art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
So just explaining the rules and regulation of this cricket tournament, Arshiniket just explaining the rules and regulation of this cricket tournament. So once again, welcome back for this wonderful cricket tournament. Panthers Super League 2023 is the first time in Urva Cricket Ground organizing such a wonderful cricket tournament. And we have a chief guest for this inaugural ceremony, the proprietor of G Institute of Creative Art, respected Guru Sanu sir is present here. So on behalf of organizer, on behalf of all cricket lovers, we would like to welcome him for this wonderful and prestigious Panthers Super League 2023. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರು ಸಾನು ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ Panthers Super League 2023 is an overarm auction based cricket tournament. 12 teams participating in this cricket tournament and 2 days of festival of cricket, and it is a tossing ceremony is going on between two teams, VV Warriors versus Saptami, and I think the captain of Saptami won the toss, looks like that, and they yet to decide whether they're going to ball past or bat past. We have one more chief guest, Suresh V. Kamath, already present here. So on behalf of cricket lovers, on behalf of organizer, once again we welcome Sir Suresh V. Kamath for this wonderful cricket tournament and the prestigious Panthers Super League 2023. Please note, both the captains, the rules and regulation of this particular cricket tournament. The match will be of 5 hours. These are league match stages. All the league matches will be played, 5 hours, and there will be the maximum of 4 bowlers to be used, and one bowler got opportunity to bowl at 2 overs, and out of that 5 overs, the 4 bowlers to be used, and one bowler is got an opportunity to bowl at 2 overs. As per the rules and regulation of 5 overs fielding condition is concerned, 1 hour going to be a power play where you can keep only 2 fielders outside the 20-yard circle. In fact, in UCC cricket ground, it's not more than 2 outside the circle in the power play overs. All the decision made on the field will not be changed. Please note that team captain must submit the playing 11 list before the toss of each match. All teams are required to be reached to the ground at least 30 minutes prior to the match, and that is very important. Time sense is so important to conduct this cricket tournament smoothly. If any of the team is not present even after 3 calls from the announcement desk, then the opposition team will be declared as a winner of the match. The maximum 10 minutes buffer. All the first round matches will be of 5 overs, that's already I mentioned, per innings, 4 bowlers each. The first over will be the power play. During that match time, the participating teams must utilize the dugout compulsory. Of course, we have 2 very good dugouts out there in the right of our commentary box. Please use that dugouts. One is in front of our commentary box and also mid-wicket region, and one at just left of our main stage. Please use that dugout, the participating teams. And the dugout will be decided by the toss winners. A new ball will be used for innings. Any batsman will not be given the runners. It's a rules and regulation. In case of if there is a tie during the league matches,
both teams will be awarded equal points. And in the playoffs, the winner will be decided by super over. In case of any disputes, only the captain is supposed to approach the umpires, and there is no leg. Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika, the Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika, the Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
Welcome back and good morning, cricket lovers. And, we are all set for the big moment of this prestigious cricket tournament, Panthers Super League 2023. And new series from the infant of dice, the toss which is completed. The captain of Saptami Warriors won the toss and elected to ball first, and wait and see how the strategy, the game plan will going to work out after winning the toss, elected to field first. The opening for the two opening batsmen for VB Warriors are in the middle. VB Warriors, everybody knows, one of the most reputed team, especially in underarm cricket is concerned. They got their own record, and especially particular in this Urva cricket ground, and they got a history of having some good records in this UCG cricket ground. But wait and see how they will going to perform in overarm cricket, and it's definitely going to be very interesting to watch VB cricketers Warriors in this particular tournament. Here is the first ball of the tournament. Right arm over the wicket, pulls that one nicely down to deep mid-wicket region before the deep backward square leg region fielder to cut it off, and ample time for the batter to complete that couple of runs. Short pitch delivery to start with. The bowler started his first over, which is bowled a little bit short pitch one, and batsman got enough time to go back and pulls that one down to mid-wicket region, and a couple of runs here for VB Warriors. So VB Warriors got two opening batters in the name of Deepak Kamath, and in the non-strikers end Varun Kinney, and bowler is operated from the commentary box is Deepu. Right arm over the wicket, passes on passion. A lovely shot, crashing that one beautifully down to deep cover point region. Fielder chasing the ball. Will going to win the race here? But fielder winning the race just inside the fence. He able to cut it off, but ample time for the batter to come back for the third as well. That was a glorious shot indeed. Off the back foot, punch that one off the back foot with the middle of that bat. That ball travels very quickly down to deep cover point region before the backward point field, and deep cover point just chasing the ball and able to cut it off just inside the boundary line. And three valuable runs came from the bat of the batsman Deepak. And the scoreboard is moves on to 5 on the board, without loss of any wicket here in over the first in progress. First over in the progress in the sense it's a power play over. You can keep only two fielders outside the circle. There's a deep backward square leg and deep long on, two fielders outside the circle. Right arm over the wicket this time. Extra deviation here for the bowler Deepu there, because he couldn't manage to control that deviation. What he was just getting encouragement in the morning session as he got out swing delivery. Of course, he bowled in swing delivery, but the fact that left-hand batsman is on strike, ball is just going away from the left-hand batter, but it's further away. The white signal by umpire, scoreboard moves on to 6 on the board. Deepak bowls this time again. Oh, the loose stroke indeed. Chance here for the fielder, and he got the penalty for that. This is a little bit extra bounce which is create the problem here for the left-hand batsman, isn't it? The Varun is a batsman, tried to tackle with that slow bouncer there from Deepak. Of course, it's a short pitch delivery, but not that much of short enough to go for the slash. He's not really controlled that stroke, didn't got enough time on that, timing on that. The loose stroke is a half-minded stroke, which comes into play, and just look at that one, a replay. Absolutely, he was nowhere to play that shot, and not a good position at all to play the shot, and he pays the penalty for that. And VB Warriors, they lost one warrior in the name of Varun, and scoreboard is 6 for the loss of 1 wicket here in number first in progress. It's absolutely fantastic morning. It's a bright, sunny morning out here in this most beautiful UCG cricket ground, and we are watching the first match of this Panthers Super League 2023. Deepak balls went for the reverse sweep, and half-hearted appeal there from the wicketkeeper behind the stump. It's just an excitement rather than the confident, and the batsman almost missed the ball long way, but tried to play that reverse stroke, and there is no chance at all for any run. New batsman came into middle is Bala. Bala means, I think, is a Bala Krishna. His nickname is Bala. He will go into face Deepak, the successful bowler, bowling away from us. Right arm from the wicket, and not a good direction in the negation. Ball pitched outside the line of leg stump, and a little margin for error for the bowler to ball that outside the line of leg stump. No hesitation there from Shiniket, and he got the first exercise of the morning as he given that one, called that one wide, and one more run which is added to total. Scoreboard is 8 on the board for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Now he's changing his angle, quite understandable. The left and right combination is now bowling over the wicket, passed on by Shiniket.
This time, lovely shot, beautifully driven right in the gap. And again, the little bit walk here for the fielder from the deep mid wicket to run across this right to field the ball down at deep backward square, like in front of square, in fact. And he fields the ball. Again, the enough time for the batter to get a couple of runs here. The Deepak is looking pretty good, actually. He's hitting the ball quite nicely, middling the ball very well. And he got most of the runs which is scored in this first over. 10 for the loss of 1 wicket. Deepak is bowling a final time in this over. Away from us. Right, over the wicket, drives that one, misfield that by the fielder. The protection has been given in the deep, and that's why the batsman have to settle for the single. Good return coming from the fielder in the deep. First over completed, productive over there from VV for VV Warriors. Even they lost 1 wicket, but Warriors not really having that much of worries as far as the run rate is concerned. They got 11 runs in this first over, and they started very well. So equal result in the first over as Saptami got 1 wicket. At the same time, Veera Venkatesha Warriors got 11 runs in this first over. Ratan Kamath brought into attack from the far end, Rama Bhajana Mandira end, and he will go into bowl the second over of the innings of Veera Venkatesha Warriors. The batsman in front of him is Deepak. There is a deep long on, there is a deep long off, deep mid wicket, deep backward square leg. This time, well pitched up delivery, the absolutely perfect one, but not perfect enough to call that the legal delivery. Umpire rightly so that is a wide ball, because that ball is going over the top of the head of the batsman, so that umpire rightly so to call that wide. The one bouncer from the over. This time lofted that one, but straight to the hands of deep long off. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement there from Deepak. It's a big wicket for Saptami Warriors. They needed that kind of the start in the second over, because Deepak is looking pretty good in the middle, striking the ball very well. But this time I think, unfortunately, the placement is not quite enough as a deep fielder, long off fielder making no mistake at all. The wicket number 2 which is back into pavilion. It's a 12 for the loss of a 2 wicket in the over number 2 in progress. So Srinivas Kamath came into middle as a number 4 batsman for the side of VV. And everybody knows that Srinivas Kamath is a very capability of batting, and he's the one who can perform both format, whether it's underarm cricket or overarm cricket. I watched him. He's a fantastic performer as far as underarm cricket is concerned, and wait and see how he'll going to perform. Oh, that was a loud appeal for leg before wicket. It's a loud appeal, but umpire says is Dikshit not, I think, not that much of confident enough to give that leg before wicket. Bite ball is just shaping towards leg stump. Absolutely, ball pitched in the line, not, but as a fact, it's bowling in swing delivery, and ball just missing that leg stump. From the professional career end, the bowler is getting ready to bowl that next delivery to the left-hand batsman Balakrishna. He came as a number 3 batter for the side of VB. Warren bowls this time. That was absolutely fantastic cricket, intelligent cricket there from the batsman Balakrishna in that occasion. He just allows the ball coming into him and just opening the face of the bat, just giving the direction towards a short third man region for a single. With the single scoreboard numbers on to 14 for the loss of 2 wicket. Ratan again from the professional career end. Right arm over the wicket. This time again went for the big shot. Again leg before wicket is an appeal, but again the ball is going down the leg stump, and leg by call by umpire Dikshit in his own style. One more addition to total 15 for the loss of 2 wickets. So far it's a good going here from the bowler Ratan, as keeping the batsman very quiet. Quite understandable, because he got a wicket of Deepak, and that's why the run rate is looks like it's coming down in this over. Beautifully bowled, absolutely perfect one. Just he got extra bounce and just forcing the batsman onto the
the back foot, and ball is almost hitting a rib cage of the batter. There's no question of any run at all, and score remains on 15 for the loss of 2 wickets. Ratan looking pretty good in this particular over as hitting the ball in the right area and getting some extra bounce as well, just creating the problem here for the batter of VV cricketers. Again, VV Warriors in fact. Full toss delivery, batsman just missing the golden opportunity to swing that one, isn't it? It's unfortunate because he's not really expecting the full toss from Ratan there, and that's why he couldn't manage to get the timing behind the stroke. But he able to rotate the strike, and after getting the single, he will go to retain the strike after completion of over number 2. It's a pretty good over from Ratan. Just 5 runs came from that over. After completion of over number 2, it's 16 for the loss of 2 wickets, and VV Warriors, they're going exactly 8 runs per over. So 2 overs completed is 16 for the loss of 2 wickets. So 16 for the loss of 2 wickets is 8 runs per over. It's not a bad run rate if you're considering the fact that when you're playing in a morning condition usage cricket ground, there is not that much of a wind at all in the ground. And I think probably the first session is definitely going to be a little bit encouragement for the bowler. Considering all this fact, I think the team of VV cricketers, VV Warriors has got a good start from the 2 overs, but even they lost to 2 wickets. Deepak will going to continue from the UTC end, and first ball nicely turned that one down to square leg region, but I don't think it's going to be the delivery where you can implement that kind of cricketing stroke, because it's a free meditated shot which is implemented by Bala. That's why you're not able to take the advantage of that full toss delivery. And 17 for the loss of 2 wicket, and it's not so easy, isn't it? We are just coming back to the batsman just came into middle is Srinivas Pai. He's a fantastic performer as far as underarm cricket is concerned, but we need to see this capacity, we need to see this capability of performing in overarm cricket. But I think those who are playing underarm cricket very well, it's not difficult for them to play overarm cricket, because ball always coming in a one bounce, they can judge the ball quite well. This time across the line, swings that one, but not really getting that much of timing and enough bat onto that, but he able to get a single down to mid-wicket region. Of course, they need to take a little bit time to settle down. It's not so easy to change your technique from underarm cricket strokes to overarm cricket strokes. It take a little bit time. Once this is settled down, definitely the batter like Srinivas Pai is definitely going to be very useful in this particular format of a game. So 5 overs format of a games, everybody knows that the 5 overs always is difficult for the bowlers to sustain, and always it's a very, very good advantage for the batsman, because this time again looking for the improvisation, but he's not really seeing the line of the ball very well, isn't it? But I think it's a good thinking by the bowler, Deepak, seeing that the batsman moving towards offside. He's just following the batsman, isn't it? He's just following the batsman. See that they need to see that, of course, the batsman going for the improvisation, going for the stroke down to find aggression. He's just following the batsman, changing the line quite cleverly, balled outside the line of off stamp, and the score remains on 18 for the loss of 2 wickets. Deepak again, this time I think nothing much to do with the delivery, as we're just getting away from the line of the delivery, rightly so, and umpire Shiniketa has got no hesitation in his mind to call that a wide ball. 19 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. 5 overs match is any score around 42-45, definitely going to be a good score to depend. Again, the identical mirror display of previous delivery, isn't it? The same line and same length and same decision which is came from umpire Shiniketa as it is a wide. So each and everyone, the VV Warriors will going to enjoy that extras which is considered by the bowlers of Saptami. 20 for the loss of 2 wicket. This time full toss, but not enough. I think is enough to get the boundary, and one bounce over the row for 4 runs. Looks like he just not putting enough power in the stroke, just helping it down, using the full toss. But I think the placement is exquisite.
Once he's played, taken an aerial route, we thought that it might be the fielder there in that position at square leg, but fielder little bit square, almost in between mid wicket and deep backward square leg, and he got a placement right to get the boundary on bounce over the row for 4 runs. 24 for the loss of 2 wicket. After a long wait, I think the Balakrishna is able to break the shackle as he got a boundary in that full toss delivery. Always it's going to be a juicy one for any batsman if he gets a full toss. In the previous 2 overs, I think Balakrishna just missed out 2 full toss deliveries. But this time I think he's made a little bit clever thinking as not really looking for the big stroke. In fact, not really looking for the powerful stroke, but he get the placement right down to deep backward square like boundary for 4 runs. So with that boundary, scoreboard moves on to 24 for the loss of 2 wicket. Looks like umpire will going to change the ball. Ball went outside the park after 1 bounce. That shows the hardness of the ball, which is used for this particular tournament. Wilson 3, which is used for this particular tournament. Not that much of hard, just like we're talking about a hard tennis ball. The wicky ball is used, it's pretty hard. But in this particular stadium, I think the organizer decided very well to implement this Wilson 3 balls is quite useful, and this time Balakrishna sensible batting after getting a boundary. He quickly realizing that the rotation of strike is so important, and he picked up a single down to extra cover region, short extra cover region, and with the single scoreboard numbers on to 25 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Deepak looks a little bit expensive in this over, and compared to his first over, as 11 runs we considered. Here also his ball some expensive over. Deepak away from us. Right, over the short pitch delivery, and Shini fools that one, not really getting that much of control over that pull shot, but still enough for him to come back for the second before the fielder from deep mid-wicket region to run across towards a deep, almost in a cow corner between mid-wicket and deep long on, and ample time for Shini to get back for the second as well. One more productive over after completion of over number 3. VV Warriors are 27 for the loss of 2 wicket, 3 overs which is completed, and they're going exactly 9 runs per over. It's a very good run rate which is maintained by the Warriors. This is a battle between 2 Warriors, and the Saptami Warriors versus VV Warriors. Equal battle is on between these 2 teams. So one more Deepak is came into ball from the professional career end. Deepak Kamath will go into ball around the wicket, and look at the way the Balakrishna, the free minute before the bowler started his run, he was almost starting in all the 4th or 5th stump of the offside region. That shows is that just he wanted to distract the concentration of the bowler. The first ball, they went for the reverse sweep, but not really getting control over the shot, and fielder from short adman fielder, just a couple of steps, he's run back and takes a very good position to take the catch, and wicket number 3 of VV Warriors are back into pavilion. 27 for the loss of 3 wickets. Just I want to see it in the replay. Look at the batsman. He's just wanted to play the reverse stroke, but not really getting that one from middle of the bat. And planning is right, but implementing that planning without seeing the line of the ball, I think is definitely going to be a wrong move there from the batter Balakrishna as he pays the penalty for that. Wicket number 3 is back into pavilion. It's a 27 for the loss of 3 wicket VV Warriors. So Vignesh came into middle. Of course, in GSB community we have many Vignesh. So Vignesh Pai for VV cricketers came into middle now. Very experienced campaigner, very good striker of the ball. Will go into face Deepak. Oh, beautifully ball. Try to york the batsman in the negation. Batsman tried to push the ball on the onside region. Wait for the umpire signal. He's got an inside edge of the bat off the batsman, so that the Vignesh not convincing and confident start there from him because of Deepak is balled a slower one actually. Change of pace comes into play, and the perfect delivery to ball to the fresh legs.
and he got reward for that. And of course, he just managed to keep him quiet in that over, in that delivery. Again, he bowling from the far end. Right arm over the wicket, drags the ball from the outside the line of leg stump, but quite interestingly, that ball didn't went straight to the hands of Deep Long on that after one bounce collected by the Deep Long on fielder, and Shini gets a single for that, and scoreboard is moves on to 29 for the loss of 3 wicket. Just we were watching the bowler which is introduced from the professional career, they got a lot of help. They created some problem. The bowler which is introduced from this end, commentary box end, that got some punishment. That's only because of the way the ground has got the wind direction, which is creating the ball problem for the batter. This time, lovely delivery, beautifully bowled. There's a leg cutter in the relegation, but it's not so easy for the batsman like Vignesh. Seeing that ball is going away from him, right outside the line of half time, try to pull the ball, but he's just get away from the line. He thought it might be a wide ball, but well within the reach of the batsman, rightly so. Umpire Dikshit is not interested, and one more dotted delivery ball by Deepak. Again, without coming to the line of the delivery, Vignesh just tried to swing that one. He's not seeing the ball, isn't it? As I wanted to hit a ball against the line, this is towards the onside region. But every time ball is going away from the right-hander batsman, again he missed it completely. The wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no chance at all for any run. It's a 29 for the loss of 3 wicket. Deepak ball, beautifully balled. One more fantastic delivery to stop with that. Absolutely, that was a stopping delivery, a stop delivery. In fact, he's bowled a slower one back of the hand. He's released the ball and getting some slow balls to miss the bat of a batsman. Vignesh several times, 3 times in occasion in that last 3 deliveries. Bowler Deepak has managed to defeat the bat of Deepak. Outstanding over there from Deepak. Much required, quite over there for Saptami Warriors after completion of over number 4. Searching for the right track. VB Warriors are 29 for the loss of 3 wicket. Now they're going to deal with the final over of their innings. From the UTC end, we got AP. AP, it's a short form, and is Anand Pai is brought into attack. Oh, starts with the delivery, appeal for leg before we get ball going down the leg stump. Rightly so. We can see that of course, in swing delivery, ball swinging in the air, and right call from umpire Shiniket. That ball definitely going to miss the leg stump, where the ball is having a shape to outside the line of leg stump. Rightly so. Umpire called it's a not out. 30 for the loss of 3 wicket, and here is the next one. Anand Pai balls. This time Vignesh. This is a stroke of the frustration, but the fielder, I think the wicketkeeper and the square leg fielder has got a lot of miscommunication at the same time, the misjudgment, and costing a 2 valuable runs here for Vignesh. It's definitely a catch for the fielder at square leg, isn't it? But the square leg fielder seeing that wicketkeeper running towards the catch, then he was given up. But it's that I think it's just look at it on replay. The way the wicketkeeper running, even the fine leg fielder is also running. Look at the square leg fielder. He's not really observing. He's just observing the wicketkeeper coming to the catch. That's why he's not trying for the catch. It's a lucky escape here for the bowler, for the batter. This time Vignesh again going for the stroke. It's a wide outside the line of half time. This time he is not survive. This time we will not going to survive as Vignesh, the frustration innings which is comes to an end. He's not really looking comfortable in the middle when the word goes when he came into middle, as he played 3 dotted deliveries in the previous over, and in this first particular over the mischance by the wicketkeeper. At the same time, next ball again he's looking for the big shot, but not really control over that full shot. Nowhere near the pitch of the delivery. No control at all for that full shot. Pays the penalty for that. Wicket number 4, which is back into pavilion of VV Warriors. The worries which is continues here for VV. They lost one more Warriors in the name of Vignesh Pai. 32 for the loss of 4 wicket. The new batsman in Aniruddha, the very young talented player for the side, Aniruddha. But nothing much deliveries remaining.
just a 4 as he cuts that one, but not quite enough to get more than single in that occasion. Of course, he's charging for the second, but Srinivas not interested, rightly so, because he wanted to deal with the remaining deliveries of this final over so that this team is will going to get some good score here. 33 for the loss of 4 wicket. Last 2 balls remaining in their innings. Full toss and Srinivas hits that one. Oh, absolutely. It was unbelievable stop there from the fielder because I don't really understand what kind of fielding it's going to be. He is not really putting his two hands. In fact, he is putting his two legs to stop that boundary. But anyhow, the boundary which is stopped, that's very important. And a couple of runs which is taken in the middle. It's a 35 for the loss of 4 wicket. It's quite unusual kind of fielding performance there from the fielder. Again, he hammering it down to deep long on. They're running hard, looking for the second, but it's going to be a boundary. The fielder there in the deep, but it was not a straight long on. It's a wideish long on. No chance at all for the fieldsman in the deep long on, and he got a boundary for that. And Srinivas has got a very important boundary for VV Warriors. Just look at that one. And long on fielder, a little bit wider, but little bit of misfield by the fielder. It's a stoppable one, but because of that ball is just missing the hands of the fielder. Ball went towards a deep long on boundary for 4 runs. So nice way to finish the innings for VV. At last they managed to score exactly 39 after completion of over number 5. And they set a target of exactly 40 to win the match for Warriors. At the required run rate of exactly 8 runs per over is going to be a required run rate for Saptami Warriors, and wait and see how Saptami will going to get this 40. This is a battle between 2 Warriors, Saptami versus VV, Veera Venkatesha, and wait and see how well these 2 teams will going to battle for the first victory and of this league matches. Of course, each and every team. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. अंतर्गत और जहाँ तक सवाल है, हर एक खिलाड़ी के लिए इस श्रृंखला में अपना कौशल दिखाने का यहाँ पर मौका है। और कुल मिलाकर जैसा कि आपने फरमाया, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों के लिए है अपने भविष्य उज्जवल करने के लिए। तो जहाँ तक सवाल है, इस वक्त पहला मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ VV और सप्तमी के बीच।
तो 40 रनों का लक्ष्य इस वक्त, और पहले वीवी वॉरियर्स ने बनाया, सप्तमी वॉरियर्स के लिए बनाने 41 रन, 41 दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन 5 ओवर्स, एंड एज फार द रिक्वायर्ड रन रेट इज कंसर्न्ड एग्जैक्टली 8.20 रन पर ओवर। दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और जहां तक सवाल है आरंभिक बल्लेबाजों का, विघ्नेश और दीपक दोनों आरंभिक बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए लक्ष्मीश बालिगा। तो विघ्नेश सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के गेंदबाज लक्ष्मीश बालिगा अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद फुल टॉस ऑन साइड पर, गेंद को पुल किया खूबसूरती के साथ, लेकिन डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। इससे पहले कि डीप मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया जाता, और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है सप्तमी वॉरियर्स के लिए। एक रन बिना किसी नुकसान के, पहला ओवर यहां पर प्रगति पर। निस्संदेह जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, एक बेहतर शुरुआत की जरूरत इस वक्त सप्तमी वॉरियर्स को, और सामना इस वक्त करते हुए विघ्नेश, जबकि इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मीश बालिगा। पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी, और विकेट कीपर और गेंदबाज इस वक्त कुछ हद तक बातचीत करते, एक बार फिर से दोनों अपने स्वस्थान पर लौटते हुए, और अपनी अगली गेंद लेकर लक्ष्मीश बालिगा इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त फील्डिंग में जमावट करने के बाद, मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर गली, शॉर्ट थर्ड मैन इस वक्त मौजूद ऑफ साइड पर, शॉर्ट फाइन लेग, स्क्वायर लेग और मिड विकेट इस वक्त तैनात। गेंदबाज लक्ष्मीश अगली गेंद के लिए तैयार, फुल टॉस पुल किया, गेंद को मिड विकेट पर, गेंद जाती हुई फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। फुल टॉस गेंद को ऑन साइड पर स्विंग किया था जरूर, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था, और आखिरकार डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने कोई गलती नहीं की, और इसी के साथ यह पहला विकेट गिर चुका है सप्तमी वॉरियर्स का। तो आउट होने वाले बल्लेबाज इस वक्त आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं। विघ्नेश, दीपक आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं, और जहां तक सवाल है पहला विकेट का, तो पहला विकेट यहां पर खो चुका है सप्तमी वॉरियर्स एक रन के ऊपर। इट्स 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। Indo Super Warriors will take over Kodial Super Kings in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡೋ ಸೂಪರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಲೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು कार्तिक प्रभु का आगमन हो चुका है, और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार। तो लक्ष्मीश बालिगा गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हैं, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद मिड ऑफ फील्डर को थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात तक किया जा रहा है, और मिड ऑन पर इस वक्त एक फील्डर मौजूद, थोड़ा सा स्क्वायर, और गेंदबाज लक्ष्मीश इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन अपील, एंड अप गोस द फिंगर फ्रॉम अंपायर, मच स्ट्रेट लाइन, इज गॉट अ डिफ्लेक्शन ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद सीधे पहुंचे बल्लेबाज के बल्ले पर टकराने के बाद, बल्ले के बाहरी किनारे पर टकराने के बाद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, और आखिरकार अंपायर श्रीनिकेत ने अपनी उंगली यहां पर उठा दी। तो इसी के साथ ये पहला दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है एक रनों के योग पर। सप्तमी वॉरियर्स संकष्ट की स्थिति में यहां पर नजर आता हुआ, दे आर लुकिंग इन ट्रबल नाउ, 1 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस, एंड अ फैंटास्टिक bowling performance continuing here from the bowler लक्ष्मीश। 2 विकेट पहले ओवर में वो प्राप्त कर चुके हैं, और निस्संदेह जिस ड्रीम स्टार्ट जिससे अंग्रेजी में कहते हैं, जिस बेहतरीन शुरुआत की इस वक्त जरूरत थी वीवी वॉरियर्स को, वो बेहतर शुरुआत यहाँ पर लक्ष्मीश बालिगा दे चुके हैं। 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर। नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, रतन इस वक्त क्रीज पर मौजूद। निस्संदेह जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त एक लंबी साझेदारी की जरूरत है सप्तमी वॉरियर्स को। अगर उन्हें 40 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो निर्धारित 5 ओवर में 2 विकेट गिर चुके, सिर्फ 1 रन स्कोरबोर्ड पर दिखाई देता हुआ लक्ष्मीश।
फुल टॉस, गेंद को ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, चूके गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बल्ले का भीतरी किनारा जरूर टकराया था, लेकिन विकेटों के पीछे गेंद को गैदर कर लिया विकेट कीपर ने पहले टिप्पे के बाद। आफ्टर फर्स्ट बाउंस एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। V4 न्यूज चैनल पर इस श्रृंखला का एक बेहतरीन टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। और फिर से एक बार गेंदबाज, again, oh, perfect off cutter this time, just going for drive after he just wanted to play that one away from his body, और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज को वंचित करने के बाद रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज लक्ष्मीश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद पटकी हुई गेंद, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर। सिर्फ गेंदबाज ने इस गेंद पर अपील की थी और आखिरकार ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ऐसा कहना पड़ेगा सप्तमी वॉरियर्स मेरा शैकलिंग स्टार्ट, एक लड़खड़ाती हुई शुरुआत वो यहाँ पर कर चुका है। 1 रन सिर्फ जोड़ चुका है 2 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। तो पहला मैच पैंथर सुपर लीग 2023, पैंथर सुपर लीग 2023, द फर्स्ट मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। और जहां तक सवाल है पहले मैच का, तो सप्तमी वॉरियर्स और वीवी वॉरियर्स इस वक्त भिड़ रहे हैं, दोनों योद्धा। हेलो और హలో నెక్స్ట్ మ్యాచ్ కేఎస్కే అని ఎల్ఆర్పి టీమ్ క్యాప్టన్స్ స్టేజాల యొక్క Damodar, the bowler, is now brought into the attack, and the first ball of the first over coming up from professional end. और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दामोदर और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए। कुल मिलाकर स्क्वायर लेग, मिड विकेट, मिड ऑन, मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट शॉट, थर्ड मैन शॉट, फाइन लेग मौजूद इस वक्त। और जहां तक सवाल है रिक्वायर्ड रन का, तो 38 और रन चाहिए बचे हुए 4 ओवर में। और आस्किंग रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त जा पहुंचा है एग्जैक्टली 9.50 runs per over. 38 more runs now they have to score for victory in remaining 24 deliveries. The asking run rate is now creeping up for them. और ओवर की पहली गेंद लंबे रनअप के जरिए इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए दामोदर नायक। पहली गेंद वाइड ऑफ द स्टंप्स, ये गेंद ओ विकेट कीपर चुके हैं, लेकिन शॉट थर्ड फील्डर के हाथों में गेंद रन लेना चाहा, लेकिन अंतिम क्षण में अपने निर्धार को बदलते हुए अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया। वाइड का इशारा ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद और 1 रन का इजाफा, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है। गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, अब गोस द फिंगर फ्रॉम अंपायर, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। विघ्नेश की पारी समाप्त, कुछ हद तक नाखुश दिखाई देते हुए, लेकिन उन्हें जाना होगा। यहां पर अंपायर की उंगली उठ चुकी है और देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। और यहां पर लेग बिफोर विकेट के रूप में ये विकेट गिर चुका है। तीसरा विकेट गिर चुका है 2 रनों के ऊपर। 2 for the loss of 3 wickets. Shackling progress is now continuing here for the batsmen of Saptami Warriors. Now they are looking deep in trouble. It's 2 for the loss of 3 wickets. So what a fantastic bowling performance continuing here from the bowlers of VV Warriors. They conceded just 2 runs in the first 1.1 over and capturing 3 wickets of Saptami Warriors. And this is an outstanding progressing here for them, for the bowlers of VV Warriors. तो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद दीपक शनय, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज दामोदर नायक की अगली गेंद का। वाइड ऑफ द स्टंप्स गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर कट करने का प्रयास किया, अंतिम क्षण में गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद विकेट कीपर हालांकि थोड़े से चूके जरूर, लेकिन दोबारा गेंद को फील्ड करते हुए रन सब बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 2 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 2 for the loss of 3 wicket
इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर, गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यशस्वीतम दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। पटकी हुई गेंद थी और इस गेंद को बल्ले पर कबूल करते हुए गेंद को विद ट्विस्टेड बैट गेंद को खेल दिया बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा पर। और जब तक गेंद को सीमा रेखा के अंदर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 4 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 2 in progress. Still the batsmen of Saptami Warriors are now searching for the right track. जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, इस वक्त एक लंबी साझेदारी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत सप्तमी वॉरियर्स को इस मैच में कमबैक करने के लिए। और फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, पटकी विकेट, इस बार स्क्वायर द विकेट, गेंद हवे में, लेकिन फील्डर कवर पॉइंट के थोड़े से स्क्वायर था ना, जब तक डीप कवर पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े ओवर थ्रो के रूप में और 3 रन यहां पर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा पूर्ण कर चुके हैं। 7 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 7 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 2 in progress. So a fantastic tournament started just short while ago after being a grand inaugural ceremony in the name of Panthers Super Leagues 2023. और जहां तक इस मेगा श्रृंखला का सवाल है, तो इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत पहला मैच इस श्रृंखला का यहां पर खेला जाता हुआ संघर्ष इस वक्त जारी है सप्तमी वॉरियर्स और वीवी वॉरियर्स के बीच। ये गेंद कट किया खूबसूरती के साथ, लेकिन रक्षणा वहां पर मौजूद, एक रन, ओ मिसफील्ड और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। अंतिम क्षण में थोड़ी सी हड़बड़ाहट, गेंद से अपनी नजरें हटा ली और गेंद उनको वंचित करते हुए सीधे उनके हाथों को बीट करते हुए सीधे डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। रन से इस वक्त चाहिए थे कि यहाँ पर किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस। और गेंद इस वक्त फील्डर के हाथों से छूटने के बाद डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 11 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 2 in progress. So long spreaded outfield, deep backward square leg, long on इस वक्त तैनात और long off इस वक्त मौजूद नहीं, मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, डीप कवर पॉइंट ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद है। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ पर इनटू द वेकेंट गैप एंड अ 6, छक्का इस वक्त उछालते हुए। So this is an absolutely a perfect strike. Have a look at this. इस वक्त देखिए किस तरीके से इस वक्त दिखाया जाएगा रिप्ले पर। गेंद को बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट करते हुए एक्सक्विजिट टाइमिंग्स के साथ इस वक्त गेंद को उछाला था लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा सप्तमी वॉरियर्स कुछ हद तक संभल चुका है। एक धीमी शुरुआत के बाद पहले ओवर में सिर्फ 2 रन बने थे, 3 विकेट गिरे थे। अब इस ओवर में 15 रन बने और इस ओवर की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा सप्तमी वॉरियर्स आर नाउ बैक इन द मैच। 3 ओवर का खेल बाकी, 23 रन चाहिए। 23 runs more now they have to score for victory in remaining 18 deliveries. Exactly 7.66 the required run rate for them at this situation. और तीसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ। रामकृष्णा गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार दीपक। कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल यहां पर पूर्ण हो चुका है। 17 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर में 15 रन जो बने सप्तमी वॉरियर्स की ओर से, वो 15 रन इस वक्त उनको एक सुस्ती पर लाकर ठहरा चुके हैं। तीसरा ओवर शुरू होता हुआ, पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। (23) to get from 18 balls now. The required run rate is now exactly 7.66 runs per over for them. तो तीसरा ओवर शुरू होता हुआ और गेंदबाज रामकृष्णा इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद फुल टॉस, गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर पर, नॉट क्वाइट पेडली गेट, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। इनफैक्ट फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई और इस बीच
कवर पॉइंट फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया जा रहा है गली पर। और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज रामकृष्णा गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद खूबसूरती के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को पंच किया लेकिन कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद। डीप कवर पॉइंट पर दूसरा रन लेना चाहते, थ्रो पहुंचा नजदीकी मामला, लेकिन थ्रो को रिसीव करने में असफल ठीक तरह से विकेट कीपर। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। पहले झिझके जरूर दूसरा रन लेते वक्त नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज 2 कदम दौड़ने के बाद, लेकिन अपने रफ्तार को वृद्धि करते हुए दूसरा रन यहां पर सुरक्षित पूर्ण करते हुए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। पहला मैच का द्वितीयार्ध यहां पर प्रगति पर, हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए वीवी वॉरियर्स के कप्तान। और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, फुल टॉस, गेंद को इस वक्त खेल दिया, लॉन्ग ऑफ पर 1 रन मिलेगा। एक ही रन से बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। 19 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री in remaining 15 deliveries. 15 deliveries gone in their innings. 15 delivery have to go, and 19 more runs now they have to score for victory. बराबर का संघर्ष यहां पर जारी। 21 in fact. 19 they have to score for victory in remaining 15 deliveries. गेंदबाज रामकृष्णा, ये गेंद अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी स्विंग लेती हुई अंदर की ओर आई, गेंद को रिवर्स शॉट के जरिए खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 21 रनों पर। स्कोर बोर्ड स्टेज एट 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और अपनी अगली गेंद लेकर रामकृष्णा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद ड्राइव किया, नॉट स्ट्राइक, बल्लेबाज के पैर पर टकराई, बल्लेबाज गिर पड़े लेकिन संभल कर दौड़ते हुए 1 रन अंतिम क्षण में पूर्ण किया था। काफी जोरदार स्ट्रोक्स का था और अंतिम क्षण में गेंद नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज के पैरों पर टकराने के बाद निकल गई वाइड लॉन्ग ऑन पर। और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, 22 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और रामकृष्णा एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, रतन सामना करते हुए, यह गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी लेकटर गेंद, पेस का चतुर परिवर्तन, और इस धीमेपन को समझ नहीं पाए बल्लेबाज और स्ट्रोक्स खेलने में चूके गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 5 रन इस ओवर में रामकृष्णा ने प्रदान किया। 5 रन कंसीडर्ड बाय द बॉलर रामकृष्णा इन दिस ओवर। 3 overs completed and after 3 overs Saptami Warriors are 22 for the loss of 3 wicket. 18 runs more run up they have to score for victory in remaining 12 balls. That means in remaining 2 overs. And the asking run rate is now gone up to exactly 9 runs per over. 18 रन चाहिए बचे वे 12 गेंदों में। काफी लंबी बातचीत इस वक्त चलती हुई फील्डरों के बीच वीवी वॉरियर्स की कि अगला ओवर किसको दिया जाए। तो इस वक्त देखना यह है कि प्रोफेशनल एंड की ओर से कौन से गेंदबाज गेंदबाजी पर उतरते हैं। विघ्नेश गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, और यहां पर फील्डिंग में फील्डर्स इस वक्त चाहते हुए। सुबह का वक्त 10:50 यहां पर बच चुके हैं और धूप धीरे धीरे अपना कहर मैदान पर ढाता हुआ इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता यहां पर बढ़ती हुई नजर आती हुई और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहां पर करते हुए। और कुल मिलाकर इस श्रृंखला, ये बेहतरीन श्रृंखला पैंथर्स सुपर लीग 2023, इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत इस श्रृंखला का पहला मैच का द्वितीयार्ध यहां पर प्रगति पर। द सेकंड हाफ ऑफ द फर्स्ट मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। और गेंदबाज इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए, लॉन्ग ऑन फील्डर को काफी वाइडर इस वक्त तैनात किया गया। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर इस वक्त मौजूद। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन फील्डर ठीक सीमा रेखा के पास तैनात। तो चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। विघ्नेश
पहली गेंद ऑन साइड पर, गेंद को उछालना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, कोई रिस्पॉन्स नहीं नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज द्वारा, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद लगभग उनके शरीर पर टकराई थी, रन लेने की हड़बड़ाहट उन्होंने दिखाई, लेकिन नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज वहीं पर खड़े रहे और आखिरकार ये रन आउट हो चुका है। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, टीवी मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है, रन के लिए दौड़ पड़े थे, 2 कदम बढ़ने के बाद नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज वहां पर रुक गए और तेजी के साथ गेंद पर झपकते हुए इस वक्त गेंदबाज ने गेंद को फील्ड करने के बाद तेजी के साथ विकेट चटका दी अपने आगे की ओर आने के बाद। 22 रनों पर चौथा विकेट गिर चुका। जब दूसरे ओवर में 15 रन बने थे तब ऐसा लग रहा था सप्तमी वॉरियर्स अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाद बेहतरीन कमबैक करते हुए गेंदबाज वीवी वॉरियर्स ने फिर से शिकंजा कसा और यहां पर एक बार फिर से परेशानियों के बादल अब सप्तमी वॉरियर्स के बल्लेबाजों पर साफ मंडराते हुए। तो नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। इन दिस critical circumstances the man is now comes out to the middle, Varun Prabhu, the number 5 batsman for Saptami Warriors. Still they have to score 18 more runs for victory in remaining 11 balls. 11 गेंदें बाकी है, 18 रन और चाहिए विजय के लिए। और जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, इस वक्त कम से कम एक चौके या छक्के की सख्त जरूरत सप्तमी वॉरियर्स के बल्लेबाजों को यहां पर कम बैक करने के लिए। पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। इट्स 23 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। तो फिर से एक बार गेंदबाजी पर जाते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद अच्छी गेंद, परफेक्ट इन कटर गेंद थी, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद के उछाल को पहचान नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। विकेट कीपर कुछ हद तक दर्द महसूस करते हुए इस वक्त उनके मांसपेशियों में कुछ हद तक खिंचावट आ चुकी है और एक बार फिर से तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा लेकिन ठीक तरह से उछाल नहीं पाए, लेकिन गेंद मिड ऑन फील्डर को बीट करते हुए इस वक्त निकली लॉन्ग ऑन पर और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर 9 गेंदें अब बाकी हैं, 16 रन और चाहिए। 16 रन मोर, नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 9 डिलीवरीज। हर गेंद पर रन बनाना इस वक्त जरूरी बन चुका है सप्तमी वॉरियर्स के बल्लेबाजों के लिए। अगली गेंद, यह गेंद उछाला, स्क्वायर ऑफ द विकेट, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद के नीचे आए जरूर लेकिन गेंद को लपकने में असफल। चौका इस वक्त प्राप्त हो चुका है। काफी मुश्किल सा मौका था, गेंद तक पहुंच गए थे जरूर लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को अपने दोनों हाथों में दबोचने में असफल और गेंद उनके हाथों को बीट करती हुई सीधे सीमा रेखा के सीढ़ियों पर टकराती हुई। देखिए किस तरीके से हुआ था, यहाँ पर गेंद हवा में थी। हैव अ लुक एट दिस ऑन अ रिप्ले और गेंद तक देखिए पहुंचे लेकिन गेंद को लपकने में असफल फील्डर। और इस बार चौका जुड़ चुका है, जरूरतमंद चौका इस वक्त लग चुका है बल्लेबाज रतन के बल्ले से। एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन हो करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद तक पहुंचे इस वक्त, गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया बैकवर्ड थर्डमैन की दिशा में। 2-4 रन एक बार फिर से मिल चुके हैं। रन वहां पर गेंद को रोक सकते थे लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने गेंद को ढकेला, लेकिन शायद उनके दूसरे हाथ से गेंद लगकर सीधे सीमा रेखा को पार कर गए 4 रनों के लिए। देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था और गेंद तक पहुंचे, गेंद को ढकेला लेकिन शायद उनके शरीर पर या दूसरे हाथ पर गेंद लगने के बाद सीधे सीमा रेखा को पार कर गए 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। 7 गेंदें बाकी, 8 रन चाहिए। 8 runs to get from 7 deliveries and now the tide is now slowly turning। और इन 2 चौकों की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा सप्तमी वॉरियर्स इस मैच में वापस आ चुका है। तो इस बीच ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, ही गेट्स एट लीस्ट कपल फॉर दैट। इन फैक्ट द बॉल cuts it off just inside the fence and before that the batsmen have got a plenty of time to come back for the second run। तो 2 रन बने, अंतिम 3 गेंदों में 14 रन बने और इस अंतिम 3 गेंदों की बदौलत मैं समझता हूं सप्तमी वॉरियर्स आर नाउ बैक इन द मैच। 6 to get from last over, 6 balls remaining, 6 runs now they have to score for victory and the match is now evenly poised।
What a fantastic match is now progressing here. The first match of Panthers Super League 2023 is now progressing here. और बराबर का संघर्ष यहाँ पर जारी है. 6 रन चाहिए, 6 गेंदें बाकी और अंतिम ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ. थोड़ी सी बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा यहाँ पर सौंपा जा रहा है. गेंदबाज जो कि इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए लक्ष्मीश बालेगा, जिन्होंने अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन फेंका था. 2 रन प्रदान करते हुए 3 विकेटें उन्होंने प्राप्त किए थे उस ओवर में और उस बेहतरीन गेंदबाजी के सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश में अंतिम ओवर लेकर इस वक्त वो मैदान पर उतरते हुए. छह रन 6 गेंदों में चाहिए और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ. लक्ष्मीश जो कि अपना माफ कीजिए रामकृष्ण को इस वक्त लगाया गया है गेंदबाजी पर. तो रामकृष्ण अपना दूसरा ओवर लेकर यहां पर शुरू करते हुए और 6 गेंदों में चाहिए 6 रन. डॉट गेंदों की सख्त जरूरत है वीवी वॉरियर्स को इस मैच पे कमबैक करने के लिए और ओवर की पहली गेंद लेकर रामकृष्ण इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए. यह गेंद बेहतर एंड आई थिंक द बॉल into the hands of wicketkeeper after beating the batsman. Luckily the ball doesn't got his outside edge or nick on that at the last moment. तो बचे पहली गेंद पर. बेहतर गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, उछाल कर खेलना चाहता चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेटकीपर के हाथों में. बेहतर गेंदबाजी इस वक्त माफ कीजिए रामकृष्ण द्वारा और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार वरुण प्रभु इस वक्त सामना करते हुए. दूसरे छोर पर रतन मौजूद जो कि एक बेहतरीन पारी खेलते हुए 23 रन वो बना चुके सिर्फ 11 गेंदों पर. ऑफ स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं और इस बीच रामकृष्ण गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार गेंद को बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन एंड दिस टाइम अप गोस द फिंगर फ्रॉम अंपायर. रन आउट होता हुआ स्ट्राइकर एंड पर और ऐसा कहना पड़ेगा रतन स्ट्राइक को खुद अपने पास रखना चाहते थे इस अंतिम ओवर में और इसलिए वो दूसरे छोर की ओर दौड़ पड़े लेकिन आखिरकार वहां पर पहुंच नहीं पाए और रन आउट होता हुआ 5वां विकेट गिर चुका. तो 2 बेहतरीन गेंदें रामकृष्ण इस अंतिम ओवर में फेंक चुके हैं और इन 2 बेहतरीन गेंदों की बदौलत अब कुछ हद तक पलड़ा यहां पर भारी होता हुआ वीवी वॉरियर्स का. 4 गेंदों में 6 रन बनाने हैं सप्तमी वॉरियर्स को. 5 for tie, 6 for win. And just 4 balls to go in their innings. What a fantastic match is now progressing here. The first match of Panthers Super League 2023. और जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का तो the number 7 batsman is now comes out to the middle for Saptami Warriors. अनंत पई नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और इस वक्त गेंदबाज को कुछ समझाते हुए विकेटकीपर और टीम के अन्य खिलाड़ी की किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए. और एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिना तो ओवर द विकेट ये गेंद बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. 3 dot balls in a row and this is turning out to be a fine over, fantastic over in fact. And now the pressure is now building up on the batsman. 6 रन चाहिए 3 गेंदों में अब. 6 to get from 3 deliveries and what a fantastic bowling performance continuing here from Ramakrishna in this final over. अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट यह गेंद बेहतर 4 dot balls. मैग्निफिसेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर. अब ऐसा कहना पड़ेगा सप्तमी वॉरियर्स को चौके या छक्के ही अब इस मैच में वापस ला सकते हैं. 2 गेंदें बाकी हैं. 6 रन चाहिए विजय के लिए. 6 to get from 2 deliveries. 5 for tie, 6 for win and just 2 balls remaining in their innings. The pressure is now on the batsman. और इस वक्त तैयार अपनी अगली गेंद लेकर रामकृष्णा बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए. रामकृष्णा की गेंद का यह गेंद इस बार चूके 5 dot balls.
And up goes the finger from umpire. One more wicket fallen. And now 6 required of last ball. 6 गेंदों में 6 रन चाहिए थे. उसके बाद 5 डॉट गेंदे यहां पर रामकृष्ण फेंक चुके हैं. अब सिर्फ 1 गेंद बाकी है और रन से चाहिए उतने ही, यानी 6. Six of last ball. And the final delivery of the match is now coming up. सिर्फ छक्का ही अब वीवी वॉरियर्स को इस मैच में विजय दिला सकता है. माफ कीजिए, सप्तमी वॉरियर्स को इस मैच में विजय दिला सकता है. और मैच की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज विनोद कामत, नए बल्लेबाज, इस वक्त सामना करते हुए रामकृष्णा की गेंदों का. पूरी तरह स्टंप्स को कवर करके इस वक्त शफल होकर इस वक्त खड़े हुए हैं. और अंतिम गेंद रामकृष्णा. गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए अंतिम गेंद लेकर तैयार. 6 of last ball required for सप्तमी वॉरियर्स. Here we go. चूके maiden wicket, maiden over. And this is an absolutely magnificent bowling performance shown by the bowler Ramakrishna. 6 dot balls in the last over. And this is an absolutely unbelievable bowling performance in the last over bowled by रामकृष्णा. तो बेहतरीन ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है और इस बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत यहां पर इस मैच में विजय दर्ज कर चुका है वीवी वॉरियर्स 5 रनों से. और इस विजय के साथ वो परिपूर्ण अंक प्राप्त कर चुका है. तो पहला मैच यहां पर समाप्त हो चुका है और देखते हैं दूसरा मैच यहां पर शुरू होता हुआ. तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस. और यहां पर मैं समझता हूं अंतिम ओवर में मेडन ओवर फेंकना उतना आसान नहीं है. और यहां पर एक ऐसा कहना पड़ेगा चमत्कारी गेंदबाजी यहां पर कर दिखाई है गेंदबाज रामकृष्णा ने. क्यों सतीश? Well, absolutely, Gopi. It's unbelievable, isn't it? Bowling a final over as a maiden over. It's unbelievable, isn't it? When the opposition required just 6 runs to win the match, everybody thought it's going to be an easy one for Saptami Warriors to win the match. But the way that the bowler... Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. SICA, C Institute of Creative Art, at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
पाल हंकाई प्रीतीपूर्वक स्वागत तशीची सुमन किणी मणिपाल हंकाई स्वागत तशीची व्यंकटरमण देवस्थानाच्या मुक्तेसर जेवणशिलाय किरण पै हंकाई प्रीतीपूर्वक स्वागत तशीची पोर्टवाडाच्या कॉर्पोरेटर जेवणशिलाय अब्दुल लतीफ हंकाई डेडली पॅन्थर्स तर्फेन प्रीतीपूर्वक स्वागत करता असची तशीची UFC प्रेसिडेंट जेवणशिलाय कमलाक्ष हंकाई डेडली पॅन्थर्स तर्फेन प्रीतीपूर्वक स्वागत तशीची मच्छली हॉटेलाच्या नागराज पै हंकाई प्रीतीपूर्वक जाऊन स्वागत करता असची सक्कडाने दीप प्रज्वलनाक मुखार येवका अधिकृत जाऊन या एक डेडली पॅन्थर सुपर लीग 2023 उद्घाटन गोरका म्हणून निमून घेता असच दोन दिवसू आजनी पायी फ्लड लाईट मुखांतर जवतसले एक पंद्याट तुमगे सक्कडाले सहकार अत्यगती जावन असुका भारी चंदरीतिरी विजृंभणेने चोलचाक तुमगे सक्कडाले सहकार चोलका निमून घेता असची अधिकृत जावन आशिल्ल्या उद्घाटन आता मुख्य अतिथी करतार असची हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनोभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांतिः पॅन्थर सुपर लीग 2023 आईल तसला सक्कड मुख्य अतिथींका हार्दिक धन्यवाद दिताची आता अधिकृत जाऊन दीप प्रज्वलन जलालस उद्घाटन जलालस तशीची तवळी जलाल रोमांचनकारी पंद्याट अंतू फर्स्ट मॅचाच्या मॅन ऑफ द मॅच सुरू मॅचच्या मॅन ऑफ द मॅच लास्ट ओव्हर एकही रन दिनाशी मॅच तंगेल परवाना तसला रामकृष्ण आणि वेदिकेर येवका तंका मुख्य अतिथीना मॅन ऑफ द मॅच स्मरणीक दिवन गौरव कोरका म्हणून निमून घेता असची तशीची पॅन्थर सुपर लीग 2023 अधिकृत जाऊन उद्घाटन झालेलं असा सक्कड मुख्य अतिथी तंका हार्दिक जाऊन आशिल्ले धन्यवाद डेडली पॅन्थर्स तर्फेना हिताची ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆನ್ ಸಕ್ಕಡಾನೆ दोन्ही मॅचच्या प्लेयर्स आना तयार जाऊ का क्रिएटिव्ह आर्ट हजे गुरुप्रसाद श्री गुरुप्रसाद हंका संदीप हन्नी स्मरणिक दिवनो
स्वागत करता म्हणून निमगिता सची गुरुप्रसाद हांका प्रीतीपूर्वक स्वागत डेडली पॅन्थर्स तर्फेन तशीच मुखाल वेला अतिथी आमगेलेची जावन आशिल्ले श्री सुरेश कामत हांकाय प्रीतीपूर्वक स्वागत हांका विघ्नेश नायक हांनी स्मरणीक दिवन स्वागत करता म्हणून नेमून घेता सची तशीच शंकर किणी आणि सुमन किणी मणिपाल हांकाय प्रीतीपूर्वक स्वागत तांकां अन्वित मल्ल्या हाणे स्मरणीक दिवन स्वागत करता म्हणून निमून घेता आसा तशीच आमगेले वेंकटरमण देवस्थानाचे मुक्तेसर जावन आशिल्ले श्रीयुत किरण पै हांकाय प्रीतीपूर्वक स्वागत हांकां नागेश बाळिगा हांनी स्मरणीक दिवन प्रीतीपूर्वक स्वागत करता म्हणून निमून घेता आसाची तशीच इಲ್ಲಿನ ಪೋರ್ಟ್ವಾಡಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣೈ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ तशीच हांगाचे UFCAचे प्रेसिडेंट जावन आशिल्ले श्रीयुत कमलाक्ष हांकाय कार्तिक कामत हांनी स्मरणीक दिवन स्वागत करता म्हणून निमून घेता आसा तशीच मछली हॉटेलाचे मालिक नागराज पै हांका अक्षय कामत हाणे स्मरणीक दिवन स्वागत करता म्हणून निमून घेता आसाची तशीच अधिकृत जावन आशिल्ल्या उद्घाटनेक तुमकां येईल सगळ्यांकय डेडली पॅन्थर्स तर्फेन अनंत अनंत धन्यवाद आज ही पाय जेवत आसल्या पंद्याटाक तुम्ही साक्षीभूत जावन हाका सहकार करता म्हणून वापस तुमगेला निमून घेताची ಹಂಗ ಗೋಪಿಭಟ್ ಮಾಮ ಇಲ್ಲ ಗೋಪಿಭಟ್ ಮಾಮಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ನಾಯ್ಕನೇ एक मुमेंट देऊन स्वागत करता म्हणून निमगून घेता सर check check test check hold ಧನ್ಯವಾದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ hello hello check mic check so thank you between Indo Super Warriors LFA versus Kodial Super Kings. So we have yes. So opening batters out there in the middle. The left-hand batter will go into take the strike. Vinayak Shenai will go into face first over, and the bowler Ashwin. It's a fast ball. It's going to be a magnificent start. Oh, unbelievable! It's a stand and delivered, isn't it? It's unbelievable strike. You can't imagine that when the bowler batsman facing his first delivery. Look at the level of confidence the batsman has got. This is just like in international cricket, Virendra Sehwag has got that kind of attitude of having a start. He's not really bothered about whether he's playing his first delivery or not. When his ball is hittable, he will definitely going to hit the ball. But here is the batsman, the left-hand batsman. What a fantastic start here from him. And it's just a stand and delivered. Vinayak Shenai, and effortlessly, lot of power and enough timing in that shot, and he got the distance as well. And a very good start here for team
Kodial Super Kings, 6 without loss of any wicket. Here is a bowler. Surendra bowls, appeal for leg before wicket, but look at clearly you can see that where the back foot of the batsman is almost outside the line of off stump, and a little bit shout there from bowler, but he knows that ball going to miss that one, and that's why he's just going back to his bowling mark. Good comeback here by the bowler. Surendra Pai from the far end. Bowls this time, lovely shot. Look at the placement, but a fielder there, the deep backwards mid-wicket region, will go into cut it off. But the timing is so good in the occasion. Just a wrist work comes into play. And as far as the proper cricketing stroke, I think it's definitely called as a helicopter shot. And just play that one beautifully down to mid-wicket region for a single. With the single scoreboard numbers on to 7. And Vinayak Chennai has got all 7 runs, which is came from his bat and for his team as well. 7 without loss of any wicket. Again Surendra from the far end. The professional career, and again this time bowler's back drive, and of course the batter Ashwin Kamath is off the mark with a single. Confident looking stroke, and you know exactly where the fielder is. There is a deep long on and deep long off for him. Now it's a deep backward square leg, little bit deep mid wicket in fact, and one a deep long on for a very dangerous Vinayak Chennai. He will go into face next delivery of Surendra. Round the wicket he balls, swings that one, but missed it completed. Line of the delivery is so good in that occasion. He knows that, Surendra knows that the Vignesh was almost shuffled across the line of the delivery. He wanted to hit the ball towards the onside region. That's why he bowled that line, which is outside the line of off stump, and too good for the left-hand batter. This time he swings it hard, and I think the fielder will going to take that. Oh my goodness, he misjudged that one. Ball is just rotating in the air, just changing the direction, in fact. But all we can see that the possibility of taking a catch, and might be just, I want to see it in the replay. Just look at it on the replay. He was just swings that one, swings it very hard, but high. It's a very high indeed. Not really able to get the timing behind it. Just look at the fielder. He's almost underneath it. Total misjudgment. Little bit urgency which is shown there by the fielder in the deep mid-wicket region as he drops the catch, and of course it's umpire. The first over is completed. After completion of our first over, it's a 9 on the board without loss of any wicket. A perfect start here for Kodial Super Kings. Little correction. Indo Super Warriors Alleppey. They came from long way, and the team which came from our neighboring state Kerala, from Ernakulam. I think it's Alleppey district they came from, and thank you very much for your cooperation, and it's not so easy, and I think the word of appreciation which is required for all the players of Indo to come here from long way to take a participate in this prestigious Panthers Super League 2023. Indo Super Warriors, and they've got a start what they really wanted. Kodial Super Kings after winning the toss and no hesitation at all to field first, and wait and see how will they going to justify. Of course, quite understandable. The power play over, definitely the batting team will go into opportunity to get some runs, and 9 runs they got in the first over, and second over starts from the commentary box end. Swings and missed. Swings and missed. There's a good line to start with. The bowler from the commentary box end, Pranav Bhatt, UTC end. And the 2 ends, the UTC and Professional Career, one of the sponsor of this cricket tournament. Of course, we are really thankful and grateful to all sponsors. Really cooperated very well for the success of this Panthers Super League 2023. And without their cooperation, it's very difficult to organize such a big tournament in this most beautiful and historical UCG cricket ground. Swings and missed again. This time, that appeal for caught behind and is gone. He's walking. You know exactly got to take outside edge of the bat, and no hesitation there from umpire Shinigate to raise his finger. But before the umpire will go to raise his finger, this turns back. The batsman turns back. The Vignesh Chennai after getting a good start in the first over, but he couldn't manage to continue that start what he's got. But it's a fantastic piece of bowling there by the bowler as he bowled outswing delivery, little bit going away, shaping away from the left-hand batsman. Batsman swings that one, missed that completely. The wicketkeeper behind the Sam not missing the opportunity, golden opportunity to take the catch. The wicket number first is back into pavilion of Indo Super Warriors had lost their first wicket,
The 9 for the loss of 1 wicket. Just look at it on the replay once again. Absolutely. ब्रेकफास्ट कोरता विनंती वेदिके मागची ब्रेकफास्ट काउंटर आसा It's a very good camera work there from the cameraman of V4 24 into 7 channel. Always they are leading from the front as far as the quality of coverage is concerned. Lovely improvisation. Played that switch quite beautifully. Down to deeper. Backward point boundary for 4 runs. Juicy full toss. The kind of delivery which is required for the batsman when he is trying for the switch hit, he is just capitalizing that one. Just look at that one. He plays it beautifully. Just over the infield, down to deeper backward boundary for 4 runs. With that boundary, scoreboard numbers under 13 on the board for the loss of 1 wicket. Again, bowler bowling away from us. Bowls this time not a good line as he bowls outside the line of leg stump too far and wide call by umpire Shriniket with that addition of that single. Scoreboard numbers on to 14 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Again the bowler bowling away from us. Pranav Bhatt from UTC end. Nicely driven down to deep mid-wicket revision for a single. That protection has been given. There is 3 protection in the deep, so that not that much of easy to get the placement right. The backward square leg, mid-wicket and deep long on the 3 fielders outside the circle. And for the left-hand batters, now it's the left-hand batsman, right-hand batsman is on strike. The new batsman is Ashwin Kamath is in non-striker's end. Now Ashwin is in strike. Ashwin Kamath is batting on 1. Pranav, slower one. That was a slower one, full toss delivery. But the fact that you bowled a little bit slower one compared to the previous delivery, the batsman completely missed out in the occasion. Ashwin Kamath, and there is no possibility of hitting run at all. 15 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Again Pranav bowling with a short run up. Right arm over the wicket past the umpire. Again, this time going to be a delivery which is umpire not interested to call that wide. Might be the batsman little shuffled across the line of the delivery. That ball is just close to the leg stump. That's why he's not interested. So over number 2 completed of completion of over number 2. It's a 15 for the loss of 1 wicket, going exactly 7.5 runs per hour. Indo Super Alapi. So 15 for the loss of 1 wicket. So 2 overs completed. It's outstanding cricket tournament is going on here. The day number 1 of this prestigious Panthers Super League 2023, which is organized by Deadly Panthers in the memory of sweetest memory of their 15 years. And they wanted to make this 15 years very memorable one by organizing such a wonderful cricket tournament in the name of Panthers Super League 2023. For the latecomers, you're watching the match number 2 of this day number 1. Day number 1, of course, is a day-night match. The 2 days of day-night match, absolutely, it's going to be an entertainment day for cricket. And we are expecting some great battle for the title, the big title, Panthers Super League 2023. Let us see which team will going to be the luckiest to win that title. There's a beautifully ball, perfect delivery in the relegation. Wicketkeeper fails to collect the ball. Opportunity of run out which is created, but the fielder in the short fine leg and short third man. In fact, they try for that run out, but they missed the opportunity. So no contact with the bat. So that by call by umpire Rajaratna sir. One more fantastic human being. Not only is watching him as a umpire, but he is a very good coach as well. Got experience, lot of experience as a umpire, as a cricket coach, as a player, and absolutely is a complete man as far as cricket is concerned. And is appreciating for this prestigious Panthers Super League 2023, but he is also appreciating for GSP Premier League as GPL, and
Once again, the bowler is from the far end, professional career end. Bowls off the back foot. He tried to play that one on the offside region, but look at the way ball is almost very late came to that field at cow point. But there is opportunity of run if the batter will going to try to get the single there. This partner is very much interested for the single, but the striker is not interested. This time again, lovely delivery. Tried to york the batsman in the negation. Negotiated very well there by the batter and right-hand batsman in the negation, as he's seeing that ball is almost targeting in the middle stump. The Yorker line delivery, and he just played that one right off the bowler to pick the single down to the plung on, and with that single 17 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Surendra bowls appeal for leg before wicket is given him, is gone, shuffled across the line of the delivery, flum in front of wicket, no doubt at all in the mind of Rajaratna sir, and already mentioned about his experience. You know exactly the bowler is targeting a midline leg stump, batsman just shuffled across the line of the delivery. Look at it when a replay. You can imagine why the umpire raising his finger, because he's finding himself right in front of middle stump, and no hesitation at all from Rajaratna to call that leg before wicket, the wicket number 2 which is back into pavilion. It's a 17 for the loss of a 2 wicket in the over number 3 in progress. Surendra Pai really got a good start in this over, as he was trying again and again for the Yorker line delivery, but at last he managed to get the victims what is really required, and it's a 17 for the loss of 2 wickets. A new batsman just walking towards the middle, Ganesh, one more very useful cricketer for the side of Indo Super Warriors. Surendra is on fire, and he's got a target in the middle stump, and middle stump is uprooted. What a magnificent performance here from Surendra Pai. This has been an unplayable delivery. Just look at that one. This is a perfect delivery to ball to the fresh leg. The Ganesh just came in. He's not expecting that kind of delivery. Look at that one. Oh my goodness, it's unplayable delivery, isn't it? It's much better delivery for any new batsman to coming into the middle. You're not really expecting that kind of a ball from Surendra. He's nowhere near the pitch of the delivery, and he picked up 2 valuable wickets in 2 consecutive deliveries. That means he's on hat-trick. So new batsman is walking towards the middle. Akshay is a very well batter as far as the Indo Super Warriors is concerned. One of the recognized and fantastic performer. But in this situation, first priority for him to not to get the hat-trick for the bowler, isn't it? Not to get hat-trick for Surendra Pai, because he's got a golden opportunity to get the hat-trick here, to register his name in this Panthers Super League 2022, the first bowler to pick the hat-trick here. He's got a golden opportunity, but he need to bowl one more good over, because in front of him is one of the fantastic performer from the bat. He will go into face. Here's the hat-trick delivery, and straight away he's played that one defensively. It's not a wicket-taking delivery, in fact, it's a full toss delivery. The batsman, in fact, he knows that he want to deny that hat-trick from the bowler. He played that defensively. The first one more over completed, good over. There from Surendra is fired in this over. He bowled magnificent over for his team after completion of over number 3. Searching for the right track, still struggling in the middle. Indo Super Warriors 17 for the loss of 3 wickets. Two big A's in the pack of Indo Super Warriors. Akshay and Ashwin has got a lot of responsibility in their shoulders. The 2 big A's, and wait and see how the 2 big A's will go into consolidate the innings. Not only do you need to consolidate the innings, but I need to see that only 2 overs remaining in their innings, that 12 deliveries excluding wides and no balls, they have to get some runs here. At least 20 plus runs takes them into comfortable score. Just seeing the result of the previous match, the 40 which is defended very well, 39 which is defended very well by the VV cricketers, so that first priority of these 2 batsmen, at least they want to get past that 35 to 40 runs in between if they wanted to be in this match. But so far I think the bowling departments of Kodial Super Kings
And as always, I just mentioned about the record in the overall cricket matches. They're one of the top performer. Kodil Super Kings, they came into this tournament as one of the favorite team to qualify. This time he lofted, and I think it's going to get the distance as well. This has been outstanding stroke there from the bat of Ashwin in the occasion. I already mentioned that the two big A's in the pack of Indo, and they got the opportunity, they got the ability, the potential of accelerating the run rate. Just look at that on the way. Nothing wrong with the line of the delivery. Just look at the reaction from the bowler. You know exactly immediately when the ball is left the bat of Ashwin, that will go into a maximum. Not that much of short enough, isn't it? But the way that the batsman Ashwin is got that to pick that line and then so quickly and dispatching that one down to wideish long on boundary for a huge 6. 23 for the loss of 3 wicket. Rajesh from the UTC end. Right arm over the wicket. Helicopter shot comes into play, but not really able to get the placement right. Short mid-off fielder, the experienced campaigner for the side of Kodil Super Kings, will going to stop the ball. And there's no chance at all for any run. Score remains on 23. Again, bowler's back drive in that occasion. Looks like it's a tennis strokes, and it's definitely the batsman almost wanted to hit the ball down the ground towards a deep straight long on region. And of course the batsman thought it might be short enough to pull the ball. Once he thought it might be very difficult to pull the ball, just he went with the stroke, adjusted his strokes, and just like a tennis forearm strokes, which is we are observing regularly in a tennis, that kind of stroke which is implemented by Ashwin to pick the single. 24 for the loss of 3 wicket. Rajesh. This time batsman Akshay wanted to play the reverse stroke in the occasion because of that slower one there from the bowler Rajesh. The batsman not really able to read that slowness of the delivery, and straight away his partner Ashwin just coming down the track having some few words with the partner, might be there talking about that strategy of accelerating the run rate after getting a 6. Maybe he's talking about pick the single, I will tackle with this over. Maybe that message coming from Ashwin. This time Akshay fulls that one, but not really get the placement right as a deep backward square fielder is in the right position. Orthodox deep backward square like behind the square, and one more addition to total 25. It's a hard fought 25 for Team Indo Super Warriors Alapis. 25 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. Rajesh changing his angle. Right hand batsman is on strike. Ashwin will go into face Rajesh, bowling away from us. Right arm over the wicket. Wicket keeper behind the stump. He's dropped the catch. One attempt, second attempt, third attempt. He drops the catch. It looks like a little bit of comedy of error behind the stump in the occasion. Just look at that one in replay. The shuffled across the line of the delivery. Now look at the wicketkeeper. Second attempt, third attempt, and still is not finding the ball from his hand. Unfortunately, ball just slipped out of his hand. Fortunate for Ashwin and unfortunate for the fielding team. So 4 overs completed, up completion of over number 4. And still I don't think Indo Warriors are completely out of the worries as far as the run rate is concerned. Just going over 6 runs per over. The exact run rate is concerned, it might be the 6.33 runs per over the run rate progressing, and scoreboard is 25 for the loss of 3 wicket. Looks like the Rakesh which came in to ball from the professional career end to ball that last over of the innings of Indo Super Warriors. Super King versus Super Warriors. The battle in this first match of their league. The second match of the day, number 1. Rakesh seaming in from the far end. This time, chip that one. Not enough power. And no timing at all. A longer fielder will go to complete that catch. The wicket number 3-4 is back into pavilion. This is what you call that result of frustration when you are not get going. As Akshay trying his level best in the previous over as well, but he's not really able to get the natural rhythm what he wanted to. And this time he wanted to break the shackle, but not really getting that much of good timing. Look at that one. Ball is not just going out of the 20-yard circle, but his intention to get past that boundary line
but unfortunately the fielder from long off is completed the catch. 25 for the loss of 4 wicket in the over number last in progress. The new batsman in Preetham Shrikant, lead correction, Shrikant. The 5 deliveries left in the innings of Indo Warriors, Super Warriors. Wait and see how Shrikant will going to contribute from his bat. Rakesh from the professional career, and good line to ball to the new batter outside the line of offence. Charging for the second, chance of run out, but this time bowler missing the golden opportunity. Rakesh couldn't manage to collect the throw from the fielder in the deep long on region. Otherwise definitely going to be a easy run out in the non-strikers, and just look at that one in replay. And I don't think the batsman is safe in that occasion, and just charging for the second run. Look at that one. The Rakesh is in a right position, and but is not enough quick enough to make that run out, and is just ball just slipping out of his hand. One more single is added to total. Shrikant picked up a single. With that single, scoreboard is moves on to 28 for the loss of 4 wicket in the over number final in progress, and final 3 deliveries left in their innings. Ashwin is the last off of acceleration of run rate for Indo Super Warriors. This time again, swings and missed. Beautifully bowled, perfect line. This is what you call that reading the mind of the batter, isn't it? You know exactly, Ashwin, what we're going to do in this particular over, particular delivery. You know exactly that you were looking for some the big stroke on the onside region, so he bowled outside the line of off temp in the off volley, and misses the bat of the batter. This is a full toss, drives that one right in the gap. No need to run for that. Ball running down to deep cow point, boundary for 4 runs. This is a clever cricket, and just as he shuffled across the line of the delivery before bowler delivers the ball, and he knows that the bowler will going to change the line, and he just drives that ball right in the gap between backward point and deep cow point region, boundary for 4 runs, and with that boundary scoreboard jumped into 32 for the loss of 4 wicket. Very important boundary for Indo. Pulls and missed, and that's it. Last delivery of their innings comes to an end. The 5 overs which is completed. After completion of 5 overs, Indo Super Warriors are managed to get 32 for the loss of 4 wicket, and they set a target of 33 to win this match. And I think it's a bowler of Kodial Super Kings. They completed the job, but all up to the batters of Kodial Super King to justify the effort of their bowlers, because it's not so easy to restrict 32 runs in 5 overs. I think the bowlers done a great job, and wait and see how Super Kings, Kodial Super Kings will go to justify. Not a big total, but you can't say anything in cricket. Even 32 might be the difficult one if the bowlers bowls well. If they fields well, I think Indo Super Warriors definitely they got opportunity to restrict their opposition. The wait and see is the strategy from both the teams to winning this match. And we'll take a short break here, and after a short break, my friend Gopi will go to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you very much.
Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर 33 रनों का लक्ष्य इस वक्त कुडियाल सुपर किंग्स के लिए तय किया है इस वक्त इंडो सुपर किंग्स अलेपी ने, और 33 रन उन्हें बनाने रिकॉर्ड रन रेट जो है 6.60 रन प्रति ओवर, एक्जैक्टली 6.60 रन पर ओवर। दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री 33 इन 5 ओवर्स एंड देयर इनिंग्स नाउ गोइंग टू स्टार्ट। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त आरंभिक बल्लेबाजों का, तो पद्मनाभा और सुरेंद्र पई आरंभिक बल्लेबाज, रोहित कामत इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और यहाँ पर पहला और एकमात्र पावर प्ले इस मैच का, इस पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ, और गेंदबाज प्रोफेशनल एंड की ओर से गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई, 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। गली पॉइंट एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ मिड ऑन और शॉर्ट फाइन लेग ओवर की पहली गेंद। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, इस वक्त लेफ्ट आर्म गेंदबाज की गेंद थी, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को इस वक्त स्विंग करना चाहता ऑन साइड पर, चूके गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, रोहित बाएं हाथ ऊपर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए फुल टॉस, पुल किया इस वक्त मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एंड लॉफ्ट दैट वन इन अ स्टाइल ओवर डीप मिड विकेट फॉर अ ह्यूज वन। एंड इस छक्के के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। 6 रन, बेहतर स्ट्रोक इस वक्त पद्मनाभा पई के बल्ले से लगता हुआ। फुल टॉस गेंद थी और बल्लेबाज ने कोई छूट इस गेंद पर नहीं दी और गेंद को डिस्पैच कर दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ 6 रन के साथ उनकी रनों की संख्या यहां पर शुरू हो चुकी है। 6 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। 33 रन उन्हें बनाने, 33 runs they have to score for victory in the stipulated 5 overs with the required run rate of 6.60 runs per over, and they started very well in the very second delivery of their innings. Padmanabha hitting the ball down to a deep mid wicket for a huge one. और 6 रन बिना किसी नुकसान के। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बारे में बातचीत इस वक्त चलती हुई खिलाड़ियों के बीच में, इंडो सुपर किंग्स अलेपी की खिलाड़ियों के बीच में। खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। अंपायर जो कि अलग गेंद की इस वक्त मांग करते हुए, और इस वक्त अलग गेंद, दूसरी गेंद इस वक्त दी जा रही है। और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। दोपहर का वक्त लगभग 12 इस वक्त बजते हुए, बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है और मैदान के दाईं और भव्य सुसज्जित स्टेज इस वक्त सजाया गया है। पैंथर्स सुपर लीग 2023 के इनाम है, ट्रॉफियां वहां पर इस वक्त जगमगाती हुई और निस्संदेह उस स्टेज की शोभा को
और बढ़ाते हुए कुल मिलाकर एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला पैंथर सुपर लीग 2023-2023 की शानदार प्रगति यहां पर होते हुए एक भव्य उद्घाटन समारोह के बाद और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद पटके हुई गेंद द बैकफुट गेंद को खूबसूरती के साथ खेला एक्स्ट्रा कवर से बाहर 4 रनों के लिए। विड़ती इस वक्त पंजों पर उछलते हुए गेंद को बैकफुट पर जाने के बाद खूबसूरती के साथ इस वक्त खेल दिया। मिड ऑफ फील्डर की बाईं ओर से गेंद निकलते हुए एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुके 4 रनों के लिए। देखिए किस तरीके से खेला था, हैव अ लुक एट दिस, विड्थ थी और इस विड्थ को कबूल करते हुए गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट इस वक्त पंच कर दिया खूबसूरती के साथ चौके के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 10 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर यहां पर प्रगति पर। अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज रोहित कामत गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा गली पर मिस जजमेंट, थोड़ा सा स्पिन हुई गेंद अंतिम क्षण में और अपने घुमाव लेने के बाद अपने दिशा को बदलते हुए जब तक थोड़ा सा संभलने के बाद गली फील्डर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो 11 रन पहले ओवर में बन चुके हैं और इस बीच गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए कुल मिलाकर 2 गेंदे अब इस ओवर में बाकी। ये गेंद इस बार उछाला लंबन पर स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड एंड अ मैसिव वन, इट्स अ बिग ए, 6 runs more and the scoreboard is now jumping up to 17 without 6. तो 17 रन पहले ओवर में बन चुके हैं और गेंदबाज इस वक्त तैयार। यह गेंद एक बार उछाला है, इस बार मौका हो सकता है लंगोल पर, लेकिन वहां पर कोई फील्डर नहीं, गेंद जाती हुई लंगोल सीमा रेखा के अंदर नहीं, बाहर हो चुकी है 4 रनों के लिए। So 21 runs scored in the first over and this is an absolutely terrific start for कोडियाल सुपर किंग्स, 21 विदाउट लॉस। और इस वक्त कोडियाल सुपर किंग्स के बल्लेबाज इस मैच को जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश में, सिर्फ 12 रन चाहिए, 4 ओवर का खेल बाकी। एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, जीएसबी योद्धास विल टेक्स ओवर टीम मंगलापुरम एंड विद दैट because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the only captains to be reported here for the toss procedure. ಅಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಬಿ ಯೋದ್ಧಾಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಮಂಗಳಾಪುರ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. So back to this match, what a tremendous start for Kodyal Super Kings, 21 runs scored in the first over. And this is an absolutely fantastic start for them. गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए आदेश और इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, सिर्फ और सिर्फ 12 रनों की दरकार 4 ओवर में। और इस वक्त आसान सा लक्ष्य, आसान सा समीकरण इस वक्त कोडियाल सुपर किंग्स के सामने। और गेंदबाज ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, 10 से 12 कदम उनका रन, फील्डिंग में जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और यह गेंद इस बार कट किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, वन मोर बाउंड्री। सो पद्मनाभा लुकिंग ऑन फायर। इस बार देखिए गेंद में विड्थ था और इस विड्थ को पहचानते हुए अंतिम क्षण में गेंद को इस वक्त पंच कर दिया, इस वक्त स्कूप कर दिया था ऑफ द बैकफुट 4 रनों के लिए बल्लेबाज ने। और इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर, जबकि दूसरा ओवर सिर्फ उनकी पारी का यहां पर प्रारंभ हो चुका है। जस्ट सेकंड ओवर बिगिन। तो गेंदबाज, ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली गुड वन, थोड़ी सी अंदर की ओर आती हुई, डिविएट होती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाह चुके 1 रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यशस्वीतम पूर्ण करते हुए 26 रन बन चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 7 रन चाहिए विजय के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा कोडियाल सुपर किंग्स अपने विजय की ओर अग्रसर होता हुआ इस वक्त, विजय की ओर अग्रसर होता हुआ और सिर्फ 7 रन अपने विजय से दूर। गेंदबाज आदेश एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर चुके, फाइन लेग फील्डर भी चुके, गेंद जाती हुई फाइन लेग सीमा रेखा की ओर, जब तक काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। और इस बीच बाई का इशारा अंपायर श्रीनिकेत का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। सिर्फ और सिर्फ 5 रन चाहिए विजय के लिए, जस्ट 5 टू गेट फॉर विक्ट्री। आदेश,
अगेन टॉप एज मौका, लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं। गली क्षेत्र पर गेंद टिप्पा खाते हुए 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यशस्वितम यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। 30 विदाउट लॉस एंड दिस इज जस्ट अ सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। The batsmen of Korea Super Kings just wanted to finish the match as soon as possible at this situation. और आदेश इस वक्त तैयार, पुल किया मिड विकेट पर और गेंद मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर एंड ही फिनिश द मैच इन स्टाइल विद अ 6। तो शॉर्ट गेंद थी, इस शॉर्ट गेंद को पुल किया इस वक्त शफल होते हुए डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए बल्लेबाज ने, और इस छक्के के साथ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री for Korea Super Kings by 10 wickets with more than 15 balls to spare in their innings, and with that comprehensive victory they back the complete points. तो दूसरा मैच इस वक्त काफी जल्द समाप्त हो चुका है, जल्दी समाप्त हो चुका है। अब तीसरा मैच यहां पर होगा। तो तीसरा मैच यहां पर शुरू होगा चंद लम्हों बाद। GSBO Yodhas will take over team Mangalapuram in the match number 3 of Panthers Super League 2023, and that match is now coming up planned exclusively. And till then we are taking a short break and we'll be back right after the short break. Thank you. Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
creative art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Let's call to the bay. KSK ವರ್ಸಸ್ LAP ಮ್ಯಾಚ್ ಆಚೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಂಕ ಸಂದೇಶ್ ಶಣೆನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದಿವನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಕೊರ್ಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂದೇಶ್. Once again, welcome back for the match number 3 of the day number 1 of this prestigious Panthers Super League 2023. The new series that after winning the toss, captain of GSP Yoda, they elected to field first, and the opening batters of team Team Mangalapura. Two opening batters, they're occupying their place in the middle of the pitch. In the strikers end, Vinayak, and in the non-strikers end, Vijay Raj. So Vinayak and Vijay Raj, the opening batters, the letter which starts with the V for both the opening batters. Of course, V means it's a signature of sign of victory, and wait and see, can they will going to start with some positive start, which is definitely is required of after lost the toss, asked by the opposition to bat first, and Mangalapura will go into fast bat first here. The straightaway signal coming from umpire Dikshit, start of the match. Here is the first ball. Right above the wicket, full toss, he lofted that one just over the infield, and before the fielder to run back to field that one down at a deep long off boundary just inside the fence. The ample time for the opening batters Vinayak to complete that couple of runs. With that couple of runs, they started their open the account with the couple of runs, and Vinayak has got a positive start, not really having that much of timing in that stroke, and that's why the ball is not really traveled very quickly. And at the same time, the new ball, which definitely is not that much of easy for the batsman to get the timing behind that shot. Again, a second time in this over. Right arm over the wicket, beautifully bowled, and is gone. Wicket keeper behind the stump completes the formalities. And Shivanand behind the stump, one of the safest pair of hands behind the stump, has completed the job. Just look at that one, a replay. Lovely moving delivery, just got a deviation, and batsman against the turn of the delivery tried to swing that one, got a healthy outside edge of the bat. Wicket keeper behind the stump complete the formalities, and the wicket number first is back into pavilion of Mangalapura, as the left hand batsman is back into pavilion. And Vinayak, after getting couple of runs in the first ball, the second ball he tried to hit the ball against swinging delivery, missed it completely, swings and missed. Missed means it's not really gets that one from the middle of the bat, outside edge of the bat.
And Shivanand making no mistake at all. It's a 2 for the loss of 1 wicket. It's a good comeback here by the bowler Atul. From the UTC, and Atul seeming away from us. Right arm round the wicket. This time gentle push down to short extra coverage to pick the single. Very good strategy there from the new batsman. It's not, I think, whenever the batsman coming to middle, I think even the power play is on. The batter knows that, the batter knows that. And Ari Prasad, I think, Ari Prasad, Pai, they lost the wicket and he doesn't want to lose one more wicket. So he's a little bit defensive frame of mind. Just picked up a single and rotates the strike and brought Ari Prasad, Vijay Raj Pai to strike now. Atul. Beautifully bowled. Again, look at the line. Absolutely right on the block hold. Negotiated very well in the last moment by Vijay Raj Pai, by seeing that ball is almost in swing Yorker line delivery, and he's just putting the bat into the line of the delivery, just refusing the bowler from that Yorker line delivery, and plays it nicely down to short extra coverage and for a single. He's off the mark with a single. It's 4 for the loss of 1 wicket. Atul. Right arm round the wicket. Again, the batsman now pushing hard for the single. It's a quick single, but a risky one. But risk is a part of cricket. Risk is a part of cricket. When you are playing a 5 overs format of a game, you need to take that kind of risk. Without taking a risk, it's very difficult to win the match. And straight away, the batsman pushing the ball right into the in front of that short extra cover region. But he's calling his partner for the run. Responded very well. And fumble from the fielder. Completes single by these two batters. 5 on the board. Over the wicket, Atul. Bowls this time, tries that one again. The lack of placement. Chance of run out. Good walk there from the fielder. If it's a direct hit, I think it's going to be all over. I think it's going to be all over for Vijay Rai. If the ball hits the stump, ball just inches miss the stumps. Just I want to see that in a replay. How many inches that ball missed the stumps. Just look at it in a replay. Ball just a little bit. Just in a couple of inches that ball missed the stumps. And Vijay Rai is lucky here. He's still there in the middle. 6 for the loss of 1 wicket after completion of first over. Very good start given there by Atul. It's not so easy to come and bowl in the power play overs, isn't it? When you're having only 2 restrictions outside the circle, the need to bowl some strong line and length. And Atul once again justifying for GSP Yoda why he's been chosen to bowl that power play overs. And he bowled brilliantly. 6 for the loss of 1 wicket. The second over will going to start from professional career end. Pawan brought into attack. One more very well recognized bowler for the side of Yoda. So some new names you can see in this Panthers Super League 2023 edition 1 of this cricket tournament. We have some new names in this particular 12 teams which is participating in this cricket tournament. Mangalapura, I think one more new name. I am just hearing that name. Mangalapura, of course, is the popular name which is given for Mangalore. Before it's Mangalore, it's Mangalapura. And it was believed that because of Mangala Devi cricketers, that Mangala Devi temple, that name which is given for Mangalore is a Mangalapura. Of course, if you goes into the neighboring state, they will call Mangalapura. They're not called Mangalore. They called it Mangalapura. And that's only because of Mangala Devi temple. It's a very historical temple situated in Mangalore. So I will request the fielding team, please don't waste the time. 20 minutes you need to complete your 5 overs quota. That means 4 minutes for every over and 5 over minutes at 20 minutes, and 4 minutes definitely is going to be grace time. That means you have to complete it within 24 minutes. There are 5 overs. Please cooperate with the organizers and for the umpires. The first ball pitched outside the line of leg stump, and umpire just clarifying from the batsman whether it's a ball has got an inside edge of the bat or not. That was a sign of experience of umpire, isn't it? Because sometimes it's very difficult to hear the sound of the bat is involving. And the batter that whether the ball is bat is involved, and the batter is told that no bat at all. So leg by call by umpire. So 7 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress.
Pawan seeming from the far end, professional career and one of the main sponsor of this cricket tournament. And left-hand batter will go into face. Drives beautifully. That was a traditional cricketing extra cover drive there from the left-hand batter to pick the single. And with the single scoreboard numbers on to 8 on the board for the loss of 1 wicket. Vijay Rajpai, his individual score now moves on to 2. And Hari Prasad is batting on 3. Now will go into face the bowling of Pawan, bowling from the far end. Round the wicket he balls, shuffled across the line of the delivery so that Hari Prasad tried to defeat his bad ball outside the line of leg stump. Punishable not from the bowler but from the umpire because of that line which is outside the line of leg stump, so that Rajaratna sir has got no hesitation in his mind to call that wide. It's a 9 for the loss of 1 wicket. Pawan. Balls, batsman trying to swing that one. Ball is just landed just in front of that short fine leg fielder. He's tried his level best to take the catch, but meantime the batsman has got a lovely presence of mind to grab the opportunity to come back for the second because of that slowness of that fielder. They're coming back for the second and made it quite easy. Just look at that one, the effort from the fielder, absolutely good attempt, but ball is just came in a off volley for that fielder. Very difficult to take the catch, and he got to put body into his body into that line of the ball, but couldn't manage to collect the catch. But here is a batsman collecting couple of runs. 11 for the loss of 1 wicket. Hari Prasad will go into face, shuffled across the line after delivery too much, and bowler is bowled a magnificent delivery there from Pawan. This is a very good thinking from the bowler's point of view, isn't it? The batsman shuffled across the line of the delivery before the bowler delivers the ball, and that will give us perfect idea for the bowler to where to pitch the ball. He's just pitched the ball on the block hold and not really settle the batsman to go for the big shot in the relegation. Fantastic delivery to pick the wicket here. The wicket number 2 which is back into pavilion of Mangalapuram. They're 11 for the loss of 2 wicket. And now I think Mangalapura have to look for some partnership which is much required. And the wait and see how well they will go to build this partnership. But the new batter walking towards the middle in place of Hari Prasad. It's Ramesh, the experienced campaigner for the side of Mangalapura. Ramesh, you need to convert that experience into performance if they wanted to get a good score outside the leg stump. Once again, punishable from umpire. The second time that same line which is bowled by the bowler, and umpire no hesitation in his mind to call that wide. 12 for the loss of 2 wicket. Pawan back to his bowling mark from the professional career end. Around the wicket he balls, copybook style, and right behind the line of the ball, and Ramesh picked up a single by pushing the ball down to deep cow point, deep long off region in fact, and he picked up a single for that. With that single, 13 for the loss of 2 wicket in the over number 2nd in progress. GSP Yoda's captain won the toss, selected to field first, and so far it's a good going. Picked up 2 wickets. Pawan. Around the wicket, that was a beautiful delivery indeed, but ball is going away from the right-hand batsman. Because of the extra deviation in that ball, isn't it? The batsman tried to reach the ball just off the front foot. By doing that, I think he's lucky because the ball just missed his bat. But umpire not missing the opportunity, seeing that ball is further away, so moving further away, and rightly called by umpire. So wide. 14 for the loss of 2 wicket. Again, lovely Yorker line delivery. Oh my goodness! Looks like the batsman is very hardly managed to consolidate the delivery, because that was a fantastic delivery, Yorker line delivery, right on the block hold. The batsman hitting a boot and ball together, and over number 2 which is completed. After completion of over number 2, searching for the right track, Mangalapura 14 for the loss of 2 wickets. They're going exactly 7 runs per over. The projected score will be 35. If with a similar run rate, they're going to get that runs in each and every over. It's going to be 35. But I don't think Mangalapura will going to be satisfied with this 35. They wanted more than that. At least the 40, the each and every team, the batting first team wanted to get. Because in the previous match, which is a one-sided match, when they tried to score 30 plus runs, it's so easy for team Kodial Super Kings against Indo Super Warriors. But 39, which is depended very well by VV against Saptami.
But it's a different ball game when time progresses. It's a different ball game as a condition of this UCG cricket ground is concerned. It's from morning to afternoon. It's at exactly 12 past 15 in the afternoon. The condition might be a little bit favorable for the batter because of the wind direction definitely going to be key. But in this particular day, I don't not really observing that much of huge wind in this cricket ground UCG. Usually it was a huge wind passing in the month of December, but we are not watching that much of the same condition here in UCG cricket ground today. The first ball just starts with the warm-up delivery of the afternoon by the bowler, and wide call by umpire. It's a 1+1. That means 2 wides which is added to total. These all are the bonus run for the Mangalapuram, and that 16 for the loss of 2 wicket. So over number 3 in progress now. No change in bowling as Atul continue from UTC end. Now he wanted to change his angle. He wanted to come round the wicket. So Ramesh have to stand left of umpire. And here is bowler. Swings beautifully. Look at the placement. Boundary deep backward square leg. But there is a protection has been given. They're coming back for a second chance of run out. Shivanand adds a magnificent work actually. Just a little bit of flicks of the wrist to get the wicket in the form of run out. I want to see that effort of Shivanand behind the stump in the replay. They're charging for the second, asking for trouble. Just look at the Shivanand, the wicket behind the stump. The throw which is coming from the fielder, just look at that one, is absolutely fantastic. The backhand throw straight to the stumps, and umpire Rajaratna sir is in a right position to take the decision in a naked eye. And he doesn't want to call for the third umpire. You know exactly the batsman shot of his crease. So no question of asking for the third umpire. And it's a 17 for the loss of 3 wickets in the over number 3 in progress. Bowler's back drive, and nicely driven by the new batter, and this time fumble from the fielder. They try to grab the opportunity, but again disaster, absolutely disaster. Oh my goodness, can you believe this? Of course there is a fumble, but the ball is not too far away from the fielder. Just look at it on the replay, and the fielder little bit fumbled, but ball is there only, and they're coming back for the second, and the throw is so good enough to make the run out. Ramesh unfortunately back into pavilion. It's 18 for the loss of 4 wickets. Now Mangalapura are looking in a deep trouble. Absolutely they are in a serious trouble. GSP Yoda are really looking in a commanding in this third over. They got 2 wickets in the form of run out. Atul seeming away from us. Round the wicket, right arm beautifully bowled, and the left hand batter tried to swing that one on the onside region, Aditya, but without coming to the line of the delivery. The bat is in somewhere, the line of the delivery is somewhere. Very difficult to have a contact. Again Aditya bowls, swings and missed, but umpire just asking the square leg umpire how many deliveries remaining. Everybody thought that Dikshit is raising his finger, but he's not raising his 2 fingers to clarify how many deliveries remaining. Just a little bit excitement coming behind the stump. Only Shivanand behind the stump, a little bit excited, but ball is almost missing the bat. 18 for the loss of 4 wicket. Atul. Right arm over the wicket, balls again, swings and miss. It's not a good technique there from Aditya. Every time he wanted to shuffle across the line of the delivery, every time he wanted to hit the ball, but he's not really forgetting that you can get the runs even in the offside as well. It's not that you want to get the run on the onside only. The bowlers bowled beautiful in that occasion outside the line of off time several times. Again swings and miss. He won. He was not listening my commentary as well, and is again wanted to hit the ball on the onside region, misses the ball outside the line of off stump, and 3 overs completed. After completion of 3 overs, Mangalapura are looking in a serious trouble. 18 for the loss of 4 wicket. Last 2 overs remaining in the innings, and wait and see how many runs they will going to score in the 2 overs.
they got a good start actually in the first over, but after that their wickets are tumbling, and because of that the run serve, which is very hard to combine against a disciplined bowling performance from the bowler of GSP Yodas. 2 overs remaining. It's definitely going to be a very important 2 over as far as the point of view of Mangalapura is concerned. In these 12 balls, at least they wanted to get 20 runs, and 10 runs per over definitely takes some total score into 38, near to 40, and that might be the good score to depend, because GSP Yoda, the name what suggests they're Yodas, the soldiers, and they got a very good soldiers, the Yodas in their side. They got the experienced campaigner, the batters in the side. So less than 35, I think, is very difficult to depend, and a very important year for Mangalapura to get some good score in remaining 2 overs. From the far end, Deepak Badal brought into attack from the professional career end. This time wanted to hit a reverse stroke in the delegation. Although the popular stroke, as far as the present ticket is concerned, every batsman loves to play that reverse stroke, but needed some exquisite footwork, and quick movement of the hands is so important if you wanted to get that reverse stroke. But everything is lacking in this particular stroke, which is attempted by the batter Prathamesh Kamath. The Prathamesh Kamath has got one fielder in the deep cover point for the reverse stroke, one fielder at deep long on, one at deep mid wicket and deep backward square leg. There is a mid off, there is extra cover, short mid wicket and short fine leg. This time, appeal for leg before wicket, loud appeal, chance of run out. Shivanand this time missing the stump, not only missing the stumps, but is allowing the batsman to come back for the second as well. Maybe the bowler is claiming for deliberate padding, but a batsman, of course, tried to hit the ball on the onside region. But surprised seeing that is a Yorker lane delivery, but ball is just going down the leg stump. It's a 20 for the loss of 4 wickets. Ball him, clean him up. This time Deepak Badal putting more clouds in the dugout of Mangalapuram. Badal means clouds, and we can see the dark clouds in the dugout of Mangalapuram. They've lost another wicket here. The 20 for the loss of 5 wickets. No one batsman actually of Mangalapuram able to stand in the middle, because it's not so easy, isn't it? No one rises suddenly, even the sun. You need to take a little bit time to settle down. Patience, which is key to everything. If you're playing a 5 overs format of game or a big format of game, but at least 1 or 2 delivery you need to middle, then you can definitely able to play natural cricketing stroke. What we are talking about. One more wicket is back into pavilion. This time I think Lakshmesh Mallya is back into pavilion with the beauty of the delivery. One of the very talented youngster in the side of Mangalapura, but is not really able to justify his talent, because this is not a kind of strokes to play in the situation like this. Now it's opportunity of hat-trick. This is a second occasion in this particular day number 1. The bowler has got opportunity to get the hat-trick here. The previous match also there is opportunity of hat-trick, which is denied. Now it's a golden opportunity for the bowler Deepak Badal to pick the hat-trick. The new batsman just walking towards the middle. It's Shanmugh Bhaliga, the left-hand batter. Will Badal becomes the first bowler to take the hat-trick? He will definitely going to try for that. That's why a lot of 2 more fielders, which is came almost in an unorthodox fielding position, very close to the batsman, put some pressure onto the batsman to get the hat-trick here for Deepak Badal. Hat-trick delivery. Bounce, sings nicely down to deep mid-wicket boundary for 4 runs. This time I think quite a different thinking here from the batter point of view, as Shanmugh Baliga
He's not really bothered about the hat-trick, but he only bothered about the acceleration of 100 for his team. And he swings that one beautifully down to mid-wicket boundary for 4 runs. The very young, talented, and this is kind of brave and gutsy batting which is required from the batters of Mangalapura. And Shanmugh Baliga has got a bounty for his team. Not only denied the hat-trick, but he got a bounty for his team. Drives that a bowler's back drive, beautifully driven. And the sweet sound coming from the bat of Shanmugh Baliga. I wanted to see him in a... Baliga is looking so confident. So over number 4 completed. After completion now for 4 overs. Mangalapura still there searching for the right track, struggling in the middle. It's a 25 for the loss of 6 wickets. So last over starts and straight away the batsman Shanmugh Baliga looking so confident in the middle as he picked up a single in the first ball of the over and scoreboard moves on to 26 for the loss of 6 wicket. Shanmugh Baliga definitely going to be a future. Hardly is 19 years, but he's got a potential of handling the pressure. Swings and down to deep backward square leg region. Protection has been given in the deep. They're charging for the second and opportunity which is of course grabbed by the batsman to come back for the second, and that couple of runs and Mangalapura moves on to 28 for the loss of 2 wicket. Aditya Bhatt picked up a couple of runs for his team. Nagesh Pai away from us. Ball swings and swings hard and he will going to get that fielder. Oh my goodness, just inside the boundary line. The very good judgment catch taken in the deep. Kedar Kudwa there at the deep backward square leg. Absolutely good catch. The position is so good. The perfection. What we want to see that the timing of that jump is so perfect in the occasion. And he got a fantastic judgment catch. Otherwise, definitely ball going to land it into the spectators who are sitting in the galleries. And unfortunate dismissal here for Aditya Bhatt. Swings that one, but unfortunately he's not getting the distance what he is looking for. It's a 28 for the loss of 7 wicket. It's a 5 overs. 5th over is in progress. Nagesh. Vijay Prabhu is a new batsman in. Rajesh bowls, cuts and defeats wicketkeeper. But they will go to get only single for that. Coming back for the second, and it's a suicider. Absolutely suicider. And a little bit fumble from the fielder. But at the same time, the batter Shanmugh wanted to get the couple of runs because no other option at all. They have to look for everything in this final over. But no response which is came from the new batsman. But new batsman, I think his thinking is right, because he thought that it's Shanmugh is the right batter to tackle with the remaining 2 deliveries. That's why he's not interested for the second run. And but unfortunately, the batter Shanmugh is back into pavilion. Little bit presence of mind is important, isn't it? That shows a lack of experience from Shanmugh is wanted to come back for the second. It's a 29 for the loss of 8 wicket. Bowler's back drive, beautifully driven straight down the ground. It's absolutely a surprise package for you.
It's absolutely surprise package for you. No one thought that the number 10 batsman is come and deliver like kind of strokes which is very difficult for the top order batsman to play. It's a very difficult stroke for the top order batsman to play because it's a straight over the head of the bowler as straight as an arrow, and ball is landed into the fence for a 6. 6 and score jumps into 35. This time again going for the same stroke, but this time not really getting that much of time behind the stroke. They're coming back for that second run. One more run out taken place, but I think the last 10th batsman is doing a great job for his team to get some competitive total. Abhishek is a batsman. He really got a finishing touch of their innings by hitting a 6 in this 5th delivery of the final over, and he got 7 runs in 2 deliveries at the strike rate of 350, and suddenly it's going to be a boost, all over the oxygen for Mangalapura. That 7 runs what the batsman has got in this last 2 deliveries. The wait and see how well this 7 runs will go into boost the interest and spirit of Mangalapura. Time will tell you, and at the same time GSP Yoda and coming back to their batting strength, they got a fantastic batting department, and wait and see how well they're going to reply. Thank you. Sparkwood captain and Viranjane cricketers Kapu captain Aikor stage alla toss ayoga. ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂಥ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿಯೋದರೊಳಗೆ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಆಫ್ಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಪಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. SICA, C Institute of Creative Art, at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. धन्यवाद सतीश. So 37 the target for GSB Yodha set by Team Mangalapuram. 37 runs they have to score for victory in the stipulated 5 overs with the required run rate of exactly 7.40 runs per over with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and their innings now going to start now. फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज कमिंग अप. पहली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ गेंद थी. गेंद को इस वक्त खेलना चाहा. गेंद बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद शॉर्ट मिड विकेट पर पहुंची, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 1 रन 90 लाख से नुकसान के रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है जीएसबी योद्धा की ओर से. और जहां तक सवाल है शिवानंद कामत का, तो 1 रन के साथ अपना खाता यहां पर खोल चुका है. वेंकटेश भाई सामना करने के लिए तैयार, जबकि विनायक भाई इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. काफ़ी लंबा रनअप उनका, लगभग 20 गज के दायरे के पास से रनअप वो शुरू करते हुए.
10 से 12 कदम उनका रन अप दाईं हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार पटके हुई गेंद थी, गेंद कौन साइड पर उछाला इस वक्त मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए 3 फील्डर आते हुए, लेकिन उनमें से एक फील्डर गेंद तक पहुंचे जरूर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को लपकने में असफल और काफी उम्दा काफी ऊंचा यहां पर उछाला था और गेंद काफी देर तक हवा में रही थी और भाग्यवशात गेंद इस वक्त फील्डर ने गेंद को छोड़ दिया है। देखिए किस तरीके से हुआ, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। गेंद हवा में उछली थी, मिड विकेट से फील्डर दौड़ कर आए, डीप बैकवर्ड स्कोर लेग से फील्डर दौड़ कर आए, सबसे पहले पहुंचे मिड विकेट के फील्डर, लेकिन गेंद को लपकने में असफल और इस बीच रन से मिले बल्लेबाज को 2 और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रन 90 से नुकसान के। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, तैनात तो पर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद को उछालना चाहता उन साइड पर, बल्ले का बाहरी किनारा टकराया, गेंद हमें में उछली, हालांकि विकेट कीपर को थोड़ा सा आगे की ओर आना पड़ा जरूर, लेकिन गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए देखिए किस तरीके से यहां पर गेंद को लपका गया था विकेट कीपर द्वारा और इस कैच की बदौलत पहला विकेट यहां पर गिर चुका है और पहला विकेट खो चुका है इस वक्त योद्धास 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। मैच नंबर 3 पैंथर्स सुपर लीग 2023 की श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ और निस्संदेह ऑक्शन बेस्ड ओवरऑल क्रिकेट टूर्नामेंट 12 प्रतिष्ठित टीमें इस श्रृंखला में हिस्सा ले रही है। 12 prestigious teams are participating in this prestigious tournament Panthers Super League 2023 और इस श्रृंखला का तृतीय मैच, तीसरे मैच का द्वितीयार्ध यहां पर प्रगति पर। पहला विकेट खो चुका है इस वक्त और नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ, तो इस बीच कुछ बातचीत करते हुए टीम दूसरे छोर पर खड़े हुए खिलाड़ी नए बल्लेबाज जिसका आगमन हो चुका है और बल्लेबाज गिरीश द नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज अंपायर से गार्ड लेते हुए। पहला और एकमात्र पावर प्ले यहां पर जारी, शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट इस वक्त मौजूद, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर एक तैनात, मिड ऑन डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग और फाइन लेग थोड़ा सा स्क्वायर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और गिरीश नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 37 रन उन्हें बनाने निर्धारित 5 ओवर में, अंपायर से गार्ड लेते हुए इस वक्त गिरीश सामना करने के लिए तैयार और फील्डिंग में जमावट करने के बाद गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद विनायक का गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के से गेंद के इस वक्त डिफ्लेक्ट कर दिया अंतिम क्षण में अपने स्ट्रोक्स को रोकते हुए शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता स्क्वायर लेग क्षेत्र पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर। निस्संदेह एक सतर्क शुरुआत की जरूरत यहाँ पर जीएसबी योद्धा को, अगर उन्हें अपने मंजिल तक पहुंचना है 37 रनों के। और इस बीच गेंदबाज विनायक पई गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए शिवानंद कामत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, दिस इज अ मैसिव वन, आई थिंक सो इट कुड बी गॉन ऑल द वे, जस्ट वी हैव टू वेट एंड सी एंड इट्स अ बिग He just caught that one right from the middle of the bat and dispatched it in a style over long on fence, a huge one. Just look at this in the replay. और किस तरीके से गेंद के लाइन पर आते हुए गेंद को कनेक्ट करते हुए गेंद को उछाल दिया इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, वाइडिश लॉन्ग ऑन कहना पड़ेगा, सीमा रेखा से बाहर। हैव अ लुक एट दिस, क्लीन इट, दिस इज a massive strike and the ball went over the road, over the fence in fact, it's on the road. तो 6 रन इस वक्त घोषित हो चुका है, इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 10 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक शिवानंद के बल्ले से लगता हुआ अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद एक बार फिर से स्ट्राइक टू द ग्राउंड, फ्लैट ओवर्शन एंड वन मोर बाउंड्री, this time in a flatter manner just over the mid on fielder's head and he lofted that one in a style. The scoreboard is now jumping up to 14 now for the loss of 1 wicket after completion of first over. And this is an absolutely terrific start for them, except they lost their 1 wicket. They managed to score 14 runs on the board. 14 रन पहले ओवर के समाप्ति के बाद बन चुके हैं और यहाँ पर निस्संदेह 1 विकेट खोने के बावजूद एक बेहतरीन शुरुआत कर चुका है और जीएसबी योद्धास
तो इस वक्त 23 रन और चाहिए. 23 still they have to score for victory in the remaining 4 overs, and the asking run rate now straight away coming down to exactly 5.75 runs per over in fact. So the next match will be played between Spark Udupi versus Viranjanaya Cricketers Kapu, and in this match Spark Udupi, after won the toss, they elected to field first. और जहां तक इस मैच का सवाल है, 4 ओवर का खेल बाकी, 23 रन अब चाहिए. रिक्वायर्ड रन रेट सीधे उतर कर आ चुका है अब 5.75 रन प्रति ओवर. पारी की शुरुआत पर रिक्वायर्ड रन रेट था 7.40. अब वो रिक्वायर्ड रन रेट पहले ओवर के समाप्ति के बाद सीधे उतर कर आकर रुक चुका है 5.75 रन प्रति ओवर. 5.75 द रिक्वायर्ड रन रेट फॉर देम एट दिस सिचुएशन. और ओवर की पहली गेंद लेकर प्रोफेशनल एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए बाएं हाथ पहली गेंद. इस वक्त हल्के से गेंद को स्टीयर कर दिया पंजों पर उछलते हुए अंतिम क्षण में शॉर्ट थर्ड मैन पर, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता. बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर. नाउ द मैन इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक हु हिट अ 6 एंड अ बाउंड्री इन द प्रीवियस ओवर. शिवानंद कामत 11 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है. और जहाँ तक स्ट्राइक रेट का सवाल है, लगभग 367 स्ट्राइक रेट के औसत से वो इस वक्त बल्लेबाजी कर. ही इज बैटिंग ऑन 11 इन जस्ट 3 डिलीवर्स विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 367. और ये गेंद इस बार बिग वन, दिस इज गॉन मेनी माइल्स. इस बार गेंद को उछाला लंगोन सीमा रेखा से बाहर, और ऐसा कहना पड़ेगा बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट किया था. और जैसे ही गेंद बल्ले से टकराकर उछली तभी मैंने अंदाजा लगा लिया कि गेंद सीमा रेखा को पार करेगी. और इस छक्के के साथ स्कोरबोर्ड छलांग लगाकर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर. और शिवानंद कामत अब 17 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंदों पर. ही इज बैटिंग ऑन 17 इन जस्ट 4 डिलीवरीज विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ एग्जैक्टली 425. So this is an absolutely outstanding batting progressing here from Shivanand. और यहाँ पर निस्संदेह चिंता का विषय जरूर बन चुका है मंगलापुरम के कप्तान के लिए कि शिवानंद को किस तरह यहाँ पर रोका जाए. पॉइंट पर नॉट स्ट्राइकन बल्लेबाज काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन एन मौके पर सही तरीके से वापस भेजा शिवानंद ने, ये देखते हुए कि गेंद पॉइंट पर फील्ड हो चुकी है. और ज्यादातर स्ट्राइक वो खुद अपने पास रखना चाहते हैं, तो एक वजह इसकी ये भी हो सकती है कि वो उन्होंने गेंद को फील्डर को माफ कीजिए बल्लेबाज को वापस भेजा. इस बार रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा. और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर. 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग हियर फॉर देम. सिर्फ 15 रन और चाहिए विजय के लिए. और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद हल्के से अंदर की ओर आए, हल्के से गेंद को पुश किया पंजों पर उछलते हुए. शिवानंद हालांकि 2-3 कदम आगे जरूर निकल आए थे, बिल्कुल सही तरीके से वापस भेजा उन्हें स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज ने. और आखिरकार रन की कोई गुंजाइश नहीं बल्लेबाज के लिए. सेंसिबल क्रिकेट अपनाई थी पिछले गेंद पर बल्लेबाज ने. और फिर से एक बार गेंदबाज आदित्य गेंदबाजी आगे बढ़ाते शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद हवा में, लेकिन जीतोड़ कोशिश करने के बावजूद गेंद को लपकने में असफल फील्डर. और यहाँ पर बल्लेबाज जीवदान प्राप्त कर चुके. अंतिम क्षण में देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था, अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था और गेंद टॉपेज पर टकराई और मिड विकेट के फील्डर ने जीतोड़ कोशिश जरूर की डाइविंग लगाते हुए गेंद तक लपकने की, लेकिन आखिरकार गेंद को लपक नहीं पाए. 1 रन का इजाफा. 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. 2 ओवर्स हैव बीन बॉल्ड और 14 रन अब चाहिए. 3 ओवर का खेल बाकी. रिक्वायर्ड रन रेट जो है इस वक्त 4.33 रन प्रति ओवर. 9 रन इस ओवर में बने. 9 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर एंड 1 मोर गुड ओवर इन Yodha's point of view came to an end. It's 9 runs came from that over, and after 2 overs they are looking in a commanding situation. It's 23 for 1 after 2 overs. 14 to get, 3 overs to go. Exactly the required run rate is 4.66. और तीसरा ओवर कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से शुरू होता हुआ UTC एंड की ओर से गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए. और षणमुख बालिगा ओपनिंग गेंदबाजी आरंभ करते हुए ये गेंद पैरों पर टकराई, सटनली गोइंग डाउन द लेग साइड और रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं, हालांकि थोड़ी देरी से जरूर दौड़े थे स्ट्राइकर के बल्लेबाज, लेकिन यशस्वी तब 1 रन
प्राप्त करने में सफल 24-24 for the loss of 1 wicket at the start of the third over. And now the man in terrific form back on strike, शिवानंद सामना इस वक्त करने के लिए तैयार और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर षणमुख गेंदबाजी करते हुए शिवानंद के लिए फुल टॉस पुल करना चाहा, पैरों पर टकराई, सिर्फ गेंदबाज ने यहां पर अपील की लेकिन गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और सही तरीके से अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। तो स्कोर रुक चुका है 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहां पर प्रगति पर, काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहां पर दिखाई देता हुआ। फुल टॉस ऑन साइड पर स्विंग किया मिड विकेट पर, लेकिन रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। और इस एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। रन्स आसानी के साथ यहां पर बनते हुए जीएसबी योद्धास के लिए धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होता हुआ जीएसबी योद्धास। तो फील्डिंग पे जमावट यहां पर करने के बाद गेंदबाज षणमुख अब तैयार अपनी अगली गेंद लेकर। पटकी हुई गेंद उछालना चाहा, चूंकि गेंद लगभग उनके पैरों पर टकराई और वहीं पर गिर गई और विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को कलेक्ट कर लिया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर बोर्ड स्टेज एट 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और अगली गेंद इस बार स्विंग करना चाहा, लेग स्टंप से बाहर, वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर। And with that point one, the scoreboard moving up to 26 for the loss of 1 wicket. Runs are coming quite easily now for GSP Yoddhas. It's 26 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद उछाला इस वक्त मिड विकेट फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपक नहीं, छूट चुका है कैच, छूट चुका है कैच अपने तीसरे प्रयत्न में। गेंद तक पहुंच गए थे, जैसे ही गेंद को वो अपने दोनों हाथों में दबोचे, गेंद उछली, फिर से दोबारा उनके हाथों से उछली और आखिरकार गेंद तीसरी बार उछलकर जमीन पर गिरती हुई। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, और पहली बार उछली, दूसरी बार उछली और कैच को पूरे करते समय गेंद उनके हाथों से उछलकर फिर से जमीन पर गिर पड़ी और इस बीच बल्लेबाज के लिए जीवदान। डॉट गेंद, 3 ओवर की समाप्ति, अंतिम गेंद डॉट थी। 28 एक विकेट के नुकसान पर। 28 for 1, 9 रिक्वायर्ड ऑफ 12 बॉल्स। सिर्फ 9 रन चाहिए 12 गेंदों में। अब निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा जीएसबी योद्धास आर नाउ लुकिंग राइट ऑन टॉप। दोपहर का वक्त लगभग 1 बजते हुए 12:50 यहां पर बज चुके हैं। धूप का कहर काफी गहरा होता हुआ इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ और सूरज आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ। और जैसा जैसा वक्त जो कि गुजरता जा रहा है, धूप की तीव्रता यहाँ पर बढ़ती हुई और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक जो भी इस मैदान पर मौजूद है काफी मात्रा में वो भी इस भीषण गर्मी का एहसास यहां पर करते हुए। और इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला पैंथर्स सुपर लीग 2023 के अंतर्गत इस श्रृंखला का तीसरा मैच यहां पर प्रगति पर। तो 2 ओवर में चाहिए सिर्फ 9 रन विजय के लिए। 9 टू गेट फ्रॉम 2 ओवर्स। पहली गेंद, ये गेंद बॉल्ड आउट, एब्सोल्युटली परफेक्ट यॉर्कर लेन डिलीवरी एंड इज जस्ट गॉट द रीड ऑफ द इंपॉर्टेंट बैट्समैन। तो शिवानंद एक बेहतरीन पारी खेलकर पेविलियन वापस लौटते हैं। देखिए एब्सोल्युटली अनप्लेएबल डिलीवरी, पिचिंग राइट ऑन द ब्लॉक होल, पास्ड बिटवीन हिज बैट एंड लेग एंड स्टक टू हिज ऑफ स्टंप। बिल्स आर डिस्टर्ब्ड एंड दैट इज द विकेट नंबर 7 सेकंड। सो शिवानंद की बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है और इंतजार है इस वक्त नंबर 4 बल्लेबाज का, केदार कुड़वा, जो कि इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में ही इज कमिंग ऑन टू द क्रीज एज अ नंबर 4 बैट्समैन फॉर जीएसबी योद्धास। और जहां तक सवाल है इस वक्त बाउंस बैक करने के लिए टीम मंगलापुरम को इस वक्त चाहिए चंद डॉट गेंदें और विकेटें यहां पर इस मैच में वापस आने के लिए। 11 गेंदों में 9 रनों की जरूरत, 9 टू गेट फ्रॉम 11 बॉल्स। तो बाउंस बैक करने का मौका अभी भी है इस वक्त टीम मंगलापुरम के गेंदबाजों के लिए और इस वक्त बाउंस बैक करने की पूरी कोशिश में इस वक्त गेंदबाज अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। प्रोफेशनल एंड की ओर से दाहिने हाथ ओवर द विकेट
पटके विकेट इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ निकाला, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। और इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। इट्स 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। 8 to get now from 11 डिलीवरीज। 8 रन चाहिए, 11 गेंदें बाकी। और फील्डिंग में यहाँ पर जमावट करते हुए गेंदबाज लक्ष्मीश जो कि नया ओवर प्रारंभ कर चुके हैं। गिरीश पंडित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन। और ओवर की अगली गेंद लेकर लक्ष्मीश दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गिरीश के लिए स्ट्राइट पहुंची, शॉर्ट मिड विकेट फील्डर के हाथों में पहले टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस। So firmly struck, but the ball straight went into the hands of a short mid wicket fielder at the last moment. और बल्लेबाज को इस गेंद पर रन सफल नहीं मिला। और अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद टॉप है, जब मौका हो सकता है लॉन्ग ऑफ फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपकने में सफल। तो कैच को लपकते ही फील्डर ने कहा अपने पीछे की ओर आते हुए फील्डर को कि भैया आप क्यों सामने आ रहे हैं, मैं इस कैच को लपकने वाला हूं और लपक चुका हूं। और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। देखिए किस तरीके से इस कैच को लपका गया था लॉन्ग ऑफ पर फील्डर द्वारा। हालांकि लॉन्ग ऑन के फील्डर लॉन्ग ऑफ पर उनके पीछे आ चुके थे, लेकिन सबसे पहले पहुंचे लॉन्ग ऑफ के फील्डर, उन्होंने इस कैच को लपका। तो 29 रन, 8 रन और चाहिए विजय के लिए। 8 runs more now they have to score for victory. 8 balls to go, 8 runs more now they have to score for victory. जब शिवानंद बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था जीएसबी योद्धा 37 रनों के लक्ष्य को आसानी के साथ पार कर जाएगा, लेकिन अंतिम चंद गेंदों में बाउंस बैक करते हुए इस वक्त गेंदबाजों ने टीम मंगलापुरम के परिस्थिति को नियंत्रण में वो ला चुके हैं। अब मैच लगभग बराबरी पर रुक चुका है। 8 गेंदें बाकी है, 8 रन चाहिए विजय के लिए। 8 runs to score from 8 deliveries. लक्ष्मीश इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए अपने टीम के अन्य खिलाड़ियों से और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज नागेश भाई, जिनका आगमन हो चुका है एज अ नंबर 5 बैट्समैन। रनों की सख्त जरूरत इस वक्त जीएसबी योद्धा के बल्लेबाजों को, जबकि विकेट और डॉट गेंदों की जरूरत टीम मंगलापुरम को कम बैक करने के लिए। अगली गेंद लक्ष्मीश की, गेंद इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंची, क्लीन कलेक्शन। वहां पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पर संतुष्ट हो चुके हैं। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका 30 रनों पर। 7 गेंदें बाकी, 7 रन चाहिए। 7 to get from 7 deliveries. The equal battle is now continuing here. और अगली गेंद लेकर इस वक्त लक्ष्मीश तैयार। इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथ के बल्लेबाज केदार कुडवा इस वक्त सामना करते हुए लक्ष्मीश, ये गेंद इस बार उछाला स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड और सारे दबाव, सारे प्रेशर जो थे वो समाप्त कर चुके हैं इस छक्के के साथ। द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। केदार कुडवा का स्ट्रोक इस वक्त लगभग सब कुछ समाप्त कर चुका है टीम मंगलापुरम के उम्मीदों को। सिर्फ 1 रन चाहिए अंतिम ओवर में विजय के लिए। अब ऐसा कहना पड़ेगा जीएसबी योद्धास अपने विजय के द्वार पर आकर रुक चुका है। So 1 run required in the last over. तो अंतिम ओवर में ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच को बराबरी पर समाप्त कर सकती है। जिस तरह पिछले इस श्रृंखला के पहले मैच में गेंदबाज रामकृष्णा गेंदबाज ने मेडन फेंका था उनके पारी के अंतिम ओवर, मैच के अंतिम ओवर। उसी तरीके की गेंदबाजी की इस वक्त जरूरत है, लेकिन इस मोड़ पर यह लगभग नामुमकिन है। तो यहां पर देखते हैं 6 गेंदों में 1 रन प्रदान करने से रोकते हैं नहीं गेंदबाज बल्लेबाज को। ओवर की पहली गेंद पटकी हुई, चूंकि कट करना चाहा, रन से नहीं मिला। 5 गेंदें 1 रन चाहिए। 1 to get from 5 balls. अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार इस वक्त। फुल टॉस, विकेट कीपर चूके और इसी के साथ
GSB Yodhas registered 7 wickets victory with 4 balls to spare and the ball over the fence for a boundary. And with that victory, they back the complete point. So match number 3. So match number 3 of Panthers Super Leagues 2023 is now came to an end, which won by GSB Yodhas by 7 wickets with just 4 balls to spare in their innings. And now the next match is now going to start within just a while between Spark Udupi versus Viranjana Cricketers Kapu. So in this match, Spark Udupi, after one draw, they elected to field first, and that match is now coming up live and exclusively right within just a while. इस मैच के मैन ऑफ द मैच होकर शिवानंद कामत, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था जीएसबी योद्धास की ओर से, मैन ऑफ द मैच पुरस्कार के लिए वो चुने गए हैं और बधाई हो उनके लिए। तो अगला मैच शुरू होगा चंद लम्हों बाद, तो तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब मैच नंबर 4 इस श्रृंखला की मैच नंबर 4 की शुरुआत यहां पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। ಶಿವಾನಂದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿವಚಾಕ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಚ ವಿಘ್ನೇಶ್ ನಾಯಕ್. Creative art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. SICA, the Institute of Creative Art, at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. ನಿಮಿಷ ತಮ್ಮ 5 ಓವರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು 24 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 5 ಓವರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
So thank you very much, and again I request the fielding team to make it fast. The opening batters came into middle. This is a match between Veeranjana cricketers Kapu versus Spark Udupi. After winning the toss, Spark Udupi elected to ball first, and opening batters are in the middle. Signal coming from umpire Dikshit and Shrinikit are the two umpires for this match, and Pundalik Pai will be the striker, and in front of him in the non-strikers, and Prajwal Shanai is a non-striker, and a bowler from the far end from the professional career, and it's going to be a Rahul Pai. It's a very popular name as Rahul Pai bowls first ball, left arm. Round the wicket, starts with a beautiful delivery, extra bounce. Every time, today I'm observed this is the fourth match that it was extra bounce, like the encouragement for the bowlers. It's not so easy for condition for the batsman. The need to tackle with some variable bounce, which is definitely very difficult for the batter as the next one. Left arm off the wicket, swings it very high, but I don't think he's going to get the distance, but he will going to get the fielder there in the mid-wicket region. This well-directed short pitch delivery, the batsman tried to swing that one. Of course, he swings it, but not really getting enough bat onto that. Just look at that one. He's just not really getting that one from the middle of the bat. And ball very high up in the air, and mid-wicket fielder is just waiting for that ball to coming into him, and he just complete that the formalities of taking that catch. The first wicket is back into pavilion of Veeranjana cricketers Kapu. There's a 0 for 1. It's not a good start here from Veeranjana cricketers Kapu. They lost there the first wicket for 0. Of course, if you see the overarm cricket, and probably it's known as in the Udupi district, the teams always is a very strong as far as overarm cricket is concerned, because they're playing that regular cricket, the soft ball overarm cricket, the hard tennis ball cricket, and that's why I think Veeranjana Kapu, I don't know the kind of the players they got in their playing 11, but probably they are very much engaged in playing that kind of the cricket, that's hard tennis ball and soft tennis ball cricket or cricket. But first over, the Spark Udupi, the team which is playing from same district, are clashing in their first round of their league matches. It's going to be a very good contest. Left arm this time try to york the batsman. It's a slow Yorker line delivery there from the bowler Rahul Pai. Rahul Pai just getting some extra confidence after he got the wicket in this second delivery of the over, as he bowled a perfect delivery. And he bowled a third delivery, almost as a Yorker line delivery for the new batter Prajwal Shanai. A little bit correction, Ganesh Nayak. Prajwal Shanai just nicely looking around the field. Of course, it's needed. They need to see where the fielder is. Of course, it's a foul play on 1-2 fielders outside the circle. One at wide-ish long on, one at the deep backward square, like the two fielders outside the circle, saving the boundaries. Rahul bowls a beautiful drive with that charge, a beautiful stroke down to deep extra coverage, and before the fielder from extra coverage to run back to field the ball down at deep extra coverage. Ample time for the batter Prajwal Shanai to pick a couple of runs. That was a confident looking drive, isn't it? Technically, just stretching his front foot to the line of the delivery, leaning into the drive, and he got a placement between cover and extra cover to get the couple of runs for his team. With that couple of runs, he's off the mark, and total score of Veeranjana is moves on to 3 for the loss of 1 wicket. Rahul bowls this time, batsman just waiting for that slower delivery. Rahul Pai is a master of play, bowling some slower delivery, the variation in the bowling, but adjusted very well by the batter Prajwal Shanai in the delegation to pick the single between mid-on and the bowler down to deep long on, deep mid-off, and bowler to get a single down to deep long off. 4 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Rahul again. Get ready bowling to Ganesh Nayak is batting on 1. Rahul. Left arm from the wicket, shuffled across the line of the delivery. Of course, umpire rightly said that ball is height of the delivery is a factor to say not out for that one. And rightly so, as Rahul Pai finished a very good over, the first over, which belongs to fielding team. That's a Udupi
has got a good start from the ball. They won the toss, selected to ball past, and the bowler Rahul Pai justifying the decision of their captain, bowled a very economical. Not only the economical over, that's a wicket taking over as well. It's a 4 for the loss of 1 wicket. Four for the loss of 1 wicket after completion of first over. It's a slow start there from Veeranjanaya Kapu. Veeranjanaya cricketers Kapu, of course, they came into this tournament. One of the new name as far as Oram cricket is concerned. And Veeranjanaya Kapu and then Udupi. The two teams, Spark Udupi. And of course, they're just like what the name has got, a Spark Udupi. Can they able to sparkle? And here in this Panthers Super League 2023, and it's a well organized and proudly organized by Panthers Super League, deadly Panthers in the name of Panthers Super League. Full toss delivered and the batsman not really able to capitalize that one. It's not that much of an easy full toss. It's a slow full toss, but the height of the full toss is not enough for the batsman to swing his bat, but he just played as per the merit of that delivery. And that's a sign of technically sound player. The Prajwal Shana is definitely a very good left-hand batter as he plays it down to deep long on region for a single. With the single scoreboard numbers on to 5 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Ajay Nayak from the UTC end, short run off. Right arm over the wicket, lovely shot off the back foot and drives that one down to square cutting that one down to deep cow point region for a single. Just got the deviation, extra deviation here for Ajay. It's outswing delivery, but managed very well there by batter Ganesh Nayak, just going back and quite nicely plays it down to deep cow point for a single. 6 for the loss of 1 wicket. Ajay. Right arm over the wicket, this time outside the line of off-stamp. Batsman tried to reach that delivery, shuffled across the line and really missed that one. Actually, the bowler tried to york the batsman, but line is outside the line of off-stamp and there is no possibility of any run at all. Ajay once again back to his bowling mark. Very simple run-up as he got. Again, nicely bowled, lack of placement. Ball went straight to the hands of mid-on. So far, Ajay is bowled very well, as he bowled a very tidy line and length in this particular over, not providing the opportunity. Nicely driven down to deep long off region, in fact, with that single score, numbers on to 7 for the loss of 1 wicket. It's a quiet cricket is going on. It's not the cricket what we're expecting, that in the first over of the power play it's a slow start. They lost a wicket. That's why both the batters are a little bit watchful in the second over as well. They know exactly if they were able to keep the wickets in hand, they can accelerate the run in remaining last 2 overs. And again, Ajay bowling away from us. Right arm over the wicket, beautifully bowled, perfect leg cutter in the negation there from Ajay. Beautifully bowled, one of the magnificent delivery as far as in this particular over is concerned, where he was finished that bowler with a beautiful leg cutter. Over number 2 completed after completion of over number 2, and Veeranjan and Kapu are struggling in the middle in the form of run rate. They're going exactly 3.5 runs per hour, 7 for the loss of 1 wicket. Veeranjan cricketers need to keep in mind that you need to complete your 5 overs within 24 minutes. You have started your bowling exactly at 12 past 2, so that you have to complete that your 5 overs within 12:25. The stipulated time has been given to you. From the far end, it's one more very popular name as far as cricket is concerned. Dr. Vinod is brought into attack from the professional career, and what the legendary player, one must say, an outstanding career he has got, especially in the GSP Premier League, GPL. He is the one
is really the player to be noted in that particular tournament, and in this Panthers Super League he is representing for the Spark Udupi, and wait and see how Dr. Vinod will going to contribute. He's a fantastic all-rounder and a lot of experience behind him. So Dr. Vinod keeping one field in the deep long on, one at deep mid wicket and one at deep backward square leg, three fielders outside the ring in the onside region, deep long off and deep extra cover, the two fielders in the offside region. Dr. Vinod starts with the delivery. It's a warm-up delivery of the afternoon. It's a kind of delivery what Dr. Vinod were not watching him regularly, the kind of delivery is bowled this time as he tried to pitch the ball up, and short pitch delivery, one from the over what umpire told to Dr. Vinod, but it's already called as a wide, rightly so. 8 for the loss of 1 wicket. Dr. Vinod from the professional career end. Right arm round the wicket, swings and swings at one, and just clearing the fence. The fielder in the mid wicket region almost tried his level best to jump and take the catch, but it's not enough to pull that one inside the boundary, and this ball is just going, and he got the distance, and a much required blow coming from the bat of Prajwal Shenoy. The right treatment for that wrong line, which is ball by Dr. Vinod. Prajwal Shenoy just waiting for the opportunity to swing that one. Not that much of short enough, but Prajwal made that one short enough to swing his bat and played it with the line and picking that line and then so quickly to get the distance right. 14 for the loss of 1 wicket. Dr. Vinod from the far end. Was one more shot pitch delivery. This time the batsman not really able to get that one aerial route as he played it one down the ground in the negation. Of course he tried to pull that one short pitch delivery. But Prajwal this time of course didn't got that much of timing enough. But he played that one along the ground towards a deep backward square leg region for a single. With that single, scoreboard now moves on to 15 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Dr. Vinod. And the first expensive over. Already 8 runs came from that 2 deliveries is ball by Dr. Vinod. But Viranjane Kapo, they wanted one productive over. Maybe they are targeting this over to get some acceleration. So far it's a good going. The 8 runs in 2 deliveries. Dr. Vinod now bowling to the right-hander batsman Ganesh Nayak. Ganesh Nayak cuts that one down to deep cow point region. Protection has been given in the deep. It's the right strategy there from Ganesh Nayak to pick the single and try to give the strike as much as possible to his partner, who is looking pretty good in the middle. And this is what you call the game plan is so important. The Prajwal after hitting a 6 is looking so confident in the middle. But wait and see how Dr. Vinod will going to deal with the remaining deliveries of this over. From the far end. Round the wicket, Prajwal straight down the ground, as straight as an arrow, and he clearing the fence with a long wing. It's gone many miles, just like my friend Gopi is mentioning about every time. When the batsmen get going, the ball will definitely going to disappear many miles. It's a biggie. That was a trademark signature pronouncement of Gopi, and before that the legendary commentator Tony Gregg always mentioning up that the biggie. It's a biggie, especially that word is came when Sachin Tendulkar is played the innings in Sharjah against Australia, and a lot of time is Tony Gregg is mentioning about the biggie from little master Sachin Tendulkar. So 22 for the loss of 1 wicket. Prajwal is on fire. This time appeal for leg before wicket. Rightly so, umpire. Rightly so. It's the right decision. That was the impact of the line is outside the line of off stamp. When the ball is hitting Prajwal's back foot, of course, he's almost shuffled across the line of the delivery. Good decision there from umpire. Dikshit, and scoreboard remains on 22 for the loss of 1 wicket. Dr. Vinod once again back to his bowling mark. He's not really happy with himself. It's a productive over for the opposition. Come back over there for the opposition. Viranjane Kapu this time again looking for the big swing. He's just asking umpire for the wide, but Prajwal shuffled across the line of 2 delivery. Shuffled too much in the negation. Ball just passing over the stumps. So how to give the wide for that delivery? Right call from umpire Dikshit. But just going over the top of the stumps. And look at the disappointment there from bowler
Dr. Vinod ball just missed the stumps here. It's a 22 for the loss of 1 wicket. First productive over which is came for Viranjana Kapu. That's only because of Prajwal is opened up in that particular over. Picked up 2 massive sixes and got the acceleration which is much required for Viranjana Kapu. It's a 22 for the loss of 1 wicket. Just we are talking about what a fantastic cricket tournament is progressing here, which is proudly organized by Deadly Panthers in the name of the Panthers Super League 2023. 2 days of day and night cricket matches, and under the, of course, under the live telecast of UO4 News channel. And I request all the cricket lovers, please subscribe V424 into 7 channel. You will get fantastic live coverage of this cricket tournament. And we have cricket heroes as well in this cricketing app, and I request all cricket lovers to download that app, Cricket Heroes. You will going to get the updates of the individual performance of the batsmen and the bowlers, and definitely the man behind this updates, we have Milan Jivan Rai, done a great job so far in this department. So first ball of the over number 4. And Ganesh Naik is doing a right job. He's playing an acting role. So important in cricket, isn't it? Whenever the partnership is get going, and other end, one batsman should take the acting role, just like rotating the strike. And what Ganesh Naik is doing here is a right job, along with Prajwal. So 23 for the loss of 1 wicket. Now the bowler Balakrishna Nayak, bowling from the UTC end. Around the wicket, balls this time almost climbed out that one, but not really getting the distance. It's a well directed short pitch delivery. Of course the Prajwal is a tall man, but it's just not tall enough for him to tackle with that extra bounce. Just is standing on his toes, tried to hit the ball down to deep mid wicket region, but because of that extra bounce in that delivery, he's not really getting that much of elevation he's looking for, and he just pays the penalty for that. A big wicket. It's definitely going to be a big fish in the net here for Spark Udupi. They got a very important wicket of Prajwal, and the bowler Nayak has got a very important breakthrough for his team. It's a 23 for the loss of 2 wicket. So new batsman is just walking towards the middle. Vignesh Bhatt in a striker's end. Balakrishna Nayak is a successful bowler. He got a very big wicket, isn't it? It's a very big wicket indeed there of Prajwal, who's looking pretty good in the middle. He's back into pavilion. This time improvisation, top edge. The fielder there in the deep long on will not going to reach there. At one bounce, it's going to be the fielder will just stop the boundary here, but I think little bit of absence of mind, I think so, because late reaction coming from the fielder, isn't it? He's not really happy. We can see that other fielder's reaction. It looks like the late reaction there from the fielder in the long on, as the ball is in the air for a long time. The Jagadish, who is standing deep long on, can reach there, but because of his slow reaction, ball landed safely and got a couple of runs. 25 for the loss of 2 wickets. Swings it hard, and he will go and get the distance. No, ball will land at one bounce just inside the boundary line over the row for 4 runs. The much required blow coming from the bat of Vignesh Bhatt. Just shuffled across the line of the delivery. Look at that one. He makes that ball a little bit short by improvising that stroke down to deep mid wicket and deep backward square leg. And look at the ball, is just landing just inches inside the boundary line, and he got the boundary for that. 29 for the loss of 2 wicket. Balakrishna now getting some suggestion from Dr. Vinod. Maybe he's just asking him to not ball the short pitch delivery when the batsman just shuffling across the line of the delivery, the kind of ball which is required. Balakrishna again.
Bowls beautifully ball. Fantastic leg cutter. Defeats the wicket keeper. Defeats the third man fielder. Did a little bit footwork there from the fielder to stop the boundary. Coming back for the second, and they made it quite easily. A lucky run. Umpire just yes, by call by umpire. Want to see that ball with got outside edge of the bat or not. The batsman says not no. It's a 31 for the loss of 2 wicket. Balakrishna bowls. This time outside the line of off time. Batsman shuffled across the line after they left the ball, thinking that might be a wide, but well within the reach of the batter. So completion of over number 4. And Viranjan and cricketers Kapu are able to get 31 runs and just under 8 runs per over. The run rate progressing as far as the exact run rate is concerned. And at 7.33 runs per over. 31 for the loss of 2 wicket. Last over remaining. Ajay Nayak to continue because one bowler can bowl 2 overs, so that they're choosing Ajay to bowl the second over because very economical in the first over, bowled just a 3 runs over, and that's why the captain wanted him to bowl that last and final over of the innings of Viranjana Kapu. Ganesh is a striker. Oh, lovely leg cutter, beautifully bowled. Ganesh Nayak asking umpire to give the wide, but umpire says yes, the ball is within the reach of you. Your problem is not able to read the turn of the delivery, and no damage done. 31 for the loss of 2 wicket. Ajay bowls. Oh, I think it's outside of the bat. Wicketkeeper has got a hand onto that, Dr. Vinod Nayak. But it's a difficult one, isn't it? When you are standing up in the stumps, it's not so easy to tackle with the tick is outside edge of the bat. But he's got a hand out to that, but not really able to complete the catches. And 32 for the loss of 2 wicket in the over number last in progress. The batsman, jersey number 17, Ganesh Nayak, Vignesh Bhatt, little bit correction, who got a boundary under his name. And wait and see how we'll go into tackle with the 4 deliveries. Again, shuffled across the line after the swings that one, missed it completely. Fantastic visa bowling there from Ajay. That's why captain wanted him to bowl that last over. He's just justifying the decision of the captain so far. Last 3 deliveries remaining in their innings. Ajay. This time, wicketkeeper Dr. Vinod will going to miss the opportunity this time. The ball is in there for a while, so enough time for Dr. Vinod to run back a couple of steps and completes the catch. So wicket number 3 is back into pavilion. Ajay once again producing a very important breakthrough here. The final over. The spark Udupi really sparkling through Ajay in this final over. 32 for the loss of 3 wicket. Sanket Kamath. Final 2 deliveries left. And Sanket Kamath, wait and see how well he will going to contribute from the bat in this final 2 deliveries. Ajay. Right arm over wicket again. A lovely delivery to ball to that new batter. Right on that outside the line of off stump. Of course, the ball is in off volley, but batsman not really able to take the advantage of that one. Last time in this over, Ajay. Ball swings and missed. What a fantastic last over. The turnout will going to take place in the non-striker's end. But it's a great over. It comes to an end here from Ajay in the negation. Just a single run in this final over. Just a single run in that particular over. And it's an outstanding bowling performance there from Ajay. And 33 will going to be a target. उडलाल टीमाचे कॅप्टन आणि आर के श्रेयकरचे कॅप्टन स्टेजला येऊ का? The great bowling performance here from Spark Udupi. Won the toss, selected to field first.
And so far, it's a good performance there by the bowling department of Spark, and restricting the opposition Viranjana Kapu for just 32 runs, and they set a target of 33 to win this match. And it's going to be a very good match because Viranjana Kapu, and they got a very good bowling department, no doubt at all. And everybody knows the cricket is a game of glorious uncertainty. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Uldal team won the toss and decided to field first. धन्यवाद सतीश। 33 रनों का लक्ष्य इस वक्त और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होती है। पहली गेंद इस बार नॉन स्ट्राइक रेट पर खतरा, लेकिन थ्रो करना मुनासिब नहीं समझा गेंदबाज ने। जहां तक सवाल है, स्पार्क उडुपी को बनाने 33 रन निर्धारित 30 गेंदों में, अब 29 गेंदों में 33 रन बनाने हैं। और वीरांजने कापू ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 32 रन बनाए निर्धारित 5 ओवर में। वीरांजने कापू स्कोर 32 रन एंड 33 द टारगेट फॉर स्पार्क उडुपी इन 5 ओवर्स। यह गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया एंड नो नीड टू रन फॉर दैट। In fact, it's gone over the fence for a boundary. शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर इस वक्त स्कूप कर दिया खूबसूरती के साथ। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर चौके के लिए, और इस चौके के साथ इस वक्त बल्लेबाज विश्वनाथ और स्पार्क उडुपी का खाता खुल चुका है 4 रन बिना किसी नुकसान के। जूसी लॉलीपॉप गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को स्कूप कर दिया पावर प्ले का फायदा उठाते हुए। और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। और गेंद के लिए तलाश इस वक्त जारी है। खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। अंपायर गेंद की मांग इस वक्त करते हुए, और दूसरी गेंद इस वक्त दी जा रही है गेंदबाज को। और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार। विघ्नेश, दाहिने हाथ के बल्लेबाज विश्वनाथ इस वक्त सामना करते हुए।
फील्डिंग में जमावट करने के बाद 7 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं, पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्टंप्स को कवर करने के बाद गेंद पहुंची फॉरवर्ड शॉट लेग पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। बिल्कुल एक सतर्क शुरुआत की जरूरत स्पार्क उडुपी के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें 33 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो निर्धारित 5 ओवर में। और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया 6 रनों के लिए। He hit that one in a flatter version and finds the gap as well. इस बार गेंद को उछाला था फ्लैटर वर्जन पर, देखिए किस तरीके से, एब्सोल्युटली इन अ फ्लैटर वर्जन इनटू द फेंस फॉर अ ह्यूज वन। और इस छक्के के साथ स्कोरबोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। 11 without loss. And this is an absolutely a good start for Spark Udupi. और गेंदबाज विघ्नेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से डीप मिड विकेट पर, लेकिन इस बार रक्षणा प्रोटेक्शन मौजूद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर, जब तक गेंद को फील्ड करे। बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर, जबकि इस ओवर में अंतिम गेंद बाकी है, लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन दिस ओवर। और विघ्नेश गेंदबाजी एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर डिफ्लेक्ट कर दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर। फील्डर काफी पीछे, 1 रन चाहिए मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पर थ्रो पहुंचा स्ट्राइक रन पर और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास, लेकिन थ्रो पहुंचा फ्लैटर वर्जन पर सीधे स्ट्रेट ओवर द स्टंप्स और विकेट कीपर ने विकेट उखाड़ दी। इस वक्त थ्रो को कलेक्ट करने के बाद गिल्लियां बिल्स उड़ा दी है और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है यहां पर 13 रनों पर। It's 13 for the loss of 1 wicket. First over completed, 13 runs on the board, and except they lost their first wicket in the last 11 in this over, they made a pretty good start. 13 runs they managed to score after completion of first over. 20 runs exactly. Now they have to score for victory in remaining 4 overs with the required run rate of exactly 5 runs per over. This is the 4th match of Panthers Super Leagues 2023 is now progressing here. 12 reputed teams are participating in this tournament, and 12 teams are divided in three groups, and 18 league matches to be played in a league stage. And this is the match number 4 of the league stage is now progressing here. दूसरा ओवर कमेंटेटर बॉक्स यानी UTC एंड की ओर से शुरू होता हुआ। प्रज्वल शनौन इस वक्त गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार डॉक्टर विनोद नायक। जहां तक डॉक्टर विनोद नायक का सवाल, एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में वो जाने जाते हैं, लंबी पारी खेलने की क्षमता वो रखते हैं और यहां पर देखना है कि इस मैच में किस तरीके की बल्लेबाजी वो अपनाते हैं। So the next match, RK Strikers will take over Ullal, Kings 11 Ullal, and in this match, Kings 11 Ullal, after won the toss, they elected to field first. So still some fielding adjustments is going on there. And the fresh over starts from Prajwal Shanai to Dr. Vinod Nayak. फील्डिंग में इस वक्त जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार विनोद नायक ने फील्डिंग का इस वक्त मुआयना किया और ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार था। ना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद पटकी हुई गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया बैक टू द बॉलर की दिशा में। गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर, गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद पहुंची बैक टू द बॉलर की दिशा में और वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर रुक चुका है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका। प्रज्वल एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट, फुल टॉस, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को पंच किया खूबसूरती के साथ, कवर पॉइंट पर गेंद जाती हुई, वहां पर फील्डर मौजूद, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन तेजी के साथ यहां पर पूर्ण करते हुए फुल टॉस गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट इस वक्त पंच किया था खूबसूरती के साथ डॉक्टर विनोद नायक ने। और आखिरकार डीप एक्स्ट्रा कवर से फील्डर जब तक दौड़ कर आकर डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास समय था कि वह दूसरा रन न प्राप्त कर सके। 15 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। डॉक्टर विनोद नायक एक बार फिर से सामना करते हुए ये गेंद इस बार खूबसूरत कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, राइट बिहाइंड द लाइन ऑफ द बॉल एंड ड्रिवन दैट वन परफेक्टली, टर्न टेक्स्ट कवर, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल शॉट इस वक्त खेला था। और तकनीकी तौर पर एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर विनोद नायक। उनके बल्लेबाजी की शैली से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि
तकनीकी तौर पर वो कितने परिपूर्ण हैं। और यहाँ पर 1 रन का इजाफा, 16 रन एक विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका 17 रन एक विकेट के नुकसान पर। दोपहर का वक्त लगभग 1:35 यहाँ पर बज चुके। धूप, सूरज अपना कहर अभी भी ढा चुका है मैदान पर और धूप की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ बढ़ती हुई। ये गेंद फुल टॉस, गेंद को ड्राइव करेगा इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था कि दूसरा रन आसानी के साथ पूर्ण कर सके और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, जस्ट सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। प्रज्वल एक बार फिर से, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया, मिड और लेग स्टंप पर गेंद थी, हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग पर और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 20 रन एक विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं। रन्स इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए और क्रीज पर मौजूद है दोनों बल्लेबाज जान चुके हैं कि इस वक्त उन्हें क्रीज पर जमना है और एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप यहां पर निभानी है और अपनी टीम को अपनी मंजिल की ओर अग्रसर करना है। तो यहां पर अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो ऊपर द विकेट। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त विनोद नायक ने, लेकिन गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं कर पाए और बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद गेंद जब तक गली की दिशा में फील्ड हो, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 21 रन एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 8 रन कुल मिलाकर इस ओवर में बने। 8 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर एंड आफ्टर 2 ओवर स्टिल Spark would be looking in a commanding situation. 21 runs they scored for losing just a single wicket after completion of 2 overs. And still they have to score 12 runs in remaining 18 balls and the asking run rate is now coming down to exactly 4 runs per over. 12 रन बनाने 18 गेंदों में और निश्चित रूप से इस वक्त स्पार्क 11 का पलड़ा भारी लगता हुआ। दर्शक आज सैटरडे शनिवार वर्किंग डेज होने के बावजूद मैदान पर इस वक्त छा चुके हैं। मैदान लगभग दर्शकों से भर चुका है, तो ये बात ये दर्शाता है कि खासकर क्रिकेट कितनी जनप्रियता इस उर्वा क्रिकेट मैदान पर रखता है, जो कि लॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट के अनवर्थ नाम से जाना जाता है, यूसीजी उर्वा क्रिकेट मैदान। और यहाँ पर इस ऐतिहासिक उर्वा क्रिकेट मैदान पर एक बेहतरीन श्रृंखला, एक शानदार प्रगति करते हुए पैंथर्स सुपर लीग 2023 के नाम पर फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए गेंदबाज जो कि नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए प्रोफेशनल एंड की ओर से संकेत कामत सामना करने के लिए तैयार डॉक्टर विनोद नायक का, जो कि 11 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। लगभग 184 का स्ट्राइक रेट उनका, इस वक्त 11 रन 6 गेंदों पर बना चुके हैं और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। 18 गेंदें बाकी, 11 रन और फिर से गेंदबाज की गेंद अपनी रनअप में कुछ हद तक बाधा। एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए डॉक्टर विनोद नायक इस वक्त एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है बल्लेबाजों को, रन से कम बनाने हैं, गेंदें ज्यादा इस वक्त बचे हुए। ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ना चाहा था विनोद नायक ने, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को ठीक तरह से मोड़ नहीं पाए और फॉरवर्ड शॉट लेग पर विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया। रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर 22 रनों पर रुक चुका है। एक बार फिर से गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद विनोद नायक के लिए उछाला इस वक्त गेंद हवा में, गेंद पहुंचती हुई एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद को उछालना चाहते थे यहां पर लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद लेग कटर गेंद कुछ हद तक बाहर की ओर निकलती हुई, देखिए किस तरीके से गेंद तक पहुंचने के बाद गेंद को उछाला था, लेकिन 2 स्क्वायर ऑफ द विकेट और डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका। तो डॉक्टर विनोद नायक की पारी समाप्त हो चुकी है और दूसरा विकेट यहां पर खो चुका है। टीम स्पार्क उडुपी, इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। तो रन्स अभी भी चाहिए
11 रन, गेंदे बाकी हैं 16, 16 balls left, 11 runs more, now they have to score for victory. विवेक प्रभु अंबागिलू इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद और संकेत कामत की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। तो अगली गेंद, ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को कट किया खूबसूरती के साथ, पॉइंट पर एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्टिंग वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। गेंद को कट किया था बैकफुट पर जाने के बाद, पॉइंट क्षेत्र पर रन के लिए दौड़ पड़े, कोई रिस्पांस नहीं नॉन स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज द्वारा, फलस्वरूप आसान सा रनआउट इस वक्त होता हुआ स्ट्राइकर एंड पर विकेट कीपर द्वारा, और इसी के साथ तीसरा विकेट गिर चुका है। हालांकि कोई जल्दबाजी की यहां पर जरूरत नहीं है, लेकिन बल्लेबाज इस वक्त स्पार्क उडुपी के विकेट के ऊपर विकेट देते हुए निस्संदेह यहां पर एक सही मौका है इस वक्त गेंदबाजों को बाउंस बैक करने का। तो वीरांजनेय क्रिकेटर्स कापू के लिए चाहिए इस वक्त एक घातक गेंदबाजी इस मैच में कमबैक को वापसी करने के लिए। रन अभी भी चाहिए 11, गेंदे बाकी हैं 15 स्पार्क उडुपी के लिए, और फिर से एक बार गेंदबाजी करेंगे। इस बार नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ बालकृष्णा स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए, सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, 11 गेंदे बाकी हैं, माफ कीजिए 11 रन चाहिए, 15 गेंदे बाकी हैं। निस्संदेह यहां पर कमबैक करने के लिए इस वक्त डॉट गेंदों की और विकेटों की सख्त जरूरत है गेंदबाजों को वीरांजनेय क्रिकेटर्स कापू के। तो अगली गेंद फुल टॉच, फुल किया डीप मिड विकेट पर, इनटू द गैप एज वेल, 6 रन्स, और इस छक्के के साथ ऐसा कहना पड़ेगा विजय के और निकट हो चुका है यहां पर स्पार्क उडुपी। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त बालकृष्णा के बल्ले से रखता हुआ मिडल लेग स्टंप पर गिरती है, देखिए किस तरीके से गेंद को डिस्पैच किया था डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए, और इन 6 रनों के साथ 28 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 2 गेंदे बाकी, 2 balls लेफ्ट इन दिस ओवर, और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद उछालना चाहा, चूंकि विकेट कीपर ने विकेट जरूर चटका है, लेकिन बल्लेबाज का पिछला पैर क्रीज पर मौजूद, और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। 5 रन सिर्फ चाहिए विजय के लिए, जस्ट 5 टू गेट 4 विक्ट्री। इस ओवर में अंतिम बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद, अपील जारी है इस वक्त, लेकिन यहां पर अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। तो गेंद फेंकने के बाद गेंदबाज बिल्कुल आड़े आ गए थे अंपायर के, तो इस वजह से अंपायर को दिखाई नहीं दिया कि वाकई में वहां पर क्या हुआ था स्ट्राइकर एंड पर। तो बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं और ओवर समाप्त हो चुका। 3 ओवर की समाप्ति, 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स, 5 रन टू गेट फ्रॉम लास्ट 2 ओवर्स। Exactly 2.5 runs per over, the required run rate for them at this situation. जहां तक अगले मैच का सवाल है, आरके स्ट्राइकर्स का मुकाबला होगा किंग्स 11 उल्लाल के साथ, और इस मैच में किंग्स 11 उल्लाल ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। तो इसलिए कृपया मैं दरख्वास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि अगले मैच के लिए तैयार रहे। प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। विघ्नेश जी भट्ट इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए यूटीसी यानी कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से, और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, बिल्कुल सरल इक्वेशन इस वक्त स्पार्क उडुपी के सामने। 5 रन सिर्फ चाहिए 2 ओवर में, ठीक 2.5 रन प्रति ओवर के औसत से, और कुछ हद तक आक्रामक फील्डिंग इस वक्त सजाई है कप्तान ने। वीरांजनेय कापू के 6 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, सिंगल्स रोकने के प्रयत्न में। कप्तान जानते हैं इस वक्त सिंगल्स रोकना उनके लिए बेहद जरूरी बन चुका है। दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, बल्ले के ऊपरी भाग पर गेंद टकराई, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर, इट्स 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। At the start of the 4th over, in fact, एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट V4 न्यूज 24/7 चैनल द्वारा इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब पर, और
फिर से एक बार गेंदबाज की यह गेंद पटकी हुई गेंद कट करना चाहा, थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकली, विकेट कीपर को बीट करते हुए और गेंद को डीप थर्ड मैन फील्डर रोकने में असफल और चौका यहां पर मिल चुका है। और इस चौके के साथ इस मैच की समाप्ति यहां पर हो चुकी है और स्पार्क उडुपी इस मैच को 7 विकेटों से जीत चुका है 10 गेंदें बाकी रखते हुए और वीरांजनेय कापू के खिलाफ। और इस विजय के साथ स्पार्क उडुपी परिपूर्ण अंक प्राप्त कर चुका है। दे बैक द कंप्लीट पॉइंट्स। तो अगला मैच, द फिफ्थ मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ कमिंग अप। आरके स्ट्राइकर्स विल टेक्स ओवर किंग्स 11 उल्लाल। सो इन दिस मैच किंग्स 11 उल्लाल after won the toss they elected to field first and I request the 12th man of both teams, the 12th man of RK Strikers and Kings 11 Ullal to please report to the stage immediately to tell the player's name. तो पांचवा मैच यहाँ पर शुरू होगा और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. See Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior design. सुमन किणी मायन सेरून एक मॅन ऑफ द मॅच दिवका म्हणून विनंती करताची। मॅन ऑफ द मॅच बालकृष्ण ऑफ स्पार्क उडुपी। At affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. See Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
Navin Pai and Varun Shanbag, the two opening batters for Arcade Strikers, came into middle and just but coming back to these two teams, of course, Kings 11 Ullal is a very good toss to win, but at the same time, the opportunity here for Arcade Strikers to bat first here, and they got a very promising opening batters are in the middle. Everybody knows the talent of Navin Pai as well as Varun Shanbag. Varun Shanbag is a very good striker of the ball, and he's a kind of batsman who can bat in both format, over-arm and under-arm cricket. First ball, the different bowling actions to start with here from bowler Pranav Bhatt, as he has bowled first ball as outside the line of off stump. The very good delivery to start with as he bowled outside the line of off stump, and Navin Pai completely missed out the delivery. Pranav again bowling with a short run up. The very experienced campaigner Navin Pai will go into face Pranav. It's a very different bowling action. Beautifully bowled. Absolutely perfect one. Navin, without seeing the line of the delivery, tried to swing that one. Missed it completely. And Pranav, just I want to say it's a bowling action. It's so very different action, isn't it? Have got a very slow run up. Has got a little bit jerk before bowling, delivering the ball. Just look at that one. Absolutely quite a different one. This time Navin, like a placement. Chance of run out. Varun Shanbag is charging into the run, but umpire Shriniket, the first time for the day, is asking for the third umpire to is referring for the third umpire, and the third umpire Rajaratna sir will going to give the decision, and the technicians of V4 24/7 channel will going to provide the exact evidence of this decision, whether the batsman is out or safe. Of course, the followers and followers of the fans of Arcade Strikers wanted Varun Shanbag to be safe, but at the same time Ullal 11 fans wanted that batsman to be out, but umpire need to get right evidence for that, whether it's out or not out. Definitely sometimes it's a very close, isn't it? Why the umpire, squad umpire Shriniket asking for third umpire, because when it's a very close, it's very difficult for umpire to judge. The Varun Shanbag is charging into the run. It's always going to be difficult for sometimes, even for the third umpires as well, because the batsman sometimes try to drag his bat in the right time. So out, which is a call, and that's what is required here for Ullal. And Varun Shanbag is a kind of batsman who can be the very handy, and but I think is definitely is a wrong call there from Varun Shanbag. It's not a run at all. There is no chance at all for any run, because the ball is went straight to the hands of short mid wicket, and he's just charging for the run. Navin responded because seeing that his partner is coming to the run, he's just responded for the run. What I think is a too late here for Varun Shanbag to survive. Absolutely a big blow here for Arcade Strikers. They lost their first wicket at the name of Varun Shanbag. It's a 0 for 1. The new batsman in is Pranav Bhatt. 33 is a jersey number. Ashwath Pai is the one more fantastic performer, as Ashwath Pai is a very good batter, got a very good technique of getting a runs on the board, but I think it's an early entry for him. It never looks like it's going to be have that much of quick entry, because they lost the first wicket in the third delivery of the first over, as Pranav is charging for the run. He desperately wanted to be in the striker's end, but by doing that I think he's finding himself short of the crease. So Ullal, Kings 11 Ullal has got a very good start from the ball, has got a big fish in the net. Pranav away from us, around the wicket to Ashwath. Ashwath this time copybook style of drive, but not for run. There is a fielder in the short mid of Prasad will going to field the ball, and there is no question of any run. And yet to open the account. So far it's a good bowling from Pranav Bhatt. The 4 dotted deliveries to start with, and 1 wicket in the form of run out.
Pranav Bhatt again away from us. Right arm round the wicket. Ashwath this time getting the placement quite beautifully between backward point and cover point. Before the fielder from extra cover to field that one down or deep extra cover region. Ample time for the batter Ashwath to pick a couple of runs. With that couple of runs, they're off the mark. They open the account very slowly and very late in this first particular over. And Pranav is a kind of bowler who is not so easy to judge his line and length, because he's releasing the ball in the last moment, isn't it? He never knows when you're going to release the ball. Stopping and just bowling that ball and beautifully bowled out. This time appeal for leg before wicket, but umpire certainly knows that ball is just going down the leg stump, just a little bit, that ball going down the leg stump, rightly so. First over completed, fantastic over there from Pranav there, outstanding over and a great start given there by Pranav. Just a couple of runs and a wicket in the form of run out, but the wicket will not go into the account of bowler because of that run out, but it's a good over. It's not so easy to come and bowl the power play overs, but Pranav Bhatt once again is a young talented bowler. Each and every team has got some good quality players in the side because of that auction-based tournament. Each and every team has got some good players. They purchased the good players to strengthen their all departments, batting, bowling, and fielding departments. RK Strikers, of course, has got some good players in the side, but they need to convert that experience into performance if they wanted to win the match. But so far, I think the first over which belongs to the fielding team, and 2 runs and a wicket. Bowler Anantesh Pai, and one more very experienced campaigner. Anantesh Pai is also the one who can be the very handy in both format, whether it's overarm or underarm cricket. He's a very useful cricketer, Anantesh. This time going for the drive, ball is in there. Anantesh complete the formalities of taking a caught and bowled, and this time Naveen just lost his patience. After that quiet over, the first over he's played some dotted deliveries. This time he wanted to hit the ball towards a deeper long off region, but he's not really reading that line and lengths, and he just pays the penalty for that by to get that down to long off, but he didn't got enough timing. And Anantesh Pai, he picked up his first wicket. And just like we are talking about his ability, the potential, and the wicket number 2 which is back into pavilion. It's a 2 for the loss of 2 wicket. RK Strikers, they needed some good start what we are talking about, but they lost 2 wickets very early. Some consolidation, and they need to be a very cool and calm. You can't get the score straight away. They need to play as per the condition required. Karthik, one more good player for the side of RK Strikers. Straight to the hands of fielder. One more wicket is back into pavilion. Karthik. Oh, can you believe this? It's a 2 for the loss of 3 wickets. RK Strikers are looking in a serious trouble. It's a really they're in a deep trouble. Lost 3 wickets for just 2 runs. Just a second over is in progress as Anantesh picked up 2 wickets in a row. That means he's on hat-trick. This is the 3rd occasion in the day. The bowlers has got a chance to get the hat-trick, but at 2 occasions the bowler missed the opportunity. Can Anantesh Pai will be the first bowler to get the hat-trick here. So new batsman in is Vijay Kamath, the experienced campaigner and useful cricketer. But here he want to restrict the hat-trick from Anantesh Pai. He will go into ball the hat-trick delivery from the professional career end, keeping one fielders very close to the batter. Mid-wicket is there, closing fielder at short square again.
Silly mid off, beautifully bowled, excellent delivery, but no hat trick in dedication there for Anantesh Pai. But this time is a lovely delivery actually. It's a very good delivery indeed. But last moment Vijay Kamath able to block that one. And Vijay again facing next delivery. Shuffled across the line off the delivery. Quite interesting kind of technique which is implemented there by the batter. Vijay Kamath in the negation, little bit shuffled across, tried to push the ball on the onside region, missed it completely. Again Anantesh Pai, right arm over the wicket. And this is a cricket, isn't it? Sometime I need to play as for the condition required. This time he's pushing the ball down to cover point region for a single and retain the strike for the next over. Fantastic over is comes in and just a single run conceded in that over by Anantesh Pai and picked up 2 valuable wickets. And captain and just expecting that kind of over from Anantesh Pai and searching for the right track. RK strikers are really struggling in the middle. It's a competition between run and ball, run and wicket. It's a 3 for the loss of 3 wicket. The 3 overs remaining, the 18 possible deliveries remaining. In 18 delivery at least 25 runs which is required, 25 to 30, which is desperately required for RK if they wanted to get some fighting total, competitive total. And of course they got ability. Even they lost 3 wickets, RK strikers, they got some good players in the side. But the problem here is that they lost the trump card batsmen. And trump card batsman in the sense in the opening they lost Shanbag. It's a big blow for team RK strikers losing Varun Shanbag without facing a single delivery, and that starts a downfall for RK strikers. But still, intelligent cricket which is required for them to get some good score. The bowler, Suhas, bowling 3rd over of their innings, of their opposition innings. First ball, right arm over the wicket, just try to reach that one, but not really getting that much of timing enough to that stroke. Picked up a single down to short backward point region. With that single, score now moves on to 4 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. So far, his outstanding cricket is going on here in the name of Panthers Super League 2023. Just I want to see the field set now. One at deep backward square leg is going back to deep backward square leg. One at deep mid wicket. One fielder in the deep long on. One at deep third man. Deep extra cover. Oh, lovely shot. Swings at her very hard. And ball is well spilled up with a long way down to deep backward square leg for a huge 6. Just like I'm mentioning about, even they lost the 3 wickets, strikers has got some good batting department who can handle the pressure. This time Ashwath Pai and effortlessly played, isn't it? Just an effortless stroke. Timing is even outstanding, exquisite. Just helping it down with the timing and with the direction of the wind, ball is travels for a long way down to deep backward square leg. It's a 10 for the loss of 3 wicket. Again he wanted to swings at one, but this time he finds a fielder. Oh my goodness. It's not a good cricket here from the batter. You can't hit the ball, each and every ball for a 6. Just he couldn't manage to control his emotions, isn't it? After getting a 6, he wanted to get one more. But this time the bowler is so clever to ball, pitch that one a little bit up, so that the batsman couldn't manage to take the advantage of that one. He's just finding the fielder in the deep backward square leg. He's in the right position. Look at that one. He complete the catch. He's so happy. You know exactly he got a big fish in the net. The one more wicket is back into pavilion now. Gain once it looks like strikers will go into back. They're losing a big wicket. It's a 10 for the loss of 4 wicket. The new batsman is Pratap. Is came into middle. Wait and see how Pratap will go into consolidate the innings here of RK strikers. Are looking in trouble now.
The over number 3 is in progress. They didn't got enough runs on the board, even though they got a 6 in this particular over. But still, they're losing that man who is looking pretty good in the middle is back into pavilion. Suhas bowling away from us. Appeal for leg before wicket. Umpire says ball going to miss the off stamp. The impact of the line. It was 11 for the loss of 4 wicket. It's a call for a lunch break. I request everyone to take the advantage of that lunch break. Pulls that one, handsome looking drive, and he got the big 6 down to deep square leg. The second sixer of the innings of Arcus Strikers. Vijay Kamath just waiting for that short pitch delivery. Just look at the improvisation as he got. Just going back, just using the deftness of the crease very well. And because of that, he got that much of shot enough to pull that one. And he got that one right from the middle of the bat towards the deep backward square leg. Just in front of square. And score jumped into 17. Again he repeats, and again he got the same result here. The back-to-back 2 sixers now for Arcus Strikers. They back very strongly in that over. What innings is playing here. Vijay, absolutely terrific shot. Improvising. Just getting some inspiration from the present T20 cricket. The kind of cricketing strokes is implemented in that particular 2 sixers. He's an improvising cricketing stroke. Shuffling across the line of the delivery. Using the deftness of the crease. One which is played down to deep backward square leg. The one which is played down to deep fine leg for a 6. And straight away Arcus Strikers, they back very strongly in this game. It's a 23 for the loss of 4 wickets. Out of 23, 18 which is came in 3 strokes. There are 3 sixes which is clears the boundary line. And that's the speciality of smaller format of the games, isn't it? One good over can change the complexion of the match. So Arcus Strikers, even the lot got a shackling start, but they back very strong from the far end. 4th over is going to start. Professional career end. Right arm over the wicket. Sensible batting here from the batsman Pratap Nayak. You know exactly what the kind of batting is required. You know exactly what Vijay Kamath will going to do. After getting 14 runs in just 6 balls, I think Pratap Nayak is thinking rightly to give the strike as much as possible for Vijay Kamath. Rakshit. Right arm over the wicket, beautifully bowled. Absolutely fantastic one. The batsman tried to swing that one without seeing that ball, without seeing the turn of that ball of Rakshit. There is a bowler slow like a in the relegation, and the batsman completely missed out. Rakshit. Right arm over the wicket again. Lovely delivery. Batsman is lucky, ball just missing the middle stump. He's saying is calling his umpire to wide, but I want to say the batsman ball is not really just missing your middle stump. You are lucky, man. Absolutely, you are lucky. He's still there in the middle. Again, swings and missed, and he umpire this time. Scholar umpire not missing. This is what the excitement what the batsman has got after getting a 2 sixes in the previous over. As he wanted to try to repeat that stroke regularly, but this time he is not too clever. The bowler is very clever than the batter. And fantastic bowling performance here from the bowler Rakshit. Just reading the mindset of the batsman. He knows that after getting 2 sixes in the previous over, the batsman should be more aggressive. So he knows exactly where to pitch, where to get the turn. Pitching the ball outside the line of off stump. And turning deliveries, spinning the ball a lot. And the batsman Vijay Kamath missing and missing, swinging and swinging and missing and missing. At last he is back to pavilion. But he played a good innings for his team to get that very valuable runs for his team. It's a 24 for the loss of 5 wicket, but the great over is in progress. Rakshit, 5th time in this over. To Radhakrishna. Oh, there's a wide outside the line of off stump, and Radhakrishna reaching for the delivery.
Certainly it's going to be a wide delivery if he left the ball. But he wanted to reach that one. He wanted to hit the one down to extra cover region. But so far it's a good over is in progress. Again Rakshit seaming in from the professional career end. Right arm over the wicket. Chip that one. Ball is in there. Opportunity for the cover point fielder. He drops the catch. Just charging in from the cover point region. And this time Radhakrishna wanted a third. But his partner says no. Rightly so. Couple of runs to finish the over number 4. After completion of over number 4, RK Strikers are 26 for the loss of 5 wickets. But this is not a kind of over what RK Strikers needed in this particular stage. Needed some runs, but this time they lost the wicket of Vijay Kamath. But at the same time, just quite over, economical over, bowled by Rakshit. 3 runs came from that over. Altogether, it's a 26 for the loss of 5 wicket. Last over remaining in the innings. Anantesh Pai, probably the bowler who can bowl the 2 overs. Seeing his bowling figure, the first over, 1 over, no maiden, 1 run, 2 wicket. What outstanding bowling spell here for Anantesh. And probably the captain wanted to see him in this final over. And Anantesh will go into bowl that final over to Pratap Nayak. Pratap Nayak drives that one right in the gap towards the mid-wicket region, but not more than a single fumble from the fielder. Possibility of second run, but Radhakrishna is not interested. Maybe Radhakrishna wanted to tackle with the Anantesh Pai. Last final 5 deliveries remaining in the innings. Scoreboard is 27 for the loss of 5 wicket. Radhakrishna will go into face Anantesh. Oh, this time chance of run out. Wicket keeper misses that 3 stumps. He can hit any stumps out of that 3. But he missed that all 3 stumps, and batsman completed the single in the form of byes. So 28 for the loss of 5 wicket. Anantesh back to his bowling mark. Is not really bothered about the single. You know exactly need to restrict the boundaries and the sixes. This time outside the line of leg stump, punishable from umpire. Even that's punishable from the batter if they're able to hit the ball, because there's a loose delivery outside the line of leg stump. Pratap Nayak can hit the ball down to a square leg or fine leg region, but he just missed the golden opportunity to swing his bat. But umpire not missing the opportunity to signal the wide. So 29. Anantesh bowls again, wide ball, back-to-back 2 wide deliveries. Something which is Anantesh is trying for experiment, which is going wrong here. The 2 back-to-back wide deliveries, bonus runs were for RK Strikers, 30 for the loss of 5 wickets. Anantesh to Pratap. Full toss, swings, but I don't think he will going to get enough bat onto that. The fielder there in the mid-wicket will going to complete the catch. And wicket number 6, which is back into pavilion. Absolutely, it's a juicy full toss. But he's just choosing the longest part of the ground. The mid-wicket is not so easy. Especially when you are playing in the afternoon. In the 2 o'clock, after 2 o'clock, we can see the direction of the wind is probably towards the left of our commentary box. If you try to hit the ball towards the mid-wicket, you need to pay the penalty for that. Against the direction of the wind, it's very difficult to get the distance. 30 for the loss of 6 wicket. So new batsman in is Saurabh Nayak, Saurabh Prabhu. Saurabh Bhakta is walking towards the middle. So one more very good campaigner as far as experience of cricket is concerned. Saurabh Bhakta can contribute from the bat in the middle order. Anantesh has got a wicket. The wicket number 3 altogether. And this time pulls that one, and oh my goodness, not quite enough. Once it looks like the fielder is a little bit struggling to get underneath that ball. It looks like ball is going to travel, but unfortunately ball is just travels safely to the hands of that deep backward square leg. Just that, let's look at it. Saurabh Bhakta swings, pulls that one, and the fielder in the deep backward square. Once it looks like he's a little bit struggling to get the position right, but ball is landed safely to his hand in the end. Unfortunate dismissal. 4th wicket for Anantesh. Now second time he's got opportunity to get the hat-trick. In the first over also he's got a chance to get the hat-trick. Now in the second over he is once again looking for a hat-trick. So Sandeep is a new batsman in. Hat-trick delivery from Anantesh.
Right arm over. Lofted, and he got the distance. And look at the Dikshit. Oh, this is the kind of decision which is coming from umpire Dikshit, which is definitely going to be a little bit a happy moment for the fielding team, but not a batting team, but not for the fielding team. It's a 36 for the loss of 7 wickets, and Sandeep is just clearing the boundary line. The frustration, absolutely, it's a result of frustration and the pressure from Anantesh. Ball just slipping out of the hands of Anantesh, and one more is a wide signal by umpire. 37 for the loss of 7 wickets. Sandeep swings that one down to deep long on. They're running hard. They know exactly dealing with the final. Dead was looking for the second. In comes the throw, and batsman completed a couple of runs. Excellent running between the wicket. What a contribution here from Sandeep. Last 2 deliveries got a very important 8 runs for his team. Radhakrishna batted very well in the last 2 overs, but Sandeep is a batter who got 8 valuable runs in these final 2 deliveries, and now RK strikers can feel that if they fields well, they can win the match, because they got a shackling start. They got a very shackling start in the beginning, but little bit recovery in the middle of the over, and they got a 39 valuable runs, and they set a target of 40 to win the match. Meanwhile, please get ready. The match number 6 of the day, number 1, Kodial United Sports Club versus Deadly Panthers registered. The host versus Kodial United Sports Club. The next match, and request both the teams, please, captain, please go for the toss immediately, and please cooperate with the organizers. Thank you very much, and takes a break here, and after that break, Gopi will go into take the microphone in our national language, Hindi. Thank you. It's time for lunch break. Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. SICA, C Institute of Creative Art, at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
of Creative Art. Get diploma in animation. आउट करते हुए पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ और किंग्स 11 उल्लाल की ओर से आरंभिक बल्लेबाज अनंतेश पई और प्रसाद भट्ट जबकि कार्तिक नायक गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार यूटीसी एंड की ओर से गेंदबाज आरके स्ट्राइकर्स के कार्तिक नायक का दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए बाएं हाथ राउंड द विकेट कहना पड़ेगा पहली गेंद बेहतर गेंद थी एब्सोल्युटली प्लम्ब इन फ्रंट देयर इज नो डाउट अबाउट दैट निस्संदेह गेंद लाइन पर टिप्पा का है उनके बैक लेग पिछले पैर पर टकराई थी और उनका पैर बिल्कुल सम के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में तो बिल्कुल सही निर्णय और पहली गेंद पर यह विकेट यहां पर गिर चुका है किंग्स 11 उल्लाल का 0 पर और पहली गेंद पर गेंदबाज यहां पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं Absolutely, that was in a fantastic delivery, much straighter line, and the batsman just wanted to lob that one on the onside area. No contact between the bat and ball. The ball kept at the last minute, stuck to its back leg, and a perfect decision, right decision given by the umpire Dikshit in this occasion. So first wicket gone, it's not for one. So Suhas, the number 3 batsman, is now comes out to the middle for Kings 11 उल्लाल जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो कार्तिक नायक पहली गेंद पर विकेट प्राप्त करने के बाद कुछ हद तक आत्मविश्वास भरे नजर आते हुए और अपनी अगली गेंद का सामना अगली गेंद फेंकने के लिए इस वक्त तैयार 7 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद फील्डिंग पावर प्ले के अंतर्गत मैंडेटरी पावर प्ले के अंतर्गत बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी फुल लेंथ गेंद को ड्राइव कर दिया स्टंप्स को कवर करने के बाद शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंची और जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया स्वयं गेंदबाज द्वारा रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा तो स्कोर रुक चुका है 0 पर 1 विकेट के नुकसान पर एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज कार्तिक नायक इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के कॅप्टन एक प्लेइंग 11 लिस्ट देऊ का Absolutely fantastic one. Extra quicker. The batsman just wanted to block that one at the last moment. और गेंद इतनी एक्स्ट्रा क्विकर लेंथ के साथ गेंद इस रफ्तार के साथ निकली कि बल्लेबाज इस गेंद पर कुछ कर नहीं पाए देखिए किस तरीके से हुआ था Absolutely perfect length. That was kept at the last moment and went into the hands of wicketkeeper. Luckily he doesn't got any nick or edge on that. And he survived in this delivery. स्कोरबोर्ड रुक चुका है 0 पर एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा पैरों पर टकराई सर्टेनली गोइंग डाउन द लेग साइड देयर इज नो डाउट अबाउट दैट और 1 रन यहाँ पर मिलेंगे अपील को सही तरीके से अंपायर ने नकार दिया और 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है अब किंग्स 11 उल्लाल 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर और जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है इस वक्त किंग्स 11 उल्लाल को एक बेहतर शुरुआत की सख्त जरूरत और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए तो इस ओवर में 4 बेहतर गेंदबाज कार्तिक नायक फेंक चुके एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए पहली बार बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रसाद भट्ट इस गेंद का सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए स्क्वायर लेग मिड विकेट इस वक्त मौजूद जबकि पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन इस वक्त तैनात बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंद को उछालना चाहा चूंकि बेहतरीन गेंदबाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम द बॉलर और 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन अब तक प्रदान कर चुके हैं निस्संदेह एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज कार्तिक नायक एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के लाइन पर मार्ग पर जाते हुए और इस ओवर की अंतिम गेंद इस वक्त फेंकने को तैयार प्रसाद भट्ट सामना करते हुए इस वक्त और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई इस ओवर में अंतिम बार कार्तिक नायक बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रसाद भट्ट के लिए यह गेंद इस बार पुल किया है गेंद को शॉर्ट गेंद थी और he picked the gap very well. The ball fell just short of a fence at deep back on a square leg and it's crossed over the fence after 1 bounce. शॉर्ट गेंद को इस वक्त थोड़ी सी सफल होते हुए स्कूप कर दिया था खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग
सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। पोजीशन एक्सक्विजिट, और इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। किंग्स 11 उल्लाल एक मिश्रण भरी शुरुआत, मिक्स स्टार्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, शुरू कर चुका है। इस वक्त 5 रन बना चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और उस अंतिम गेंद को अगर एक्सक्लूड करके देखा जाए जो कार्तिक नायक ने फेंकी थी, जिसमें चौका उन्होंने प्रदान किया था, तो पहले 5 गेंदें उन्होंने काफ़ी बेहतर फेंकी थी। और जो गेंदबाजी के जरिए जो बेहतर शुरुआत की उम्मीद थी उनके कप्तान के लिए, वो बेहतर शुरुआत कार्तिक नायक इस पहले ओवर में दे चुके हैं, सिर्फ 5 रन प्रदान करके 1 विकेट प्राप्त करने के बाद। अश्वथ पई गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और इस वक्त फील्डिंग में जमावट चलती हुई। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, प्रोफेशनल एंड की ओर से। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, थोड़ा सा स्क्वायरर इस वक्त जाते हुए। डीप एक्स्ट्रा कवर ठीक सीमा रेखा के पास तैनात। 5 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त अश्वथ पई तैयार। मैच नंबर 5 पैंथर्स सुपर लीग 2023-2023 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ, और मुकाबला इस वक्त जारी आर के स्ट्राइकर्स और किंग्स 11 उल्लाल के बीच। फील्डिंग में जमावट करने के बाद नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। पहले ओवर के खेल के बाद फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, और फील्डर जो कि मैदान पर इस वक्त छा चुके हैं। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। एक और बाएं हाथ के गेंदबाज, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, ऑनसाइड पर, ऑफसाइड पर गेंद गई ऑनसाइड पर, और इस बीच ओवर थ्रो हो चुका है, लेकिन वहां पर बैकअप होता हुआ। और फुल लेंथ गेंद पर गेंद को ऑफसाइड पर गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद गई इस वक्त स्लिप मिड ऑन पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। द मैन प्रसाद भट्ट इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक। पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर चौका जड़ने के बाद कुछ हद तक आत्मविश्वास प्राप्त कर चुके हैं प्रशांत भट्ट, और देखना यह है कि उस बड़े हुए आत्मविश्वास का वो इस ओवर में किस तरह अनावरण करते हैं बल्लेबाजी के जरिए। तो सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बाएं हाथ के गेंदबाज अश्वथ पई, गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। निस्संदेह जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, किंग्स 11 उल्लाल को इस वक्त एक लंबी साझेदारी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है। गेंद ड्राइव किया, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद को बल्ले पर आने दिया, वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 7 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर बराबर का टक्कर यहां पर जारी। द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। और फिर से एक बार अश्वथ पई गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुहास इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए गेंदबाज अश्वथ पई अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद फुल टॉस, गेंद को इस वक्त उछाला, रिवर्स शॉट के जरिए मौका हो सकता है, लेकिन फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाया डीप कवर पॉइंट पर, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद थी, और फुल टॉस के तौर पर गेंद को खेलने का प्रयास किया था, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाती हुई, फील्डर के आगे टिप्पा खाती हुई डीप कवर पॉइंट पर, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ, और विजय के लिए अभी भी 31 रन और चाहिए किंग्स 11 उल्लाल को। 3.3 ओवर में गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। पटके हुए गेंद ऑन साइड पर उछाला, लेकिन गेंद सीधे पहुंची मिड विकेट पर, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को जरूर मिलेगा। ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को जरूर मिला इस गेंद पर, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। ये दोनों बल्लेबाज जो क्रीज पर मौजूद है, एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप पर निभाने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए, और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, शॉट पॉइंट पर गेंद पहुंची,
एक रन मिलेगा इस बीच और यहाँ पर अंतिम क्षण में कुछ हुआ था जरूर स्टंप सेंड पर। इस बीच एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 11 रन एक विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। निश्चित रूप से यहाँ पर गेंद और बल्ले के बीच में कड़ा संघर्ष जारी है और अभी भी अपने विजय से 29 रन और दूर, जबकि कुल मिलाकर 19 गेंदे और उनकी पारी में फेंके जाने बाकी। दे नीड 29 ऑफ रिमेनिंग 19 डिलीवरीज। The equation seems to be stiffer now for the batsmen of Kings 11 Ullal. इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज बाएं हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और इस बीच बल्लेबाज ने कुछ रुकने के लिए कहा और एक बार थोड़ा सा संभलने के बाद फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद पटकी हुई गेंद, उछालना चाहा चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 11 रन बन चुके, 2 ओवर के नुकसान। 2 ओवर की समाप्ति के बाद एक बेहतर ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है गेंदबाज का, जिसमें 6 रन उन्होंने प्रदान किए थे। 2 ओवर के बाद 11 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। 29 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 18 डिलीवरीज एंड the equation seems to be stiffer and stiffer now for Kings 11 Ullal. And as far as the boundary and sixes are concerned at this situation, they desperately need a couple of big strokes at this stage to get back into this match. $29 to get from 18 balls. और 2 ओवर में अपनी क्षमता अपनी काबिलियत के अनुसार गेंदबाजी कर चुके इस वक्त हार के स्ट्राइकर्स के गेंदबाज। फलस्वरूप पहले 2 ओवर में कुछ ज्यादा रन बना नहीं सके बल्लेबाज किंग्स 11 उल्लाल के, लेकिन मौका जरूर है कम बैक करने का बचे हुए 3 ओवर में बल्लेबाजों के लिए। और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में किस तरीके की बल्लेबाजी वो अपनाते हैं बल्लेबाजी में। थर्ड ओवर स्टार्ट, तीसरा ओवर शुरू होता हुआ आर के स्ट्राइकर्स एंड की ओर से। गेंदबाज सौरभ भक्ता गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। प्रसाद भट्ट सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद। डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन काफी वाइडर, लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर इस वक्त तैनात। आकृति डिजिटल साचा नरेश इस बार जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली। नरेश प्रभु आयलेलं सर त्यांनी एक स्टेज आरे का विघ्नेश नायकानं तंगे एक स्वागत कोर का। तो बेहतर गेंद थी इस वक्त, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। अगली गेंद इस बार got him and got him, I think so. Yes it does. पहले दूसरे तीसरे प्रयत्न में इस गेंद को लपका और ऐसा लगा गेंद छूटी और आखिरकार लपक ली गई। तो विकेट यहां पर गिर चुका है, कॉट बिहाइंड द विकेट, और इस कॉट बिहाइंड द विकेट की बदौलत ये दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। प्रसाद भट्ट की पारी समाप्त हो चुकी है और यहां पर दूसरा विकेट गिर चुका है। अब ऐसा कहना पड़ेगा किंग्स 11 उल्लाल के लिए कुछ हद तक लक्ष्य कठिन होता हुआ। 29 रन और चाहिए विजय के लिए, 16 गेंदें बाकी। 29 runs more run they have to score for victory. 29 more runs in fact they have to score for victory in just remaining 16 deliveries. और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज और नए बल्लेबाज का यहां पर आगमन हो चुका है नरसिम्हा नायक, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई। एक्स्ट्रा कवर फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया गया। डीप एक्स्ट्रा कवर पर मिड ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्हें हटाकर इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर तैनात किया जा रहा है। पॉइंट इस वक्त तैनात, शॉर्ट थर्ड बैन, स्क्वायर लेग, 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार था, तो ओवर द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया इनटू द विकेट एरिया। 1 रन मिलेगा। अब फील्डर दौड़ कर आए डीप मिड विकेट से, दूसरा रन बल्लेबाज दौड़ पड़े, दूसरा रन यशस्वी तब पूर्ण करते हुए। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। 15 balls gone in their innings. 13 runs they scored for losing 2 wickets. 15 balls have to come. 27 more runs now they have to score for victory. इस बार ओवर पिच उछाला लॉन्ग ऑफ पर और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर एक टिप्पे के बाद जब तक फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का।
14 रन, 2.4 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है, 14 गेंदें बाकी और 26 रन चाहिए। 26 टू गेट नाउ फ्रॉम रिमेनिंग 14 डिलीवरीज। हर गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर, चौके और छक्कों की उन्हें इस वक्त सख्त दरकार इस वक्त कमबैक करने के लिए इस मैच में। गेंदबाज अगली गेंद सौरभ, ये गेंद रिवर्स शॉट, एब्सोल्युटली एक्सक्विजिट, he just played that one with a twisted bat and finds the gap as well. So a much needed boundary came from the bat of Suhas and the scoreboard is now moving up to 18 with that boundary. थोड़े से सफल होते हुए गेंद के लाइन को पहचाना था, गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर की ओर निकलती हुई विद अ रिवर्स शॉट गेंद को खेल लिया खूबसूरती के साथ गली फील्डर की दाईं ओर से। अब एक खिलाड़ी को गली फील्डर पर और तैनात किया गया है, थोड़ा सा सीधा चौका रोकने के प्रयत्न में, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। एक बार फिर से रिवर्स शॉट खेलना चाहा लेकिन इस बार गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेती हुई बल्ले पर ठीक तरह से नहीं आई और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। 3 ओवर की समाप्ति, 3 overs completed and after 3 overs 18 for the loss of 2 wickets. Still the batsmen of Kings 11 Ullal are now searching for the right track. 22 more runs now they have to score for victory in remaining 12 deliveries. That means in remaining 2 overs. And the asking run rate is now gone up to exactly 11 runs per over. 11 रन प्रति ओवर के औसत से 22 रन यहां पर बनाने हैं और इस वक्त काफी लंबी बातचीत चलती हुई खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए और बातचीत खत्म होने के बाद इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा जा रहा है दूर वाली छोर से, प्रोफेशनल एंड की ओर से। कार्तिक नायर जो कि गेंदबाजी का क्रम में इस वक्त जारी रखते हुए, कार्तिक नायक का और वो अपना दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ करते हैं। पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था, सिर्फ एक चौका उन्होंने प्रदान किया था, विकेट भी प्राप्त किया था, लेग भी 4 विकेट के रूप में बल्लेबाज का और दूसरा ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई। 12 गेंदें बाकी हैं, 22 रन चाहिए, 22 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 12 डिलीवरीज। कार्तिक, दाहिने हाथ के बल्लेबाज नरसिम्हा नायक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, कार्तिक की ओवर की पहली गेंद, नरसिम्हा नायक का यहां पर सामना करते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पैरों पर टकराई, पॉइंट पर पहुंची, 1 रन का इजाफा। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट, और 21 रन और चाहिए विजय के लिए और कुल मिलाकर 11 गेंदें अब बाकी। 21 more runs now they have to score for victory in remaining 11 deliveries. The asking run rate is now creeping up for them. तो यहां पर कार्तिक का अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुहास इस वक्त सामना करते हुए, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, चौके और छक्कों की उन्हें इस वक्त सख्त दरकार बल्लेबाजों को इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। और सुहास एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग मौजूद, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर तैनात, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद, 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त तैनात। मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग, गली थोड़ा सा सीधा और एक्स्ट्रा कवर थोड़ा सा स्क्वायर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। कार्तिक एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, 21 टू गेट फ्रॉम 11 बॉल्स। पटकी हुई गेंद, क्लीन हिट एंड दिस इज गॉन मेनी माइल्स। 6 रन इस वक्त बल्लेबाज के खाते में, और इस गेंद के पहले मैंने कहा था छक्के और चौके इस वक्त सख्त उनके लिए चाहिए, और यहां पर अगली गेंद पर छक्का लगाने में सफल, ऐसा कहना पड़ेगा। राइट बिहाइंड द लाइन ऑफ द बॉल गेंद को अपने बल्ले को लाते हुए गेंद को पिक किया राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट और गेंद को लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर उछाल दिया। 6 रनों के लिए बल्लेबाज सुहास ने बेहतरीन स्ट्रोक, 25 रन, 15 रन चाहिए, 10 गेंदें बाकी। Again, इस बार फ्लैटर वर्जन, दिस टाइम नॉट मोर देन अ सिंगल। प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं था और इस वजह से एकमात्र रन बल्लेबाज को मिला। 26 रन बन चुके हैं, 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 in progress. 9 balls remaining, 14 runs to get, 13 for tie, 14 for win.
9 balls remaining in their innings and the equal battle is now on. कार्तिक अगली गेंद लेकर तैयार. नरसिम्हा इस वक्त सामना करते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट. यह गेंद इज बॉल्ड आउट. एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट डिलीवरी. लगभग गेंद बल्ले के अति निकट टिप्पा खाते हुए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था, लेकिन न गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे उनके बल्ले और पैर को वंचित करने के बाद मिडल और सिलेक्शन को बिखेर कर ले जाते हुए और इसी के साथ ये विकेट निर्णायक मोड़ पर प्राप्त कर चुके हैं गेंदबाज. देखिए किस तरीके से यहां पर विकेट गिरा था. एक बेहतरीन गेंद के जरिए इस विकेट को प्राप्त किया गेंदबाज ने. अब 8 गेंदें बाकी हैं, 14 रन चाहिए. 14 runs to get from 18 deliveries. Really, the testing time is now continuing here for the batsmen of Kings 11 Ullal. और कम बैक करने के लिए इस वक्त एक और छक्के या चौके की जरूरत इस वक्त बल्लेबाजों को, किंग्स 11 के उल्लाल के बल्लेबाजों को, जबकि आर के स्ट्राइकर्स के गेंदबाज इस वक्त एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए. कार्तिक अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. पटकी विकेट, टॉप एज, जस्ट ओवर द विकेट कीपर. इन फैक्ट दिस इज चांस ऑफ रन आउट एंड दिस टाइम इज गॉन. गेंद सीधे पहुंची थी शॉर्ट थर्ड मैन पर. रन लेने की हड़बड़ाहट इस वक्त बल्लेबाज ने दिखाई. कोई रिस्पॉन्स नहीं नॉन स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज द्वारा. फलस्वरूप आसान सा रन आउट स्ट्राइकर एंड पर होता हुआ और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. तो छक्का प्रदान करने के बाद 3 बेहतरीन गेंदें यहां पर फेंक चुके हैं गेंदबाज कार्तिक और परिस्थिति को अपने नियंत्रण में, अंडर कंट्रोल यहां पर कर चुके हैं. 7 गेंदें बाकी हैं, 14 रन चाहिए. 14 runs to get now from 7 balls. और इस ओवर में अंतिम गेंद बाकी. नए बल्लेबाज प्रणव भट्ट का आगमन यहां पर होता हुआ एज ए नंबर 6 बैट्समैन. ही इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल फॉर किंग्स 11 उल्लाल और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार कार्तिक की ओवर की अंतिम गेंद का. 14 रन चाहिए 7 गेंदों में. बाएं हाथ राउंड द विकेट, गेंदबाज की यह गेंद इस बार बल्ले का भीतरी किनारा, शॉर्ट फाइन लेग पर, रन से नहीं मिला. ओवर की समाप्ति. छक्का प्रदान करने के बाद 4 बेहतर गेंदें कार्तिक ने फेंकी और एक बार फिर से उन 4 बेहतर गेंदों की बदौलत दबाव इस वक्त बल्लेबाज के ऊपर गिर चुका है. 14 रन चाहिए अंतिम ओवर में. 14 टू स्कोर फ्रॉम लास्ट ओवर. कम से कम एक चौका या छक्का इस वक्त लगाना होगा बल्लेबाजों को यहां पर कमबैक करने के लिए इस अंतिम ओवर में. तो 5वां मैच इस श्रृंखला का यहां पर प्रगति पर पैंथर्स सुपर लीग 2023 के अंतर्गत और अंतिम ओवर लेकर इस वक्त तैयार कमेंटेटर बॉक्स यानी यूटीसी एंड की ओर से गेंदबाज Sandeep Kamath is now brought into the attack and the last over starts in Kings 11 Ullal's innings. 14 to get from last over and the bowler wearing a 14 number jersey is now starts the fresh proceedings from commentator box and और देखना यह है कि 14 नंबर जर्सी पहने हुए गेंदबाज 14 रन बनाने से रोक पाते हैं बल्लेबाज को इस अंतिम ओवर में. तो यहाँ पर देखना यह है कि जो जर्सी पर जो नंबर लिखा गया है उतने ही रन से सामने वाली टीम को चाहिए और गेंदबाज किस तरह की रणनीति टैक्टिक्स यहां पर अपनाते हैं उन 14 रनों को बनाने से रोकने के लिए बल्लेबाजों को. पहली गेंद संदीप यानी सैंडी इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए. फुल टॉस, बॉल्ड आउट और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है. फुलर लेंथ गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, ऐसा कहना पड़ेगा just wanted to play that one too early and the ball came quite lately and because of that no contact between the bat and ball और गेंद सीधे बल्ले को वंचित करने के बाद मिड लेग स्टंप पर जाकर टकराते हुए गिल्ले बेल्स ऑफ होते हुए और इसी के साथ ये 5वां विकेट गिर चुका है. 26 for 5 and now 14 required in remaining last 5 deliveries. तो 6 पड़ावों में से एक पड़ाव यशस्वीतम पार कर चुके हैं इस वक्त
गेंदबाज, अब 5 पड़ाव यानी 5 गेंदें बाकी हैं और देखना है कि उन 5 गेंदों को किस तरीके से फेंकते हैं इस वक्त गेंदबाज बल्लेबाजों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए। संदीप उर्फ सैंडी अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन, रन के लिए दौड़ पड़े, शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें बाकी हैं, 13 रन चाहिए, 13 टू गेट फ्रॉम 4 डिलीवरी, ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के ही अब किंग्स 11 उल्लाल के बल्लेबाजों को इस मैच में वापस ला सकते हैं। और संदीप अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, 13 to get from 4 balls, right arm over the wicket, bowls, lofted this time, but I don't think it could be gone all the way. In fact, it taken just inside the fence at wide is long on, and one more wicket fallen, wicket number 6, 27 for 6, and now with this dismissal they are looking deep in trouble. 13 to get now. Have a look at this in the replay. किस तरीके से गेंद को उछाला था देखिए, मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है और आसानी के साथ इस कैच को वहां पर लपक लिया गया फील्डर द्वारा। 3 गेंदें बाकी हैं, 13 रन चाहिए, 13 टू गेट फ्रॉम 3 डिलीवरीज। सिर्फ चौके या छक्के ही अब किंग्स 11 उल्लाल का भविष्य यहां पर बदल सकते हैं, जैसे कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं। संदीप, नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, तो इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद फुलर लेंथ गेंद थी, गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि अब अंतिम अवकाश, द लास्ट चांस, 2 sixes रिक्वायर्ड इन द लास्ट 2 डिलीवरीज, नॉट फॉर विक्ट्री बट फॉर टाई। 12 रन, 2 छक्के चाहिए अंतिम 2 गेंदों में टाई के लिए और अंतिम अवकाश इस वक्त बल्लेबाजों के सामने। स्विंग्स बट दैट इज नॉट इनफ, जस्ट अ सिंगल, 28 and now it's almost all over for them if the bowler cannot bowl no ball or wides in this final delivery. 12 required of last ball, अंतिम गेंद बाकी, 12 रन्स चाहिए और अंतिम गेंद, मैच की अंतिम गेंद लेकर संदीप सैंडी इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, एज एंड टेकन इन हिज सेकंड अटेम्प्ट बाय विकेट कीपर, दैट्स इट, 11 runs victory for RK Strikers against Kings 11 Ullal. With that 11 runs victory, they are back the complete points. So 3 विकेट अंतिम ओवर में संदीप प्राप्त किए और निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने इस ओवर में दिया। तो बटाटा विघ्नेशा So 6th match of this tournament is now coming up between Cordial United Sports Club versus Deadly Panthers. And in this match, Deadly Panthers are won the toss. They elected to field first. And I request all the players of this match to please start the match immediately. Institute of
creative art. Get diploma in animation, So, man of the VFX, match of video this match, editing, the award goes filmmaking, to graphic and web the design, man- photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. See The man the Institute of who Creative performed the Art at all-rounding 3rd floor, performance, Sanu Sandeep, Palace, PVS who Circle, captured 3 Bangalore. wickets Call in the last over, 0824 and in the 425 batting he 2288. contributed 8 runs unbeaten with 1-6 in the strike rate, with a strike rate of 400 in just 2 deliveries. And because of this all-rounding performance, he bagged the man of the match award. I request Mr. Sandeep Kamat, please go to the dais, please go to the stage and receive the man of the match award from our organizers. ಅದೇ ರೀತಿ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಊಟ ಮಾಡದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So match number 6 now is now coming up, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English. When the next match will going to resume within a short while. Thank you. request extra player from both the teams, please report to the commentary box immediately. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. The extra player of Kodial United Sports. To be reported
noted here. And first over, Rajat is on strike, and from the far end, the bowler. The first ball. Right above wicket, Rajat. Oh my goodness, he's just hammering it down. Does a mid-wicket boundary for a U6. What a start here from Rajat. Just like what he's knowing for. He is definitely going to be one of the most destructive batsmen as far as both the format is concerned, whether it's underarm or overarm. But he is a kind of batsman. He's going to enjoy his stroke making. What an outstanding strike here from Rajat. Second ball again. He plays it down beautifully down to deep. Wide is long off boundary for 4 runs. The intention is very clear here from Rajat that he wanted to take the advantage of that power play. The fielding restriction, but one towards a mid-wicket for U6. The second one, it was ball is on the slot outside the line of off-stamp, off volley, and Rajat just taking the advantage of that one, drives that one down to deep long off boundary for 4 runs. 10 runs in the 2 balls. It's definitely going to be an electrifying start here from Rajat Shanaik. Aditya Pai is little bit pressure now from the professional career end. 6 and a boundary. Third ball of the over number first. Aditya to Rajat. Rajat will not going to stop here. He will not going to stop here. Ball is landed straight to the roof of a dugout of their own dugout down at deep mid-wicket region. The dugout of Cordial United Sports, and they are definitely going to enjoy the stroke making of Rajat just across the line of the ball, swinging that one. Instrumental sound coming from the bat of Rajat. That's definitely one of the best stroke, even little bit across the line, but look at the swing of the bat. Absolutely terrific. Astonishing batting performance here from Rajat. 16 in 3. And this time the bowler survives, bowled outside the line of off-stamp, quickly realizing Aditya Pai, you cannot bowl that line where the batsman enjoying his batting. He bowled outside the line of off-stamp. This time something is going on as Rajat is not ready to face, and bowler stopping that one. Aditya once again back to his bowling mark. Right arm over the wicket, beautifully bowled, perfect delivery, good comeback. This is what you required as a bowler. Why the captain asking you to come and bowl the power play overs? Because the captain believe with yourself, believes with your strength, and you need to justify the believeness of your captain. After the 3 magnificent stroke, then Aditya bowled 2 very good deliveries to stop the run flow from the bat of Rajat. This is a little bit change in field as a mid of coming little bit straighter version. Rajat drives that one right in the gaps. What a deep mid-wicket. 1 bounce for 4 runs. After that 2 dotted deliveries, then he's finished this power play over in a style by hitting a boundary. The runs are flowing like just fast flowing waters of the rivers. 20 runs which came from that first over. 2 sixes and 2 boundaries. Very easy calculation. 6 to the 12, 4 to the 8. And 20 runs which came from that over of the first over. That is an electrifying start there from Rajat Shanaik. His home condition, of course, he played a plenty of cricket in this UCG cricket ground. Rajat Shanaik knows the condition of the ground. He knows exactly which side the wind will going to flow, and the same with the direction of the wind is hitting the ball and getting a valuable 20 runs for his team. And now pressure situation here for the opposition team, Deadly Panthers. Deadly Panthers, of course, being the host of this cricket tournament after their completing their successful journey of 15 years, and they wanted to make that one memorable one, and absolutely so far is a memorable cricket tournament is in progress in this UCG cricket ground, the Panthers Super League 2023. The second over, right arm over the wicket, beautifully bowled there by the bowler, of course. The experienced campaigner Vishwanath Kamath came into attack, and straight away he's just putting all his experience bowling that slow leg cutter in the relegation, away going delivery from the right-hander batsman, and there is no chance at all for any run. The batter Ramesh
will going to face again looking for the reverse sweep, not really getting that from the bat, but definitely is deflected from the leg, so that leg by call by umpire Shiniket. One more addition to total addition of that single scoreboard now moves on to 21 without loss of any wicket. Now I want to see the strategy there from Rajat after that power play, the kind of technique he will going to implement, because a different fielding set now, because we can see there's so many bodies out there in the deep. One at deep mid wicket, one at deep backward square leg, one at deep long on, one deep long off is there, one deep extra cover between extra cover and cover point. Vishwas bowling, Vishwanath bowling away from us. Right now, one wicket bounce. This time, check that one. Opportunity for the fielder at long off, and he completes the catch. So Rajat once again, just what he wanted to complete, continue the kind of stroke making in the power play, but he need to see that the fielding really spreading out. He's just got a field in a deep long off for that stroke, which is wanted to clear the boundary line, but ball is just landed safely to the hands of deep long off fielder. Almost he's moving towards his left to complete that catch, and it's a big wicket now for team Deadly Panthers. Of course, the captain must be pleased with that wicket, and Vishwanath is producing that very important breakthrough for his team. Deadly Panthers has got a very good history, not only from the overarm cricket but even in the underarm cricket as well. They got the deadly name because they got some deadly players in the side. Even the 20 runs in the came from the first over, but here is Vishwanath. Might try to make a little bit patchwork in the second over. Again, nicely bowled, just a single run for the new batsman just came into middle. Is a Kirtan. He's a very young talented player, technically sound, and he picked up a single for his team with the single scoreboard numbers on to 22 on the board. Vishwa just adjusting the field, asking that fielder from the deep cow point to make note to a little bit fine. Again driven for a single from Ramesh with that single scoreboard numbers on to 23 for the loss of one wicket. The kind of over which is badly required for Deadly Panthers, and so far Vishwanath is bowling a good line, tidy line and length. Kirtan Prabhu facing outside the line of leg stamp is going to be punishable from umpire, as Shiniket has got a nice agitation in his mind to signal the wide, and extra will be added to total with the extra scoreboard numbers on to 24 for the loss of one wicket in the over number second in progress. Vishwa again right arm over the wicket to Kirtan. Kirtan almost he drags the ball into the stump. Very lucky indeed. Ball looks like going to touch the stump, but ball just spinning and just not really able to hit the stumps. Good over there from Vishwanath. The kind of over which is badly required, deadly required for the Panthers, and Vishwanath is able to put some pulley stop for that flow of the runs in the second over, especially the wicket of Rajat. And I think Rajat Shanai, after getting 20 runs in the first over, couldn't manage to get a big stroke in the second over. Vishwanath has got the very important breakthrough. So still it's 24 minutes, is a good score on the board for Kodial United Sports. Kodial United Sports 24 for the loss of one wicket. They're going exactly 12 runs per over. Sharat, what a player he's been. Outstanding journey has got in a GPL. Several times he becomes the man of the series. He's winning the two-wheelers, the two occasions. What a fantastic performer Sharat. He's a very good all-rounder. He's brought into attack. And this time the batsman is not really. They wanted him to settle down. The first ball itself, the intention is very clear there from the batsman. This time the batsman Ramesh Pai clearing that fielder in the mid-wicket. Ball is just hitting the advertisement board. Beautifully driven, picking that line and then so quickly and dispatching that one very stylishly down to mid-wicket. Oh my goodness! What a kind of cricketing stroke that was. There is no word to explain the kind of cricketing stroke he's played, because he's lost his backhand grip while he playing that strokes. Isn't it? Ball is wide outside the line of off stump. I want to see it in the replay. Look at that one. Absolutely unbelievable struck. He just went with the stroke. Even he lost the grip over that handle, but he got the boundary for that. And with that boundary score, jumped into 34 for the loss of one wicket.
This time Joseph full toss as the batsman run that one right in the gap towards the deep extra cover region before the fielder from long off to cut it off. Ample time for the batsman to complete that couple of runs. So Ramesh look like slowly and steadily occupies the crease, and when his time is required, some big shot is delivered. Even is not bothered about the who is bowling in front of him, but he is a kind of batsman who is just looking for some acceleration of run rate. So far it's good going. 36 for the loss of 1 wicket. Sharath adjusting the field. Deep cow point, deeper, long off. Again the reverse strokes comes into play. This time his protection has been given in the deep. They're running hard. Not a good piece of fielding there by the fielder. Fumble from the fielder. So that Ramesh crossed off for a couple of runs in that occasion. So with that couple of runs, scoreboard now moves on to 38 for the loss of 1 wicket. Deadly Panthers won the toss, elected to field first, but everything is going in favor of the fielding team. Again, nicely driven, spare of the wicket, down to deep backward point region. Before that, cow point fielder to run across this to left to field the ball. Again, the ample time for Ramesh to complete the couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 40 for the loss of 1 wicket. After losing the wicket of Rajat, I think losing Rajat, this man, Ramesh, is really playing a good innings for his team. It's a 40 for the loss of 1 wicket. Again, nicely bowled. Appeal for leg before wicket. No confident appeal. Just an appeal which is wanted to umpire to give the leg before wicket. But umpire is so experienced, saying that ball is missing the off stamp. One more good over is going in favor of Kodial United Sports, and they really got a big runs in the board at 41 for the loss of 1 wicket after completion of over number 3. Vishwanath came into ball. The first over, it's at 20 runs. Then Vishwanath came in, bowled a good over. Again, the third over is very expensive. The 17 runs came from that over. And again, he came here to restrict the runs. Is Vishwanath. So bowling his second over. And he once again asking him to bowl one good over for his team. This time, swings that one handsomely. And he got the distance as well. Ramesh looks like he's in a terrific touch. Look at the way that he is transferring his weight onto the back foot. And just using the deftness of the crease. Look at that one. Shuffled across the line of the delivery. Going back. Pulls that one handsomely. And he got the distance as well. And score jumped into 47 for the loss of 1 wicket. This time again wanted to repeat that one. But this time he didn't got enough bat onto that. But he able to get the single there. 48 runs. As for the information just came from Money. It's the highest in total score of the tournament so far. It's a 48 by Kodial United Sports. Vishwanath bowling away from us. Right arm over the wicket. Pulls high up in there. Opportunity for the square leg fielder. You need to grab this opportunity. But catches win the matches. What's the greatest slogan? But here is they missing the opportunity of taking the catch of the very danger. Of course, not a danger man. I think it's a catch of Kirtan in that occasion. The danger man is back on strike. Is Ramesh. Will going to take the strike. This time again pulls, but again. I think it's a good walk. Absolutely good work by the fielder. There was an opportunity of catch there, but the fielder quickly realizing that he couldn't manage to take the catch, but he's just putting his body behind that ball to stop the boundary. But here is a couple of runs. 50 comes up. 50 comes up here for Kodial United. And very quick fired 50. 51 for the loss of 1 wicket. They wanted to play the reverse wave. Good thinking there by Vishwanath. Seeing that batsman's premeditated. He wanted to hit the switch it, but he's just changing the line cleverly outside the line of leg stump. But the score which is required in this particular over already, both the batters are grabbing the opportunity to
getting some acceleration. This time again, short pitch delivered outside the run of flex stamp. Couldn't manage to defeat that fine leg fielder. Just a single. One more good over going in favor of Kodial United. After completion of over number 4, it's a 52 for the loss of 1 wicket. It's a 52 for the loss of 1 wicket, and good going here for Kodial United Sports. Just like we are getting the information and from our scorer, and that is one of the highest total score of this tournament, is scored by Kodial United against the Deadly Panthers. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ and a very hard working corporator. So warm welcome on behalf of all cricket lovers for Ganesh Kulal. This time nicely driven, but straight to the hands of deep cow point after one ball collected by the fielder, and Ramesh is playing a magnificent innings. He's batting on 28, I think is one of the highest individual score by any batter in this day number 1 of this Panthers Super League 2023. Second time in this over. Right arm over wicket. This time the Kirtan wanted to hit the ball towards a mid wicket, but he wanted to take the aerial route, but he's not really getting that much of enough the short pitch delivery to hit the ball, but he's played it on down the ground towards a mid wicket region. 54 for the loss of 1 wicket, and now Ramesh back on strike. Chirag will going to continue from the professional career end. Maybe the umpires not happy with the bowling action, the suspicious bowling action. As again, right arm over the wicket bounce. This time swings, but I think the fielder there will not going to get there. Not a good effort that from the fielder. This is a lazy movement by the fielder in the mid wicket, so that we got a boundary for that. The Ramesh is playing a fantastic knock for his team. Is batting on 32, one of the highest individual score of this particular tournament. Just in 17 balls, 32 runs his score, and that shows his aggressiveness and clean hitting. Short pitch, lofted, but straight to the hands of long off. The entertainment innings comes to an end of Ramesh. He definitely will going to get a standing ovation from his dugouts. The kind of batting he made in this particular match. The really good innings, played some enterprising cricketing strokes, and an entertainment innings comes to an end. Scored 32 valuable runs in 18 deliveries. Srinivas Pai is a man who's got a fantastic record of hitting a 6 sixes in an over, and now he's came into bat. 2 balls remaining. This time 6 number 1. We just reminding he's just recalling the memories what he did in the previous edition, or I don't think when he used to score that 6 sixes in an over, but he is getting the 6 in his first ball he facing, and score jumped into 64 for the loss of 2 wickets. Chirag has got a punishment. Need to survive one more delivery. Already this is the monumental, the mountain of runs. 64 for the loss of 2 wickets. Chirag bowls. This time reverse stroke. He played right in the gap, but ball will definitely going to stop by one of the fielder, the backward point fielder. They're going hard for the third run, but it's a suicider. And just a couple of runs
and over completed after completion of over number 5, and they scored the highest total score of this tournament, 66. One shot which is called by umpire at square leg, so that it's going to be a single run in the last ball. 65, which is the total score of Kodial United Sports, and 66, which is going to be a target. And we'll take a short break here after, and before that I once again announce the two teams, please get ready to play the 7th match of the day, number 1, VV Warriors against the Spark Udupi. I request both the teams' captain, please report to the main stage for the ಟಾಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಉಡುಪಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. And all together is entertainment day for cricket, and what an entertainment innings which is played by Ramesh of Kodial United, and scoring 32 valuable runs out of 65 runs. That means almost the 50% of the Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. थैंक यू, धन्यवाद सतीश। तो पहली गेंद इस बार उछाला खूबसूरती के साथ लंगोन पर, और गेंद लंगोन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इसी तरीके की बल्लेबाजी की ही जरूरत है डेडली पैंथर्स को, और चौके के साथ यहां पर शुरुआत कर चुके हैं बल्लेबाज। और डेडली पैंथर्स को इस वक्त बनाने हैं 66 रन
5 ओवर में. They have to score 66 runs in 30 delivers. That means in 5 overs. And the first ball hit by the batsman for a boundary. चिराग इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दाहिना बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद उछाला लंगोल पर 6 रनों के लिए. 6 रनों के लिए इस वक्त उछाल दिया और चौका और छक्का. निस्संदेह पॉजिटिव स्टार्ट, धनात्मक शुरुआत इस वक्त कहते हैं कर चुके हैं इस वक्त बल्लेबाज चिराग दत्तात्रेय. 2 गेंदों में 10 रन बटोर चुके हैं और निश्चित रूप से यहां पर एक बेहतरीन शुरुआत वो अपनी टीम को दे चुके हैं और 10 रन बन चुके हैं. 2 गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुके हैं. तो जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, डेडली पैंथर्स को इसी तरीके की ही बल्लेबाजी की इस वक्त जरूरत है, विस्फोटक बल्लेबाजी की, अगर उन्हें 66 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो. और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार सुधींद्र हेगड़े. गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार उछाला, लेकिन इस बार मौका जरूर मिड विकेट फील्डर को और गेंद के नीचे आते हुए और इस बार कैच को लपकने में सफल. Just trying to heave the ball once again over the fence. This time not succeeded और गेंद टॉप पिच पर टकराने के बाद काफी देर तक हवा में उछली और डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है. 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 10 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. 66 रन उन्हें बनाने हैं. जब उन्होंने पारी की शुरुआत की थी 3 गेंद पहले, अब उन्हें बनाने 56 रन, जबकि 4.3 ओवर्स उनके पारी में अभी भी बाकी. 4.3 ओवर्स रिमेनिंग, 27 balls left and 56 more runs now they have to score for victory. तो चौके और छक्कों की बौछार यहां पर लगानी होगी बल्लेबाजों को अगर उन्हें इस लक्ष्य तक पहुंचना है तो. तो नए बल्लेबाज का आगमन ने यहाँ पर होता हुआ बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. विश्वनाथ कामत और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. बाएं हाथ के माफ कीजिए दाहिने हाथ के गेंदबाज की ओर की अगली गेंद का पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर उछाला, गेंद हवे में, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को बेहतरीन तरीके से लपकने में सफल. पीछे की ओर दौड़ते हुए इस कैच को लपका खूबसूरती के साथ और यहां पर ये विकेट नंबर 2 गिर चुका है. 10 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है. अब डेडली पैंथर्स कहना पड़ेगा कुछ हद तक संकट की स्थिति में नजर आती हुई. 10 रनों पर दूसरा विकेट खो चुका है. जब पहले 2 गेंदों में चौका और छक्का झड़ा था बल्लेबाज ने, तब ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि बल्लेबाज छा जाएगा, लेकिन उसके बाद वापसी करते हुए 2 विकेट 2 लगातार गेंद में प्राप्त करने में सफल गेंदबाज मंजुनाथ नायक का आगमन होता हुआ और 10 रनों मंजुनाथ नायक ने कैच पकड़ा था. तो यहां पर नंबर 4 बल्लेबाज का आगमन हो चुका है. तो हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. सुधींद्र हेगड़े इस वक्त गेंदबाजी करेंगे अपनी हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन एंड ही हैज गॉट द हैट्रिक. दिस इज एन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट डिलीवरी, अनप्लेएबल वन. और यहां पर देखिए किस तरीके से विकेट उड़े थे और निस्संदेह ये बेहतरीन गेंद की बदौलत ये विकेट प्राप्त कर चुके हैं गेंदबाज और इसके साथ हैट्रिक भी परिपूर्ण कर चुके हैं. एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर एंड ही हैज गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन. सुधींद्र हेगड़े गेंदबाज जो कि विकेट प्राप्त कर चुके हैं और इस श्रृंखला का पहला हैट्रिक इस श्रृंखला का वो प्राप्त कर चुका है. 10 रनों पर तीसरा विकेट यहां पर खो चुका है.
डेडली पैंथर्स इस वक्त काफी संकट की स्थिति में नजर आता हुआ और इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद सामना इस वक्त करने के लिए तैयार सुधिंद्रा की ओर की अगली गेंद का सुधिंद्रा अपने चौथे विकेट की तलाश में इस वक्त यह गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट इनटू द गैप एज वेल एंड ही गेट्स एन बाउंड्री फॉर दैट। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त स्कूप किया था, 4 रन मिल चुके हैं। हालांकि 14 रन जरूर प्रदान कर चुके पहले ओवर में सुधिंद्रा ने, लेकिन 3 बहुमूल्य विकेटों को प्राप्त करने में सफल और पहले ओवर के बाद 3 विकेट खोने के बावजूद एक बेहतर शुरुआत यहां पर कर चुका है। डेडली पैंथर्स 14 रन जोड़ चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 14 for 3 आफ्टर फर्स्ट ओवर। So second over starts in their innings, 14 runs already scored, 66 runs more, 66 runs in fact the target, and 52 runs more they have to score for victory in remaining 4 overs with the required run rate of exactly 13 runs per over. और गिरी इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और अभी भी ऐसा करना पड़ेगा डेडली पैंथर्स को, सिर्फ चौके या छक्के ही इस मैच में विजय दिला सकते हैं। 13 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाने हैं इस वक्त 52 बचे हुए 4 ओवर में। और अपनी ओवर की पहली गेंद गिरी की गेंद फुल टॉस टॉप एज, लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे और गेंद जब तक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। ऑन साइड पर गेंद को स्कूप किया था थोड़ी सी सफल होते हुए, लेकिन आखिरकार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद को जब तक फील्ड करे टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 15 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 6th मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट Panthers Super League 2023 is now progressing here। और गिरी एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए फुल टॉस स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड। दिस टाइम he can't got more than a single in the stroke और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 16 for the loss of 3 wicket in the over number, second in progress। तो गिरी 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं, बेहतर बॉलिंग एक्शन उनका, हाई आर्म एक्शन, और इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए यह गेंद चिप किया, स्ट्रेट हिट एंड अ क्लीन हिट। He's got the distance। 6 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर, छक्का इस वक्त लग चुका है बल्लेबाज के बल्ले से। ऐसा कहना पड़ेगा, he just shuffling across the line, just got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style of a long on fence for a huge 6। और इसी तरह के स्ट्रोक से सिर्फ इस वक्त डेडली पैंथर्स को अपने मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। 22 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद फुल टॉस, पैरों पर टकराए, अप गोज द फिंगर फ्रॉम अंपायर और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। रिवर्स शॉट खेलना चाहा, अपने घुटनों के बल रिवर्स शॉट खेलना चाहता, गेंद उनके घुटने पर टकराई और गेंद बिल्कुल स्टंप्स के मिडिल स्टंप के सामने रही और आखिरकार अंपायर अश्विनी केत को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। चौथा विकेट गिर चुका है 22 रनों के ऊपर। इट्स 22 for 4 इन द ओवर नंबर, सेकंड इन प्रोग्रेस फॉर डेडली पैंथर्स।
So new batsman is now comes out to the middle, number 6 batsman for Deadly Panthers, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गिरी की गेंदों का, और गिरी अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। फुल टॉस, बल्ले का बाहरी किनारा कट करना चाहता, पहले टिप्पे के बाद गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर रुक चुका है 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी बल्लेबाजों को डेडली पैंथर्स के, और फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद, फुल टॉस, गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, जगह बनाते हुए मिड ऑफ पर एक रन मिला बल्लेबाज को, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति, 2 overs completed. Now it's 23 for the loss of 4 wicket. The batsmen of Deadly Panthers are now still sitting for the right track. Exactly 11.5 runs per over. The present run rate is now progressing here for them. 66 the target, 43 runs more now. They have to score for victory in remaining 3 overs with the required run rate of exactly 14.33 runs per over. 43 रन और बनाने हैं बचे 3 ओवर में, 14.33 ओवर्स प्रति ओवर की मदद से। सुधींद्र हेगड़े इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। प्रोफेशनल हैंड की ओर से अपनी नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस, बाउंड ऑफ हिज लेग्स, ऑन साइड पर गेंद को फ्लिक करना चाहा था, चूंकि बल्ले को वंचित करती हुई सीधे गेंद टकराई। देखिए किस तरीके से हुआ था, फुल टॉस गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए, और इसी के साथ 5वां विकेट गिर चुका। और ऐसा कहना पड़ेगा इस विकेट के पतन के साथ डेडली पैंथर्स की पारी लड़खड़ाती दिखाई देती हुई इस मैदान पर। 23 रनों पर 5 चोटी के बल्लेबाजों को खो चुका है। इट्स 23 for 5. दे आर नाउ स्ट्रगलिंग। 43 more runs now they have to score for victory in remaining 17 balls. The big strokes are badly required for them. और बल्लेबाज इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में नंदीश का आगमन यहाँ पर होता हुआ नंबर 7 बल्लेबाज की हैसियत से, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के गेंदबाज सुधींद्र हेगड़े की अगली गेंद का। Oh, terrific! This is an absolutely terrific, much straighter line, much straighter delivery. और गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने में चूके, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 23 रनों पर। 23 now for the loss of 5 wickets in the over number 3 in progress. Full toss, लेग स्टंप से बाहर स्विंग करना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित, और देखा कि रन इस वक्त लिया जाए, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए। देखा कि गेंद फील्ड की जा चुकी है, शॉर्ट फाइन लेग फील्डर द्वारा, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 23 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 5 विकेट के नुकसान। इट्स 23 for the loss of 5 wickets in the over number 3 in progress. और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। इस बार बेहतर गेंद, प्लम एब्सोल्युटली प्लम, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। गेंद उनके बैक लेग पर टकराई, और उनका पैर बिल्कुल मिडिल स्टंप के सामने रहा, और अंपायर को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। 6वां विकेट गिर चुका है, और डेडली पैंथर्स की पारी यहां पर लड़खड़ाती दिखाई देते हुए। इट्स 23 for 6. Still 43 more runs now they have to score for victory in remaining 2+ overs. 2.4 overs. 2.2 overs in fact remaining. That means 14 balls left and 43 more runs now they have to score for victory. And just they got 4 wickets kept intact. और नए बल्लेबाज नंबर 8 बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ।
और अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए इस वक्त तैयार। फुल टॉस, नो बॉल का इशारा, स्विंग करना चाहा चूंकि रेफरी हिट इस वक्त घोषित। एक रन के साथ 24 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। White down the leg side. One more single added to the total. It's 25 for the loss of 6 wickets in the over number 3 in progress. रेफरी हिट इस वक्त बरकरार और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। पटकी हुई गेंद, उछालना चाह चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर रुक चुका है 25 रनों पर। हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता नजर आता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। 38 और रन चाहिए विजय के लिए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार था। इन ऊपर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया जगह बनाते हुए मिड ऑन पर हाफ स्टॉप, रन से फिर से बल्लेबाज ने नहीं लिए और स्कोर रुक चुका है 25 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तो सिर्फ एक नो बॉल रन इस ओवर में गेंदबाज ने प्रदान किया था और विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया। 3 ओवर की समाप्ति। "41 required in remaining 2 overs. That means in 25 deliveries and the asking. That means in 12 deliveries and the asking run rate is now gone up to exactly 20.5 runs per over." तो यहां पर 12 गेंदों में 25 रनों की दरकार, 4 विकेट सुरक्षित और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई। लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त तैनात, डीप बैक फॉर थर्ड मैन, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। Srinivas, the bowler, is now brought into the attack. First ball of his fresh over is now coming up. आदित्य इस वक्त सामना करते हुए। श्रीनिवास से कुछ पूछताछ करते हुए नो बॉल के नियमों के बारे में अंपायर से और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार स्टंप को कवर किया, ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। Lofted. This time I think it could be taken inside the fence. Yes, it taken. So one more wicket fallen. Not so power in that stroke, and because of that, the batsman paid the penalty for that. 26 for 7 in the fourth over in progress in their innings. So 26 for the loss of 7 wickets और गेंदबाज श्रीनिवास अगली गेंद पटकी हुई गेंद, लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। 27 for 7 now. Turns it away, down to deep mid wicket. In fact, he gets a single for that stroke. Fielder after it. In fact, they come back for the second और 2 रन यहाँ पर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। 29 रन बन चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर। अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी डेडली पैंथर्स के बल्लेबाजों को। अगली गेंद लेकर श्रीनिवास इस वक्त तैयार। 29 for the loss of 7 wickets. 10 balls and 37 runs required. Swings it away, but straight to fielder. One more wicket fallen. Wicket number 8. 29 for 8. 37 runs more they have to score for victory in remaining just 9 balls.
Absolutely a difficult task in front of the batsmen of Deadly Panthers. Next one from the bowler, full toss, driven that one down to long on, एक रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका 30 रनों पर। बिल्कुल एक तरफा मैच यहाँ पर चलता हुआ, सिर्फ 8 गेंदे अब बाकी है उनके बारे में। 36 रन चाहिए, उछाला लंगोन पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यशस्वीतम दूसरा रन यहां पर पूर्ण करते हुए 32 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन द ओवर नंबर फोर्थ इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। अगली गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। 33 for 8 and fourth over has been games to an end. So 33 required in last over. 33 runs already scored and 33 more runs are still required for them for victory. And just they got 2 wickets kept intact and just a last over to go in the innings. The last chance in front of the batsmen of Deadly Panthers. 5 sixes and a boundary required in the last remaining 60 deliveries. First ball and he misses. And now 33 runs required of just 5 balls. It's almost all over now for the batsmen. If the bowler cannot bowl no ball or wides in these remaining 5 deliveries. Swings it away but straight. In fact, it's gone all the way. It's a 6. तो छक्का इस वक्त लग चुका है लेकिन काफी देर से और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर। 27 रन और चाहिए, गेंदे बाकी हैं सिर्फ 4। 27 more to get in remaining 4 deliveries. Edge and taken behind the stumps. I think he's gone. He's got a bottom window on that at the last moment. And wicketkeeper finally, no mistake behind the stumps. Ek aur wicket get chuka, 39 for 9. And now the last wicket remaining and just 3 balls to go in their innings. So last pair in the middle, Rugly again is bar, गेंद को खेला, not quite mid wicket, just a single. 40 for the loss of 9 wicket. In fact, it's going to be more run in the face of overthrow. 41 now. Just 2 balls now remaining in the innings. सिर्फ 2 गेंदे बाकी. 41 for 9 in the over number 5 in progress. 2 balls and 25 required. Kept low and went into the hands of wicketkeeper and there is no possibility of any run. अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. Edge are taken behind the stumps. That's it. They were bowled out in the stipulated exactly 5 overs for 41 and comprehensive victory for Deadly Panthers by 25 runs
24 runs, they are defeated the against team, and with that 24 runs victory, comprehensive victory, they back the complete points. So match number 6 ended of this tournament, Panthers Super League 2023, and the match number 7 of this tournament is now coming up within just a short while, between VV Warriors versus Spark Udupi. So in this match, Spark Udupi, after 1 toss, they elected to field first. So man of the match of this match, the award still yet to be decided. Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
it. This is a battle from these two very good teams actually. Spark, Udupi. They won the first match of the league, and VB Cricketers also won their first match of the league. So both the teams wanted to be in the same track, that is a winning track in the league matches, and that's why the level of competition is always going to be high between these two winning teams. Rahul. The power play is on. Just I want to see the field set. First shot, fine leg, square leg, in front of square, short mid wicket, deep backward, square leg, deep mid wicket. Left arm, round the wicket, drive straight down the ground, one bounce over the row for 4 runs. Delightful stroke there came from the bat. It's been nothing wrong with the line of the delivery. It's just on the middle stump, but it's on the slot. And technically sound player definitely going to enjoy that line to hit the ball over the top of the bowler. And he got the boundary down to deep, straight long on boundary for 4. Beautifully bowled. That was a comeback from Rahul, but it's too late. 16 runs came from that first over of Rahul, and VB Cricketers has got a really flying start. It's been a terrific start from the opening batters. After completion of first over, it's 16 without loss of any wicket. Just coming back to the VB Cricketers, the team which has got a lot very good history, especially in underarm cricket. The VB Cricketers, of course, the journey of more than 35 years when they are dominating in underarm cricket. They got some fantastic performer in the VB Cricketers side. But even they are just showing that they are good enough to perform in the overarm cricket as well. Not really playing regularly in the overarm cricket, but in this particular tournament, Panthers Super League 2023, they came in such a good unique. Sudhindra man of the match ಗೆ ವೇದಿಕೆ ರೇವುಕ. It's not Sudhindra, Ramesh who is judged as a man of the match for his quick fired 32 runs. Please note, which is a 32, which is definitely going to be a Kodiyal United acha Sudhindra ವೇದಿಕೆ ರೇವುಕ Sudhindrana. Again, that ball is came almost outside the line of off-hand batsman, tried to play the reverse sweep and missed it completely, but umpire not missing here to call that by. So with that extra scoreboard, this moves on to 17 on the board. Sudhindra ka Suman Kinimayana man of the match trophy Divkamonu. Ajay is bowling from the far end, professional career end. The bowling to the right-hander batsman. A right arm over the wicket, he bowls. Drives that beautifully and down to deep, extra coverage, and protection has been given in the deep so that batsman have to settle for the single. Nice looking drive there from the batter. Deepak, and Deepak has played a good innings for his team in the previous match. And now Varun is looking pretty good, 11 in just 6 balls. Ajay bowls that one, lofted that one bounce collected by the fielder in the deep. Long off fielder almost running towards his left to right to stop that boundary. Good piece of fielding there by the fielder. Collect that one just in right hand when ball looks like going to defeat that fielder in the deep long off region. And a couple of runs taken there by the batter, Varun. Just Varun tried to reach that delivery outside the line of off stump, but missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump, Dr. Vinod, not missing the opportunity to gather the ball very neatly, and back to bowler. Ajay again from the far end. Right arm over the wicket, he balls. Again, lovely delivery, just playing with the mind of the batter. Again, the batsman making a little bit room to play the shot. That's why he's moving towards a leg stump, outside the leg stump. And bowlers, good thinking, bowling outside the line of off stump so that batsman very difficult to reach that pitch of the delivery. Full toss. It was a full toss where the batsman feeling a little bit difficult to hit the ball. Slow full toss, and
The batsman picked up a single for that. A good comeback here by the bowler Ajay. So after completion of over number 2, it's a 21 for the loss of without loss of any wicket after completion of over number 2. It's a good over compared to the previous over. It's a good over ball there by Ajay. (16), which is the first over runs, and that means 21. I think it's a 5 runs which is came from that over of Ajay. It's a good over. It's a very good over, the kind of over which is required for Spark Udupi. And now Dr. Vinod is came into attack. Not that much of effective in the previous match. Dr. Vinod bowled an expensive over, but now it's a condition is different. That against team is also different. But I think as a Varun is a batsman. He's got the ability of hitting the ball out of the park. Just seeing his strokes in the first over, he's got a lot of technique as far as hitting the ball is concerned. That's a very good battle between experience, Dr. Vinod versus Varun. The first ball, beautifully driven down the ground, down deep long off region. There a good piece of fielding there. The fielder in the field looks like Dr. Vinod seeing that effort that fielder is definitely going to be a boundary because the pretty hardly hit there by Varun straight down the ground. But fielder in the deep extra cover, deep wideish long off, done a great job to stop that boundary. And just a couple of runs here from Varun. Good piece of fielding there by the fielder. It's a 23 without loss of any wicket. Varun is looking pretty good. 16 in just 11 balls. Dr. Vinod. Balls this time across the line. We wanted to swing that one. Good thinking there from Dr. Vinod. Seeing the batsman shuffled across. He bowled a little bit low full toss so that batsman cannot reach that full toss delivery. Is a good thinking. The ball outside the line of off stump. And batsman completely missed out that delivery. This time top edge. Opportunity for Dr. Vinod. But Vinod is searching for... Oh my goodness. What a catch. What a catch. Just as I want to see it a replay, but I am really observing him. He never looks like he's going to take the catch because the way that he is watching the ball. Look at that one. Dr. Vinod, he's thought that it might be a catch for the fielder in the deep long on. Once he realizing that ball is not too far away from him, and he just suggesting that one. Look at the way he is taking that catch. It's a magnificent catch, isn't it? If any youngsters watching this fielding effort there from Dr. Vinod, there's something to be learned. Because keeping the eye on the ball is so important. Whether it's a difficult catch, whether it's a high catch, I think is need to keep the eye on the ball. Even though never looks like he has got a good position to take the catch, but he's just kept the eye on the ball till the last moment. Even the ball is rotating because of that the direction of the wind, which is not really coming right to the hands of Dr. Vinod. But Dr. Vinod is handling the pressure very well. He keeps the eye on the ball till the last moment and complete that catch. So 23 for the loss of 1 wicket and a very important breakthrough from Dr. Vinod. The new batsman came into middle. One more very good striker of the ball. The Vignesh Shanai Karkal will going to face the next delivery of Dr. Vinod. Beautifully ball. Rakatar in the legation. Away going delivery. Dr. Vinod is just mentioning about his experience bowler. You know exactly the kind of batsman in front of him. The Vignesh, he is watching him from long time. He loves to play some big shot in the onside region, so he bowled that outside the line of off stump. And the ball is bowled a dotted delivery. Again, nicely driven. Set to the hands of fielder. It's gone. Direct, it is gone. Vignesh Shanai need to walk back. Direct kick there from the jersey number 14. Vivek, the fieldsman there in the short extra cover region, not only fields the ball. Look at that. Even Dr. Vinod is nowhere. He's never thought that the fielder will go and hit the stumps because he's not in a position to collect the throw. That's why the fielder thought that it's my time to hit the stumps. And he hits the stumps and sends danger man Vignesh Shanai Karkal back into pavilion. Once again, disappointment, dismissal of Vignesh Naik. As again fails to contribute from the bat. This is all happening in cricket when your day which is not belongs to you.
Everything is going against you. The first match he fails. Second match in the form of run out is back into pavilion. It's a 23 for the loss of 2 wickets. New batsman. And it's one more very good striker of the ball. Srinivas Pai is in non-striker's hand. Dr. Vinod delivers beautifully bowled. What a fantastic stuff there from experienced Dr. Vinod. Absolutely one more good over. The 16 which came from the first over, everyone thought that it might be a high scoring game. But after that, 2 very good overs bowled there by this Park Udupi and restricting the flow of the runs of VB cricketers. But still sensible batting from VB cricketers definitely takes them into good score. Because 12 balls remaining. If they're able to get another 20 runs in these 12 balls, they can get 40 plus runs. It's going to be a good score. To depend and wait and see how well they will going to get that one, and wait and see how Spark Udupi will going to continue their sparkling attack in remaining 2 overs. What a fantastic over there from Dr. Vinod. Just the 2 runs he conceded and putting some pressure onto the batter of the opposition. So from the far end, continuation of Ajay Nayak. Starts with the delivery, which is definitely going to be a punishable from umpire. As Dikshit called this a wide because that ball is got extra deviation, leg cutter, which is going away, further away from the right-hander batsman. And one more addition to total. 24 for the loss of 2 wicket. Ananta bowling from the far end. Ajay again nicely bowled right on the block hold of the batsman, and Srinivas is quite a difficult face to very difficult to face that Yorker line delivery of Ajay, and he managed to pick the single. Not convincing cricketing stroke, but he managed to rotate the strike. It's a 25 for the loss of 2 wicket. Again bowling from the professional career end, right arm over the wicket to Deepak. Deepak again, something is going on. Dr. Vinod is asking the square leg umpire and main umpire. The umpire says not out. It's lightman, late reaction. I want to see that. If Dr. Vinod is so confident, but the bowler is after the reaction of wicketkeeper behind the stump, then he started to ask the appeal. You can just look at that one and replay. Absolutely right. Dr. Vinod thought it might be a caught behind, but bowler didn't really looks like that much of confident enough. Oh, that was a wrong one. Absolutely wrong one. And the batsman thought it might be one more leg cutter. It's going to be wide, but it's a ball which is bowled. The wrong one there from Ajay. Bowled as little bit in delivery. And the batsman completely misreading the turn of the delivery. One more dotted delivery. The struggle time continues here from VB cricketers. And Ajay Nayak are looking pretty good. Right arm over the wicket. Bounce this time off the back foot. Hammer that one down to deep long on region for a single. With that single score, numbers under 26 for the loss of 2 wicket. In the over number 4 in progress. So far it's a very quiet cricket is going on after that aggressive cricketing in the first over. And all we can see that Spark Udupi came back, but this time Srinivas not getting the distance, but the bowler helping to get the distance. Fielder helping to get the distance. It's not a good kind of cricket fielding there from the fielder at deep long on. What could be a certain wicket for the bowler? He is just helping the batsman to get the 6. Not only drops a catch, but he's just pushed the ball out of the boundary line. Just look at it on a replay. And the fielder is almost in the right position. He got the ball in his hand, but unfortunately ball just slipping out of his hand after hitting his palm of the hands and fallen out of the boundary line. This time Srinivas is looking for the huge 6, and he's just enjoying that cricketing stroke. I'm already mentioning about the caliber of this man. Once he get going, he's unstoppable. After that lucky 6, he just want to send a message. I am the kind of batsman who's not really dealing with some luck, but I can hit the ball very neatly. And the hit was definitely going to be a very neat hit. Clinical stroke. And he got a distance as well. 38 for the loss of 2 wicket.
The strong Livy wicketers are back in this game through Srinivas. Now last over remaining, and they're going to be very interesting how well this batter will go into tackle in this final over of their innings. The jersey number 29 is brought into attack to bowl that last and final over of the innings of VV cricketers. Just look at out of the 38, in 2 over itself, they got 33 runs. 16 in the first over, 17 in the fourth over. That means 32 runs they conceded, 33 runs they conceded in just 2 overs. The VV cricketers. This time, full set one, and no need to run for that. Fine leg inside the ring. He's not really having an ample face in the bowling, and he didn't got adequate field for that. It's absolutely a punishable delivery, isn't it? When you are pushing your fielder inside the ring in the fine leg region, this is not a kind of a line you need to bowl. Look at that one. Poor delivery, absolutely. It's outside the line of leg stump. The batsman got enough time to go back and full set one, of course. Got a placement down to fine leg region for 4 runs. 42 for the loss of 2 wickets. Again the loose delivery. Again it's going to be a big one. Absolutely right one. 10 runs came from just 2 balls. This time it's a 6. Balakrishna is not learning from the mistake. Again the short pitch delivery. And batsman Deepak once again, he's been a very quiet and calm till the 5th over, last over. Then he's opening his wings by hitting 2 big shots, boundary and a 6. 10 runs in just 2 balls. 48 is the total score of VV cricketers. This time hits that one pretty hard, but he's finding a fielder this time down at deep long on. The jersey number 5, Ajay, is there in the deep long on region, completed the catch, but Deepak, I think, is completed his job by hitting a 2 good stroke in the final over. He's got altogether 10 runs in the 2 balls, and he scored altogether 16 runs from his bat. 48 for the loss of 3 wickets. Balakrishna is back very strongly with this good line and length. After that, 2 poor deliveries, then he bowled a little bit puller length delivery, inviting the batsman to go for the big shot. But the batter Deepak didn't got enough bat onto that to get the distance right. Anirudh is a new batsman, improvising. Very lucky indeed. That ball's a full toss, but a low full toss, and the batsman not happy with himself. And Anirudh thought that it might be the ball can get more than single for that, because fine leg inside the ring, if you're able to defeat that fielder, he can get the boundary for that. Now Srinivas back on strike. Full toss, Srinivas lofted, choosing the longest part of the ground and against the direction of the wind. Dr. Vinod Nayak is in the right position down at deep in wicket, completes the catch. Wicket number 4 is back into pavilion of VB cricketers. Looks like they're losing some deliveries of the final over, because losing a wicket means you are losing the deliveries of the final, the important deliveries of the final over. It's a very good crowd so far in this UCG cricket ground, enjoying the game of cricket, because Urva cricket ground has got some different scenario, and we can see that in a extra coverage and a deep long on region, you get the play, of course, for spectators gallery is a newly built it, and a lot of spectators enjoying this game of cricket by sitting there in the galleries. And the score is 49 on the board. Last delivery of the innings is coming up. This time full set one and finish the innings in a style. The 50 comes up here for VV cricketers. They finished the innings with a 55, and they set a target of 56 to win this match. Expensive over. It comes to an end. 2 sixes and a boundary in that over. "17 runs came from that over." Just I want to give the simple statistics of this 55 runs. The 3 big overs which came from VV cricketers: 16 in the first over, 17 in the fourth over,
and another 17 in the last over. And altogether, 3 expensive over takes VB cricketers into comfortable score of 55. But I am not telling that it's going to be comfortable, because Udupi has got just like what the name, they got a spark, they got sparkling batters in the side, so that a lot of hard work will be required from VB cricketers. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. SICA, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. वीवी वॉरियर्स, धन्यवाद सतीश। और वीवी वॉरियर्स के लिए, वीवी वॉरियर्स ने स्पार्क उडुपी के लिए एक लंबा सा लक्ष्य रखा, 56 रनों का। 56 रन स्पार्क उडुपी have to score in the stipulated 30 deliveries, that means in 5 overs, and their innings now going to start. पहली गेंद लेकर उनकी पारी की गेंदबाज लक्ष्मीश बालिका इस वक्त तैयार है। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड कर लिया गया। और जहां तक सवाल है स्कोर का, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर। और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज लक्ष्मीश बालिका यहां पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। इस बार गेंद को उछाला है, लेकिन गेंद हवा में और मिड ऑन फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की, तो पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। द बैट्समैन जस्ट वांटेड टू हीव दैट वन ओवर द लॉन्ग ऑन फेंस, नॉट सक्सीडेड, और गेंद उनके बल्ले के टॉप एज पर टकराने के बाद सीधे पहुंची मिड ऑन पर, और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। इट्स नॉट फॉर वन फॉर इन द फर्स्ट ओवर। तो स्पार्क उडुपी और वॉरियर्स, वीवी वॉरियर्स के बीच में मैच इस वक्त चल रहा है। स्पार्क उडुपी अपना पहला विकेट खो चुका है इस वक्त पहले ओवर में 0 पर, और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार वसंत नायक इस वक्त सामना करने के लिए। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, स्क्वायर ऑफ द विकेट, खूबसूरती के साथ निकाला, कवर पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई, काफी लंबा दौड़ लगाते हैं फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करें बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। स्क्वायर ऑफ द विकेट, खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ दिया था इस वक्त, और आखिरकार 2 रन के साथ बल्लेबाज
अपनी टीम का खाता भी खोल चुके हैं 2 रन एक विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है इस वक्त स्पार्क उडुपी का, तो इस वक्त 27 रन चाहिए 54 गेंदों पर, 54 टू गेट फ्रॉम 27 डिलीवरीज। और इस वक्त एक एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी की जरूरत है, एब्सोल्युटली क्विक फायरिंग नॉक रिक्वायर्ड फॉर द बैट्समैन्स। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मीश बालिका अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। तो वसंत इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करने का प्रयास किया था, चूंकि और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो 2 रन एक विकेट के नुकसान पर पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर रहा। तो एक लंबा सफर अभी भी तय करना बाकी, 54 रन चाहिए 26 गेंदों पर, 54 टू गेट फ्रॉम 26 डिलीवरीज एंड स्टिल दे गॉट 9 विकेट्स केप्ट इंटैक्ट। वसंत नायक और डॉक्टर विनोद नायक इस वक्त क्रीज पर मौजूद और अपनी अगली गेंद लेकर लक्ष्मीश बालिका गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और ये गेंद उछाला, दिस टाइम स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड एंड इट्स गॉन many a miles. It's a huge one. Just got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style on the roof of our commentator box stand. And this is a massive one. तो इस तरीके की चंद और स्ट्रोक्स की जरूरत इस वक्त। और एब्सोल्युटली फैंटास्टिक शॉट केम फ्रॉम द बैट ऑफ द राइट हैंडेड बैट्समैन। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। वसंत नायक का, तो वसंत नायक इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए 8 रन जोड़ चुके हैं सिर्फ 3 गेंदों पर, 267 स्ट्राइक रेट की मदद से, 267 स्ट्राइक रेट। ही स्कोर्ड 8 रन्स इन जस्ट 3 डिलीवरीज और विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ एग्जैक्टली 267। अगली गेंद फुल टॉस, ड्रिवन दैट वन स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गॉन टू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। ही जस्ट रन विद दैट स्ट्रोक और अंतिम क्षण में इस वक्त रन को कंप्लीट करने में सफल और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर के समाप्ति। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट फॉर स्पार्क उडुपी, चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 56 in 5 overs. So 1 over completed, 9 runs at the board, 1 wicket loss, and let's straight away coming back to the equation. 47 required in 4 overs. That means exactly 11.75 runs per over they have to score for victory, and still they got 9 wickets kept intact. 47 रनों की दरकार 24 गेंदों में और 11.75 रन प्रति ओवर की औसत इस वक्त उनके सामने रिक्वायर्ड रन रेट। 4 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में उनकी पारी में क्या क्या होता है। मैच नंबर 7 पैंथर्स सुपर लीग 2023 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ स्पार्क उडुपी और वीवी वॉरियर्स के बीच V4 न्यूज 24/7 चैनल पर इस श्रृंखला का लाइव टेलीकास्ट, एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है। 4 ओवर का खेल इस वक्त बाकी है एंड स्टिल 47 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री, एग्जैक्टली 11.75 द रिक्वायर्ड रन रेट फॉर देम एट दिस सिचुएशन। और हमसे दूर वाले छोर से प्रोफेशनल एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सूरज इस वक्त अपनी ओर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। पहले ओवर खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पहली गेंद इस बार टॉप एज, मौका फॉलो थ्रू में, गेंदबाज गेंद के नीचे आते हुए लेकिन कैच यहां पर छूट चुका है। शायद बल्लेबाज उनके आड़े आ गए थे कैच को लपकते समय और अंतिम क्षण में यहां पर कैच उनके हाथों से छूटा। इस वक्त खिलाड़ी कुछ बात करते हुए अंपायर से कि बल्लेबाज आड़े है, लेकिन जानबूझकर शायद बल्लेबाज आड़े नहीं आए थे, तो इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। तो 1 रन का इजाफा 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर second in progress. Still they have a long way to go. 46 more runs now they have to score for victory in remaining 23 deliveries. 3.5 overs left. 46 more runs now they have to score for victory. 12 runs per over the required run rate for them. Ugly गेंद, पटकी विकेट on side पर and a massive one. It's gone many a miles. It's a biggie. 6 runs into the account of the batsman and 6 runs into the account of Spark Udupi. तो ऐसा ही स्ट्रोक इस वक्त स्पार्क उडुपी को इस मैच में वापस ला सकते हैं। तो लेट्स स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू द इक्वेशन। 40 रिक्वायर्ड इन 22 डिलीवरीज, 40 रन चाहिए, 22 गेंदें बाकी
और निस्संदेह यहाँ पर बल्लेबाज स्पार्क उडुपी के फाइट बैक करते हुए। तो डॉक्टर विनोद नायक पहली गेंद पर खाता खोल चुके हैं छक्के के साथ। खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला था डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, और अपनी अगली गेंद का सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई और दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करते हुए और गेंद की परीक्षा इस वक्त करने के बाद गेंद को लौटाते हुए इस वक्त गेंदबाज के हाथों में। 16 रन एक विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, और फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। अगली गेंद, यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद लगभग उनके कमर पर टकराई और अंतिम क्षण में गेंद जब तक शॉर्ट पॉइंट पर फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का। 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। स्टिल द बैट्समैन ऑफ स्पार्क उडुपी आर नाउ फाइटिंग बैक। वसंत नायक is now going to face the next delivery from सूरज, और अपनी अगली गेंद लेकर सूरज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद पटकी हुई गेंद उछालना चाहा, इस वक्त गेंद को ऑन साइड पर स्विंग करना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। सो डॉट गेंदे निश्चित रूप से इस वक्त दबाव बल्लेबाज के ऊपर बढ़ाते हुए, और इस वक्त उन्हें चाहिए चंद करारे स्ट्रोक्स इस मैच में वापसी करने के लिए। और फिर से एक बार गेंदबाज सूरज गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार काफी ऊंचा उछाला है और आसान सा मौका मिड विकेट फील्डर के लिए, और इस बीच लेकिन गेंद को इस वक्त छोड़ चुके हैं। दुविधा दोनों खिलाड़ियों के बीच में, और आखिरकार इस दुविधा की बदौलत ये कैच उन दोनों के बीच ये गेंद टिप्पा खाती हुई और बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं। तो रन इस वक्त चाहिए। स्पार्क उडुपी के बल्लेबाजों को किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है, और यहाँ पर रन्स बने और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस, 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 38 more runs now they have to score for victory in remaining 19 deliveries. Exactly 2 runs per ball, exactly 12 runs per over. अगली गेंद, यह गेंद फुल टॉस, गेंद को उछालना चाहा, चूंकि फुलर लेंथ गेंद थी, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति, 2 overs completed, and after 2 overs still the batsmen of Spark Udupi are searching for the right track. It's 18 for 1. So 38 required in 18 balls with the required run rate of exactly 11.66 runs per over. और 38 रन बनाने 18 गेंदों पर, और ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के ही अब स्पार्क उडुपी को इस मैच में वापस ला सकते हैं। मैच नंबर 7 पैंथर्स सुपर लीग 2023 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ, और हल्की सी हवा मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त गुजरती हुई कुछ हद तक इस भीषण गर्मी से दर्शक और खिलाड़ी दोनों को राहत यहाँ पर दिलाती हुई इस ढलते हुए शाम में, शाम के लगभग 4:30 यहाँ पर बच चुके हैं, और मुकाबला इस वक्त जारी है वीवी वॉरियर्स और स्पार्क उडुपी के बीच में इस श्रृंखला के मैच नंबर 7 में। तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए नई ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। यूटीसी एंड की ओर से, कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से नया ओवर प्रारंभ करते हुए गेंदबाज रामकृष्ण कामत और सामना करते हुए इस वक्त वसंत नायक। 38 रिक्वायर्ड इन 18 डिलीवरीज, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। फील्डिंग में जमावट करने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ निकाला, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जाते हुए, और गेंद सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। He just played that one square of the wicket and finds the gap as well between cover point and extra cover, and because of that he's got a boundary for that. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त, देखिए किस तरीके से इस वक्त गेंद को खेला था, और गेंद सीधे एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 22 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. So still the equal battle is now continuing here. 34 required in 17 deliveries. हर गेंद पर 2 रनों की दरकार इस वक्त विजय के लिए, और रामकृष्ण इस ओवर में अगली बार फुल टॉस, स्क्वायर ऑफ द विकेट, एक बार फिर से गेंद को ड्राइव किया, लेकिन इस बार उतना फाइन नहीं और थोड़ी सी मिसफील्ड, हर गेंद को दोबारा रोका गया डीप कवर पॉइंट पर। इस बीच बल्लेबाज के पास मौका तीसरे रन के लिए, और तीसरा रन यहां पर पूर्ण करने में असफल, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है।
2 रन पूर्ण कर चुके थे, तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े जो कि बहुत ही जोखिम भरा साबित हो सकता था और हुआ भी। और इससे पहले कि बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक रन पर पहुंचे, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ डीप कवर पॉइंट का गेंदबाज के हाथों में, और गेंदबाज ने तेजी के साथ विकेट चटका दिए थ्रो को रिसीव करने के बाद। सो दिस इज द विकेट नंबर 2 नाउ दे आर 24 for 2. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। किस तरीके से थ्रो पहुंचा था देखिए, और गेंद को इस वक्त जब विकेट उखाड़े गए थे, गिल्लियां बेल्स डिस्टर्ब किए गए थे जब बल्लेबाज का बल्ला बैट हवा में था, द बैट वाज इन द एयर। In fact, it's a boundary or couple no. So just we have to check the boundary. और यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि गेंद जो फील्डर खड़े हुए थे वो सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोकने में सफल रहे थे या नहीं। पहले प्रयत्न में गेंद उनके हाथों से छूटी थी, लेकिन दोबारा काफी मुश्किल के साथ अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को उन्होंने फील्ड किया था, लेकिन फील्ड करते समय गेंद या उनका शरीर का कोई अंग सीमा रेखा के दीवार पर टकराया था, यह देखने वाली बात है। तो अंपायर ने कहा कि वहां पर चेक किया जाए और उसके बाद रनआउट का निर्धार वो लेंगे। सो स्कोरबोर्ड स्टेज एट 22 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और इस वक्त थर्ड अंपायर देखते हुए कि वहां पर चौका हुआ था या नहीं। तो 7वां मैच इस श्रृंखला का यहां पर खेला जाता है पैंथर्स सुपर लीग 2023 के अंतर्गत इस सुंदर से विशाल से यूसीजी क्रिकेट मैदान पर लॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट के नाम से मशहूर ये मैदान कई मशहूर श्रृंखलाओं के लिए गवाह है। और यहां पर अभी भी वहां पर देखा जा रहा है तृतीय अंपायर द्वारा कि चौका है या नहीं। खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। So no 4, in fact just a couple of runs added to the total. तो 2 रन दोबारा दूसरे प्रयत्न में गेंद को रोका गया था इस वक्त सीमा रेखा के अंदर, और इस बीच सिर्फ 2 रन घोषित, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। सो स्टिल दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो। छप्पन रनों का लक्ष्य, 24 रन बन चुके हैं, यानी 56 से 24 घटा दिया जाए तो 32 रन और चाहिए विजय के लिए। और कुल मिलाकर उनकी पारी का तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। 32 more runs now they have to score for victory in remaining 2+ overs. Still some discussion going between the fielder and the bowler, that fielding adjustments, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए इस वक्त रुक चुका है। दोनों बल्लेबाज भी आपस में बातचीत करते हुए कुल मिलाकर 16 गेंदों में अभी भी चाहिए 32 रन स्पार्क उडुपी को इस मैच में विजय दर्ज करने के लिए। 32 required of 16 deliveries. They badly required couple of boundary or sixes at this stage to get back into this match. तो गेंदबाज रामकृष्णा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, डॉक्टर विनोद नायक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, क्लीन कलेक्शन, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। इट्स 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। 15 balls to go in the innings, 31 more runs now they have to score for victory. और चंद चौके और छक्कों की इस वक्त उन्हें सख्त जरूरत इस मैच में वापस आने के लिए। तो इस वक्त एक बार फिर से दोनों बल्लेबाज विवेक प्रभु और डॉक्टर विनोद नायक कुछ आपस में बातचीत करने के बाद
एक बार फिर से अपने स्वस्थान पर लौटते हुए रामकृष्ण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट 7 से 8 कदम उनका रन अप दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद लेग कटर गेंद थी धीमी लेग कटर गेंद रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन ऐन मौके पर देखने वाली बात यह है कि वो क्रीज पर पहुंच चुके हैं वापस जाना है एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। तो तृतीय अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है और देखना यह है कि यहाँ पर तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं। जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास किया था गेंद को बिना देखे रन लेने की कोशिश उन्होंने की थी और देखना है कि जब विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड करने के बाद विकेट चटकाए तब बल्लेबाज क्रीज पर वापस लौट चुके थे या नहीं, अपना बल्ला क्रीज पर लैंड कर चुके थे या नहीं। Once again, the call goes to the third umpire. He's gone. He fell just short out of his crease at the last minute when the belts are disturbed from the fielder. And that is the wicket number 3. 25 for 3 now in the over number 3 in progress. And now they are looking deep in trouble. Spark Warriors, 25 for the loss of 3 wickets. So 31 required in 14 deliveries. And the asking run rate is now creeping up here for them. और ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके छक्के ही अब इस मैच में स्पार्क वॉरियर्स को वापस ला सकते हैं। तो 2 गेंदे इस ओवर में बाकी। सुनील शेनाई द नंबर 5 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के गेंदबाज रामकृष्ण कामत की अगली गेंद का और 14 गेंदों में चाहिए 31 रन। 31 रिकॉर्ड ऑफ 14 डिलीवरीज और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त रामकृष्ण तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस लेकिन फुलर गेंद अंतिम क्षण में गेंद बल्ले के अति निकट टिप्पा खाते हुए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहता थोड़े से सफल होते हुए छू के गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ एक गेंद और व्यर्थ हो चुका है। हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता नजर आता हुआ 25 रनों पर तीसरा विकेट खो चुका है। 31 रन आउट चाहिए और 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी, माफ कीजिए 2.1 ओवर का खेल अभी भी बाकी और गेंदबाज रामकृष्ण
एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया जगह बनाते हुए, लेकिन ठीक तरह से जगह नहीं बना पाए और गेंद पहुंची धीमी गति से लॉन्ग ऑन पर, और जब तक लॉन्ग ऑन फील्डर गेंद को फील्ड करे 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. 3 overs had been bowled and now 30 runs more they have to score for victory in remaining 2 overs. That means in 12 balls. Exactly 15 runs required run rate at this situation for them. 30 रन चाहिए बचे हुए 2 ओवर में, और निस्संदेह यहाँ कहना पड़ेगा पानी इस वक्त सिर से ऊपर निकल चुका है स्पार्क उड़पी के. और जहां तक परिस्थिति को अगर अपने नियंत्रण में करना है तो इस वक्त चौके और छक्के, 2 या 3 चौके और छक्के को इस वक्त उन्हें लगाना होगा इस मैच में कमबैक करने के लिए. तो काफी लंबी बातचीत यहां पर चलती हुई वीवी वॉरियर्स के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए, जो कि खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है. शाम का वक्त लगभग 5 इस वक्त बजते हुए 4:45 बज चुके हैं और धूप का कहर मैदान पर काफी हद तक कम हो चुका है. घने वृक्षों की परछाइयां धीरे धीरे पिच की ओर पधारते हुए इस बात का संकेत देते हुए कि जैसे जैसा वक्त गुजरता जा रहा है मैदान पर रोशनी इस वक्त कम होती हुई. और इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत पैंथर्स सुपर लीग 2023 मेगा श्रृंखला के अंतर्गत इस श्रृंखला का मैच नंबर 7 7th मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर. द्वितीयार्ध प्रगति पर और गेंदबाज विघ्नेश इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए. So 26 for 3 after 3 overs and 30 more runs required in remaining 12 deliveries. Exactly 15 runs per over the required run rate for them at this situation. Long spread it out for we are just watching from here right from our commentator box. Deep back with a third man next to cover. Long off इस वक्त शायद नहीं मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद. और जहाँ तक सवाल है वाइड इस लॉन्ग ऑन डीप बैक with a square leg इस वक्त तैनात दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. और इस वक्त गेंदबाज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिना हाथ ओवर द विकेट प्रोफेशनल एंड की ओर से यह गेंद उछालना चाहा, चूंकि टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रहती हुई मच स्ट्रेटर लाइन एंड द बॉल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन. इनफैक्ट एक विकेट यहां पर गिर चुका है. Finally, the dismissal happened at the striker at the last moment, and 1 more wicket fall, and it's 26 for the loss of 4 wickets now. And now 1 ball, dot ball goal in their innings. 10 balls remaining, and 30 runs more now they have to score for victory. In fact, it's 11 balls remaining at 30 runs more. Now they have to score for victory. तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए बालाकृष्ण नायक, the number 5 batsman, is now comes out to the middle, and he'll be facing right-handed bowler. 10 गेंदें बाकी हैं, 30 रन चाहिए. काफी कठिन सा लक्ष्य इस वक्त स्पार्क उडुपी के सामने. और अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए इस वक्त गेंदबाज तैयार, जबकि बल्लेबाज क्रीज पर स्ट्राइक लेते हुए. लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट बैकवर्ड स्क्वायर लेग लॉन्ग ऑफ इस वक्त पीछे की ओर जाते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. 30 required in 11 balls. Next ball comes from the bowler. Again, इस बार this time hit that one and it's gone many a miles. It's a huge one onto the road. Exactly that type of some more strokes needed for the batsman to get back into this match. This time he hammered that one high up in the air and he's got the distance at last. 32 for 3, and let's straight away coming back to the equation. 24 required in 10 deliveries, and still the batsmen of Spark Udupi are now fighting back. तो 10 गेंदें बाकी हैं, 24 रन चाहिए. पिछले गेंद पर जो छक्का डॉक्टर विनोद नायक ने उछाला था वो छक्का उनकी उम्मीदों को बरकरार रख चुका है. अगली गेंद ऑफ का टारगेट, नो बॉल का इशारा. इस बीच लगभग लाइन के बाहर गेंद टिप्पा खाई थी और आखिरकार ये नो बॉल उनके खाते में जुड़ चुका है. 33 रन बच चुके हैं. 6 गेंदों में 13 रन जोड़ चुके हैं. इस वक्त डॉक्टर विनोद नायक is batting on 13 in just 6 deliveries with a strike rate of exactly 217. और अगली गेंद के लिए तैयार. ये गेंद इस बार पुल करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, रन नहीं मिलेगा.
आफ्टर फर्स्ट बाउंस इस बीच कलेक्ट करते हुए गेंदबाज और रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदे बाकी है 9 और रन चाहिए 23। 23 रिक्वायर्ड इन 9 डिलीवरीज। तो विनोद नायक एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। विघ्नेश शनई गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा। इस बार उछालना चाहा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद। एक्स्ट्रा बाउंस अपील के लिए मांग करते हुए, वाइड के लिए मांग करते हुए, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा हद तक इस वक्त बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और इस बीच अंपायर ने आखिरकार सही गेंद घोषित किया। तो इस बार स्कोर रुक चुका है 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 8 गेंदे बाकी, 23 रन चाहिए। 23 टू गेट फ्रॉम 8 डिलीवरीज। डॉक्टर विनोद नायक कुछ हद तक असंतुष्ट इस वक्त दिखाई देते हुए, अंपायर से कुछ कहते हुए, लेकिन वक्त बीत चुका है और सही गेंद इस वक्त फेंकी जा चुकी है और अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। तो अंपायर का अंतिम निर्धार होता है। हर खिलाड़ी को उनके निर्धार का पालन करना जरूरी है इस श्रृंखला में। यह गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, गेंद सीधे गए बैक टू द बॉलर की दिशा में। रन से नहीं मिलेगा। शफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहता चूके और आखिरकार रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। चौथा ओवर समाप्त होने के लिए एक गेंद यहां पर बाकी है। तो इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज इस वक्त तैयार। विघ्नेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर विनोद नायक के लिए 2 डॉट गेंदे लगातार खेल चुके हैं। ये गेंद फुल टॉस स्विंग किया डीप मिड विकेट पर, लेकिन रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद। नॉट मोर देन अ सिंगल। अपने ऊपर की ओर उछल कर गेंद को फील्ड किया आफ्टर फर्स्ट बाउंस और सिर्फ एक रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 34 3 विकेट के नुकसान पर। 22 रिक्वायर्ड इन लास्ट ओवर। मीन टाइम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, GSB Yodhas, that means GSB Warriors will meet Kodial United. In fact, KSK will meet RK Strikers in the next match. So news is here from the center that the skipper of the captain of RK Strikers won the toss. He elected to field first, and that match is now coming up live exclusively right after this match. So back to this game. The battle is now going on here. तख्ता इस वक्त भारी लगता हुआ VV Warriors का और चमत्कारी बल्लेबाजी की इस वक्त जरूरत इस अंतिम ओवर में स्पार्क उड़पी के बल्लेबाजों को। 22 रन चाहिए। 22 रिक्वायर्ड इन लास्ट ओवर। V4 न्यूज 24/7 चैनल पर इस वक्त इस श्रृंखला का एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है YouTube के जरिए और यहाँ पर यह श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति करते हुए अंतिम ओवर बाकी और अंतिम ओवर में चाहिए रन 22 विजय के लिए। 22 रिक्वायर्ड इन द लास्ट ओवर। तो ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। रामकृष्ण कामत अपना दूसरा ओवर, अंतिम ओवर शुरू होता हुआ। यहां पर पहली गेंद ड्राइव किया, गेंदबाज की बाईं ओर से गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ की दिशा में। रन्स लेना नहीं चाहते इस वक्त बल्लेबाज डॉक्टर विनोद नायक। स्ट्राइक को खुद अपने पास रखना चाहते हैं। 5 गेंदों में इस वक्त चाहिए 22 रन। सिर्फ चौके या छक्के इस वक्त उनकी टीम को विजय दिला सकते हैं और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। रामकृष्ण का मत दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद फ्लाइटेड उछाला स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है। एक वक्त ऐसा लगा कि गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा को पार कर जाएगी, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई और इसी के साथ विनोद नायक की बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है और उनके विकेट के पतन के साथ लगभग उम्मीदें भी काफी हद तक कम हो चुकी हैं स्पार्क उडुपी के लिए। अंतिम अवकाश, द लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ स्पार्क उडुपी। 3 sixes and a boundary required in the last 4 deliveries. 22 required of last 4 balls. और 4 गेंदे इस वक्त बाकी है। राहुल इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में का आगमन इस वक्त हो जाता है। लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ गोइंग टू फेस द राइट हैंडेड बॉलर रामकृष्ण। द लास्ट चांस नाउ इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ स्पार्क उडुपी। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। Still some physics adjustments is going on there at this situation और जहां तक
सवाल है अगली गेंद का। तो रामकृष्णा इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर स्विंग करना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग गेंद, गेंद पहुंची डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक रन मिलेगा और एक रन बल्लेबाज ले चुके हैं। दूसरा रन लेने का प्रयास और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। सो वन मोर विकेट फॉल ऑन, 35 for 4, 21 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट 3 डिलीवरीज। और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त वीवी वॉरियर्स की विजय निश्चित है अगर इन 3 गेंदों में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंके तो। 21 रनों की दरकार 3 गेंदों में, 21 रिक्वायर्ड इन 3 डिलीवरीज। नए बल्लेबाज का इंतजार है और नंबर 7 बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर आते हुए जगदीश पई, 6 विकेट यहां पर गिर चुके हैं। 35 for 6 नाउ। गेंदबाज रामकृष्णा, बालाकृष्णा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और फील्डिंग में यहां पर कुछ हद तक जमावट करती हुई। Next one comes from the bowler. Dainat over the wicket again. Extra bounce. Get some slower delivery at the last moment by the right-handed bowler. Just missing outside the leg stump. Slower leg cutter. और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। Scoreboard stays at 35 for the loss of 6 wickets. 21 to get from 12 deliveries. Absolutely impossible task. बिल्कुल नामुमकिन सा लक्ष्य इस वक्त। एक बार फिर से चूके विकेट कीपर के पहुंच से बाहर और रन के लिए दौड़ पड़े, एक विकेट गिर चुका है। 35 for 7, इनफैक्ट इट्स 36 नाउ for 7। वाइड का इशारा अंपायर का। 2 गेंदे अभी भी बाकी है, स्टिल 2 balls लेफ्ट, 20 रिक्वायर्ड। $36 for the loss of 7 wickets. Still we are just waiting for the new batsman, number 9 batsman. This now comes out to the middle. 2 balls remaining, 20 runs required. Absolutely impossible task in front of the batsmen of Spark Udupi. और इस बीच प्रज्वल कामत का आगमन हो चुका है, नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद। गेंदबाज तैयार इस बार, बिग वन, बट आई थिंक यस इट डस, बट दैट इज नॉट इनफ फॉर देम। इस बार छक्का जरूर उछाला था लेकिन यह छक्का उनके लिए पर्याप्त नहीं है विजय तक पहुंचाने के लिए। काफी देर से यह छक्का लग चुका है बल्लेबाज के बल्ले से। अब 14 रन चाहिए अंतिम गेंद पर। देखिए किस तरीके से इस वक्त उछाला था, डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर और फील्डर की जीतोड़ कोशिश की बदौलत गेंद उनके पहुंच से बाहर। अंतिम गेंद, द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप। दैट्स इट, सिंगल रन एडेड, 43। In fact, they're looking for the second but won't. In fact, they come back for the second and a run out happened. So that's it. 12 runs victory for VV Warriors against Spark Udupi, and 12 runs, with that 12 runs victory they back the complete points. परिपूर्ण अंक यहाँ पर VV Warriors प्राप्त कर चुका है स्पार्क उडुपी के खिलाफ 12 रनों की विजय से। अब अगला मैच यहाँ पर खेला जाएगा KSK और आरके स्ट्राइकर्स के बीच। तो ताज़ा समाचार यह है कि आरके स्ट्राइकर्स के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय यहाँ पर लिया है। और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने कम बैक करेंगे जब 8वें मैच की शुरुआत होगी यहाँ पर। धन्यवाद, थैंक यू।
creative art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. SICA, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. SICA, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. बहुत ही हृदय से आभार प्रकट करता हूं जो मुझे पसंद करते हैं और जिन्होंने मुझे न्योता दिया, सम्मान दिया और इस क्रिकेट श्रृंखला में आमंत्रित किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्रिकेट श्रृंखला में जैसे आप देख रहे हैं कि संघर्ष अभी चल रहा है। टॉस जीतने के पश्चात कोडियाल जी नहीं, आर के स्ट्राइकर्स के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोडियाल सुपर किंग्स के 2 जाबाज बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं। शानदार मौसम है, शाम के लगभग जी हाँ 5 बज चुके हैं। सूरज दूर आकाश में अपने रोशनी को फैलाता हुआ उर्वा का मैदान आप जानते हैं क्रिकेट के लिए बहुत अनुकूल, हालांकि ये ज्यादा विशाल नहीं लेकिन घने पेड़ों से सजा हुआ संवारा गया ये क्रिकेट श्रृंखला के लिए अनुकूल मैदान माना जाता है और दर्शकों का हमेशा यहाँ पे झुंड, उनकी तादाद लगी रहती है और क्रिकेट को हमेशा सराहा जाता है। आइए इस मैच की ओर बढ़ते हैं। सारे फील्डर्स अपने पोजीशन को लेकर तैयार हो चुके हैं। श्रीनिकेत और राज रतन जी जो कि इस वक्त मैदान पर अपनी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं और जी हाँ उन्होंने संकेत किया कि खेल शुरू। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं। फील्डिंग की रूपरेखा आपको बता दें, ऑफ साइड पर दायरे के अंदर इस वक्त 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर दिखाई पड़ रहे हैं। ऑन साइड पर जी हाँ मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है, 3 खिलाड़ी मौजूद और इन कार्तिक गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। पद्मनाभ पर स्ट्राइक एंड पर दूर वाले छोर से कार्तिक की गेंद कितना कुछ असर वो दिखा पाएंगे, देखने वाली बात होगी। और दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई
उम्मीद है कि आज इस मैच के पश्चात, हालांकि धीरे धीरे जिस तरह से दर्शक बढ़ रहे हैं, रात के फ्लड लाइट में ढेरों दर्शक यहां पर उपस्थित हो गए। दूर वाले छोर से इस मैच की पहली गेंद राउंड विकेट ऑन साइड पर घुमाकर खेलने का प्रयास कर गए, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया बल्ले और गेंद के बीच में। विकेटों को पूरी तरह से कवर करते हुए ऑन साइड पर थोड़ा सा आड़े बल्ले से, हॉरिजॉन्टल बल्ले से खेलने के प्रयास में चूक गए। फील्डर गेंद को समेट चुके हैं, रन लेने का अवसर नहीं है। शानदार दृश्य है, मैदान पर मोटी मोटी छाव जो कि पेड़ों की गिरती हुई, और दृश्य बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ता हुआ। और शाम के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त किया गया है, कृपया ध्यान दीजिएगा। दूर वाले छोर से राउंड विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर बहुत बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन स्क्वायर लेग पर बिल्कुल अंपायर श्रीनिकेत के पास एक खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को रोक लिया, और वरना मैं समझता हूं कि संभावित चौका हो सकता था। खूबसूरती के साथ खेला गया स्ट्रोक। अब शायद बल्ले को बदलना चाहते हैं बैट्समैन पद्मनाभ पई, जो कि अब मुझे लगता है कि शायद बल्ले को बदलने के पश्चात कुछ जादूगरी करके दिखाएंगे वो अपने बल्ले से, और ऐसे में दूर वाले छोर से कार्तिक योजनाबद्ध तरीके से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। युवा खिलाड़ी हैं कार्तिक, और कदकाठी में कुछ ज्यादा लंबे नहीं हैं, और रनअप उनका काफी, मुझे लगता है कि लगभग 30 गज के दायरे से वो दौड़ लगाते हैं। कितना असर दिखा पाएंगे? 2 बार उन्होंने बैट्समैन को कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर परेशान किया। उस छोर से गेंद को पटक कर तैयार हो रहे हैं पद्मनाभ पई। स्ट्राइक एंड पर थोड़ा सा ओपन स्टांस है उनका। ये गेंद राउंड विकेट, बैकफुट पर गया, खूबसूरत स्ट्रोक है, फील्डर के ऊपर से गेंद को उन्होंने कट कर दिया खूबसूरती के साथ। जब तक गेंद को गली में टी फील्डर के पीछा करते हुए गेंद को समेट पाए, बैट्समैन के पास इतना समय कि वो 2 रन तेज कदमों के साथ पूरा कर ले, और इन दोनों के साथ ही पद्मनाभ पई अपना खाता खुल चुके हैं। 2 रन बगैर किसी नुकसान के। आइए दोहरा दें, आरके स्ट्राइकर्स के कप्तान ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और कोडियाल सुपर किंग्स की तरफ से 2 बल्लेबाज जो कि विश्वसनीय मैदान पर उतर चुके हैं। पद्मनाभ पई स्ट्राइक एंड पर 2 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। थर्ड मैन शॉट में है, गली थोड़ा सा जी हाँ तिरछा रखा गया है, पॉइंट को थोड़ा सा कवर क्षेत्र की ओर ढकेल दिया गया है। उच्च छोर से गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बीट हो गए, और अंपायर राजरतन जी को मजबूर होना पड़ा कि वो उंगली को उठाएं और बैट्समैन को लेग बिफोर द विकेट करार दें। इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। सारे फील्डर से एकत्रित होकर उत्साह मना रहे हैं कि आखिरकार पहला शिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया। पद्मनाभ पई जो कि लेग बिफोर द विकेट करार दिए गए, विकेटों को कवर करते हुए ऑन साइड की दिशा में घुमाकर खेलने का प्रयास। कार्तिक की गेंद स्टंप्स के लाइन पर थी, सीध पर थी, बिल्कुल नजरों के, अंपायर की नजरों में दोषी पाए गए। स्टंप्स पर आती हुई गेंद जिसको खेलने के प्रयास में, ऑन साइड पर खेलने के प्रयास में पैरों से गेंद टकरा गई, और हम इस विश्वसनीय अपील को राजरतन जी ने विश्वास के साथ उंगली को उठाते हुए संकेत किया कि बैट्समैन आउट हो गए। तो पहला आघात कोडियाल सुपर किंग्स को हो चुका है। पद्मनाभ पई जो कि काफी विश्वसनीय बल्लेबाज हैं, उन पर बल्लेबाज थे, माफ कीजिएगा, तो उन पर काफी कुछ निर्भर था, लेकिन डगआउट में जाकर वो शायद कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि आखिरकार गलती कहां पर हुई, क्योंकि जिस तरह से मेरिट ऑफ द बॉल जिसे कहते हैं उसके अनुसार खेला जाए तो शब बात कुछ और होती है, लेकिन थोड़ा सा घूमकर विकेटों को कवर करते हुए, हालांकि इस ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने उसी तरह से प्रयास किया था। लगातार 2-3 बार उन्होंने इसी प्रयास में कि गेंद को वो थोड़ा सा ऑन साइड पर घुमाकर खेलें। इस बार गेंद स्टंप्स के लाइन पर, और आखिरकार कार्तिक ने शिकार प्राप्त कर ही लिया। उस छोर से कार्तिक की गेंद एक शिकार करने के पश्चात जो कि विश्वास को बढ़ाते हुए और 30 गज के दायरे के अंदर ऑन साइड पर फाइन लेग थोड़ा सा जी हाँ शॉट में रखा गया है, स्क्वायर लेग बैकवर्ड है, मिड विकेट वाइड है, राउंड विकेट। उस छोर से गेंद ऑन साइड पर फ्लिक किया गेंद को, और कदमों का अच्छा इस्तेमाल। कार्तिक ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से गेंद की, थोड़ा सा जड़ में यॉक कराने का प्रयास किया, और ऐसे में बैट्समैन को थोड़ा सा मजबूर होना पड़ा कि वो अपने पैरों को थोड़ा पीछे की तरफ ले जाए। कलाई के सहारे से ऑन साइड की दिशा में खेलने के प्रयास में फील्डर की दिशा में उन्होंने खेल दिया, रन लेने का अवसर नहीं है। प्रणव भट्ट जो कि स्ट्राइक एंड पर, और क्रीज के मुश्किल से जी हाँ थोड़ा सा बाहरी वो खड़े रहते हैं। राउंड विकेट, उनकी गेंद
बहुत अच्छी गेंद और अंपायर राजरतन जी ने फिर सिर को हिलाया और कहा कि बैट्समैन आउट हो गए। एक और शिकार प्राप्त कर लिया कार्तिक ने। क्या कमाल की गेंदबाजी वो कर रहे हैं। दूसरा विकेट उनके खाते में गया है। बैट्समैन प्रणव आउट होकर लौट गए। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा निकलती हुई गेंद, जिसको खेलने के प्रयास में अच्छी लेंथ के साथ, लंबाई के साथ थी गेंद, थोड़ा सा बीट हो गए। बल्ले का महीन सा सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। इसी के साथ एक और विकेट का पतन हो चुका है। तो 2 विकेटों के नुकसान पर रन्स बन चुके हैं मात्र 2। तो कमाल की गेंदबाजी आर के स्ट्राइकर्स के कप्तान ने, मैं समझता हूं कि कमाल की कप्तानी की है। और क्रिकेट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं इस बात पर हमेशा, इस पहलू पर ध्यान देते हैं कि मैच का जो निर्णय होता है सबसे पहले टॉस पर काफी कुछ निर्भर होता है। तो अगर टॉस आप जीत जाएं तो 25% मैच को आप जीत सकते हैं। उसके बाद कप्तान पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरह से शफल करते हुए गेंदबाजों को लगाए, कौन सा गेंदबाज किस स्ट्रेंथ के साथ गेंदबाजी कर सकता है। और उसको देखते हुए यहां पर मैं समझता हूं कि आर के स्ट्राइकर्स के कप्तान ने बहुत शानदार गेंदबाजों का चयन किया और उसके फलस्वरूप उनको 2 शानदार विकेट अर्जित उन्होंने कर दिए। तो इस प्रकार पहला ओवर समाप्त हो चुका है और पहले ओवर के समाप्ति पर 2 रन 2 विकेटों के नुकसान पर तो अश्वथ गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। सुरेंद्र भाई, आप जानते हैं सूर्य जिसको कहा जाता है, कुंदापुर कहिए, उड़पी कहिए, कहीं पर जुगनू की तरह टिमटिमाने वाला, तारों की तरह जगमगाने वाला एक ऐसा विश्वसनीय बल्लेबाज जिस पर बहुत कुछ निर्भर है। कोडियाल सुपर किंग्स की जिम्मेदारी उन पर है। इस छोर से यह गेंद और विकेट, फुल टॉस थी, ड्राइव किया बहुत योज चतुराई के साथ सुरेंद्र ने गेंद को थोड़ा सा जमीन पर रखते हुए इस बार रन आउट का मौका हो सकता है। स्ट्राइक रेट की दिशा में थ्रो गिर चुका है स्टंप्स पर और अंपायर ने संकेत किया कि तीसरा अंपायर ये जिम्मेदारी उठाएगा कि आखिर क्या हुआ है। दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा और राजरतन जी ने कोई जोखिम नहीं उठाया। वो जानते हैं कि बहुत निर्णायक मोड़ है। ऐसी परिस्थितियों में दोनों ओर से, जी हां, गेंदबाज को भी बहुत जरूरी है, बल्लेबाज की तरफ से बहुत जरूरी है कि ये नतीजा बिल्कुल साफ साफ हो और इस वजह से उन्होंने जिम्मेदारी तीसरे अंपायर को सौंपी कि आखिर बैट्समैन क्रीज में पहुंच गए या रह गए। तो इसी के साथ जी हां, सुरेंद्र आउट होकर पवेन लौट रहे हैं। क्या शानदार क्षेत्ररक्षण का फैलाव है। आज मैं कहूंगा कि जितने सारे दर्शक यहां पर देख रहे हैं, आर के स्ट्राइकर्स के कप्तान को, फील्डरों को, गेंदबाजों को एक तरह से वो सराह रहे होंगे, प्रशंसा के पुल बांध रहे होंगे कि क्या जबरदस्त प्रदर्शन उनका रहा है इस मैच में, विशेष तौर पर जिस तरह से वो गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं। सुरेंद्र भाई जैसा बैट्समैन जो बहुत विषैला, बहुत जहरीला, बहुत खतरनाक साबित हो सकता था, वो डगआउट की दिशा में बढ़ चुका है। शानदार थ्रो, स्टंप्स पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हो गई। दोनों बैट्समैन आपस में थोड़ा सा मैं समझता हूं कि शायद पछता रहे होंगे कि इस गलती का भुगतान उन्हें एक तरह से काफी महंगा साबित हो सकता है। सुरेंद्र भाई जो कि एक बहुत विश्वसनीय बल्लेबाज हैं, वो क्रीज पर अगर ज्यादा देर रहते तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं आर के स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों के विश्वास को तोड़ सकते थे। लेकिन परिस्थितियां हर मैच अलग रंग से दिखाती है और बैट्समैन सुरेंद्र पै जो कि पिछले मैच में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, वो आउट होकर लौट गए। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों बैट्समैन में वो तालमेल, जो अंडरस्टैंडिंग रहती है, वो कहीं ना कहीं खो गए क्योंकि 2 विकेट शुरुआत में जल्द गिर चुके थे, जिसकी वजह से दबाव, थोड़ा सा प्रेशर था और इस प्रेशर में दोनों बैट्समैन एक दूसरे को पूरी तरह से कॉल नहीं दे पाए।
अश्वत्थ भाई गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। कमेंटेटर बॉक्स छोर से उनकी गेंद हवा में खेल दिया है, कुछ देर हवा में थी, कैच हो सकता था। फील्डर थोड़ा सा वाइड खड़े थे, कवर की दिशा में फील्डर थे, गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गई। और मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं धड़कनें तेज हुई होंगी बैट्समैन के, क्योंकि जिस तरह से गेंद को थोड़ा सा चेक करने के अंदाज में बल्ले का बैकलिफ्ट रोकते हुए उन्होंने गेंद को धीरे से दबा देने के अंदाज में खेला था, गेंद बल्ले को लगती हुई थोड़ा सा टॉप एज लगकर गेंद हवा में गई। और भाग्यशाली रहे कि एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में कोई फील्डर मौजूद नहीं था, वरना निश्चित तौर पर पछताना पड़ जाता। देवदास स्ट्राइक एंड पर इस छोर से ओवर द विकेट, कमेंटेटर बॉक्स छोर से ये गेंद बैकवर्ड पर गए, गेंद को बल्ले का सिरा देकर खेल दिया। क्या बात है, बहुत अच्छा स्ट्रोक। और 1 रन के साथ देवदास नायक जी ने अपना खाता खोल लिया। आप जानते हैं देवदास नायक बहुत ही चिर परिचित ऐसे बैट्समैन, हालांकि क्रिकेट में बहुत योगदान उनका है और आज जिम्मेदारी उन पर आन पड़ी है कि वो कहीं ना कहीं इस परिस्थिति से अपनी टीम को ऊपर ले आ पाए। इस पेशोपेश में, इस पशोपेश में ये मैच इस वक्त उनके टीम के ऊपर बहुत खतरनाक, हालांकि काफी दबाव बढ़ता हुआ। ये गेंद ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेलते हुए 1 रन तेज कदमों के साथ पूरा कर लिया बैट्समैन ने। इस 1 रन के साथ रन सब बढ़कर पहुंच चुका है 6 पर 3 विकेटों के नुकसान पर, 6 for 3। राजरत्न जी स्क्वायर लेग पर, श्रीनिकेत इस वक्त इस छोर पर बिल्कुल मेन अंपायर की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि जीपीएल जब भी बनता है उसमें चुनिंदा ऐसे अंपायरों को चुना जाता है जो निश्चित तौर पर जैसे कहते हैं कि योग्य हैं निश्चित तौर पर, तो ऐसे अंपायरों को चुना जाता है, अनुभव से भरे हुए होते हैं, पक्के आम की तरह। जी हाँ, इस छोर से ओवर द विकेट, बाएं हाथ से गेंद इस बार डेक्स्टम के लाइन के आसपास थी, जिसको थोड़ा सा ऑन साइड की दिशा में मोड़ने के प्रयास में तेज कदमों के साथ 1 रन चुरा लिया। जोखिम भरा जरूर हो सकता था, लेकिन तेज कदमों के साथ 1 रन चुरा लिया बैट्समैन ने। इस 1 रन के साथ ही रन बढ़कर पहुंच चुका है 7 पर 3 विकेटों के नुकसान पर, अच्छी लंबाई के साथ। और मुझे लगता है कि स्लॉट से थोड़ा आगे डालने का प्रयास था अश्वत्थ का, लेकिन गेंद की लाइन जो कि लेग स्टंप के थोड़ा बाहर थी, जिसकी वजह से देवदास जी ने गेंद को ऑनसाइड की दिशा में धीरे से मोड़ने के प्रयास में कहीं ना कहीं नाक के नीचे से 1 रन चुरा लिया। 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 33 नंबर के जर्सी में अश्वत्थ की गेंद ओवर द विकेट उछल कर आई, उछाल को थोड़ा सा कवर किया, बल्ले पर आने दिया और धीरे से गेंद को पुश भर कर दिया। आसानी के साथ दोनों बैट्समैन छोर को बदल चुके हैं। इस 1 रन के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति पर 8 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 8 for 3, 8 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। एक छोर पर देवदास हैं और दूसरे छोर पर गौरव मौजूद हैं, तो यह जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों पर है कि वो एक सम्मानजनक लक्ष्य की तरफ अपनी टीम को ले जाएं। और इस प्रयास में कोरियल सुपर किंग्स क्या कुछ कर पाता है। थोड़ा सा समय ले रहे हैं, सारे फील्डर्स आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी वो बना रहे हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त खिलाड़ी जो कि बैट्समैन के खेमे से, आरके स्ट्राइकर जी ने कोरियल सुपर किंग्स के खेमे से आकर जो कि इस वक्त योजना बना रहा है, अपनी तरफ से कुछ टिप्स देता हुआ। आरके स्ट्राइकर के सारे फील्डर्स जो कि मैदान पर योजना बनाने के पश्चात अपने अपने स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। शानदार दृश्य है। अब धीरे धीरे सूरज की रोशनी, जी हाँ, थोड़ा सा मध्यम रोशनी फैलाती हुई, समय 5:10 और धीरे धीरे शाम होगी। और इस फ्लडलाइट जो दूर दूर लगाए गए हैं उसकी रोशनी में फिर आपको शानदार क्रिकेट का खेल देखने को मिलेगा। सौरभ भट्ट दूर छोर से आ रहे हैं आक्रमण पर। सौरभ की गेंद गौरव को, जो कि गौरव स्ट्राइक एंड पर हैं, और गौरव ने हालांकि मट्टी से रगड़ते हुए अपने हाथ के पसीने को दूर कर लिया। स्ट्राइक लेने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। फील्डिंग में काफी फैलाव दिखाई पड़ रहा है। ऑफ साइड पर दायरे के अंदर 2 खिलाड़ी मात्र, थर्ड मैन शॉट में है, बैकवर्ड पॉइंट है। इस छोर से गेंद, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद हवा में तैरती हुई गगनचुंबी स्ट्रोक है और अंपायर ने संकेत किया कि 6 रन। जीपीएल का सिक्सर, कमाल का स्ट्रोक। और आक्रामक तरीके से आखिरकार गौरव ने अपने टीम की गौरव को बढ़ाने का प्रयास किया। खूबसूरत स्ट्रोक है। जिस तरह से आपने देखा, लंबाई ज्यादा थी गेंद में, हाफ वॉली में लिया, थोड़ा सा तिरछा और ऑन साइड की दिशा में लगभग मिडवे के डीप में थोड़ा सा वाइड जरूर था, लेकिन आक्रामक स्ट्रोक बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। उस छोर से अगली गेंद
ऑफ स्टंप के बाहर थी और पीछा नहीं कर पाए, हालांकि खड़े खड़े स्ट्रेच करते हुए गेंद को खेलने का प्रयास किया और विकेट कीपर ने गेंद को गैदर करते हुए कहीं ना कहीं हल्की से आह निकाली, अपील करना चाहते थे लेकिन फिर समझ गए कि बल्ले का सिरा नहीं लिया है और अब दोनों बैट्समैन आपस में जो कि शब्दों का लेन देन करने के पश्चात गौरव दोबारा स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। देवदास जी अनुभवी हैं तो वो अपने साथीदार को आकर उन्होंने समझा दिया कि आखिर क्या करना होगा। उस छोर से ये गेंद बहुत अच्छी गेंद बीट कर गई और बैट्समैन थोड़ा सा उछल कर अपने टो पर गेंद को दबा देने के अंदाज में खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी सिरा शायद ही लग पाता, गेंद थोड़ा सा अंदर से निकल गई, टप्पा खाने के बाद नीचे से विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। ओवर द विकेट छोर से गेंद लॉफ्ट किया, बहुत बढ़िया स्ट्रोक है, कोई फील्डर इस गेंद को नहीं रोक पाएगा, गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से गई 6 रनों के लिए। 20 for 3, 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और आपके साथ जब देवदास जी जैसा कोई अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हो तो निश्चित तौर पर बात बनेगी। सारथी अगर कन्हैया होगा तो अर्जुन को किस बात का डर है। गौरव जी ने बिल्कुल विश्वास के साथ खूबसूरती के साथ गेंद को लॉफ्ट किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद गई 6 रनों के लिए, तो छक्के के साथ रन बढ़कर 20 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। उस छोर से गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, इस बार पहले सोचा कि शायद वो गेंद का पीछा करें, फिर अंतिम समय पर अपने निर्णय को बदलते हुए जाने दिया गेंद को, अंपायर की तरफ देखा, अंपायर टच से मस नहीं हुए और फिर विकेट कीपर अपना काम कर चुके हैं। देवदास जी दोबारा आकर समझा चुके हैं अपने साथीदार को कि गेंदे ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर जाएं तो उसको छोड़ दें। उस छोर से शफल कर रहे हैं, इस बार गौरव ने उछालने का प्रयास किया, बल्ले का सिरा लेकर विकेट कीपर के हाथ बड़े खुश हो गए, विकेट कीपर ने गेंद को कैच कर लिया, आउट होकर गौरव लौट रहे हैं। लेकिन देवदास जी ने अपनी तरफ से पीठ थपथपाते हुए बैट्समैन का कि आपने जो निर्णायक 2 जबरदस्त छक्के लगाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो 4 विकेटों के नुकसान पर 20 रन बन चुके हैं। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर के समाप्ति पर 20 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि 18 गेंदों में 20 रन बन चुके हैं और अब आखिरी 2 ओवर्स शेष बचे हुए हैं। 12 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है। उर्वा का ये मैदान आप देख रहे हैं कि जितना ढेर सारे दर्शक उपस्थित हैं, धीरे धीरे और बढ़ेंगे और विशेष तौर पर अगर देखें तो बहुत सारे श्वान इस मैदान पर आपको देखने को मिलेंगे। आउटफील्ड में बिल्कुल अपना प्लेसमेंट बनाकर वो विश्राम कर रहे हैं, शानदार दृश्य है। और खिलाड़ियों का स्पिरिट देखिए, वो जानते हैं कि श्वान आमतौर पर यहां पर इस मैदान पर रहता है तो उसको वो न हटाने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल उसको विश्राम करने के लिए दे रहे हैं और फिर अपना खेल, अपना जुनून अपनी जगह। देवदास जी ने दोबारा गार्ड लेने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, गार्ड लेने के पश्चात वो तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि अनुभव उस पक्के आम की तरह होता है। आमतौर पर अगर अनुभव कम हो, अगर मैच्योरिटी न हो तो आप कच्चे आम की तरह बन जाते हो। इस छोर से वो तो विकेट, कमेंटेटर बॉक्स छोर से ऑफ स्टंप के बाहर और क्या खूबसूरत स्ट्रोक है। इस बार हल्के हाथ से गेंद को बल्ले का सिरा दिया बैट्समैन देवदास जी ने। फील्डर जरूर मौजूद थे लेकिन देखा कि अपना साथीदार फुर्तीला है तो क्यों ना तेज कदमों के साथ 1 रन को चुराया जाए। 1 रन तेज कदमों के साथ देवदास जी ने चुरा लिया और अपने साथीदार को अब समझा रहे हैं कि आखिर गेंदें कम बची हुई हैं और मुझे लगता है कि अब शायद 11 गेंदें शेष बची हैं। 21 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तो इन बचे हुए गेंदों में क्या कुछ होता है। दामाद स्ट्राइक एंड पर संदीप कामत गेंद को लेकर तैयार होना है और कोई कसर नहीं रखना चाहते, इस वजह से उन्होंने देख लिया कि फील्डर अपनी जगह उपस्थित है या नहीं। उल्टे हाथ से गेंद को खेल दिया, कैच हो सकता है। जी नहीं, गेंद जारी है बाउंड्री लाइन के बाहर और अंपायर थोड़ा सा रुक कर इंतजार कर रहे हैं कि आखिर गेंद चौके में तब्दील हुई या छक्के में। फिर श्रीनिकेत जी ने हाथ को संकेत किया कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई और ये 4 रन। 25 for 4, 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैचेस में आप देखते हैं जब महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे तब वो अपने साथीदार टेल एंडर्स को इसी तरह समझाते थे कि आपको क्या करना है, उनका हौसला बढ़ाते थे और इसी तरह से देवदास जी अपने साथीदार का हौसला बढ़ा रहे हैं। इस छोर से ये गेंद फुल टॉस थी, फ्लैट शॉट खेल दिया, बहुत शानदार स्ट्रोक बाउंड्री लाइन के बाहर, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन।
क्या बात है, एक और जबरदस्त स्ट्रोक दामोदर के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। और जैसे ही मैंने जी हाँ बात छेड़ी कि महेंद्र सिंह धोनी अपने साथीदार को, अपने टेल एंडर्स को लेकर किस तरह से मैच को बनाते थे। महेंद्र सिंह धोनी जी जो कि इस वक्त मैंगलोर में ही हैं, बिल्कुल कोइंसिडेंस है और आश्चर्य की बात है। मैं कहूंगा कि जितने सारे चाहने वाले हैं निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे कि वो उनसे मिले। और द विकेट, इस छोर से ये गेंद उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, चूक गए, इस बार पैरों से टकराई और कहीं ना कहीं इस अपील को अंपायर ने सहमति नहीं दी और ओवरथ्रो के रूप में दूसरा रन का रास्ता बना लिया बैट्समैन ने। शानदार रनिंग है लेग बाय के रूप में। 31 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 31 for 4। तो दामोदर स्ट्राइक एंड पर संदीप यानी कि सैंडी गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। कमेंटेटर बॉक्स छोर से उनकी गेंद ऑफ द विकेट, दामोदर को उछालने का प्रयास किया, ऑफ स्टंप के बाहर थे, इस बार चूक गए। संदीप बहुत योजना बना रहे हैं, चतुराई के साथ गेंदबाजी करने। वो जानते हैं कि जिस तरह से बैट्समैन प्रयास कर रहा है दामोदर कि आक्रामक स्ट्रोक लगाए जाए तो क्यों उनको ऐसा अवसर दे, इसीलिए वो काफी चतुराई के साथ लाइन और लेंथ पे गेंद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा द्वंद्व, एक युद्ध आपको देखने को मिल रहा है। और द विकेट, संदीप की गेंद इस बार जी हाँ एक और बार बीट हो गए और इसी के साथ मैं समझता हूं कि ओवर समाप्त हो चुका है। तो 4 ओवर के समाप्ति पर कुल मिलाकर रन बन चुके हैं 31, 4 विकेटों के नुकसान पर 31 for 4। आप देख रहे हो शानदार पैंथर्स सुपर लीग, माफ कीजिएगा, तो पैंथर्स सुपर लीग का ये शानदार मैच इस वक्त चलता हुआ 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, मात्र 1 ओवर शेष बचा हुआ है। दोबारा सारे स्ट्राइकर्स, आरके स्ट्राइकर्स के सारे खिलाड़ी मैदान पर एक झुंड, एक काफिला बनाकर तैयार हो रहे हैं कि क्या योजना वो बनाए आखिरी ओवर में। पैंथर सुपर लीग जैसा आप जानते हैं कि एक ऐसी क्रिकेट श्रृंखला जो हमेशा जीएसपी के लिए एक उत्सव की तरह होता है और अलग अलग खाद्य पदार्थ जो कि तैयार हैं और चाय नाश्ते का भी बंदोबस्त किया गया है। तो जितने सारे क्रिकेटर्स हैं जीएसपी के, कृपया उस मेन स्टैंड की ओर जाएं, वहां पर उनको सारे वो खाद्य पदार्थ मिलेंगे, ग्रहण कर सकते हैं। इत्मीनान के साथ गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेकर वो मैच का आनंद ले सकते हैं। आखिरी ओवर लेकर दूर वाले छोर से गेंदबाज आ रहे हैं। गेंदबाज कार्तिक अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, जबकि स्ट्राइक एंड पर देवदास जी हैं। और आज देवदास जी ने भले ही चौके छक्के न लगाए हो, लेकिन उनके अनुभव के, उनकी चतुराई बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रही है। अपने अनुभव को झोंक कर अपने साथीदार का हौसला बढ़ाकर वो उनसे आक्रामक बल्लेबाजी करवा रहे हैं। उस छोर से कार्तिक की गेंद देवदास जी को ग्राउंड विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और आक्रामक तरीके से खेलने का प्रयास किया और रनआउट का अवसर, आसान सा मौका। इसी के साथ बैट्समैन देवदास जी आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। एक और विकेट का पतन। तो राकेश कामत आ रहे हैं नए बैट्समैन नॉन स्ट्राइक एंड पर। और राकेश आप देख रहे हैं उनके सर में वो चोटी आप देख रहे हैं, एक अलग पहचान राकेश जी की जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद हैं। दामोदर स्ट्राइक एंड पर कार्तिक गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। दामोदर क्या कुछ कर पाते हैं, आखिरी ओवर प्रगति पर है। हालांकि उनके अनुभवी साथीदार देवदास आउट होकर डकआउट में विश्राम कर रहे हैं, तो अब उनको अकेले ही ये युद्ध लड़ना होगा और इस वजह से वो अपनी तलवार की धार वैसे भी कर चुके हैं। तो क्या बात है, उस छोर से राउंड विकेट, कार्तिक की गेंद ऑन साइड पर घुमाने का प्रयास किया, एक और रनआउट का मौका। विकेट कीपर ने बहुत जल्दी झपटते हुए गेंद को उठाकर गिल्लियां उड़ा दी। इसी के साथ एक और विकेट का पतन हो चुका है। तो राकेश आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। दोनों बैट्समैन हर एक गेंद पर रन चुराने का जो प्रयास उनका है उसमें लगातार 2 बार विफल हो गए। विकेट कीपर के हाथ सबसे सुरक्षित होते हैं और ऐसे में जिस तरह से बैट्समैन ने प्रयास किया कि वो 1 रन को चुरा लें, विकेट कीपर ने ऐसा होने नहीं दिया। जल्दी जाकर उन्होंने
काफी चपलता के साथ गेंद को उठाकर गिल्लियों को उड़ा दिया और बैट्समैन आउट होकर पवेलियन लौट गए। तो इस प्रकार विकेटों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 6 पर। 31 रन जैसे ही पहुंचे ऐसा लगा कि आखिरी ओवर में कुछ रन बनते हुए 40-45 रन कहीं ना कहीं बनाया जा सकता है कोडियाल सुपर किंग्स की तरफ से, लेकिन परिस्थितियां बदल गई और इसीलिए क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहते हैं। उस छोर से कार्तिक योजनाबद्ध तरीके से राउंड विकेट लंबी दौड़ के साथ उनके गेंद और आक्रामक तरीके से उछाल दिया और एक अद्भुत कैच कहा जा सकता है। गेंद को ऑन साइड पर तिरछे बल्ले से आड़े बल्ले से घुमाकर खेल दिया था। फील्डर जो लगभग मिड विकेट में शॉट में मौजूद थे, गेंद उनसे जाकर टकरा गई। फॉलो थ्रू में कार्तिक आ गए, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और मैं समझता हूं कि ऐसा सिर्फ पैंथर सुपर लीग में आपको देखने को मिलेगा। अद्भुत अनोखा कैच, इसी के साथ 7वां विकेट का पतन हो चुका है। तो किस तरह से कैच बनते हैं, बिगड़ते हैं, चौके लगते हैं, छक्के लगते हैं, विकेट्स गिरते हैं, गेंदबाजी होती है, शानदार खेल देखने को मिलता है। अलग अलग रंगों से सजाया सवारा गया खेल जिसको क्रिकेट कहते हैं। शानदार खेल देखने को मिला। एक ऐसा आक्रामक स्ट्रोक था, फ्लैट खेला गया स्ट्रोक जिसमें ताकत बहुत ज्यादा था स्ट्रोक के पीछे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद फील्डर के जांघों से टकरा कर गेंद हवा में गई और कार्तिक ने फॉलो थ्रू में कैच कर लिया। उस छोर से गेंद विकेट कीपर को एक और अवसर है, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में एक और बैट्समैन आउट हो गया है। इसी के साथ 8वां विकेट गिर चुका है। तो दो गेंदें शेष बची हुई हैं, 8वां विकेट गिर चुका है। ऐसा लग रहा है कि 31 का जो कुल योग है, मानो जिस तरह से आप ऐड देखते हो फेविकॉल से चिपकाया गया हो, वहां से टच से मस नहीं हो रहा है, न आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोडियाल सुपर किंग्स की मानसिक स्थिति कहें, साइकोलॉजिकली थोड़ा सा वो बैकफुट पर हैं, दबाव में दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि 31 के आगे रन्स नहीं बन रहे हैं। जिस तरह से दो बैट्समैन विशेष तौर पर देवदास जी आउट होकर पवेलियन लौटे, उसके पश्चात परिस्थितियां बदल गई और अब ऐसा लग रहा है कि 31 के आगे क्या बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, आने वाला समय बताएगा। 2 गेंदें शेष बची हैं। उस छोर से कार्तिक, क्या कमाल की गेंदबाजी उन्होंने इस आखिरी ओवर में किया है। कप्तान ने जानबूझकर, स्ट्राइकर्स के कप्तान ने विशेष तौर पर कार्तिक के इस आखिरी ओवर को रखा है। उस छोर से गेंद और इस बार मौका शायद बने जी नहीं, इस बार नॉन स्ट्राइक एंड के बैट्समैन ने अपने आप को रोक लिया। पहले आगे बढ़ चुके थे लेकिन फिर उन्होंने देखा कि रनआउट के रूप में लगातार विकेट्स गिर रहे हैं, तो अपने बढ़ते हुए कदमों को उन्होंने खींच लिया और सुरक्षित कर लिया अपने आप को। 31 for 8, 31 रन 60 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद लेकर कार्तिक गेंद को लेकर तैयार हो रहे, उंगलियों के बीच में गेंद को फंसाकर बस जादू ही कर दिया कार्तिक ने। कमाल की गेंदबाजी वो इस आखिरी ओवर में कर रहे हैं। मानो बैट्समैन को कोई ऐसा अवसर ही नहीं दे रहे हैं कि वो बल्ले को चलाएं और चौके और छक्के में उसे तब्दील करें। वो छोर से कार्तिक की गेंद, बैट्समैन थोड़ा सा शफल कर रहे हैं, ये गेंद उछालने का प्रयास विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर ने गेंद को कैच कर लिया और एक विकेट गिर चुका है। तो इसी के साथ आरके स्ट्राइकर्स ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी और फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए रनों पर रोक लिया। कुल मिलाकर 31 रनों पर रोक लिया कोडियाल सुपर किंग्स को, यानी कि अब लक्ष्य है आरके स्ट्राइकर्स को जीतने का 32 रनों का। ऐसे में क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी, बहुत दिलचस्प मुकाबला। जीएसबी योद्धास और कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब, दोनों टीमों से अनुरोध है कृपया वो कमेंटेटर बॉक्स की तरफ आए टॉस के लिए, हालांकि मेन स्टेज की तरफ जाएं टॉस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों टीमों के कप्तान से अनुरोध करते हैं कि कृपया वो टॉस के लिए Institute of Creative
creative art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika, C Institute of Creative Art, at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. And it doesn't want to miss that winning track, and that's why I'm talking about. This match is definitely going to be very interesting. Even it's a 32, it's a very not that much of a huge total to chase down, but just considering the fact that Kodial Super Kings has got some good bowling department, and I think a little bit hard work which is required from the batters of Super King. Little bit correction for Arcus Strikers to get that 32 runs. Of course, coming back to these two opening batters, Varun Shanbag, and he not really has got a good time in the middle for the first match, as without facing a single delivery, is back into pebble in the form of run out. But he doesn't want to continue the mistake what he did in the previous match. If a little bit sensible batting is required from these two opening batters if they wanted to win this match. But taking the advantage of the power play is always going to be useful for any team, and we will see how well these two opening batter will going to capitalize this first over of the power play. From the far end, from the professional career end, it's going to be a Surendra Pai will going to start the proceedings. The first ball looks like it's Malinga is bowling there from the professional career end. The kind of the bowling action absolutely is a very much suitable for the international. Of course, he's a former cricketer now. He's retired from the cricket. So Malinga is one of the popular fast bowler from Sri Lanka. The same kind of bowling action there from Surendra Pai to start with from the professional career end. Right above the wicket. So this time beautifully driven straight down the ground, but not really having enough timing in that stroke. Before the fielder from deep long on region to cut it off down at deep long off. Ample time for the batter Varun to complete that couple of runs. Positive start there from Varun, as he picked up a couple of runs from the bat. The Varun is a kind of batter who can be very handy in both format, whether it's on-drum or over-arm cricket. And watching him is destroying the bowling attack. The Padu Tirupati trophy, which is organized in the last month, 24th or 25th of the last year, December 24th, 25th, is really batted fantastically for his team. And again, the ball is going down the leg stump, going to be punishable from the umpire, not from the batsman for that particular delivery. So Surendra Pai asking that short mid-wicket fielder a little bit squarer, and of course he's in a short mid-wicket region. And here is again Surendra. Full toss delivery and punishable. I don't think it's going to be a chance for any fielder to stop that one. Of course, the mid-wicket fielder's tried his level best to stop that boundary, but it's a juicy full toss. It's not really kind of deliveries required in this power play over when you're not having enough fielder in the deep. There's not ample pace in the bowling and didn't got adequate field for that.
little margin for error when you're not having a fielder in the deep. The full toss, juicy full toss, and one thing to say for a batsman to thank you very much for the bowler for that juicy full toss. And score jumped Next into match 7 on the board between Yodas, without loss of any wicket. GSB Yodas versus next match versus GSB Yodas versus Kodial United. Toss won by GSB Yodas and Again, selected what to a ball. improvisation! What a improvisation! The effortlessly played, isn't it? Absolutely, just like what you were talking about a Natraj stroke. The Kapil Dev, the former Indian cricketer, that used to play that kind of Natraj, so lifting his front foot, left foot, and look at the way that is absolutely magnificent, isn't it? Effortlessly played. Again, the bowler is not really learning from the mistake. Of course, Kapil Dev is celebrating his birthday yesterday. One of the really the fantastic all-rounder has ever produced for Indian cricket. Snacks ready jalla. Una buns, charmbur, fresh watermelon. 11 without loss of any wicket. Team owners, visitors, supporters, pura jana nevunu. Wow! What a shot that one! Absolutely terrific one. Absolutely, it's a mesmerizing cricketing stroke there from the batter Varun Shanbag. Just I'm mentioning about his ability, his potential. He's not just like a kind of batsman who can deal with the under-arm cricket, but even in over-arm cricket, it's a terrific shot indeed. Just look at the way that he is hitting the ball. It's so easy for him when he was in arc. Ball will going to disappear out of the park. 17 without loss of any wicket. Arc strikers, they are really back in this game in the first over itself. The half of the job is completely done in the first over itself. Now I think the fielding team is little bit now feeling the pressure now how to stop the opposition team from that winning runs. 17 runs which is scored. That means another 15 runs required for the victory in remaining 4 overs. Just under 4 runs per over is the required run rate. Varun Shanbag, I just mentioned about, he missed the opportunity in the previous match when he's got run out without facing a single delivery. But still they managed to win the match. That was really a dramatical change in the game when it's the 6 runs required for the victory from the last over. And Ramakrishna, I think, is a bowler who is really changing the complexion of the match, bowling 6 dotted deliveries in the final over. It's an unbelievable bowling performance. And because of that, I think arc strikers, they came into this particular Panthers Super League by victory. And their level of confidence is definitely going to be galvanized after that victory from victory in their first league match. So something miracle required from the bowling department of team Kodial Super Kings. First ball, and batsman has got no panic at all in that occasion. And Ashwath Pai know exactly the kind of batting is required in this particular situation, as he is just dealing with a single, rightly so. He know exactly the Varun is a kind of batsman who can be the most dangerous batsman, and he's definitely is in a good nick in the first over itself. He's hitting the ball quite nicely, so his job is to pick the single and try to give the strike as much as possible for his partner. And Varun Shanbag takes a fresh guard from umpire Shiniket and bowler from the commentary box, and Pranav Bhatt just wanted to from the UTC end. Right arm over the wicket balls. Drives that one again. A good stop there by the fielder. Off stop, in fact. Of course, the fielder Sunil there in the short extra cover is a one more very good fielder as far as the fielding department of Kodial Super Kings is concerned. But he couldn't manage to stop the single from these two batters. So 19 without loss of any wicket. Slowly they are cruising towards a victory. In fact, not slowly, but it's a rapid speed. 17 which is came from the first over. This time looking for the reverse stroke. Ball is in there. Gaurav will going to take the catch. He's really got a good time. He's got some runs from his bat. Now he's just giving some help for the bowler to pick the wicket by taking that very good running catch. He's standing in a very short fine leg region. In fact, batsman looking for the reverse stroke, but not really having a control of that shot. Full toss delivery. Premeditated switch it is attempted. Pays the penalty for that. And first wicket of arc strikers are back into pavilion. It's 19 for the loss of 1 wicket.
Karthik just walking towards the middle. Fantastic all-rounder for the side. He's also missed the opportunity in the previous match to showcase his talent. He's unfortunately back into pavilion as he was trying for the big shot. But this time I think the 19 is a very good score on the board. Just a sensible batting which is required here for Marcus Strikers to win this match. But a lot of hard work required here from Cordial Super Kings. If they wanted to win the match, this one wicket will not going to help them to win the match. But it needed the wicket in each and every over, a couple of wickets required. Just straight to chance of score like region. Chance of run of that. Oh my goodness. In one ball, 2 chances missed out there by the fielder at square leg. He's standing just behind the square. The ball went straight to him, powerfully driven in fact, but that's a straightforward catch there for the fielder. But at the same time, one more opportunity which is created for the run out, and once again he's missed out. So 2 occasions in one ball, the missed out. Karthik being lucky here, as is still there in the middle. 19 for the loss of 1 wicket. Pranav balls. That one more opportunity I think is a cotton ball chance, but it's a tough one. It's not the good hand and side for the bowler. Left hand side is just stretching his left hand, but not quite enough to take the catch. But he's just stopped the ball, but not really able to stop the single from Karthik. He's off the mark. 20 for the loss of 1 wicket. Another 12 more runs required for the victory. Again Pranav seeming away from us. Right arm over the wicket. Swings that one down to deep mid wicket. Boundary for a 6. The fielder there in the mid-wicket region tried his level best to stop that one. Ball just missing the advertisement board down at deep mid-wicket region for his one more 6 there from the bat of the batter Varun Shanbag. Second sixer came from his bat. So 26 for the loss of 1 wicket. That means just 6 more runs required for the victory for Arcus Strikers. So Arcus Strikers definitely they're eyeing on the net run rate, isn't it? If they're able to finish the match as soon as possible, that will definitely going to help them to get some good net run rates. That's why Arun Shanmag is on fire. He wanted to complete the match as quick as possible. That's so important when you're playing league matches. The net run definitely going to comes into play. When it's going to be points or level, the winner going to be decided by seeing the net run rate. So that Arcus Strikers looking to finish the match as quick as possible. 2 overs, 26 runs. They're going exactly 13 runs per over. The 3 overs remaining, just 6 runs required for the victory. The required is just 2 runs per over. But Cordial Super Kings looking very dangerous here. As again the first ball, little bit misunderstanding between the wicket. Of course, the Karthik after pushing the ball down to backward point region, he wanted a single. Not really. The Varun wanted a single, but Karthik is not interested. Rightly so. No need to panic at all. Just one big shot will go in to complete the match here for Arcus Strikers. Surendra Pai. Right arm over the wicket, but Surendra Pai not really letting the opposition to finish the match as quick as possible, because you know exactly at least they wanted to take the match towards 4th or 5th over. But Karthik in the occasion tried to hit the ball against the line, not really coming to the line of the ball. Play that against the line of the delivery, pays the penalty for that. Wicket number 2 is back into pavilion. It's 26 for the loss of 2 wicket. Coming back to the next match, the match number 9 of the day, number 1 of this prestigious Panthers Super League, which is proudly organized by Deadly Panthers as they're celebrating their 15 years. The KSK versus Arcus Strikers. Little correction, it's a GSP Yoda versus Cordial United Sports Club. Toss which is completed, and captain of Cordial captain of GSP Yodas won the toss, and they elected to ball past. So 26 for the loss of 2 wicket. Another 6 runs required for the victory. The new batter just came into middle, Pratap Nayak. But Surendra Pai is trying his level best to get this match to very close to the 4th or 5th over. But Arcus Strikers, they wanted to finish it off the things as quick as possible. Surendra from the professional career end.
Right arm over the wicket. This time bowler helping Arcus striker to finish the match as soon as possible, because that was a ball pitched outside the line of leg stump too much. And so that wide called by umpire. 27. Just 5 more runs required for the victory. Surendra just looking for some experiment, but couldn't manage to control the line. This time Pratap, it looks like he wanted to disturb the concentration of the bowler by moving here and there. But bowler is too clever, seeing the batsman's intention. He's just wanted to get that one down to onside region, but he bowled outside the line of off-stump. Batsman nowhere near the pitch of the delivery. Luckily that ball just missing this outside edge of the bat. Oh my goodness, the chance here for the fielder, and the senior most the fielder of this side, Devdas Naik, is not missing the opportunity here to take the catch. The one more wicket is back into pavilion. RK strikers, there's just missing the momentum what they got in the first 2 overs. They're losing the wickets. Try to finish the match as quick as possible. This is not a kind of cricketing stroke. It's very difficult to explain what kind of cricketing stroke is trying for the batter. And maybe is looking for the scoop, which is a reverse scoop, but not really finding that one from the middle of the bat. He's got a top edge, and the fielder making no mistake at all. 27 for the loss of 3 wickets. Now the new batter Saurabh Bhakta is promoted up in the order. Maybe he wanted to get some batting practice from the remaining league matches. The captain wanted to see him in the... This time ball is in there for a while, but luckily that ball landed between square leg and deep backward square leg. The ball is in the air for a while, and I think if any good fielder, athletic fielder inside the ring can able to take this catch, but unfortunately no one is trying for that. One more single. 28 for the loss of 3 wickets. Now 4 runs away from the victory. Varun Shanbag so far he scored at 23 runs in just 8 balls. And that shows his explosive batting. Now just 4 runs required for the victory. Saurabh. This time he plays quite nicely between cover point and backward point. They're running for coming back for the second as well. So a couple of runs. With that couple of runs, Coburn now moves on to 30. Just 2 runs away from the victory. Just 2 runs away from the victory. They got the 2 overs to spare. 12 balls, 2 runs required for the victory. The required run rate is just 1 runs per over. 1 run per over. It's not 1 runs per over. It's 1 run per over. And Rakesh will go into ball that 4th over. Just a couple of runs required for the victory. And Saurabh Bhakta, I think he is the one got opportunity. Saurabh Bhakta has got opportunity to get the winning runs for his team. Rakesh with the jersey number 21. Maybe he's looking for some magic here. I request the fielding team to make it past. It's a 30 for the loss of 3 wickets. 2 runs required for the victory. We can see some closing fielders, extra fielders coming inside the ring. Rightly so, when you are depending only 2 runs in 2 overs, need to restrict the singles rather than the boundaries. There is a backward point, short extra cover, short mid off, silly mid off in fact. Silly mid off, silly mid on. Short mid wicket is very close to the batsman. Short square leg. There is a leg slip. Means it's a leg slip means it's almost up. This short fine leg is very fine. And 1, 2, 3 and 6 fielders inside the ring. 2 runs required for the victory. Wicket keeper going a little bit behind. And bowler Rakesh will go into ball. First ball. This time Bhakta is sensible batting. Bhakta is thought that I think he's the right person. Varun Shanbag is the right person who will definitely will going to finish the match for his team, because he's the one who's take the match away from the opposition by his explosive batting. 25 runs he scored, and now he's got opportunity to get the winning run. But this time he wanted to play unorthodox cricketing stroke. Reverse stroke is trying for, misses this completely from the bat. So dotted delivery there from Rakesh. The scores are levelled, just a single run required for the victory. Rakesh to Varun. This time he got a winning run for his team.
and he is the one scoring 26 runs unbeaten, and a second victory of our RK Strikers. And not only they won the match, but they won the match with a big margin. They won the match by 7 wickets and keeping 1.4 deliveries to spare. They finished their match, and definitely that will going to give a lot of benefit as far as net run rate is concerned. So now it's the time to announce the man of the match. Of course, it's a low-scoring game. When it's a low-scoring game, of course, the bowler will going to deserve the man of the match. And a man who really dismantling the batting department of their opposition, it's none other than Karthik Nayak of RK Strikers, who was judged as a man of the match for his outstanding bowling figure of 2 overs, 1 maiden, conceded 2 runs and picked up 4 valuable wickets. So may I request Karthik, please go and collect your man of the match award from our chief guest. Karthik Nayak for his outstanding bowling spell of 2 overs, 1 maiden, 2 runs and 4 wickets. RK Striker Karthik man of the match ಗೆ ವೇದಿಕೆ ರೇವುಕ Before the next match will trophy ದಿವು ಕವಣ್ಣಿ ಮುನ್ಗೆದ್ದ. Before the next match will going to start here, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. I request the extra player of Kodial United Sports Club and GSP Yodhas to please report to the stage immediately to tell the player's name. Ali Kodial United Sports Club ಹಾಗೂ GSP Yodhas ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು. दोन टीमांचे 12th मॅन कमेंट्री बॉक्स आत्ता चुका.
Right, the ninth match of the tournament is now going to start between Kodial United Sports Club versus GSB Yodhas, and news is here from the center that the captain of GSB Yodhas, after won the toss, elected to field first, and because of that the openers of Kodial United Sports Club are the crease, and the first ball of the match is now coming up. The bowler starts the fresh proceedings. First ball comes. पहली गेंद outside the leg stump. गेंद को हल्के से मोड़ना चाहता, गेंद एक्स्ट्रा बाउंस लेते हुए अंतिम क्षण में पहुंचे फॉरवर्ड शॉट लेग पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका एक रन न प्राप्त करने का। तो इस एक रन के साथ जीएसबी योद्धास के खिलाफ कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब का खाता यहां पर खुल चुका है, एक रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू हो चुका है। लंबे कद के खिलाड़ी, चश्मिश खिलाड़ी इस वक्त अपने गेंदबाजी पर जाते हुए, फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए, पहला और एकमात्र पावर प्ले उनकी पारी का यहां पर शुरू हो चुका है। और जहां तक सवाल है इस वक्त स्ट्राइकर एंड का, तो रमेश इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए, अतुल गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिना तो द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और इस बार प्लम्ब इन फ्रंट, अप गोज द फिंगर फ्रॉम अंपायर। शफल होते हुए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, चूंकि गेंद उनके पैरों पर टकराई और उनका पैर बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने रहा, और आखिरकार अंपायर को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। तो इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स वन फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट फॉर कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब इन द फर्स्ट ओवर ऑफ देयर इनिंग्स। तो पहला विकेट यहां पर गिर चुका है एक रन के योग पर, और पहले ओवर में जीएसबी योद्धा के आरंभिक गेंदबाज यहां पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं। और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है कोडियाल यूनाइटेड के बल्लेबाजों का, तो एक साझेदारी पार्टनरशिप की इस वक्त उन्हें सख्त जरूरत है। और देखते हैं इस ढलते हुए शाम में क्रीज पर मौजूद अब ये दोनों बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर करते हैं। धूप बिल्कुल मैदान से गायब हो चुकी है और सूरज मैदान के दाईं ओर नीला आकाश तले अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है। लगभग आग का गोला यहां पर नजर आता हुआ, और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी कम होती हुई, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, स्टंप्स को कवर करने के बाद लेग स्टंप से बाहर की ओर पैर से लगकर गेंद निकले थे, जब तक गेंद को शॉर्ट फाइन लेग पर विकेट कीपर फील्ड करे, बल्लेबाज के पास रन लेने का कोई अवसर नहीं। स्कोर रुक चुका है एक रन एक विकेट के नुकसान पर। वन फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। मंजू नायक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और फिर से एक बार गेंदबाज अपने गेंदबाजी पर जाते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज अतुल, दाहिने हाथ के बल्लेबाज मंजू के लिए ये गेंद फुल टॉस, ड्राइव किया गेंद को, रन के साथ दौड़ पड़े। नजदीकी मामला हो सकता था अगर एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में ठीक तरह से गेंद बैठ जाती तो, लेकिन गेंद उनके हाथों से छूटी और इस बीच बल्लेबाज के पास समय था एक रन प्राप्त करने का। दो रन एक विकेट के नुकसान पर, 2 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। एक बेहतर गेंदबाजी का क्रम यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज अतुल अपनी ओर की अगली गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार। इस बार गेंद को खेलना चाहा चूंकि, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, कपल ऑफ बाउंसेस और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी, और एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अतुल लंबे रन अप के जरिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिना तो द विकेट, ये गेंद पटकी हुई गेंद स्टीयर किया, बैकफुट पर जाने के बाद रन के लिए दौड़ पड़े, पॉइंट पर गेंद पहुंचे, निशाना चूका, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे और आखिरकार एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपने स्थान को बदलते हुए, अपने छोर को बदलते हुए, कुल मिलाकर स्कोर इस वक्त पहुंच चुका है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर के समाप्त, एक बेहतर ओवर अतुल का समाप्त चुका है। 3 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट स्कोर्ड बाय कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब आफ्टर ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ದೇ ಮೇಡ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಕೀ ಒಂದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಬೀಗದ ಕೀ ಒಂದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So back to this game, 3 for the loss of one wicket. First over completed and the second over is now going to begin in their innings. गेंदबाजी में जमावट, गेंदबाजी में इस वक्त उतरते हुए प्रोफेशनल एंड की ओर से पवन, और इस वक्त फील्डिंग में जमावट चलती हुई। पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर धीरे धीरे
चाहते हुए। कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल अभी भी उनकी पारी में बाकी। और जहां तक सवाल है इस वक्त फील्डिंग के नजरिए क्या, तो काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता है। डीप थर्ड बैन, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन, कवर पॉइंट इस वक्त, डीप फाइन लेग, माफ कीजिए, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट इस वक्त तैनात और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान एक फील्डर मौजूद। डीप कवर पॉइंट और डीप एक्स्ट्रा कवर के बीच जो खाली क्षेत्र पड़ा है वहां पर एक फील्डर को तैनात किया गया ठीक सीमा रेखा के बाद। पहले गेंद टॉप एज, मौका स्क्वायर लेग फील्डर के लिए और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। He just trying to hit the ball over the fence at the last moment, but the ball gets some extra bounce and collected after being got his stop it, ballooned into there and collected perfectly at short square leg, and that is the wicket number 2. तो एक लड़खड़ाती हुई शुरुआत यहाँ पर कोडियाल यूनाइटेड सुपर क्लब स्पोर्ट्स क्लब कर चुका है। 3 रनों के ऊपर 2 विकेट यहाँ पर खो चुका है। इस बार थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद, स्टंप्स को थोड़ी सी शफल करते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहता, टॉप एज पर गेंद टकराई, गेंद हवा में उछली और आखिरकार शॉर्ट स्क्वायर लेग पर गेंद को लपक लिया गया फील्डर गिरीश पंडित द्वारा। तो दूसरा विकेट गिर चुका है 3 रनों के ऊपर। कुल मिलाकर उनकी पारी का दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, कोडियाल यूनाइटेड को एक लंबी साझेदारी की सख्त जरूरत है। और जहां तक जीएसपी योद्धास के गेंदबाजी का सवाल है, तो एक सतर्क लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। नए बल्लेबाज श्रीनिवास पाई इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल एंड इज नाउ गोइंग टू फेस द बॉलिंग ऑफ पवन हु स्टार्टेड द बॉलिंग जस्ट शॉर्ट व्हाइल अगो। और इस वक्त रनअप में कुछ हद तक बाधा एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा। बाएं हाथ, माफ कीजिए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद दैट इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन एंड अप गोज द फिंगर, द बॉल जस्ट क्लिपिंग द बिल्स एट द लास्ट मोमेंट। गेंद लगभग बिल्स को उड़ा ले गई अंतिम क्षण में स्टंप्स के ऊपरी भाग पर टकराने के बाद और ये बोल्ड आउट के रूप में यहाँ पर विकेट गिर चुका है। हालांकि बिल से डिस्टर्ब हुए लगभग इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, देखिए यहाँ पर रिप्ले पर दिखाया जा रहा है। और जहां तक सवाल है विकेट का, तो विकेट यहाँ पर गिर चुका है बोल्ड आउट के रूप में। तो तीसरा विकेट गिर चुका है 3 for 3 एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली शॉकिंग स्टार्ट फॉर कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब। 3 for the loss of 3 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और 3 चोटी के बल्लेबाजों को सिर्फ 3 रन बनाने पर इस वक्त खो चुका है और निस्संदेह यह एक खराब शुरुआत यहाँ पर कही जाएगी। और जहाँ तक जीएसपी योद्धास की गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त जीएसपी योद्धास के गेंदबाज हावी होते हुए बल्लेबाजों के ऊपर और नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ इन संकटमय परिस्थितियों में अतुल शेनाई, द नंबर 5 बैट्समैन, इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल फॉर कोडियाल यूनाइटेड एंड ही इज नाउ गोइंग टू फेस द बॉलिंग ऑफ पवन। तो फील्डिंग में यहाँ पर जमावट चलती हुई, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त तैनात, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर मौजूद, डीप कवर पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप कवर पॉइंट के दरमियान एक फील्डर तैनात ठीक सीमा रेखा के पास और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया जस्ट ओवर द एक्स्ट्रा कवर, फील्डर से डाउन टू लॉन्ग ऑफ और फील्डर जब तक गेंद को फील्ड वहां पर करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। तो हल्के से गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया था, चिप कर दिया था जस्ट ओवर द एक्स्ट्रा कवर फील्डर्स हेड। जब तक वाइड इस लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान फील्डर दौड़कर आकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 1 रन प्राप्त करने का। ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। तो शाम का वक्त और रोशनी काफी हद तक मैदान पर कम हो चुकी है। मैदान के बाहर जो रास्ते के स्ट्रीट लाइट्स, रास्ते की बत्तियां इस वक्त जल चुकी है और यहाँ पर ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला, नॉट क्वाइट मिडली गेट द लास्ट मोमेंट, गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 6 for the loss of 3 विकेट एंड दिस इज द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। स्टिल द बैट्समैन ऑफ कोडियाल सुपर, in fact it's Kodyal United just searching for the right track और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची मिड विकेट पर, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, धीमी प्रगति यहां पर करता हुआ कोडियाल यूनाइटेड
और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, जैसे कि मैं पहले भी कई बार फरमा चुका, इस वक्त एक साझेदारी की उन्हें सख्त जरूरत है। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर, गेंद को उछालना चाहा लेकिन गेंद बल्लेबाज ने जितना उछाल का इस वक्त अंदाजा लगाया था उतनी ज्यादा उछाल नहीं ली। गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रही और आखिरकार बल्ला ऊपर से अड़ा गए। गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रही और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ ओवर नंबर 2 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 2 overs completed, 7 for the loss of 3 wicket. Still the batsmen of Kodial United are now searching for the right track. 3 overs remaining in their innings. 3 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में कोडियाल यूनाइटेड के बल्लेबाज अपने टीम की कुल रन संख्या को किस मकाम तक ले जा पाते हैं। तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अतुल, जो कि अपना दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। और जहां तक सवाल है स्ट्राइक का, तो मंजू इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए अतुल की गेंदों का ओवर की पहली गेंद, ये गेंद फुल टॉस ऑन साइड पर मोड़ा, खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर गेंद पहुंची, एक रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा और थ्रो पहुंच चुका इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर। और दोनों बल्लेबाज एक रन के साथ आखिर संतुष्ट हो चुके। एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। तो फिर से एक बार फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए शॉर्ट फाइन लेग फील्डर को इस वक्त आगे बुला लिया गया है। मिड विकेट पर, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद इस वक्त मौजूद, सिली मिड ऑफ इस वक्त थोड़ा सा स्क्वायर था ना दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। और इस बीच अतुल गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर उछाला, नॉट क्वाइट मिड विकेट, बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन नहीं, गेंद पहुंची इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान। जब तक थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद गेंद को जब तक फील्डर फील्ड करे, बल्लेबाज के पास समय अवकाश एक रन प्राप्त करने का और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 9 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और फिर से एक बार अतुल गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को स्कूप किया, इस वक्त मौका हो सकता है, डीप मिड विकेट, फील्डर के हाथों में गेंद और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, not quite middling it at the last moment. Is got a top edge on that. The ball ballooned into the air and comfortably held just inside the fence at deep mid wicket by the fielder. और यहाँ पर विकेट गिर चुका है। Have a look at this in the replay. किस तरीके से गेंद को उछाला था इस वक्त और गेंद हवा में होती हुई सीधे पहुंची दोनों जो फील्डर जो मिड विकेट पर खड़े हुए थे उनके हाथों में। चौथा विकेट गिर चुका है 9 रनों के ऊपर। And this is an absolutely a struggling time continuing here for the batsmen of Kodial United. 9 runs scored for losing 4 wicket, and still badly they need a partnership at this stage if they have to get back into this match. V4 News 24/7 चैनल पर इस श्रृंखला का लाइव टेलीकास्ट इस वक्त दिया जा रहा है, एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब के जरिए। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा पैंथर्स सुपर्स लीग ये श्रृंखला एक टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति यहां पर करती हुई। अगली गेंद ओ बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, सो एक्स्ट्रा बाउंस एंड द बॉल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। एक कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार oh that is an absolutely fantastic one this time, extra slower and the ball came in a much straighter line and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman, and this is a fantastic one. Luckily the batsman doesn't got any nick or edge on that, and this is an absolutely terrific delivery from the bowler. Scoreboard stays at 9 for the loss of 4 wicket. This is the third over in progress. और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद, oh that one absolutely once again a good one, fantastic delivery, so consecutive fantastic delivery to end the over. 3 overs completed, the problems are now more building up for the batsmen of Kodial United Sports Club. They only managed to 9 runs on the board and they lost 4 top enders wickets, and this is an absolutely shackling progressing year for them. Still 2 overs left in overall calculation in their innings. So Deepak Badal, the bowler, is now brought into the attack and the 4th over starts.
दीपक बादल, इनफैक्ट नॉट बड़ाल, इट्स बादल. सो कुछ भी हो, बादल या बड़ाल, लेकिन दीपक है वो. तो दीपक इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और नया ओवर प्रारंभ होता हुआ उनकी पारी में. और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद पैरों पर टकराई और सीधे पहुंचे पॉइंट पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. उस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है इस वक्त. 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है. 11 बॉल्स रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स. और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस, पुल दैट वन बट स्ट्राइक टू फील्डर एट लॉन्ग ऑन. Can't finds the gap as well, and because of that he paid the penalty. One more wicket fallen, 10 for the loss of 5 wickets, and the struggling time continuing here for the batsmen of Kodial United Sports Club. 10 balls remaining in overall calculation in there is 10 गेंदें बाकी. और निस्संदेह यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा, GSP योद्धास are now looking right on top. So 10 balls left in their innings. और देखते हैं इन बचे हुए 10 गेंदों में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं बचे हुए 5 विकेटों की मदद से. फिलहाल इस वक्त गेंदबाज GSP योद्धा के बुलंदियों पर नजर आते हुए. तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर हो चुका है. कीर्तन प्रभु जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दीपक की गेंदों का नॉन स्ट्राइकर एंड पर अतुल शनै इस वक्त तैनात. और ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाला, मिड विकेट पर, और गेंद 6 रनों के लिए. बेहतरीन प्रयत्न वहां पर किया था डीप मिड विकेट फील्डर ने. अंतिम अक्षर में अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के अंदर की ओर ढकेलने की जीतोड़ कोशिश उन्होंने की, लेकिन आखिरकार गेंद उनके पाउंच से बाहर और गेंद सीधे डगआउट में इस वक्त जा गिरी है 6 रनों के लिए. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर एक बार फिर से, लेकिन इस बार मौका जरूर है लॉन्ग ऑन फील्डर को. इस बार कैच छूट चुका है और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है, नहीं देखना पड़ेगा. अंपायर के इशारे का इंतजार है. अंपायर वहां पर पूछताछ करते हुए और एक चौका घोषित यहां पर. तो छक्का और चौका इस वक्त उनकी रन की गति को कुछ हद तक एक्सेलरेट कर चुका है. एंड 2 परफेक्ट स्ट्रोक केम फ्रॉम द बैट ऑफ द बैट्समैन कीर्तन. और एक बेहतरीन शुरुआत वो कर चुके हैं छक्के और चौके के साथ. तो अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, बल्ले का बाहरी किनारा, सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है. तो छक्का और चौका लगाने के बाद कीर्तन जो आक्रामक शुरुआत की मुनसूचना दे चुके थे, उनका विकेट अगली गेंद पर गिर चुका है. और 3 गेंदों पर 10 रन बनाने के बाद 333 स्ट्राइक रेट के औसत से ही स्कोर्ड 10 रन्स इन 3 बॉल्स विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ एग्जैक्टली 333. and he is back into pavilion and 6th wicket gone for Kodial United Sports Club. लेकिन टीम की रन की गति को कुछ हद तक बढ़ाने में सफल रहे बल्लेबाज. एक छक्का और एक चौका झड़ने के बाद कीर्तन और आखिरकार एक छोटी मगर एक अच्छी पारी खेलने के बाद पेविलियन वापस लौट चुके. 20 रनों पर छठा विकेट गिर चुका है. इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट. तो नए बल्लेबाज का इस वक्त आगमन हो चुका है. द न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. नंबर 8 बैट्समैन, द लेफ्टी बैट्समैन Vaibhav Pai is now going to face the right-handed bowler Deepak. और दीपक अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार. वैभव के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉट थर्ड मान पर, रन के लिए दौड़ पड़े, नॉन स्ट्राइकर पर थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा 1 रन प्राप्त कर चुके हैं. 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रन 6 विकेट के नुकसान पर. 21 for the loss of 6 wicket and 4th over has been came to an end. 4 overs completed. 21 for the loss of 6 wicket and just a last over remaining in their innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इस अंतिम ओवर में बल्लेबाज कोडियाल यूनाइटेड के और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं. मेरे ख्याल से कम 12 से 15 रन उन्हें बटोरने होंगे इस अंतिम ओवर में, अगर एक चुनौती भरा स्कोर उन्हें यहां पर खड़ा करना है तो. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो
कमेंटेटर बॉक्स यानी यूटीसी एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज नागेश इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं। लगभग मैदान पर अंधेरा सा छाता हुआ और यहां पर इंतजार है फ्लडलाइट्स के खंबे के बत्तियों के जलने का और वक्त इस वक्त हो चुका है 6:15 शाम के और इस श्रृंखला का नवा मैच का प्रथमार्ध यहां पर प्रगति पर इस शानदार श्रृंखला पैंथर्स सुपर लीग 2023-2023 के अंतर्गत नया ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज डीप बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर को इस वक्त आगे बुला लिया गया है, ये जानते हुए कि बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने वाले हैं उनकी गेंद का। और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त तैनात। डीप एक्स्ट्रा कवर थोड़ा सा स्क्वायरर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज नागेश गेंदबाजी शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। He's hit that one for a maximum. Just shuffling across the line and pulled that one in a squarer manner, and he got the and he got the distance for that, and he got the maximum runs for that also. 27 for 6. और रनों की सख्त दरकार है इस वक्त। रन से चाहिए बल्लेबाजों को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक गेंद को पुल कर दिया था खूबसूरती के साथ स्टंप्स को शफल करने के बाद और छक्का प्राप्त करते हुए इस बीच बल्लेबाज 27 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और फिर से एक बार गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए नागेश दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार पुल किया गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। क्लीन कलेक्शन नॉट मोर देन अ सिंगल इन फैक्ट and with that single run the scoreboard moving up to 28 for the loss of 6 wickets in the over number 5th and the last in progress in their innings। तो कुल मिलाकर गेंदें बाकी है। अब कितने गेंदें बाकी है? 4 गेंद बाकी है और विकेट सुरक्षित 4 और अगली गेंद के लिए गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची सीधे फील्डर के हाथों में और दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्डर ने फील्ड कर लिया। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक गेंद डॉट हो चुकी है, 28 रनों पर स्कोरबोर्ड रुक चुका है। 28 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5th एंड द लास्ट इन प्रोग्रेस इन द इनिंग्स। स्टिल 3 बॉल्स लेफ्ट इन द इनिंग्स। 3 गेंदें अब बाकी उनके पारी में और नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइकर के बल्लेबाज की ओर बढ़े और कुछ कहा उन्होंने कि किस तरीके की बल्लेबाजी उन्हें अपनानी चाहिए इन बचे हुए 3 गेंदों में। और इस बीच गेंदबाज की अगली गेंद इस बार फुल टॉस गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में। दे कंप्लीटेड वन लुकिंग फॉर द सेकंड, इनफैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड थ्रो अराइविंग एट द नॉन स्ट्राइकर एंड लेकिन थ्रो काफी धीमा और स्ट्राइकर एंड की ओर जब तक थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था कि दूसरा रन प्राप्त कर सके और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 30 रनों पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट विद जस्ट कपल ऑफ बॉल्स नाउ लेफ्ट इन द इनिंग्स। और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार दिस इज अ क्लीन हिट, आई थिंक सो, इट्स गॉन ओवर द फेंस, इट्स अ बिग he just got that one right from the mid of the bat and lofted that one in a style of a long offense for a huge one. Much needed sixer for the batsman and for his team. Scoreboard is now jumping up to 36 for 6 now and the last ball of their innings is now coming up. अंतिम गेंद ये गेंद इस बार उछालना चाहा चूके विकेट कीपर चुके गेंद निकल चुकी है, फाइन 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचा, काफी नजदीकी मामला हो सकता है लेकिन नहीं, वहां पर बल्लेबाज पहुंच चुके हैं और बाई के रूप में उनके पारी के अंतिम गेंद पर 2 रन जुड़ चुका है। So the innings is up and they finished with the 38. They started slowly, progressed slowly, but finished well in the last couple of overs of their innings. And finally, they are finished well with 38 for the loss of 6 wickets after their completion of 5 overs. So the 39 the target for GSB Yodhas, and their innings not going to commence. 39 they have to score for victory in 5 overs. And as far as the required run rate is concerned, exactly 7.80 runs per over. The required run rate for them at this situation, 39 they have to score. 39 they have to score in 5 overs, exactly the required run rate 7.80. And just talking about the next match, the 10th match of this tournament is now coming up right after this match between Saptami Warriors versus Viranjanaya Kapu. And
creative art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. SICA, the Institute of Creative Art, at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. कि उनके माताजी उनके माताश्री यहाँ पर पधार चुके हैं, उनका स्वागत है। और बड़ा कम अवसर ऐसा देखने को मिलता है। ये इस मैच में आते हैं। ऑन विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उछालने का प्रयास, शानदार स्ट्रोक है। फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार रेस जीत गई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, और इसी के साथ 4 रन। इस शानदार चौके के प्रोजेक्ट थे पैंथर्स सुपर लीग 2023। क्या कमाल का स्ट्रोक। सप्तमी वॉरियर्स आणि गिरीश भाई दोबारा गेंद को लेकर तैयार हो रहे शिवानंद के लिए। शिवानंद ने दोबारा गेंद को उछाल दिया, एक और जबरदस्त स्ट्रोक हो सकता है। फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया और इसी के साथ शिवानंद आउट हो गए। पहली गेंद पर जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। उसके पश्चात एक और आक्रामक स्ट्रोक खेलने का प्रयास शिवानंद ने किया, लेकिन जिस तरह से बल्ले के बीचों बीच लेने के पश्चात मुझे लगता है कि शायद वो डिस्टेंस को क्लियर नहीं कर पाए। बहुत लंबा फासला होता है, आमतौर पर आप जानते हो कि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ का जो क्षेत्र होता है, जो दायरा होता है, वो बहुत काफी लंबा होता है, जिसकी वजह से उसको क्लियर करने के लिए टाइमिंग और पावर का बहुत ज्यादा होना जरूरी है। और ऐसे में जिस तरह से गेंद को स्ट्रोक में बदल दिया, फील्डर वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने गेंद को खूबसूरती के साथ कैच कर लिया। तो इस कैच के साथ ही पहले विकेट का आघात हो चुका है। जो दर्शक अभी अभी आए उनके जानकारी के लिए बता दें, जीएसपी योद्धास और कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब के बीच में यह संघर्ष चलता हुआ। टॉस जीतने के पश्चात योद्धास के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनके सामने 39 रनों का लक्ष्य जो कि कोडियाल यूनाइटेड ने रखा हुआ है। तो पहला विकेट उनका गिर चुका है। 4 रन से 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर है। गिरीश भाई की गेंद स्टंप्स के लाइन पर, बहुत बढ़िया स्ट्रोक है। क्या जबरदस्त स्ट्रोक। फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, दोनों फील्डरों के बीच में से गेंद को निकाल दिया, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। इस शानदार चौके के प्रायोजक थे पैंथर्स सुपर लीग 2023। बेहतरीन स्ट्रोक केदार कुड़वा, क्या बात है, क्या कमाल का स्ट्रोक। स्टंप्स के सीट पर यह गेंद थी, मिडलर ऑफ स्टंप की लाइन पे लंबाई ज्यादा थी और उसको बहुत जल्दी पहचान गए केदार और उन्होंने खूबसूरती के साथ प्लेसमेंट के साथ दोनों बैट्स फील्डरों को बीट करती हुई गेंद गई 4 रनों के लिए। इस बार उछाल दिया, इस गेंद को कौन भला रोक सकता है। गेंद हवा में तैरती हुई कमेंटेटर बॉक्स के बिल्कुल ऊपर आकर गिरी 6 रनों के लिए। एलईडी ऑपरेटर कहीं पर हो तो कृपया कमेंटेटर बॉक्स की तरफ आइए प्लीज। इस छोर से इस ओवर की अगली गेंद ड्राइव किया, फील्डर के दिशा में गई है और रनआउट का मौका शायद बन जाए। नॉन स्ट्राइक हैंड की दिशा में थ्रो हो चुका है, लेकिन बैट्समैन पहुंच चुके। अंपायर श्री ने के जी ने उंगली को उठाते हुए कहा कि बैट्समैन आउट हो गए। इसी के साथ केदार आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं, थोड़े से निराश दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि स्ट्रोक उनका बहुत बढ़िया था लेकिन प्लेस नहीं कर पाए। स्ट्रोक पर नियंत्रण और प्लेसमेंट जो कि आमतौर पर बहुत जरूरी हो जाता है, जिस तरह से दायरे को घेर कर 3-4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर मौजूद थे, उनको वो बीट नहीं कर पाए। गेंद हवा में तैरती हुई गई फील्डर की दिशा में और एक्स्ट्रा कवर में गेंद को कैच कर लिया गया। इस कैच के साथ ही तो पहला ओवर अभी भी प्रगति पर। केदार आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं
और मुझे लगता है कि शायद गौतम आ रहे हैं बैटिंग के लिए। जी हाँ, बल्लेबाजी के लिए गौतम युवा खिलाड़ी स्ट्राइक एंड की दिशा में बढ़ रहे हैं। और केदार ने जिस तरह से स्ट्रोक लगा था, ऐसा लगा कि शायद बहुत आगे तक वो जाएंगे, लेकिन परिस्थितियां शायद थोड़ा सा विपरीत हो गई। गेंद को कवर के ऊपर से या फिर बीच में से निकालने के प्रयास में कैच कर लिए गए। गिरीश भाई गेंद को लेकर तैयार, 5 नंबर के जर्सी में ऑफ द विकेट। कमेंटेटर बॉक्स छोर से उनकी गेंद ड्राइव किया, इस बार ऑफ स्टंप के लाइन पर थी, बिल्कुल सीध पर थी, लंबाई ज्यादा और लगभग एक तरह से लोअर और स्लोअर जिसे कहते हैं, फुल टॉस थी। उसको सीधे बल्ले से जिस तरह से क्रिकेट की तकनीक होती है उस अंदाज में गेंद को बॉलर्स की दिशा में पलट कर खेल दिया और फील्डर गेंदबाज ने गेंद को अपने फॉलो थ्रू में उठा लिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो पहले ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 14, 2 विकेटों के नुकसान पर। 14 for 2, 14 रन्स 2 विकेटों के नुकसान पर। फ्लडलाइट्स की जो रोशनी है वो बिल्कुल अब धीरे धीरे मैदान पर फैल रही है। बहुत शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है। घने पेड़ अब कुछ ही देर में मुझे लगता है कि अंधेरों में डूब जाएंगे और दर्शकों की तादाद और ज्यादा बढ़ेगी। उर्वा का ये मैदान बड़े बड़ी क्रिकेट श्रृंखलाओं के लिए जाना जाता है। अक्सर यहाँ पर फ्लड लाइट्स खेले जाते हैं और दर्शकों का बहुत अच्छा मनोरंजन होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी क्रिकेट श्रृंखलाएं होती है और बिल्कुल आपको ऐसा लगता है जैसा कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच का आनंद उठा रहे हैं। कुछ पंछियां आकाश में तैरती हुई बिल्कुल अपने घोंसलों की ओर बढ़ रही है और शाम होते होते सारे पंछियां लौटती हैं अपने घोंसलों में। इस छोर पर स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन तैयार हो रहे हैं। थोड़ा सा घूमकर स्टांस है ऑन साइड की दिशा में, जिस तरह से स्टांस लेते हैं अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने कदमों पर बहुत अच्छा खेलते हैं। वेंकटेश प्रभु स्ट्राइक एंड पर, सुरेंद्र हेगड़े की ये गेंद और इस बार धीरे से आधे अधूरे मन से गेंद को थोड़ा सा ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया, पूरी तरह से समझ नहीं पाए। टप्पा खाकर थोड़ा सा अचानक ऊपर उठी गेंद और थोड़ा सा कटती हुई अंदर की तरफ आई। उसको बैट्समैन धीरे से गेंद के ऊपर आकर खेलने के प्रयास में कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन दोनों बैट्समैनों के बीच में तालमेल अच्छा रहा। तेज कदमों के साथ 1 रन वो पूरा कर चुके हैं। 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 15 for 2। अब चारों और फील्डरों की जो छाव है आपको दिखाई पड़ेगी। शानदार दूधिया रोशनी मैदान पर फैली हुई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस रोशनी को अब ज्यादा अगर आपको देखना अगर आप चाहते हैं तो मुझे लगता है और थोड़ा सा अंधेरा होना जरूरी है। उस छोर से अगली गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, थोड़ा सा पीछा किया, रीच करना चाहते थे, बीट हो गए। विकेट कीपर ने गैदर कर लिया, लेकिन बैट्समैन ने अंपायर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा अपील किया, जिसको अंपायर ने बिल्कुल नकार दिया और रन अभी भी वहीं पर स्थिर है। सुरेंद्र की गेंद उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, विकेट कीपर गेंद को गैदर कर चुके हैं और अगर अपने प्राकृतिक शैली में, नेचुरल स्टाइल में अगर खेलते तो मैं समझता हूं कि इस गेंद को अंपायर वाइड करार देते, लेकिन उल्टे हाथ से खेलने के प्रयास में अंपायर को बाध्य होना पड़ा कि इस गेंद को वो लीगल करार दे। दूर वाले छोर से विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को धीरे से पुश पर करने का प्रयास और हल्की सी अपील, जिसको अंपायर ने पुरस्कार नहीं दिया। बैट्समैन देख रहे हैं कि मौका अवसर जरूर है कि वो दूसरे रन का रास्ता बना सकते हैं। इनफील्ड में थी, कवर क्षेत्र में गेंद को धीरे से ढकेल दिया था, लेकिन देख लिया कि फील्डर थोड़ा सा ढीला पड़ रहे हैं और इसे बहुत चतुराई कहते हैं। बैट्समैन के अंदर यह होना बहुत जरूरी है और इस वजह से दोनों बैट्समैनों ने एक दूसरे का साथ दिया, तेज कदमों के साथ नाक के नीचे से दूसरा रन निकालना और बिल्कुल सफल हो गए दोनों के साथ। रन्स बढ़कर 17 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। उस छोर से आक्रमण अभी जारी है। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, बहुत खूबसूरती के साथ खेला गया स्ट्रोक, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, जिसको थोड़ा सा पीछे हटते हुए चॉप के अंदाज में गेंद को खेल दिया। कवर में थोड़ा सा तिरछा गई, फील्डर जो कि पॉइंट की दिशा से गए उन्होंने गेंद को उठा लिया और बैट्समैन के पास समय के 1 रन वो पूरा करे। 1 more ball to go, एक गेंद शेष बचा है और वेंकटेश प्रभु स्ट्राइक एंड पर। स्टांस अंदाज अगर देखें
तो बिल्कुल ऐसा लगता है कोई आक्रामक बैट्समैन जो कि इस वक्त स्ट्राइक एंड पर है। उस छोर से फुल टॉस गेंद थी लेग स्टंप के बाहर और अंपायर ने कहा कि वाइड, जी नहीं, नो बॉल का संकेत किया उन्होंने। लेग स्टंप के ज्यादा बाहर थी, फुल टॉस भी रही और ऐसी गेंदों को बिल्कुल उन्होंने नहीं बख्शा और संकेत कर रहे हैं अंपायर की नो बॉल का अवसर जो है उसमें आधुनिक नियम के अनुसार फ्री हिट का अवसर बैट्समैन को दिया जाएगा। क्या वेंकटेश प्रभु इस मौके का फायदा उठा पाएंगे? वेंकटेश स्ट्राइक एंड पर, उस छोर से नो बॉल का अवसर है। गेंदबाज के पास एक चुनौती है कि वो इस बैट्समैन को रोक पाए। इस बार उछालने का प्रयास, बहुत अच्छी गेंद, जी हां, अतिरिक्त उछाल मिला, कंधों का ज्यादा उपयोग किया, गेंद को थोड़ा सा छोटा कर दिया, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थोड़ा सा टप्पा खाकर उछल कर ज्यादा कंधों के उपयोग से बाहर की तरफ निकली और थोड़ा ऑन दी अप खेलने के प्रयास में चूक गए बैट्समैन और विकेट कीपर गेंद को अपने हाथों में ले चुके हैं। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 2 ओवर के समाप्ति पर 19 रन, जबकि 2 विकेट्स गिर चुके हैं अभी और 20 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। 20 मोर रन्स टू गेट इन रिमेनिंग 18 बॉल्स। 18 गेंदों में 20 रनों की दरकार। बीस रनों की दरकार, 18 गेंदें शेष बची हैं और बहुत दिलचस्प मुकाबला चलता हुआ। क्या होगा, कौन जीतेगा? क्या जीएसपी योद्धास जीत पाएंगे या फिर कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब इस मैच को जीत सकता है? देखने वाली बात है। ऐसे में कांटे की टक्कर में कप्तान कोडियाल यूनाइटेड के कप्तान ने जो विकल्प है, जो ऑप्शन है, उसके अनुसार अपने एक नए गेंदबाज को आक्रमण पर, सात्विक को आक्रमण पर वो ले आ चुके हैं। मोर्चे पर सात्विक बालिका, क्या असर वो दिखा पाएंगे? और उनके सामने स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन गौतम हैं, तो सात्विक गौतम को किस तरह से गेंदबाजी करते हैं? गौतम और सात्विक के बीच में एक द्वंद्व। 18 गेंदें शेष बची हैं, 20 रनों की दरकार है। कांटे की टक्कर की उम्मीद करते हैं दर्शक, यही उम्मीद कर रहे हैं। दूर दूर जितने सारे दर्शक बैठे हैं, धड़कनें उनकी जुड़ी हुई हैं गेंद और बल्ले से, कि उनको कुछ थोड़ा सा रोमांच देखने को मिले। थोड़ा सा रुक कर गेंदबाज सात्विक, जी हां, सात्विक तैयार हो रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से इस बैट्समैन को वो परास्त करें और इस योजना के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। ओवर द विकेट उनकी गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को। क्या कमाल की गेंद थी, मानो एक ऐसी तीर जो बैट्समैन को घायल कर गई। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा चेक करना चाहते थे गौतम, फ्रंट फुट पर थोड़ा सा गेंद को आधे अधूरे मन से खेलने का प्रयास किया और बैट्समैन के बल्ले को थोड़ा सा हवा डालती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथ में समा गई। रन लेने का अवसर वैसे भी नहीं है, तो फील्डर सब आउटफील्ड में फैले हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओवर द विकेट सात्विक चल पड़े, उनकी गेंद लेग स्टंप के बाहर गई और अंपायर ने कहा कि वाइड है। गौतम बहुत मैं समझता हूं कि थोड़ा सा रुक कर उन्होंने इंतजार किया। वो जानते थे कि गेंद थोड़ा सा कट कर बाहर की तरफ निकल रही है, विकेटों को उन्होंने पूरी तरह से कवर कर लिया और गेंद जो थोड़ा सा कटती हुई लेग स्टंप के बाहर गई, अंपायर ने कहा कि वाइड है। अतिरिक्त के खाते में एक और रन की बढ़ोतरी, फुल टॉस थी, लेग स्टंप के बाहर एक और वाइड है। मौका जरूर था, अगर गौतम इस गेंद को कनेक्ट करते तो मैं समझता हूं कि गेंद कहीं ना कहीं ऑन साइड पर स्क्वायर ऑफ द विकेट, बाउंड्री लाइन के बाहर वो भेज सकते थे, लेकिन वैसे भी पुरस्कार उनको दिया गया। अंपायर ने कहा कि वाइड है, लेग स्टंप की ज्यादा फुल टॉस गेंद, उसका फायदा निश्चित तौर पर बैट्समैन को होगा। इक्वेशन आपको बता दें, मुझे लगता है कि अभी 17 गेंदें शेष बची हैं, 18 रनों की दरकार है। 18 रन्स टू गेट इन रिमेनिंग 17 बॉल्स। तो सात्विक तैयार हो रहे हैं, योजना बना रहे हैं, क्या वो गौतम को बांध कर रखने में सफल हो पाएंगे? हमसे दूर जाते हुए सात्विक गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, सात्विक की गेंद ऑन साइड पर पुल कर दिया। मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर गेंद को समेटने का प्रयास कर रहे हैं, जब तक वो गेंद को उठाकर थ्रो कर पाते, तेज कदमों के साथ दोनों बैट्समैन ने अपने दूसरे रन का रास्ता बना लिया। बहुत शानदार रनिंग है और सात्विक ने अपने साथीदार को पहले ही समझा दिया है, जब रनों और गेंदों के बीच में आंख मिचौली का खेल चलता हो तो पैर किस तरह से तेज होने चाहिए, रफ्तार कितनी ज्यादा होनी चाहिए। और द विकेट सात्विक आक्रमण पर, हमसे दूर जाते हुए उनकी गेंद फुल टॉस, गेंद को उछाल दिया कमेंटेटर बॉक्स के ऊपर से, जी हां बिल्कुल हमारे सामने आकर गिरी 6 रनों के लिए। शानदार छक्का और इस छक्के के प्रायोजक थे पैंथर्स सुपर लीग 2023।
तो गौतम स्ट्राइक एंड पर जबरदस्त छक्के के साथ विश्वास का पारा चढ़ चुका है। सात्विक के चुनौती से गुजर रहे हैं। फुल टॉस गेंद उनके ऑन साइड पर, इस बार कैच होगा। फील्डर आ रहे हैं मिड विकेट वाइड टीम में, लेकिन उन्होंने गेंद को कैच तो जरूर किया। अंपायर ने कहा कि नो बॉल है। जी हाँ, श्रीनिकेत संकेत कर रहे हैं कि नो बॉल है, तो नो बॉल के इस अवसर पर तो 2 रन और खाते में जोड़ लिए गए और श्रीनिकेत जी ने संकेत किया फ्री हिट का। जी हाँ, और आज मुझे लगता है कि उनकी माताजी बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही है, पहली बार अपने बेटे को जो कि मैदान पर अंपायरिंग कर रहा है। और श्रीनिकेत को बहुत अच्छा करना होगा भविष्य के लिए। उनकी प्रार्थना है कि बहुत ऊंचे और बड़े मकाम पर इस क्षेत्र में आगे बढ़े। और इस उम्मीद के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। गार्ड को बदलते हुए गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। सात्विक मुझे लगता है कि अब वो राउंड विकेट कर रहे हैं। आक्रमण पर कोई योजना तो उन्होंने बनाई होगी। वेंकटेश स्ट्राइक हैंड पर, उनके लिए गेंद राउंड विकेट। सात्विक तैयार हो रहे हैं। उनकी गेंद लंबाई के साथ ज्यादा थी और खेलने के प्रयास में थोड़ा सा चूक गए। सात्विक को ऐसी गेंदबाजी की आवश्यकता है, ऐसी गेंदबाजी की। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी इस वक्त। उन्होंने देखा कि फ्री हिट का अवसर है और ऐसे में बैट्समैन को कौन सा तीर बैट्समैन के ऊपर उनको चलाना होगा, और योजना बनाकर उन्होंने गेंद को ज्यादा लंबा करते हुए स्लॉट के एरिया में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डालने का प्रयास किया और कदमों तले फुल टॉस उछाल दिया गेंद को। गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में, जी हवा में तैरती हुई बिल्कुल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और इस जबरदस्त छक्के के प्रायोजक थे पैंथर्स सुपर लीग 2023। 37 for 2, यानी कि अभी सिर्फ 2 रनों की दरकार है। सात्विक परेशान है, निराश हैं, लेकिन उनका हौसला बढ़ाते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक मैच में सचिन सेंचुरी बनाए या फिर कोई जबरदस्त गेंदबाज विकेट प्राप्त करें। कभी कभार दिन लिखाकर बैट्समैन आ जाता है तो कभी गेंदबाज। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। छोर से सात्विक गेंद को लेकर तैयार हुए। उनकी गेंद थोड़ा सा आगे निकल गए, बल्ले का सिरा लेकर विकेट कीपर के दिशा में गई। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया, लेकिन 1 रन लेने का अवसर नहीं मिला क्योंकि विकेट कीपर गेंद को संभाल चुके हैं। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है और इस ओवर की समाप्ति पर कुल मिलाकर रन बन चुके हैं 37 for 2। 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हो पैंथर्स सुपर लीग 2023। वीरांजने कापू और सप्तमी वॉरियर्स, इन दोनों के बीच में अगला मैच खेला जाएगा। और वीरांजने के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो बिल्कुल अगले जबरदस्त शानदार मैच के लिए सारे दर्शकों से अनुरोध है कि वो हमारे साथ बने रहें। एक और जबरदस्त कांटे की टक्कर के साथ आपके सामने आएंगे। लेकिन इस वक्त मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब थोड़ा से, हालांकि ज्यादा ही बैकफुट पर है, निराश दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हार और जीत सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जैसा हम अक्सर कहते हैं। निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में संघर्ष पथ पर जो भी मिले, ये भी सही वो भी सही। माफ कीजिएगा, दूर वाले छोर से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं गेंदबाज सुदिंद्र। आक्रमण पर उनकी गेंद ड्राइव किया, गेंद को फील्डर इनफील्ड में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद 1 रन तेज कदमों के साथ पूरा कर लिया है। सारे फील्डर्स इनफील्ड को घेर कर खड़े हैं और आश्चर्य की बात है, बिल्कुल आश्चर्य की बात है कि इतने सारे फील्डर्स होने के बावजूद कितना विश्वास बढ़ा हुआ है सात्विक का कि वो जोखिम भरे रन के लिए तैयार हो गए। उस छोर से इस ओवर की अगली गेंद ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद गई है बाउंड्री लाइन से, जी हां बाहर। 4 रनों के लिए शानदार चौके के साथ इस मैच को जीएसबी योद्धास ने 8 विकेटों से जीत लिया। बहुत बहुत बधाई हो। और इस चौके के प्रायोजक थे पैंथर्स सुपर लीग 2023। कंग्रेचुलेशंस जीएसबी को योद्धास ने इस मैच को जीत लिया है, बधाई हो। कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब को अगले मैच के लिए शुभकामनाएं देते हैं। जिस मैच में आप हारते उस मैच में आपको सीखने को मिलता है और मुझे लगता है कि सीखने की और थोड़ा सा और प्रयास, थोड़ा सा और जुनून जरूरी है। अगले मैच के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। मुझे लगता है कि अब अगले मैच के लिए समय है विवरण को बदलने का, आवाज को बदलने का, भाषा को बदलने का। तो आइए सतीश जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद।
Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. SICA, the Institute of Creative Art, at third floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. SICA, the Institute of Creative Art, at third floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Team will going to get their first victory of this league match, which is Panthers Super League, organized by Deadly Panthers in this most beautiful and historical UCG cricket ground. So umpire is calling here is the start of the match, and Dikshit and at square leg Rajaratna sir. The first ball beautifully played off the back foot, just over the infield, ball running down to deep cow point boundary. Ball will going to win the race, so not doesn't. Just inside the boundary line, the fielder definitely going to win the race against that ball, because the outfield is not quick enough in that occasion. But just ball just lost his speed while ball is traveling towards the deep cow point region. That means the fielder has got opportunity to field the ball.
And the scoreboard is now, they open the account 2 without loss of any wicket. ದಯಮಾಡಿ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. Deepak will go into face next delivery. Oh, that was quite dangerously played. Appeal for like before it is gone. Absolutely flum. No doubt at all. Look at the where he was. He's just shuffled across the line of delivery too much and finding himself almost in the midland leg stump. And Dikshit took his own time to raise his finger because it's a right decision, I want to say. Just I want to see it in the replay. Absolutely, he's shuffled across the line too much. And it's not a kind of cricketing stroke you need to implement in the first over. It's shuffled across the delivery. Just I want to see as the bowler bowled on the midland leg stump. Even the batter is not satisfied with the decision, but I think he is not really don't know where he is standing, and just pays the penalty for that, finding himself like in front of midland leg stump. The first wicket is back into pavilion of Saptami Warriors. They lost the wicket of Deepak, which looks pretty good in the first ball as he played an orthodox cricketing stroke, but unfortunately he's trying for the unorthodox cricketing stroke. That's the improvising stroke, which is almost shuffled across the line of the delivery. Tried to hit the ball on the onside region, but unfortunately finding himself in the middle of a stump. 2 for the loss of 1 wicket. The good start from the bowler of Vieranjana cricketers Kapu. Karthik Prabhu is the new batsman. He came into middle. The Vignesh is the bowler from the far end, professional career end. Right arm over the gate, right on the block out. Perfect delivery to ball to the fresh leg. Absolutely, is right on the block hold, and that's all happening, isn't it? When you're getting the wickets, the bowler will be looking more confident after getting the wicket as he bowls excellent delivery to follow that like before wicket deliveries. And again, Vignesh from the far end. Right arm over the wicket again, forcing the batsman onto the back foot. Lovely piece of bowling there from Vignesh. Again, is just forcing the batsman onto the back foot by moving the ball from a good length spot. The batsman just using the deftness of the crease, going back, but not really able to get any kind of runs for that. And defensively played. I request Anvit of Deadly Panthers, the organizer, please report to the commentary box immediately. Anvit of Deadly Panthers. Vignesh seaming from the far end. Right arm over the wicket, he balls. Beautifully bowled. Without seeing the line of the delivery, batsman looking for the blind stroke. Missed it completely. And wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. And the batter tried to break the shackle in the negation after seeing that the bowler is almost bowling that good line and length. But this time I think the batsman is nowhere near the pitch of the delivery. The intention is to clear that mid-wicket region fielder, but he's missed it completely. There's a change of pace. This is one of the best weapon to use when the batsman is looking for the big stroke, as Vignesh finished over in a style by bowling the slower one in the negation. And swings and missed. The very good over from Vignesh to start with. After winning the toss, selected to field first. Vieranjana cricketers Kapu, they got a very good start with the first over. 2 runs and 1 wicket. And definitely the captain must be pleased with his performance, isn't it? Always when the first over is always going to be a opportunity for the batter to get some runs. But in this particular over, the Vignesh is really going after the batter of the opposition as he bowled a fantastic first over of just 2 runs and a wicket. Prajwal brought into attack. Prajwal is a useful cricketer actually. He's a very good all-rounder. He performed very well in the previous match. Unfortunately, he's ended with the losing side. And wait and see how Prajwal will going to contribute in this particular match. He's a very good all-rounder for the side. Technically very sound batsman for the side, but he can contribute from the ball as well. So after that,
the power play over, we can see that so many bodies out there in the deep. One at deep cover point, there is a deep long off, and in the onside there is a deep long on deep backward square leg and a deep mid wicket. Short fine leg, short mid wicket. There is a short gully, one at short extra cover. And Prajwal again bowling from the UTCN. Balls, this time again appeal for leg before wicket, but a half-hearted shout. You know exactly ball is going down the leg stump, and umpire also knows that. Rajaratna sir is a so experienced umpire. Not only the umpire, he is a very good coach as well. And you know exactly ball definitely going to miss the leg stump in the negation. So that leg by call by umpire, one more addition to total 3 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. So slow cricket is in progress. Of course, quite understandable. It's a different condition. The playing in natural light and playing under floodlights is always going to be the different. The more effort which is required from the batters to get some good score. Prajwal, right arm over the wicket, lofted, but I don't think he will going to get the distance. But he will definitely going to find the fielder in the mid wicket region. Not really having any control over that pull shot, isn't it? Of course, it's a short pitch delivery, but not that much of shot enough to pull the ball. And he just pays the penalty for that. The wicket number 2, which is back into pavilion of Saptami Warriors. The worries which is continues here for the Warriors. The intelligent cricket is much required in this condition. You can't hit the ball, each and every ball, because they are not having any help from the wind. There's not that much of wind at all in the night, in the evening. But certainly the batsmen need to be very selective as far as the shot selection is concerned. They need to see which part will going to be a easier one to get the distance right. He's just choosing the one of the longest part of the ground as far as the dimension of this UCG cricket ground is concerned. When you're playing from that end, the mid wicket definitely going to be the longest part of the ground. If you're choosing that one, I think you need to pay the penalty for that. So number 3-4 batsman is came into middle. Ratan is a new batsman again. He's going for the full shot. Chance here for the field and the deep backward score leg. He completed the catch. This time I think it's a little bit tough catch here for the fielder at deeper square leg region. He need to run a little bit front. And he takes a very good running catch in the end. The wicket number 3 is back to pavilion. It's a competition between run versus the wicket. It's a 3 for the loss of 3 wicket. And I think now Saptami Warriors definitely they're in deep trouble. 3 for the loss of 3 wicket. The kind of mistake which is done by the previous batter, the same mistake which is continued by the new batter. Try to pull that one. I think is just we're talking about the strategy, that technique which is implemented by the bowler to pick the wickets. The bowling is a short pitch delivery, inviting the batsman to go for the big shot, and he got 2 wickets for that short pitch delivery, and he got a golden opportunity to get the hat trick here. Already 1 hat trick is completed in this particular tournament. And it's an opportunity for Prajwal to take the hat-trick. This time batsman not only denied that hat-trick, but a copybook style of stroke down to a cow point region to get the single. Almost covered his stump and then pushes the ball down to short cow point region for a single. He's off the mark with the single. Scoreboard moves on to 4 on the board for the loss of 3 wicket in the over number 2 in progress. So far, Veeranjana cricketers, Kapu, and everybody knows that the strength of the teams which is coming from Udupi district. They are almost engaged in performing in hard tennis ball and of course soft tennis ball cricket. Very useful, very experienced players in the side. Just using the feet, and he got the placement right, and before the fielder from deep cow point to run across his left to field the ball. Ample time for the batter to complete that couple of runs. It's a good technique implemented here from left-hand batter, seeing that every time Prajwal is just to try to ball little bit short pitch delivery, and he's just using his feet in the occasion to just reach to the pitch of the delivery, and he got the placement right to get the couple of runs down to extra cover region. Prajwal again away from us. Round the wicket, improvising by playing the switch, useful one, and ball running down to deeper. Backward point boundary for 4 runs. Once again, that ball is a little bit slowing down. After ball is hitting the ground, the ball looks like the fielder will going to reach there. But ball almost winning the race at last. And a welcome boundary coming up here for Saptami cricketers at last in this last delivery of the over number 2. After completion of over number 2,
Saptami cricketers are going exactly 5 runs per hour, 10 for the loss of 3 wicket. Vignesh Bhatt is a so experienced campaigner but a useful left-hand batter for the side of Saptami cricketers. In the previous match also is contributed from the bat. But in this difficult condition, I think they needed such kind of intelligent cricket. Vignesh has got run from his bat, but it's not quite enough. He need to continue the start what he's got. They need to be there till the end of the 5 overs. Then Saptami cricket has got opportunity to get some competitive total. It's a 5 runs per hour. The projected score definitely is going to be just a 25, the similar run rate. But Saptami cricketers knows that it's not enough. They need to accelerate the run rate. But problem here is that they lost 3 top order batters back into pavilion. They doesn't want to lose the wicket here, because losing wicket means putting brake onto the run rate. Every new batsman is not easy to come and perform straight away under the floodlight. It's so important for these 2 batters of Saptami cricketers to carry on the business. So from the far end, it's going to be a start of the over number 3. Vignesh G. Bhatt is in his second over. Is what an outstanding first over of just 2 runs and a wicket. And now he's wanted to continue that from the professional career end. Right arm over the wicket to Deepak. This time again, lovely delivery indeed. Almost squared him up. This time direct hit. It's going to be a close one. Whenever they're going to be a direct hit, I think is the most of the time the batsman is in trouble. Even the batter knows that he's out of the crease. He's waiting for the third umpire decision. He's walking towards the pavilion. And you know exactly, as a body language, after ball hits the stump, he is really frustrated, is disappointed because of that direct hit. So direct hit is not that easy one from the fielder, that short third man, because his angle of the throw is not easy. The square angle is hits the stump, and I think his batsman just waiting there. He has not really crossed that boundary line, because if he crossed the boundary line, if it is a not out, the batsman should be out. That's you know exactly. He need not be out of the boundary line. He's just staying there in the boundary line, waiting for the decision of third umpire. But here is the third umpire. They need to observe the technicians of V4 24/7 channel. Definitely, they are the master class. They will going to provide exact angle to get the best result of this run out. And the batsman just short of his crease. You can see in the screen here. The batsman is short of crease. You know exactly. And that's why he's walking towards the pavilion. Out is a call from the third umpire. It's a 10 for the loss of 4 wickets. Once it looks like both the batsmen are really occupying the crease and try to spend a little bit time in the middle to accelerate the run rate. But unfortunately, the man who got runs from his bat is back into pavilion. It's not a good sign here for Saptami cricketers. Losing the batter like... the left-hand batter like Vignesh back into pavilion. I had already mentioned about the getting a boundary in the previous over is not quite enough. He need to carry on a business till the last over, but unfortunately he's finding short of his crease. The very good throw coming from that short gully field to get the result in favor of their team. I think the Viranjana Cricketers Cup was looking quite a different body language in the second match. Not really looking that much of comfortable in the first match. That's maybe the reason that when you are coming to the new grounds, like I think the Viranjana Cricketers, the new team which is participating in this Panthers Super League, they need to little bit settle down for the condition of the ground, the condition of the pitch. Once they're almost settled for the condition, we can see that a different body language you can see from Viranjana Cricketers in this particular match. Vignesh from the far end. Right arm over the wicket. Off the back foot. Batsman cuts that one, but not really able to beat the fielder there in the short point region. But there is a possibility of a single for the new batter. Varun Prabhu is off the mark with a single. With that single, score numbers on to 11 for the loss of a 4 wicket. Deepak just examining the field set. So important for the batter to need to see where the fielder is, because under flood it's very difficult to sight the fielder.
Vignesh balls, beautifully bowled. Oh, the wicketkeeper behind this time, going up, asking for the umpire to give. Caught behind, but both the umpires are unmoved. Both umpires are unmoved. The bowler think there's a caught behind. Wicketkeeper thought it might be a caught behind, but the umpire is not really thinking about that. The ball is missing the bat. But the wicketkeeper is so confident in the occasion, saying that, look at that, the Deepak and the wicketkeeper having some a little bit conversation. Wicketkeeper saying that you have got an edge of the bat. The batter saying that, no man, I didn't. Just an excitement rather than the confidence. Of course, the ball is not that much of confidence, but seeing the wicketkeeper is appealing for the caught behind, he started to appeal for the caught behind. 11 for the loss of 4 wicket. Vignesh. Right arm over the wicket again. Lovely delivery in the Rockin again on the block. All chance! What a dramatical collapse here from Saptami cricketers. This time, the batsman looks like a safe. I don't think so. I don't think so. It's definitely going to be the third umpire is calling for the run out. Whenever there will be the third umpire, whenever there will be a direct hit, the most of the chances which is becoming out for the batter, and it's definitely going to be the body language. You can see there from Viranjana cricketers. They looks like they got a one more wicket. They looks like they got a one more wicket, and they got a wicket as well. Out is a call from the third umpire. 11 for the loss of 5 wickets. I think Viranjana cricketers has got a sharp shooters in their side. Before the first run out, the back point fielder hitting the stumps. Now the wicketkeeper in a square angle. It's not so easy. Again hitting the stumps. And 2 wickets, unfortunately, in the form of run out of Saptami cricketers are back into pavilion. It's 11 for the loss of 5 wickets. They are in a serious trouble now. It's a new batsman walking towards the middle. With the jersey number 18, Vinod Kamath. Of course, jersey number 18, the master class, Virat Kohli wearing that jersey number 18. And both players, they start their names with the letters of V. The Vinod is playing here. The first ball right on the block, all and it's gone. Absolutely flum in front of wicket. So 6th wicket is back into pavilion of Saptami cricketers. Even though I just mentioned the name of Virat Kohli, maybe we're just getting some inspiration from that name, but I think the result definitely going to be unfortunate for the batters. The one more wicket is back into pavilion. The 11 for the loss of 6 wicket. Disappointment batting display here from Saptami cricketers. I already mentioned it's a different ball game when you're playing in under floodlight, when you're playing under natural light. Last ball remaining in this over. Please be noted. The new batsman is walking towards the middle. Samarth with the jersey number 9. It's not going to be a hat-trick because one is run out. The previous one is a leg before wicket. But Vignesh so far is really dismantling the batting department with his fantastic bowling spell from the professional career end. Seaming in right up over the wicket, chip that one, and just over the head of the bowler, quite deliberately chip that one by the batter, by picked a single, and he will going to retain the strike for the next over. The one more fantastic over comes to an end. After completion of over number 3, Saptami cricketers still they're searching for the right track, struggling in the middle. It's a 12 for the loss of 6 wickets.
I request the fielding team to make it past. I already mentioned about the 24 minutes which is given for the fielding team to complete their 5 overs quota. And now it's the start of the over number 4. Sanket Kamath will go into ball the 4th over. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಕೇತ್ bowling away from us. Right, I'm over the full toss delivery. Batsman going for the full shot and asking the square leg umpire to give the no ball. Will it go into a ball over the waist level? Umpire don't think so. Umpire don't think so. It's not over the waist level. But seeing the height of that batter, it might be it was little enough for him to pull the ball. But he is not really able to take the advantage of that full toss. This time, lovely shot, improvising by playing a switch it. One bounce over the row for 4 runs. At last, Deepak breaking the shackle in the occasion. He's trying best to play some good shot by playing an orthodox cricketing stroke in the previous 2-3 overs, but he's not really getting a best result of that. Then he was thinking about the unorthodox cricketing strokes. That is one of the popular stroke in the present cricket, switch it. And the timing and the footwork is exquisite in the occasion. Just changing his position very quickly to get the very good position to play that switch it. And he got the result for that. And with that welcome bound, this scoreboard now moves on to 17 on the board for the loss of 6 wicket. Needed just that kind of brave and gutsy batting here from Saptami cricketers batter if they wanted to get a very good score against Viranjana. This time looking for the improvisation, exposing his all stumps. This is quite dangerous move there from the batter, but he's so confident. He's so confident that he can hit the ball, but the bowler is more than confident than the batter as he bowls a very good line. Again, the switch it he wanted to play. This time, I think the full toss delivery. But Deepak doesn't want to get the single here. He wanted to keep the strike, the remaining delivery of this over, so that he can get some acceleration of run rate. 17 for the loss of 6 wicket. This time again outside the run of Flex Temba. And umpire is not interested to call that wide because the batsman is shuffled across the line of the delivery too much. And that's why the bowler changing his line. Again, swings and miss. This time going for the single, but wicketkeeper just missed the opportunity to get the run out in a non-striker's end. Leg by call by umpire. One more addition to total addition of that single. 18 for the loss of 6 wicket. Over number 4 completed. 4.5 runs per over is not quite enough for Saptami cricketers. This is the last and final opportunity for them to get some acceleration. Deepak, I think, is trying his level best to get some good score here. But so far, I think Viranjana cricketers are dominating in this particular match with the ball. And there is a dominate yet to combine from the batters of Saptami cricketers. The last opportunity for them, at least 15 runs, takes them into comfortable score. Can they able to get that 15 in the last? The bowler is introduced from the far end. One more very young talented bowler, Vijay Naik, introduced from the professional career end. Vijay Naik bowling last over, keeping one fielder in the deep long off. Now they're sending one fielder from extra cover to deep extra cover. Right arm over the Vijay Naik. This is Deepak hammering it down towards the deep mid wicket for a huge 6. Just I'm mentioning about this is a over. The final opportunity for the get some acceleration for Saptami cricketers. The Deepak is the one who spent a lot of time in the middle. He is now seeing the ball like a football. Juicy full toss and inviting the batsman to go for the big shot and just taking the invitation. Deepak dispatching that one into the mid-wicket boundary for a huge 6. Score jumps into 24 for the loss of 6 wicket. From the professional career and Vijay Naik now just started to feel the pressure. 6 in the first ball. Second time in this over. Right arm over the wicket balls. Deepak coming down the track, charging down the track, but not really able to get the more than single for that, as a deep long on fielder will go into field the ball, return the ball. Ample time for the batter to complete the single. Meanwhile, I request two teams captain, the captain of
Indo Super Warriors as well as Kings 11 Ullal captain to please report for the toss for the next match. That will going to be 11th match of the day, number 1 of this prestigious the Panthers Super League 2023, and 25 for the loss of 6 wicket. Samarth is back on strike. The well-built personality. Of course, he can use his personality to get the distance, just like what Deepak is did in the first ball. And Vijay Naik from the far end. Right arm over the wicket, he balls. But this time again, the chance of run out in a non-striker end. It's absolutely a presence of mind here from striker Sampath, seeing that his partner need to come towards the striker's end. After he reaching his home, he started to run. That means he's sacrificing his wicket for his partner. Captain toss आयोग का म्हणून विनंती करतो. उल्लाल टीम कैप्टन रखता सांगा. So 25 for the loss of 7 wickets. The new batter just walked towards the middle. He's in non-striker's end, but here is a Deepak. I think Deepak need to be very careful. Last few deliveries left in the innings, and Deepak is the one who is settled down in the middle, and last hope of getting some acceleration in the run of Saptami cricketers. They got a 25 already on the boards, and wait and see how Deepak will going to deal with the remaining deliveries of Vijay. Right arm over getting this time, coming down the track, lofted and going, and he got the distance as well. What a terrific shot. It's not so easy to get the distance when you're hitting the ball towards a long off regions, particularly in this UCG cricket ground. You can get the distance towards a mid-wicket, long on and backward square leg, but getting the distance in the long off under floodlight, I think you need to have enough power, need to have enough timing in that stroke. Just using his feet beautifully, reaching to the pitch of the delivery, lofted that one handsomely, and he got the distance towards a deep long off for a huge 6, 31 for the loss of 7 wicket. Vijay again from the far end. Right arm over the wicket, again batsman coming down the track. This time lovely short pitch delivery there from Vijay Naik. Seeing the batsman again coming down the track, shortening the length quite deliberately and pitching the ball right in the spot, getting some extra bounce, missing the bat of the batter. There's an excellent comeback by the young bowler Vijay Naik. 31 for the loss of 7 wickets. Outstanding battle between these two the players. One is a fantastic hitter of the ball, and one is a very talented young bowler Vijay Naik from the far end. Alright, come over the wicket. This time almost shuffled across the line of the deaded ball is in there. The bowler himself takes a wonderful catch. The very good catch indeed. It's not so easy when the ball is high up in the air. The bowler should keep the eye on the ball till the last moment. And Vijay Naik completed that catch. The over number 5 which is completed is the last delivery of the innings of Saptami cricketers. That's why Deepak wanted to finish the innings with a big shot, but not really able to get that elevation he's looking for. He got a top edge, then Vijay Naik completed the catch. Good comeback as far as the bowler's point of view. In that last delivery, he picked up a wicket here. And at last, Saptami cricketers managed to get 31 by losing 8 wickets. And they set a target of 32 to win the match for the opposition Veeranjana cricketers Kapo. Wait and see how Veeranjana cricketers Kapo will go and get this total of 32. I don't think it's going to be a big total, but considering the fact that under floodlight, even 32 definitely going to be a score. You can depend if you bowl well, if you field well. And wait and see how well Saptami cricketers will go into justify that total. And definitely is going to be a very, very interesting session. The second section of this the match. And for that, I would like to invite once again my friend. Institute of Creative Art. Get diploma
in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाज शुरू करते हुए यहां पर, तो अंपायर ने इशारा किया कि उनकी पारी की शुरुआत हो। मैच की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। Ratan, first ball, this time lofted that one, just clearing the infield, and I think it could be gone over the fence for a boundary. So a perfect start in the very first delivery of the innings. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त, गेंद को चिप किया था, खासकर पावर प्ले का फायदा उठाते हुए गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया। मिड ऑफ फील्डर मिड ऑफ को क्लियर करते हुए गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है वीरांजने या क्रिकेटर्स के लिए। 4 रन बिना किसी नुकसान के, 32 रन उन्हें बनाने। दे हैव टू स्कोर 32 रन्स इन द स्टिपुलेटेड 5 overs with the required rate of exactly 6.40 runs per over. Next one, पहली गेंद पटकी हुई गेंद, अगली गेंद थी इस वक्त, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद बल्लेबाज ने जितना पूर्वानुमान एक्सपेक्टेशन लगाया था उससे कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद अंदर की ओर आती हुई, गेंद को हल्के से कट करना चाहा बैकवर्ड पर जाने के बाद, लेकिन गेंद और बल्ले का ठीक तरह से संपर्क नहीं। बॉर्डर में जॉन दैट एट द लास्ट मोमेंट और गेंद सीधे पहुंची बैक टू द बॉलर की दिशा में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो 3 पहले गेंद पर चौका प्रदान करने के बाद एक बेहतरीन वापसी यहां पर कर चुके हैं गेंदबाज रतन। 2 डॉट गेंदों को लगातार फेंक चुके हैं। पुंडलिक पई इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। प्रज्वल शनय नॉन स्ट्राइकर एंड पर और पहला और एकमात्र पावर प्ले उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। फ्लडलाइट्स की जगमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी है और अंडर फ्लडलाइट्स इस श्रृंखला का 10वां मैच यहां पर खेला जाता हुआ। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, प्लम्ब इन फ्रंट, अप गोज द फिंगर फ्रॉम अंपायर। शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, गेंद लाइन पर टिप्पा गया, मिडल स्टंप को कंसंट्रेट केंद्रीकृत कर कराते हुए और उनके पिछले पैर पर गेंद टकराई और अंपायर को कोई हेजिटेशन इस वक्त मौजूद हेजिटेशन नहीं हुई कि उन्हें आउट घोषित करें। और यहां पर यह विकेट नंबर 1 गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज पुंडलिक पाई आउट होकर पेविलियन वापस लौटते। हालांकि पहले गेंद पर चौका जड़ने के बाद एक बेहतरीन शुरुआत की सूचना उन्होंने जरूर दी थी, लेकिन उसके बाद बेहतरीन कमबैक करते हुए गेंदबाज ने 3 डॉट गेंदे यहां पर फेंके और आखिरकार तीसरी गेंद पर उनका विकेट प्राप्त करने में सफल। तो 4 रनों पर पहला विकेट खो चुका है, जबकि पहला ओवर यहां पर प्रगति पर। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर मौजूद। नए बल्लेबाज एज अ नंबर 3 बैट्समैन ही इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल और विघ्नेश इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और वो इस वक्त सामना करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज का। तो बिल्कुल एक सतर्क गेंदबाजी की इस वक्त सख्त जरूरत सप्तमी वॉरियर्स के गेंदबाजों को, अगर उन्हें वीरांजने या के बल्लेबाजों को 31 रनों के अंदर रोक कर रखना है। तो ये गेंद पटकी हुई गेंद बैकफुट पर गई, कट किया इस वक्त खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, ही गेट्स एटलीस्ट कपल फॉर दैट, द चेस फॉर द फील्डर, इनफैक्ट दे कंप्लीटेड अ सेकंड रन। और जब तक एक लंबा दौड़ लगाते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर फील्ड करके थ्रो करे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर
फर्स्ट इन प्रोग्रेस इन फैक्ट स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और फील्डर इस वक्त विकेट कीपर फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए शॉर्ट मिड विकेट फील्डर की इस वक्त बुला लिया गया है एक्स्ट्रा कवर पर तैनात करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज विघ्नेश जो कि पिछले गेंद पर अपना खाता यहां पर खोल चुके हैं अपनी अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेकर तैयार पटकी हुई गेंद स्कूप किया स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद जाती हुई फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे लंबा सा दौड़ लगाते हुए जब तक गेंद को डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर पीछे की ओर दौड़ कर जाकर फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का कहना पड़ेगी जस्ट रॉक टू द बैक फुट एंड स्कूप दैट वन इन स्टाइल जस्ट क्लियरिंग द इनफील्ड and because of that he gets in a couple of runs for that and with a couple run the scoreboard moving up to 8 for the loss of 1 wicket first over has been comes to an end in their innings पहला ओवर समाप्त हो चुका है 8 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर and let's straight away coming back to the equation 32 minus 8 that means 24 more runs now they have to score for victory in remaining 24 deliveries and the required run rate for them is exactly 6 runs per over ठीक 6 रन प्रति ओवर के औसत से 24 रन उन्हें बनाने हैं बचे हुए 24 गेंदों में हालांकि एक विकेट जरूर खो चुका है पहले ओवर में वीरांजनेय क्रिकेटर्स लेकिन 8 रन बनाने में सफल और यहाँ पर देखते हैं कि सप्तमी वॉरियर्स के गेंदबाज कौन सी रणनीति यहाँ पर अपनाते बचे हुए 4 ओवर में वीरांजनेय के बल्लेबाजों को बांध कर रखने के लिए तो गेंदबाजी कमेंटेटर बॉक्स दैट मीन्स फ्रॉम द यूटीसी एंड इस वक्त वो गेंदबाजी शुरू करते हुए और गेंदबाज इस वक्त दीपक कामत इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार फील्डिंग में जमावट चलती हुई पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए प्रज्वल शनाय इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और जहां तक प्रज्वल शनाय का सवाल है एक बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं करारे स्ट्रोक्स लगाने की क्षमता वो रखते हैं और यहाँ पर देखना है कि अपनी इस बेहतर बल्लेबाजी की प्रतिभा को वो किस तरह यहाँ पर अनावरण करते हैं तो बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त तैनात और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार गेंदबाजी करने के लिए दीपक का बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त शम्स को कवर करने के बाद गेंद पहुंची इस वक्त स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन का इजाफा इस वक्त मिलेगा मिड लेग स्टंप पर गेंद थी अंतिम क्षण में गेंद को मोड़ दिया था इस वक्त और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता स्क्वायर लेग पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर जहां तक जय आंजनेय क्रिकेटर्स का सवाल है इस वक्त उन्हें चाहिए एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप और अभी भी विजय से 23 रन दूर और निस्संदेह क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज एक साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए दीपक एक बार फिर से तैयार इस बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया इस वक्त गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर वहां पर पहुंचे 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा 1 रन के साथ बल्लेबाज यहां पर संतुष्ट हो चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर इट्स 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर बराबर का संघर्ष यहां पर जारी अब तक और देखते हैं आखिरकार इस मैच में विजय कौन सी टीम दर्ज करती है इस बार राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दीपक का बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार प्रज्वल शनाय और दीपक का अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार ये गेंद पटकी हुई गेंद लेग स्टंप पर आती हुई विकेट कीपर चूके शॉट फाइन लेग फील्डर चूके और गेंद इस वक्त फाइन लेग सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए दैट वाज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी गेंद अंतिम क्षण में उछाल ली लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर की ओर निकलती हुई और इस उछाल को बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी समझ नहीं पाए और शॉर्ट फाइन लेग फील्डर जो थे वो गेंद तक पहुंचे लेकिन गेंद की अंतिम क्षण में गेंद की रफ्तार को भापने में असफल और गेंद उनको वंचित करते हुए सीधे फाइन लेग सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए तो 5 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे 5 runs added to the total 5 wides added to the total and the scoreboard is now moving up to 15 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in their innings is now progress with that 5 wides दीपक दाहिना तो राउंड द विकेट इस बार अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला स्कोर रुक चुका है 15 रन और दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर एक पार्टनरशिप की जरूरत है वीरांजनेय क्रिकेटर्स को जबकि चंद कसे हुए ओवर्स और विकेटों की सख्त जरूरत है इस वक्त
सप्तमी वॉरियर्स के गेंदबाजों को कमबैक करने के लिए। ये गेंद परिवर्तन के धीमी गेंद, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी। गेंद की गति को बेहतरते हुए गेंद को स्टीयर कर दिया अंतिम क्षण में बल्ले के मुंह को खोलते हुए, और गली पर जो फील्डर थे वो ठीक तरह से गेंद को फील्ड नहीं कर पाए। दोबारा वो पीछे की ओर दौड़कर जाकर जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 16 now for the loss of 1 wicket. 16 more runs now they have to score for victory and 3 overs to go after this one. और निश्चित रूप से यहाँ पर एक बराबर का संघर्ष जारी, और यहाँ पर दीपक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद को लेकर तैयार। लंबे रनअप के जरिए यह गेंद इस बार हल्के से गेंद को इस वक्त स्टीयर कर दिया खूबसूरती के साथ, गेंद की उछाल को भांपते हुए विकेट से हटते हुए, और जब तक गली पर गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर। 2 overs completed, 17 runs on the board. In fact, 2 overs completed, 17 runs on the board for a single wicket lost, and still in overall calculation, it's going to be 15 more runs now they have to score for victory. Still a ball left in fact. So 1 ball to go in this over. So 1.5 overs gone and 17 runs at the board, and still in overall calculation 19 balls remaining in their innings, and 15 more runs now they have to score for victory. So इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज दीपक इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो दीपक दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ना चाहा इस वक्त, सर्टेनली गोइंग डाउन द लेग साइड, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, 1 रन का इजाफा, लेग बाय declared by umpire, and with that leg by run the scoreboard moving up to 18 for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs in their innings. 2 overs completed, 18 runs on the board, 14 to get in remaining 3 overs with a required run rate of exactly 4.66 runs per over. और लक्ष्य इक्वेशन इस वक्त कुछ हद तक आसान न, लेकिन मौका जरूर है इस वक्त सप्तमी वॉरियर्स के गेंदबाजों को बाउंस बैक करने का। चंद कसे हुए ओवर्स और चंद विकेटें निस्संदेह उन्हें इस मैच में वापस ला सकते हैं। 18 गेंदें बाकी हैं, 14 रन चाहिए विजय के लिए, 14 टू गेट फ्रॉम 18 डिलीवरीज। तो बातचीत इस वक्त जारी, और नया ओवर हमसे दूर वाले छोर से यानी प्रोफेशनल एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए Anant Pai is now brought into the attack, and the first ball of his fresh over is now coming up. So still some fielding adjustments is going on there. जहां तक सवाल है 20 गज के दायरे के अंदर के फील्डिंग के नजरिए का, शॉर्ट फाइन लेग स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद, एक्स्ट्रा कवर इस वक्त थोड़ी से पीछे की ओर जाते हुए, और मिड विकेट पर एक फील्डर इस वक्त जाते हुए क्षेत्र रक्षण न करने के लिए, और कुल मिलाकर नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। विकेट कीपर अभी भी फील्डिंग में जमावट करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त डीप मिड विकेट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त तैनात, जबकि लॉन्ग ऑफ पर बिल्कुल सीधा एक फील्डर मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर। और जहां तक सवाल है ऑफ साइड के 20 गज के फील्डिंग के नजरिए का, तो शॉर्ट थर्ड बैन गली इस वक्त मौजूद, और सिली मिड ऑफ इस वक्त तैनात, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, गेंद पहुंचे मिड विकेट पर, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। Quiet cricket is going on here now. 13 runs more now they have to score for victory in remaining 17 deliveries. और निस्संदेह ये दोनों बल्लेबाज वक्त की नज़ाकत को समझते हुए इस वक्त क्रीज पर टिकने की पूरी कोशिश करते हुए, सेंसिबल क्रिकेट अपनाने की पूरी कोशिश करते हुए। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजों का, तो सबसे पहले इस वक्त ये जोड़ी को तोड़ना होगा गेंदबाजों को अगर उन्हें कम बैक करना है इस मैच में। तो फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद गेंदबाज अनंत पई गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, विघ्नेश भट्ट इस वक्त सामना करते हुए ऑन साइड पर गेंद को स्विंग किया, डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, इनकम सत्रो नॉट मोर देन अ सिंगल, स्ट्राइट ओवर द स्टंप्स, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए, लेकिन खुशी की बात यह है वीरांजने या क्रिकेटर्स के लिए कि रन्स इस वक्त बन रहे हैं, और सिर्फ 12 रन अपने विजय से दूर, जबकि 16 गेंदें उनके पारी के बाकी। अगली गेंद, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर गेंद इस वक्त हो चुकी है 6 रनों के लिए। शॉर्ट गेंद थी, गेंद को
थोड़े से सफल होते हुए मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट किया और खूबसूरती के साथ उछाल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरीके से गेंद को उछाला था देखिए टीवी मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है। गेंद सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार हो चुकी है और इस छक्के के साथ विजय के और निकट यहां पर हो चुका है। एक छक्के की और जरूरत इस वक्त विजय के लिए। ये गेंद टॉप एज, मौका हो सकता है मिड विकेट फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और ये क्या छूट चुका है। ही ड्रॉप्स दैट वन, दैट वाज एन simplest chance and the opportunity gone in vain. 27 for the loss of 1 wicket, just 5 to get now. और ऐसा कहना पड़ेगा अब विजय के अति निकट इस वक्त पहुंच चुका है वीरांजनेय। अगली गेंद, यह गेंद उछाला स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में गेंद और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका था। हालांकि फ्लैटर वर्जन पर गेंद आई थी लेकिन अंतिम क्षण में गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखी और आखिरकार गेंद को लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर अपने दोनों हाथों में लपकने में सफल। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरीके से गेंद को लपका गया था फ्लैटर वर्जन पर सीमा रेखा के अंदर लॉन्ग ऑफ पर दूसरा विकेट गिर चुका है। सो 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स और बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं। तो विघ्नेश छोटी मगर बेहतर पारी खेलने के बाद पेविलियन वापस लौट चुके हैं और उनका स्थान ग्रहण करते हुए अब एज ए नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल गणेश नायक और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अनंत पई की गेंदों का। अंतिम बार इस ओवर में स्वीप किया, इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग, लेकिन मैं समझता हूं ही कलेक्टेड दैट वन आफ्टर फर्स्ट बाउंस। पहले टिप्पे के बाद गेंद को कलेक्ट किया था इस वक्त और बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। गेंद हालांकि कुछ देर तक हवा में जरूर थी लेकिन अंतिम क्षण में जीतोड़ कोशिश जरूर की डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर ने गेंद तक पहुंचने की, लेकिन गेंद को उन्होंने कलेक्शन जरूर किया, कलेक्ट जरूर किया, लेकिन इससे पहले गेंद जमीन पर टिप्पा खा चुके थे। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, मॉनिटर पर इस वक्त दिखाया जा रहा है। 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 3 ओवर्स हैड बीन बाउल्ड, जस्ट 4 टू गेट एंड 2 ओवर्स लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। 2 ओवर का खेल बाकी, सिर्फ 4 रन चाहिए विजय के लिए। अब ऐसा कहना पड़ेगा सप्तमी वॉरियर्स को कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही अब इस मैच में वापस ला सकती है और इस वक्त वीरांजनेय क्रिकेटर्स अपने विजय के द्वार पर आकर खड़ा हो चुका है। तो गेंदबाज दीपक कामत इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक, अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। 4 रन चाहिए 12 गेंदों पर और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त। ये गेंद इस बार कट किया बैकफुट पर जाने के बाद खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, इट्स कुड बी गॉन ऑल द वे, इनफैक्ट जस्ट वी हैड वेट एंड सी, इट माइट बी कंसिडर्ड ऑफ जस्ट इनसाइड डिफेंस और इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। जस्ट रॉक्ड ऑन द बैक फुट एज स्कूप्ड दैट वन इन स्टाइल वाइड ऑफ गली फील्डर एंड बिकॉज ऑफ दैट ही फाइंड्स द गैप वेरी वेल एंड बिकॉज ऑफ दैट ही गेट्स a couple run for that stroke। 30 for the loss of 2 wicket, just 2 to get 4 victory, सिर्फ 2 रन चाहिए विजय के लिए और गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, गेंद पैरों पर टकराई और पहुंची इस वक्त शॉर्ट कवर पर, रन से नहीं मिलेगा। गेंद हालांकि उस समय से कुछ हद तक बाहर की ओर निकलती हुई अंतिम क्षण में और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, दीपक दाहिना हाथ राउंड द विकेट, फुल टॉस, इस बार स्विंग किया डीप मिड विकेट पर, फील्डर गेंद पर पहुंच पाए, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक रन पर, लेकिन स्ट्राइक रन के बल्लेबाज ने 2 कदम आगे जरूर बढ़ाए लेकिन वहीं पर रुक गए और आसान सा रन आउट यहां पर होता 1 नॉन स्ट्राइक रन पर। स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड, जस्ट अ सिंगल रन नीडेड फॉर वीरांजनेय क्रिकेटर्स फॉर विक्ट्री एंड 1+ overs to go in their innings now. And we are just waiting for the number 5 batsman of Viranjana cricketers. He is now coming out to the middle और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, जबकि संकेत कामत नए बल्लेबाज और इस वक्त सामना करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक की गेंदों का। तो प्रज्वल है इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए दीपक की गेंदों का। यह गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को खेला मिड ऑन पर, रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला निशाना चूका और इसी के साथ वीरांजनेय क्रिकेटर्स रजिस्टर्ड a 7 wickets victory with 9 balls to spare in their innings and with that victory they bagged the complete points. So match number 10 ended just short while ago and Viranjana cricketers registered a victory of 7 wickets against Saptagiri Warriors and with that victory
दे बैक द कंप्लीट पॉइंट्स। तो 10वां मैच समाप्त हो चुका है, 11वां मैच यहाँ पर शुरू होगा। 11th मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ कमिंग अप लाइव exclusively within right in front of you within just short while, and till then we're taking a short break and we'll be back right after the short break in the match number 11. We'll starting within just short while. Indo Super Warriors Aleppi will take over Kings 11 Ullal in the match number 11, which will coming up live exclusively right in front of you. So news is here from the center that the skipper of Indo Super Warriors Aleppi are won the toss. They elected to field first, and we'll be back right after the short break with the match number 11 will going to commence within just a short while. Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
creative art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. तो जिस तरह से मैं बता रहा था, घने पेड़ दूर दूर दिखाई पड़ रहे हैं, दर्शकों की तादाद बढ़ चुकी है, शानदार फ्लडलाइट की दूधिया रोशनी और संकेत कर रहे हैं श्रीनिकेत जी के मैच शुरू होने जा रहा है। शानदार दृश्य है और दोनों बैट्समैन मैदान पर पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन इस वक्त अनंत स्ट्राइक एंड पर लेग स्टंप के बाहर थी और अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया जी या घोषित किया। लंबाई ज्यादा, मुझे लगता है कि शायद गेंदबाज चाहते थे कि गेंद को यॉक कराएं, ब्लॉक होल में डालने का प्रयास, और एक एंगल डिलीवरी जिसे कहते हैं, जो लगभग ऑफ स्टंप के दायरे के क्रीज के कोने से अंदर आकर एक एंगल बनाकर लेग स्टंप के बाहर की तरफ निकलती हुई और उसको खेलने के प्रयास में थोड़ा सा क्रॉस द लाइन आकर खेलने का प्रयास चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। हमसे दूर जाते हुए ये गेंद इस बार परिवर्तन किया, गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर और थोड़ा सा हवा में तैरती हुई डिवेट होती हुई गेंद रुक कर आई और बैट्समैन को इंतजार करना पड़ा। धीरे से उन्होंने इंतजार करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र में ढकेल दिया जब तक फील्डर आकर गेंद को उठा लें। एक रन आसानी के साथ बैट्समैन पूरा कर चुके हैं। इस एक रन के साथ ही रनों का सिलसिला जो कि शुरू हो चुका है। इंडो सुपर वॉरियर्स टॉस जीतने के पश्चात क्षेत्र रक्षण का फैसला कितना सही या गलत, ये इस मैच के अंत में पता लगेगा। लेकिन इस वक्त किंग्स 11 चाहता है कि इन बच्चा निर्धारित 5 ओवर्स में वो एक सम्मानजनक लक्ष्य बना ले और इसीलिए दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन विशेष तौर पर उन्होंने भेज दिया है। प्रसाद भट्ट जो कि स्ट्राइक एंड पर बाएं हाथ के बैट्समैन हैं और उनके सामने इस छोर से गेंदबाज रामनाथ आ रहे हैं। रामनाथ प्रसाद भट्ट को, प्रसाद स्ट्राइक एंड पर, रामनाथ की गेंद थोड़ा सा घूमकर ऑन साइड पर खड़े हैं। ये गेंद और रामनाथ की गेंद, क्या कमाल की गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को। अंपायर ने थोड़ा सा समय लिया, श्रीनिकेत कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे और उन्होंने इस गेंद को वाइड करार दिया। लेग स्टंप के ज्यादा बाहर थी, हालांकि कहीं ना कहीं रामनाथ प्रयास कर रहे थे कि गेंद थोड़ा सा कटती हुई अंदर की तरफ आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गेंद में वो स्विंग जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे नहीं मिली और गेंद थोड़ा सा बाहर की तरफ रह गई। श्रीनिकेत जी ने पहले देखा कि गेंद, पहले वो आश्वस्त होना चाहते थे क्योंकि फॉलो थ्रू में वैसे भी कभी कभार गेंदबाज उनके सामने आ जाते हैं और साइड करना मुश्किल हो जाता है। रामनाथ की गेंद, यह गेंद राउंड विकेट और उसको जाने दिया बैट्समैन ने। अंपायर ने दोबारा श्रीनिकेत जी को आज बहुत इस मैच में विशेष तौर पर मुझे लगता है कि अच्छा व्यायाम करने का अवसर मिल रहा है। वाइड के साथ रनों का लेखा जोखा कुल मिलाकर रन बन चुके हैं 4 पर बगैर किसी क्षति आघात के, नुकसान के। शानदार दृश्य है, बिल्कुल हवा नहीं है, ऐसा लगता है कि कहीं गायब हो चुकी है। आकाश में दूर दूर आपको वो धुंध दिखाई पड़ेगी और निश्चित तौर पर ओस पड़ेगी रात में और फिर खेल का मजा शायद कुछ और हो। राउंड विकेट ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत अच्छी गेंद। रामनाथ की गेंद का क्या कहना, वो बहुत जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल वो हवा में तैरती हुई गेंद डिवेट होकर स्विंग होती हुई तेज रफ्तार और बीच में थोड़ा सा स्विंग का मिश्रण। ऐसा लग रहा है कि गेंद कभी कभार थोड़ा सा रुक कर आ रही है और इस वजह से बैट्समैन बीट हो रहे हैं। गेंद को खेलने के प्रयास में कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास कम दिखाई पड़ रहा है। राउंड विकेट छोड़ से अगली गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, जाने दिया, बैकलिफ्ट को वहीं पे रोक लिया और बाध्य होना पड़ा श्रीनिकेत जी को कि इस गेंद को भी वो वाइड करार दें। 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 5 पर बगैर किसी क्षति के। ऑफ साइड पर थर्ड मैन शॉट में है, पॉइंट बिल्कुल पॉपिंग क्रिस की सीध में जो रेखा जाती है वहां पर है
कवर पर एक खिलाड़ी मौजूद है। एक्स्ट्रा कवर मुझे लगता है कि शायद नहीं, बिल्कुल मिड ऑफ क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात, लेग स्टंप में ऑन साइड पर, माफ कीजिएगा, स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी, मिड विकेट थोड़ा सा वाइड रखा गया है। ड्राइव किया गेंद को कदमों के सहारे से, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया। जब तक फील्डर गेंद के ऊपर आ जाते आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया। रामनाथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। अलावा इसके कि कुछ एक गेंदें जो उनकी वाइड गई है, उसके अलावा देखा जाए तो उनकी गेंदों में मुझे लगता है कि कुछ अलग वो करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कम गेंदबाज ऐसे होते हैं जो उंगलियों के बीच में गेंद को फंसाकर, मध्यम तेज रफ्तार के गेंदबाज जो हवा में गेंद को थोड़ा सा फिरकी देने में प्रयास में सफल हो जाते हैं। इस छोर से गेंद दोबारा उसी अंदाज में गेंद और ऑफ स्टंप के लाइन के आसपास थी, जिसको दबाते हुए पुश भर कर दिया। बैट्समैन ने रन लेने का अवसर नहीं मिलेगा। रन अभी भी वहीं पर स्थिर है। धीमापन, कछुए की चाल चलता हुआ ये रनों का औसत, लेकिन उम्मीद है जिस तरह से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, कप्तान अपने आक्रामक गेंदबाजों के जरिए ये प्रयास कर रहा है। शॉट ऑफ लेंथ थी, अच्छा परिवर्तन, और इस परिवर्तन के तौर पर गेंद टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर थी। शॉट ऑफ गुड लेंथ थी और इस गेंद को ऑन साइड पर घुमाकर खेलने के प्रयास में थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद वो विलंब कर गए। विकेटों को कवर जरूर किया, लेकिन इस बार पिछले गेंद के मुकाबले में गेंद थोड़ा ज्यादा रफ्तार के साथ आई और उस उछाल को कवर करने के प्रयास में समय निकल गया और बैट्समैन कहीं ना कहीं एक रन लेकर कुल योग को बढ़ाकर पहुंचा चुके हैं 6 पर। कोई आघात, कोई क्षति अभी नहीं हुई है। ओवर द विकेट रामनाथ दौड़ना शुरू कर चुके हैं। काफी लंबा ओवर उनका दिखाई पड़ रहा है। लॉफ किया गेंद को, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर थोड़ा सा वाइड खड़े थे, जब तक वो गेंद तक पहुंच पाते। एक रन तेज कदमों के साथ दोनों बैट्समैनों ने पूरा कर लिया। इसी के साथ पहला ओवर समाप्त हो चुका है। 7 रन बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर के समाप्ति पर 7 विदाउट लॉस। आप देख रहे हैं पैंथर्स सुपर लीग 2023 शानदार क्रिकेट श्रृंखला। और तो पैंथर सुपर लीग 2023 की यह श्रृंखला निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर बनाई गई है। हर साल कुछ नया करने का प्रयास। और हमारे सामने बिल्कुल कमेंटेटर बॉक्स के सामने अगर आप देखें तो एक श्वान बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठकर इस आंखों देखे हाल को सुन रहा है, कमेंट्री को सुन रहा है। और बिल्कुल अगर कहें तो बैट्समैन के लिए मिड ऑफ का क्षेत्र होगा, बाएं हाथ दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए, बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए माफ कीजिएगा, तो बाएं हाथ के बैट्समैन इस वक्त स्ट्राइक एंड पर और श्वान बिल्कुल मिड ऑफ क्षेत्र में बैठकर इस और अपने मुंह को करते हुए, यानी कि बिल्कुल जो स्पीकर है उसकी ओर कान को रखते हुए बिल्कुल इत्मीनान के साथ वो विवरण को सुन रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। दूर वाले छोर से हालांकि इस वक्त बैट्समैन इस छोर पर है, तो उनके लिए मुझे लगता है कि शायद स्लिप या शॉर्ट थर्ड मैन कहा जा सकता है जहां पर श्वान मौजूद, लेकिन वो संजीदगी जिसे कहते हैं सारे खिलाड़ियों में मौजूद हैं और इसीलिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया कि उस श्वान को बाहर की तरफ निकाले। दूर वाले छोर से नया ताजा ओवर लेकर गेंदबाज लंबी दौड़ के साथ तैयार हुए। उनके गेंद को ऑन दिया, उछाल दिया, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद हवा में गगनचुंबी स्ट्रोक है, दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरी है और इसी के साथ 6 रन। इस छक्के के प्रायोजक हैं पैंथर्स सुपर लीग 2023। जबरदस्त स्ट्रोक। अनिर्देश का जबरदस्त स्ट्रोक। आदेश की गेंद पहले इस गेंद पर आते हो दूर वाले छोर से और दोबारा गेंद को खेलने का प्रयास, थोड़ा सा घूमकर खेलने का प्रयास किया, इस बार चूक गए। गेंद थोड़ा सा घूमकर कटती हुई बाहर की तरफ निकली। अनंत का वो जबरदस्त स्ट्रोक भला कौन भूल सकता है। बहुत कम बैट्समैन होते हैं जो पहले समय लिए बगैर उस लय को, उस मोमेंटम को प्राप्त करते हैं और अनंतेश मुझे लगा कि शायद विचार या फिर योजना या फिर कमर कसते हुए मैदान पर उतर चुके हैं कि किस तरह से उनको बल्लेबाजी करनी होगी। शानदार स्ट्रोक था, जैसी गेंद टप्पा खाकर उठी उसको अच्छे पूर्वानुमान के साथ उन्होंने उछाल दिया। उस छोर से गेंद इस बार थोड़ा सा गेंद के ऊपर आने का प्रयास किया, ऑफ स्टंप की ज्यादा बाहर थी, टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछल कर आई, उस उछाल को कवर किया बैट्समैन ने। गेंद को नीचे की तरफ खेलने के प्रयास में 1 रन लेने का अवसर बना, जिस 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 14 पर बगैर किसी आघात के नुकसान के, 14 विदाउट लॉस। और शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है। सारे दर्शक बिल्कुल शांत है, स्तब्ध हैं, उनकी धड़कनें जुड़ चुकी हैं इस मैच से और ऐसा लग रहा है कि इस मैच में अगर संघर्ष हो तो निश्चित तौर पर उनका समय
बिल्कुल जायज साबित होगा जिस उम्मीद के साथ वो यहाँ पर इस मैच का आनंद उठाने के लिए, श्रृंखला का आनंद उठाने के लिए आए हैं। गार्ड को बदलते हुए गेंदबाज इस बार दूर वाले छोर से आदेश, दूर वाले छोर से प्रसाद को, प्रसाद थोड़ा सा घूमकर ऑन साइड पर खड़े होते हैं। राउंड विकेट, आदेश की गेंद प्रसाद के लिए, बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को और मानो किसी स्पिनर ने गेंद को किया हो उस अंदाज में गेंद टप्पा खाकर घूमकर स्विंग होकर थोड़ा सा अंदर की तरफ आई और बैट्समैन को थोड़ा सा पीछे हटते हुए कट करने के प्रयास में, हालांकि पूरी तरह से विश्वसनीय स्ट्रोक नहीं था, बल्ले का सिरा लेकर गई थी, 1 रन खाते में जोड़ लिए गए। स्ट्राइक रोटेट हो रहा है 1 रन के साथ, कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुका है 15 पर बगैर किसी नुकसान के। दूर वाले छोर से ये गेंद इस बार खेलने का प्रयास, बल्ले का निचला हिस्सा शायद लगा हो, गेंद टप्पा खाने के बाद काफी नीची रही थी, गेंद के लाइन के ऊपर आने का प्रयास कर रहे थे और इस वजह से इस प्रयास में मुझे लगता है कि शायद गेंद जो नीची रही थी उसे थोड़ा सा बीट हो गए और बैकअप कर रहे फील्डर ने शॉट थर्ड मैन पर गेंद को गैदर कर लिया, रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। वाहनों का आना जाना दिखाई पड़ रहा है दोनों ओर से, जो कि आपको देखने को मिलेगा। इस छोर, दूर वाले छोर से गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, घुमाकर खेलने के प्रयास में थोड़ा सा शफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर आ गए, लेकिन अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया है और बच गए मुझे लगता है, क्योंकि जैसे ही बैट्समैन शफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर आते हैं, कहीं ना कहीं अंपायर को सोचने पर वो मजबूर हो जाते हैं कि इस गेंद को वो लीगल करार दे या नहीं, और ऐसे में आखिरकार अंपायर ने कहा कि वाइड है, लेग स्टंप के ज्यादा बाहर थी और कहीं ना कहीं बैट्समैन वहां पर बच गए। उस छोर से गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, ड्राइव किया गेंद को, थोड़ा सा हवा में तैरती हुई गेंद, जब तक मिड ऑफ में, लॉन्ग ऑफ में माफ कीजिएगा, फील्डर गेंद को समेट पाते, 1 रन पूरा किया, ओवरथ्रो के रूप में 1 और रन लेने का अवसर। आउटफील्ड में जितने सारे फील्डर्स होते हैं और ये इंस्ट्रक्शंस हालांकि पहले ही दिया जाता है कि किस तरह से उनको क्षेत्ररक्षण करना होता है और थ्रो करना होता है और बैकअप जरूरी हो जाता है अगर कोई फील्डर थ्रो करता है तो, लेकिन यहां पर देखने को नहीं मिला कि जिस तरह से थ्रो किया गया था उसे बैकअप करने के फील्डर काफी वाइड खड़े थे और इसका फायदा उठाते हुए दोनों बैट्समैन ने दूसरा रन पूरा कर लिया। ओवर समाप्त हो चुका है, 18 रन कुल मिलाकर 2 ओवर के समाप्ति पर कोई आघात क्षति अभी नहीं हो चुका है। हालांकि दोनों बैट्समैन काफी विश्वसनीय तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन अक्सर हम कहते हैं कि गेंदबाजों को और फील्डरों को काफी परेशानियों का सबब बनती है और यही देखने को मिल रहा है। दोनों बैट्समैन बहुत विश्वसनीय तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अनंतेश और प्रसाद, प्रसाद स्ट्राइक एंड पर हैं, अनंतेश जो कि दाहिने हाथ के बैट्समैन नॉन स्ट्राइक एंड पर। क्या कुछ होता है, बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बैट्समैन के लिए प्लस ही कहा जा सकता है जब दोनों दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन चलता हो। प्रसाद स्ट्राइक एंड पर इस छोर से उनके लिए गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को, जोरदार अपील कर रहे हैं विकेट कीपर ने दोनों हाथों को उठाते हुए अंपायर को वो कन्विंस करना चाहते हैं, लेकिन इस पाषाण पर पानी का कोई असर नहीं हुआ, इस अपील का कोई असर नहीं, उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया इस अपील को और खारिज कर दिया, कहना होगा, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश हो गए। शायद स्टंप्स को छोड़कर गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी, जी हाँ, शायद बल्ले का सिरा लेकर गई थी और इस वजह से श्रीनिकेत जी ने कहा कि बैट्समैन सुरक्षित हैं और इसीलिए कहा जाता है कि बहुत बारीकी निगाह, नजदीकी निगाह और बहुत पैनी निगाह होना बहुत जरूरी है अंपायर के लिए और इसको देखते हुए अंपायर ने इस अपील को खारिज कर दिया और आखिरकार बैट्समैन बाल बच गए। अगर बल्ले का सिरा न लिया होता तो निश्चित तौर पर बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। अनंतेश स्ट्राइक एंड पर इस छोर से ये गेंद ड्राइव किया, बहुत अच्छा खेल रहे हैं अनंतेश, कोई ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं, देखा कि गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर है और बिल्कुल थोड़ा सा ऑन दी अप उनका स्ट्रोक देखने को मिल रहा है। अच्छा पूर्वानुमान उनका, अच्छा प्रेडिक्शन करते हैं कि गेंद को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी और अच्छी लंबाई के साथ जिसको ऑन साइड की दिशा में लॉन्ग ऑन में ढकेल दिया। जब तक फील्डर आ जाते प्रसाद को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी और स्ट्राइक रोटेट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कमेंटेटर बॉक्स छोर से राउंड विकेट, इस छोर से ये गेंद उछाल दिया है, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद कोसों दूर हवा में तैरती हुई गई 6 रनों के लिए और इस छक्के के प्रायोजक थे पैंथर्स सुपर लीग 2023। अनंतेश हो या प्रसाद,
लक्ष्य सिर्फ यही है कि वो बड़ा लक्ष्य दे। बड़े लक्ष्य के लिए क्या करना होगा? आपके पास ओवर्स कम है, गेंदें कम बची हैं, आक्रामक स्ट्रोक्स लगाने हैं। और प्रसाद ने बहुत जबरदस्त स्ट्रोक लगाते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर का रास्ता दिखा दिया। राउंड विकेट चोर से ऑन साइड पर एक और बढ़िया स्ट्रोक है, लेकिन इस बार फील्डर ने बहुत तेजी के साथ गेंद को फील्ड कर लिया। जब तक वो गेंद को उठाकर थ्रो कर पाते, थ्रो करते हुए फील्डर बहुत तेजी के साथ गेंद के ऊपर आ गए थे, लेकिन दोनों बैट्समैन उससे ज्यादा तेजी के साथ दौड़ पड़े। 2 रन उन्होंने जल्दी ही पूरा कर लिया। और मुझे लगता है कि गेंदबाज को थोड़ा सा सोचना होगा। गणेश जिस तरह से फुल टॉस गेंदें कर रहे हैं, शायद वो गेंद को ब्लॉक होल में डालने का प्रयास कर रहे थे, और ऐसे में अचानक कभी कभार फुल टॉस हो जाती है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। फुल टॉस गेंद दोबारा उछाल दिया, इस बार कैच हो सकता है। फील्डर थोड़ा सा डीप में खड़े हैं, जब तक वो समेट कर गेंद को थ्रो कर पाए। 1 रन तेज कदमों के साथ दोनों बैट्समैन पूरा कर चुके हैं। इस 1 रन के साथ ही रन्स बढ़कर कुल मिलाकर पहुंच चुका है 29 पर, बगैर किसी नुकसान के 29 विदाउट लॉस। और शानदार खेल चलता हुआ अनंतेश और प्रसाद बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा लग रहा है कि शायद एक कंपटीशन चल रहा हो कि कौन अच्छा स्ट्रोक लगा सकता है। ये गेंद ऑन साइड पर एक ऐसा जबरदस्त स्ट्रोक, मानो गेंद पर छाप पड़ी और 6 रनों की। आप इस स्ट्रोक को क्या कहेंगे? स्कूप कहेंगे, पुल कहेंगे, या स्लॉग स्वीप कहेंगे? इतना बेहतरीन स्ट्रोक, मुझे लगता है कि स्ट्रोक देते हुए युवा खिलाड़ियों को एक तरह से सीखने को मिल सकता है कि किस तरह से आप इस मोमेंटम को बरकरार रख सकते हैं। गेंद लंबी थी और कहीं ना कहीं ब्लॉक होल में डालने का प्रयास में थोड़ा सा फुल टॉस रह गया, उसका फायदा उठा लिया अनंतेश ने। बिल्कुल उस रफ्तार का फायदा उठाते हुए उनको सिर्फ एक दिशा देनी थी। बल्ले का मुंह खोला, कलाई के सहारे से गेंद को धीरे से स्कूप के अंदाज में उन्होंने फ्लिक कर दिया और गेंद गई कौसो दूर मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। और छक्के के प्रायोजक थे पैंथर्स सुपर लीग 2023। उस छक्के के साथ ही ये महंगा खर्चीला ओवर मुझे लगता है कि समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर 35 रन बन चुके हैं 3 ओवर के समाप्ति पर, बगैर किसी नुकसान के, आघात के। और 2 ओवर शेष बचे हैं। आप अगर देखें तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इंडो सुपर वॉरियर्स के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, कप्तान पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनके माथे पर चिंता की लकीरें आएंगी। और गेंदबाजों को कहीं ना कहीं ये दोनों बैट्समैन परेशान कर रहे हैं, नाक में दम कर रहे हैं, और ऐसा कहना होगा कि बिल्कुल उनके विश्वास को कहीं ना कहीं धराशायी कर चुके हैं। दूर वाले छोर से नया ताजा ओवर, राउंड विकेट, फुल टॉस से ऑन साइड पर उछाल दिया, फील्डर गेंद के नीचे आ गए, उन्होंने कमाल का कैच लपक लिया। क्यों ना होगा 100 सुनार की 1 लहार की जबरदस्त कैच। आदेश अपना दूसरा ओवर कर रहे थे और अचानक मुझे लगा कि प्रसाद थोड़ा सा विचलित हो गए, और जिस तरह से स्ट्रोक उन्होंने खेला मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। जिस तरह से गेंद को स्लोअर फुल टॉस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से दोबारा उन्होंने स्कूप और फ्लिक का मिला जुला स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, प्लेसमेंट जरूर किया था, लेकिन थोड़ा सा और स्क्वायर वो खेल जाते तो शायद बात बन सकती थी। और तारीफ करनी होगी उस फील्डर की जो कद काठी में ज्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन चुस्ती और फुर्ती और उत्साह और जोश जिसे कहते हैं, उस तेजी के साथ दौड़कर काफी लंबा फासला तय करते उन्होंने गेंद को बहुत आसान तरीके से कैच कर लिया। ऐसा लगा, ऐसा दिखाया कि बहुत आसान कैच है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। ढेरों दर्शक आपके सामने मौजूद होते हैं और इतना प्रेशर, और उस प्रेशर के साथ ही एक शानदार कैच आपको देखने को मिला। और मुझे लगा कि ऐसे विश्वसनीय बल्लेबाजों को अगर आउट करना है तो ऐसे कैचेस का होना बहुत जरूरी है। तो आखिरकार एक ब्रेक थ्रू मिल चुका है इंडो सुपर वॉरियर्स को, और किंग्स 11 का पहला विकेट जो कि प्रसाद के रूप में गिर चुका है। नए बैट्समैन का आगमन, आदेश उस छोर से गेंद कर रहे हैं, इस बार उछाल दिया, गेंद को हवा में है, बल्ले का टॉप एज लगकर गई विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर ने गेंद को कैच कर लिया है और बैट्समैन आउट होकर अंपायर से थोड़ा सा वो शब्दों का लेन देन करना चाहते थे, लेकिन अंपायर ने, मैं कहूंगा कि शायद इस अपील को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नो बॉल के लिए शायद वो कह रहे थे कि इस गेंद को वो नो बॉल करार दें, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकार दिया और बैट्समैन कैच आउट होकर लौट रहे हैं पवेलियन। जी हां, इसी के साथ एक और विकेट का पतन जो हो चुका है। दूसरे विकेट का पतन 2 विकेटों के नुकसान पर, कुल मिलाकर रन्स बन चुके हैं 35 35 फॉर 2, 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
हैट्रिक का अवसर इस वक्त गेंदबाज आदेश को, और आदेश क्या कर पाएंगे, क्या वो कुछ जबरदस्त करके दिखाएंगे, क्योंकि प्रणव भट्ट इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। तो आदेश के पास एक ऐसा अवसर है कि वो अपने टीम के लिए कुछ कर गुजरें, कुछ कर दिखाएं, कुछ ऐसा करें कि आखिरकार टीम को उनके ऊपर नाज हो, गर्व हो, और क्या ऐसा अवसर जो उनको मिला है उसका वो लाभ उठा पाएंगे। आवश्यकता है एकाग्रता की, फोकस की, सटीक लाइन और लेंथ की। उस छोर से आदेश की गेंद ऑफ द विकेट, इस बार अच्छी गेंद थी और इसको थोड़ा सा दबाते हुए गेंद को धीरे से अंदरूनी सिरा देकर गेंद को खेल दिया। स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद गई, जब तक फील्डर शॉर्ट फाइन लेग से दौड़कर जाकर गेंद को समेट लेते। एक रन तेज कदमों के साथ बैट्समैन ने पूरा कर लिया। इस एक रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 36 पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। अनंतेश स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं और ये बड़ा अच्छा बैटल होगा अनंतेश और आदिश के बीच में। क्या कुछ होता है देखते हैं। उस छोर से ऑफ द विकेट, ये गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी और सही दिशा में गेंद को उछाल दिया। कौन फील्डर इस गेंद को कैच कर पाएगा। मिड विकेट के ऊपर से गेंद गई 6 रनों के लिए, जबरदस्त सिक्सर, और इस छक्के के प्रायोजक थे पैंथर्स सुपर लीग 2023। जैसा अक्सर हम कहते हैं कि विश्वास और अति आत्मविश्वास में तो एक बारीक सी लकीर होती है, और आदिश ने गेंद को थोड़ा सा छोटा कर दिया था। कंधों का उपयोग, अतिरिक्त उछाल, पटकी हुई गेंद और उछल कर आई, और अनंतेश जैसे बैट्समैन को अपने आई लाइन पर गेंद मिली और उनको बिल्कुल ऐसा लगा कि पुरस्कार मिल चुका है, और उसको बहुत खूबसूरती के साथ, टाइमिंग के साथ उन्होंने उछाल दिया मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से 6 रनों के लिए। उस छोर से आदेश की अगली गेंद अनंतेश के लिए, इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को। ऐसा लगा कि गेंद अचानक आउट स्विंगर होकर निकली। बैट्समैन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुविधा में पड़ गए, गेंद को जज करने में शायद वो थोड़ा सा विफल हो गए। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा घूमकर ऑफ स्टंप के बाहर निकली। अनंतेश बिल्कुल चकमा खा गए, गेंद को खेलने के प्रयास में विकेटों को कवर तो जरूर कर लिया लेकिन संपर्क नहीं कर पाए। ऑफ द विकेट, ये गेंद खेलने के प्रयास में थोड़ा अंदरूनी सिरा लेकर गई विकेट कीपर, और फील्डर गेंद के ऊपर झपट चुके हैं। 1 रन तेज कदमों के साथ पूरा कर लिया बैट्समैन ने, और इस 1 रन के साथ ही शायद ये ओवर समाप्त हो चुका है। जी हां, ओवर की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 4, यानी कि 4 ओवर की समाप्ति पर 43 रन 100 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हो पैंथर्स सुपर लीग 2023। अनंतेश 25 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने 3 छक्कों की सहायता से, क्या बात है, अनंतेश भाई निश्चित तौर पर किंग्स 11 उल्लाल के एक जबरदस्त बल्लेबाज साबित हो रहे हैं और राजा की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्यों ना हो, टीम का नाम बिल्कुल किंग्स रखा गया। तो किंग्स 11 का एक राजा जो इस वक्त कमान संभाल कर, बिल्कुल बागडोर को संभालकर स्ट्राइक एंड पर मौजूद है। आखिरी ओवर फेस करने के लिए, सामना करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। मानो कंधे पर बल्ला नहीं बल्कि गदाधारी हो, और उनके सामने गेंद को लेकर तैयार हैं गेंदबाज रोहित को सोचना होगा। हालांकि अंतिम आखिरी निर्णायक महत्वपूर्ण ओवर है, तो एक योजना बनानी होगी। अनंतेश जैसे बैट्समैन को अगर रोकना होगा तो हमसे दूर जाते हुए रोहित के गेंद राउंड विकेट, उनकी गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को, बहुत अच्छी गेंद थी। रोहित ने जानबूझकर गेंद को थोड़ा सा धीमा भी कर दिया था, हालांकि स्विंग जरूर था लेकिन धीमापन था, जिसकी वजह से अनंतेश थोड़ा सा जल्दी कर गए और शायद लाइन पर भी नहीं थे, गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी और लाइन से थोड़ा सा हट कर रह गए। थ्रू द लाइन खेलने का प्रयास भी नहीं किया और इस वजह से बीट हो गए और गेंद थोड़ा सा रुक कर आई। उस छोर से अगली गेंद ड्राइव किया, लॉफ्ट किया, हवा में तैर रही है, फील्डर गेंद के नीचे आ गए लेकिन उनके हाथ से गेंद छूट गई। 2 रन लेने का अवसर मिला अनंतेश को, वो बड़े खुश दिखाई पड़ रहे हैं। ओवर थ्रो के रूप में एक और रन लेने का अवसर, 3 रन खाते में जोड़ लिए गए। क्रिकेट की अनिश्चितताएं देखिए किस तरह से रंग बदलता है क्रिकेट की तरह। 46 रन बन चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। रोहित की पिछली गेंद अनंतेश ने गेंद को उछाला जरूर था, कैच हो सकता था लेकिन फील्डर गेंद के नीचे आया, जरूर कैच नहीं हुआ। फिर
उसके अलावा 3 रन और खाते में जोड़ लिए गए। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बीट कर गई। स्विंग का हल्का फुल्का मिश्रण था। गेंद हवा में टप्पा खाने के बाद घूमकर बाहर की तरफ निकल गई। गेंद को खेलने के प्रयास में न प्रेडिक्ट कर पाए, न अनुमान था, न पूर्वानुमान था। बल्ले हालांकि लाइन से बहुत दूर बल्ले को थोड़ा सा घुमाया, लेकिन चूक गए। लाइन और गेंद बिल्कुल, बल्ला और गेंद बिल्कुल अलग रह गया और विकेट कीपर अपना काम कर चुके हैं। हमसे दूर जाते हुए राउंड विकेट इस छोर से अगली गेंद। इस बार बहुत चतुराई के साथ थोड़ा सा इंतजार किया, जानते थे कि गेंद थोड़ा सा रुक कर आ रही है और इस वजह से चतुराई के साथ रुक कर गेंद को थोड़ा सा पीछे हटते हुए ढकेल दिया। जब तक फील्डर कवर में आ जाते हैं, अपने साथीदार को जिम्मेदारी सौंपी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना साथीदार बल्लेबाज अनंतेश अगर ज्यादा बल्लेबाजी स्ट्राइक लेते हैं तो रन अच्छे खासे बन सकते हैं, बह भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से 3 छक्का अनंतेश लगा चुके हैं। और राउंड विकेट इस छोर से गेंद और बहुत जबरदस्त गेंद। रोहित कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इंडो सुपर वॉरियर्स के कप्तान को इस निर्णय पर बड़ा नाज होना चाहिए कि आखिरकार रोहित को उन्होंने आखिरी ओवर में रखा है, एक ऐसा गेंदबाज जो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा कर रहा है। कमेंटेटर बॉक्स छोर से रोहित की गेंद, राउंड विकेट, उल्टे हाथ से खेलना चाहते थे अनंतेश, बार बार बीट हो रहे हैं। इस बार गेंद लगभग जांघों से टकराई, 1 रन लेना चाहते थे लेकिन चूक गए और लेग बाय के रूप में 1 रन का इजाफा हो चुका है। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो रोहित ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर 5 ओवर के समाप्ति पर रन बन चुके 48। 2 विकेटों के नुकसान पर 48 for 2, 48 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि रनों का लक्ष्य जो कि इस वक्त है इंडो सुपर वॉरियर्स के सामने 49 रनों का। 49 इज द टारगेट। क्या कुछ होता है, कितना रोमांच देखने को मिलेगा और कितने चौके लगेंगे, छक्के लगेंगे, विकेट किस तरह से गिर पाएगा या फिर रोमांच कहां तक अपने चरम सीमा पर बढ़ता है या नहीं, ये सब सुनाने के लिए आगे सतीश जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया अंग्रेजी में सतीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. See Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Thank you very much, Ajay Raji. So 49 to win the match for Indo Super Warriors LMP, and in this small format of the games, you can get the runs by playing some traditional cricketing strokes. So Anantesh played an excellent knock. Mangalapura cricketers toss win. Anantesh scored a 28 valuable runs. 18 balls. Then Prasad. 12 from.
28 runs which is scored by Anantesh, and that means he's the one is leading from the front and just anchoring the innings along with the Prasad is one more good run getter in this particular innings. Scored of 12 valuable runs, and altogether is a contribution from the top order batsmen, the opening batters of Ulala Super Kings. They played like a kings and they got a valuable runs of 48 runs, and getting 49 under floodlight is going to be a big ask for any team, and wait and see how well Alapi will going to get this total score of 49 to win this match. It's going to be more interesting, and they needed some good start from the opening batsmen of Indo Super Warriors. Just like what the name has got, Warriors, they need to play like a Warriors against Super Kings. So some information from international cricket is a decider T20 is going between Sri Lanka versus India. The third T20, decider T20, and India after winning the toss elected to bat first. They're batting really very well, and the last report came from Rajkot. It's 174 for the loss of 4 wicket India, and thanks to the innings of Rahul Tripathi, they scored a quick fired 35 runs in just 16 balls at a strike rate of 218, then followed by Surya Kumar Yadav is now batting on 84 in just 37 balls, and of course one more run getter in this particular match is Subman Gill scored a 46 runs in 36 balls. Here is the first ball of the innings. First ball, and he's just lofted that ball. Will it going to get the distance? Fielder is underneath, but I don't think he will going to get there. The ball just winning the race against the fieldsman. It's a full toss, but not a juicy full toss. A low full toss. Batsman have to bend a little bit to get that one right from the middle of the bat. That's why he's not really getting that much of enough timing, but quite enough to get that distance what he's looking for. Just look at that one a replay where the fielder is. Of course, he almost looks like going to reach that catch, but unfortunately that was landed just over the head of that fielder. And perfect start what we are talking about is required for Indo Warriors. And the left-hand batsman straight away is off the mark with the 6. Right arm over the wicket again, the one more full toss. Again the batsman really getting the placement right, but this time the fielder there, the deep whitish long on. In fact, I thought the fielder might be there in the deep long on version, but the fielder is a deep whitish long on region, so that he managed to collect the ball, and the batsman has got ample time to complete the single. With the single, scoreboard now moves on to 7 on the board without loss of any wicket. Vinayak Shanai has got a very good start from the first 2 deliveries, got a 7 runs, and Pranav Bhatt is a different bowling action. Just look at how many jerk he has got before delivering the ball. It's very difficult to pick his line. Lovely delivery. This time a very good line to ball to the right-hander batsman, pitching the ball in the right spot. There is not that much of deviation in that ball. That's straighter one, but ball looks like kept a little bit low, and when the time of batsman going for the cut shot and missed it completely. Again Pranav, right arm over the wicket. Bounce, batsman forces that beautifully down to deep back, score like boundary. No chance at all for any fielder to stop that one. Now I think the batter Ganesh joining the party. The right strategy, right game plan from these 2 batters. They know exactly if you wanted to climb the mountain of runs, they need to get start in the first over itself. And that's a golden opportunity for the batter. When you're having only 2 fielders outside the circle in the power play overs, there will always going to be opportunity, scoring opportunity for the batters. As Ganesh picked up a boundary here, score jumped into 11 on the board. The straight away pressure now for the Pranav. He's a very young, talented bowler, of course, no doubt at all. But sometimes handling the pressure is so important. It's not so easy sometimes. When the batsman is in an aggressive frame of mind, they need to be very, very concentrate over the line and length. They need to where the fielder is, need to bowl as for his field. Again Pranav bowling away from us. Right arm over the wicket.
Bounce to Ganesh. Short pitch delivery off the back foot. Cuts that one wide nicely between cover point and the backward point region. Before the fielder from cover point fielder to run back towards the deep cover point region. Ample time for Ganesh to complete that couple of runs. Not really getting that much of enough bat onto that because the short pitch deliveries all the time in the world. Batsman can hit the ball towards a deep cover point, but this time he's not really getting that much of enough bat onto that, enough timing onto that. That's why he got a couple of runs. 13 without loss of any wicket. Pranav bowling away from us with a short run up. Pass umpire Shiniket again, the loose delivery and absolutely perfect punishment for that loose delivery. In this particular match, Pranav is not really looking like what he's did in the previous match. Again, the short pitch delivery for the batter, and Ganesh just want to say thank you very much, man, for that short pitch delivery. He's not really having the field in the deep backward square leg region, so that punishment has been given. First over completed. An absolutely explosive start from these opening batters for Indo Warriors. They really started like a Warriors. 17 without loss of any wicket. The match number 12 will be played between team Mangalapura versus Deadly Panthers. So after winning the toss, team Mangalapura elected to ball first. So that's the information for the next match. But here is definitely is going to be a very good match is progressing. After getting 17 in the first over, straight away both the opening batters just open the gate. But it's not quite enough to getting 17. Everybody knows that 17 runs the first over. It's a possibility because of that restriction in the fielding. There are only 2 fielders allowed to stand outside the circle. So scoring opportunity always created. But after that power play, wait and see how well these two batter will going to get the runs here. Now a lot of discussion is going between umpire, squad umpire, and some players of Kings 11 Ullal. Maybe they're talking about the bowlers. Maybe I think the previous match one bowler has got a suspicious bowling action where they doesn't want to introduce. Maybe they're asking for any substitute fielder. Looks like it's a substitute fielder. Pranav looks like he's going to leave the field. Maybe there's some reason, as it looks like it might be is not 100% fit. But seeing that the line and length is ball might be struggling, isn't it? He never looks like he's in 100% fit. The way he is struggled to ball this line and length, and that's why he's leaving the field. And one substitute fielder replacing his place. (32 required in remaining 24 deliveries. Match is evenly poised. It's going to be anybody's game. Vignesh Shanaik has got a very good start, but he need to continue to start what he's got. It's so important in cricket. When you were chasing a big total like 49 to win the match, the one of the batsmen have to play a long innings. A little bit disturbance we can see there in the fielder. I request Diamond at the same jersey number, jersey hakidavaru ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿ. The confusion for the batter to identify the fieldsmen, especially those who are standing in the boundary line, outfield. This time, hammers that one. It is going to be a huge one. This is definitely going to be a flying start here for Indo Super Warriors. Just like I mentioned, after getting 17 in the first over, I just mentioned about it's not so easy to get going after that first over. We can find so many bodies out there in the deep, but it's no bother about that fielders because he's just is getting the distance for long way towards a deep square leg region. As a good comeback here by the bowler, almost in the block hole in the negation. But Ignesh, of course, not really a convincing stroke, but he managed to get that one over the head of that Anantesh, who was standing at short mid-off region, and he got a single for that. With the single, scoreboard was on 24 on the board. What a fantastic start here from the opening batters. Of course, we are talking about Indo Warriors. They're coming from long way. It's not so easy. They have got a long distance of 350 plus kilometers. They came here from our neighboring state, Kerala. And they doesn't want to lose this match because after losing their first match, they desperately wanted to win the match. But it's not so easy of getting a 49 in this condition. But so far they're going very well. This time now improvising that one quite beautifully down to deep fine leg region. There is a fieldsman there in the deep. He will go in to cut it out. But here is a batsman running hard for the second run, and they made it quite easily in the end. All together we can see that the Super Warriors, Indo Super Warriors, are really cruising towards a victory. 26 without loss of any wicket.
Now 23 more runs required for the victory in the remaining 21 deliveries. The difference which is coming down between run and ball. Anantesh balls, beautifully balled. This time, look at that one. Absolutely, this is what you need to see. The sportsman spirit shown there by the batter. Ganesh, I think, without waiting for the umpire decision, he is just turning his face towards a pavilion. And a round of applause is required for the batsman because a rare, we can see that the batsman after having a nick, they doesn't want to leave the crease. But here is the batsman knows that he nicks that one. He's not really waiting for the umpire decision. He's walking towards the pavilion. This is absolutely a true spirit of cricket. He will going to lift the spirit of the game. And that was really required from the batter, more than the talent, the character which matters. 26 for the loss of 1 wicket. But both the batters really, they laid the foundation which is really required when chasing a big total like 49 to win this match. But I think which is not yet over. The job which is not yet over, they need to complete. The new batsman just came into middle, is a left-hand batter. Srinath Kamath will going to face next delivery of Anantesh. This time this almost a full toss delivery. The batsman might not able to get that placement right as he wanted to play that one on to extra cover region. There is a huge gap between long off and cover point region, but he got a single down to cover point region. 27 for the loss of 1 wicket. Anantesh. Alright, I'm over to Vignesh. Again across the line of the delivery, wanted to swing that one. Looks like the ball has got a little bit inside edge of the bat, saving the batsman from the leg before wickets. It's one more good over which is completed, going in favor of Indo Super Warriors. They got 27 in just 2 overs at the rate of exactly 13.5 runs per over. Still the match is in the hands of Indo Warriors. Unless one good over which is badly required for Kings 11 Ullal. 22 required, 18 balls remaining, 7.33 runs per over is the required run rate. I don't think it is going to be a big run rate as the pheasant cricket is concerned, but it might becomes a big required run rate if the one bowler from the side of Kings 11 able to pick the wicket and able to bowl one economic over, then opportunity is definitely going to open for a fielding team as well. But having Vignesh in the other end, I don't think it's going to be a so easy game for the fielding team. But a game everybody knows, cricket is a game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket. It's an unpredictable game. One good over will go into change the complexion of this match. That's why they're asking their trump card bowler to come and bowl. Jersey number 11, Rakshit. Rakshit means savior. Can he able to save this match for the team? Right arm around the wicket, he bowls. Oh, look at that turn of the delivery. And really unbelievable, isn't it? Even he was not believe himself, because ball pitched in a line on a midland off time. Look at the extra turn in the delivery, and umpire called that wide because ball is going further away. Extra turn in the delivery. So 28 on the board for the loss of 1 wicket. Right arm around the wicket. Again, batsman shuffled across the line of the dead wicket keeper behind the same fails to collect the ball. The batsman going for the single in the form of a bye. This time definitely it's not going to be a wide because of the batsman almost shuffled across the line of the delivery. And just umpire is having a problem here with the bowler because he's coming right in front of umpire. So very difficult for Shinike to see where the ball is going. And that's why asking the bowler not to come in a protected zone. Again, the big wide. He's not really able to control his spin. Is it whether it's a swing or spin? I don't know what kind of delivery it's. It's absolutely cutter, what you call, and it's not a kind of line to ball when you're having that much of turn. It looks like when Shane Warne bowling the leg cutter, he's pitching the ball outside the line of leg stump. Ball then going to miss the off stump. It's going to leave the right left-hand batsman. But you need to be very careful to pitch the ball when you're having that much of turn. But it's outstanding spin in his bowling. And look at that one. This is a good line to ball. Yorker line delivery in the negation. But this time he's not really trying for the turn. But he was bowled just aiming towards that line in line you want to ball. The Yorker line delivery. Perfect delivery to ball to the batsman like Vignesh. 30 for the loss of 1 wicket. Again bowler away from us. Right over the wicket. This time it's, I think, the bowler just survived
Just a little bit survived from umpire to call that wide. That's well within the reach of the batsman in the relegation. Score remains on 30 for the loss of 1 wicket. Rakshit again. This is a good line. This is a perfect line to ball. When you're having that much of turn, pitch the ball around the mid-land leg stump and going away from the left-hand batsman. Now, Vignesh need to think a little bit because the difference between run and ball is definitely getting larger. Vinayak little protection. Vinayak will going to face next one. This time again going to be a wide. Disaster. Absolutely disaster, isn't it? Again, this is third wide, I think so, in this particular over, as 31 for the loss of 1 wicket. The over number 3 in progress. Now, Rakshit have to think a little bit. So again, Rakshit just changing his run up. Now he's taking a long run up. Rakshit bowls. This time, Vinayak sensible batting. This is what you call. The cricket is not all about the physical game. Sometimes you need to see the condition of the game. Vignesh Vinayak quickly realizing that after getting 3 wides in this over, no need to panic at all. You got runs what you really wanted in that particular over. So he's just played a defensive role and he picked up a single for that, and that single score numbers on to 32 on the board. 17 more runs required for the victory. Rakshit. This time the batsman wanted to play the reverse stroke. Good thinking by the bowler, just changing the line quite cleverly. So it's a good over. The point of view of Kings 11. Now I want to see that equation between run and ball. 2 overs remaining. That means 12 balls remaining, excluding wides and no balls. Out of 12 balls, and now Warriors needed 17 runs. Super Warriors needed 17 runs at the required rate of exactly 8.5 runs per over. Now the pressure will start to build because of that good over. I just mentioned earlier, the 1 over can change the complexion of this match. Just look at that over which is bowled by Rakshit. Exclude that 3 wides. It's fantastic over. And even he bowled 3 wides, but he managed to control the run from the bat. That's so important in this particular over of Rakshit. Now Anantesh definitely going to be a confident bowler because he will going to defend 17 in 2 overs. And wait and see how Anantesh will going to bowl that very important over from the point of view of winning this match for their team. But having Vinayak in the middle, I don't think the captain of the opposition will going to be relaxed here. If he wanted to win the match, he need to send this man as quick as possible, as Anantesh. Balls. Oh, what we are talking about, the needed this man. The Vinayak is back into pavilion and Antesh is producing a very, very important, it's a vital breakthrough here for team Kings 11. The man who looks very comfortable, man who looks like he will going to take the match into the target, but they really wanted to get the 49 in stipulated 5 overs. But without completing his job, he is back to pavilion. It's a 32 for the loss of 2 wickets. Vinayak is going back in a wrong time. It's not a right time for him to walk towards the pavilion. It's not a right time for the new batsman to occupy the crease. Because 17 still more runs required for the victory in 11 balls. What a match. Now Captain Pranav, certainly is a happy captain seeing that the danger man is back into pavilion. The Anantesh produced that very important breakthrough here. Fantastic outswing delivery, isn't it? You know that Vinayak will going trying for the big shot after that the quiet over the previous over. He definitely going for the big shot. By seeing that, he's reading the mind of the batsman quite well. So experienced campaigner Anantesh. What a fantastic all-round performance from him. Again, nicely turns that one down to deep backward square leg region, but not more than a single. Fielder is in a right orthodox position. That is a deep backward square leg. 33 for the loss of 2 wickets. Anantesh again.
Oh, lovely delivery, very lovely delivery because of that short pitch delivery, which is a well-directed short pitch delivery. It's not the short pitch delivery where batsman can enjoy that one because that ball is just moving from the right-hander, left-hander batsman outside the line of off stump, and there is no possibility of any run. 33 for the loss of 2 wicket. So far, it's Anantesh really taking the match. Jovan ready sir. Lovely shot, improvising that one down to deep backward point boundary. The fielder chasing the ball, ball winning the race against the fieldsman. It's a welcome boundary for Indo Super Warriors. Once again, that boundary will go in to open the gate here for Indo Super Warriors. It's a 37 for the loss of 2 wickets. Still, they required another 12 runs to win this match. Second and Jovan Korkam Vinanti. 8 balls remaining. 12 runs required for the victory. Srinath Kamath, really it was absolutely gutsy batting because it's not so easy to play that shot, switch it, and his right time implemented, right technique to get the runs. 12 to get from 8. The difference coming down. Just a 4 between a run and a ball. Anantesh just adjusting the field from the professional career and balls one dotted delivery, much required. Once again, Anantesh realizing that how important to ball that dotted delivery here. He wanted to larger the distance between run and ball. Now it's a 7 ball and 12 runs required for the victory. Anantesh, this time batsman charging down the track. Srinath, this time they're running hard, looking for the second. In comes the throw from the fielder, and it looks like umpire will going to be satisfied enough to call that not out. He is satisfied enough to call that not out. One side looks like will going to be a third umpire, but Shinniket knows that batsman really safe at home in the striker's end, but it's not a good pick fielding from the fielder in the cover point region. As a little bit correction, short mid wicket region. Couple of runs takes the score into 39. 10 required from the last over. Please be noted, here is an announcement. Today's last 2 matches will be played tomorrow. And I think it's the 17th and 18th match of the day and night will be played tomorrow. Please note the changes, a little bit changes in the schedule. Today's 2 matches will be postponed to tomorrow, and please bear with this, and please note the changes. Now it's a very excellent game is going on. It's going to be anybody's game. It's going to be the match is very difficult to say who will going to win this match. But both the teams, after they're facing their defeat in the first matches, and look at that one spectator is very excited. He's just entering into the ground. Maybe wanted to tell something about a strategy for the batter, how to get the 10 runs. Maybe the supporters of Indo Super Warriors is excited. They wanted to see their team to win this match. It's a 39 for the loss of 2 wickets. The last over will go into start. I want to see which bowler to bowl that last over. Venkatesh to Ashwin. 10 required. Oh, look at the delivery. Perfect start from Venkatesh. He's a very clever, intelligent cricketer, Venkatesh. And he bowled very intelligently right on the block hold. And now the testing time comes now, because he need to bowl another 5 deliveries to the left-hand batter, because whenever there's a left and right combination, it's not so easy for the bowler, because he need to change the line and length every time when strikes are rotated. Now left-hand batsman Srinath, one who picked up a bound, very important bound in the previous over, he is now came back to strike now. 9 to get, 5 to go. There is a deep cover point, long off. There's a 2 fielders outside the circle in the offside region. In the onside, deep backward square leg, deep mid wicket, deep long on. There is a short fine leg, short mid wicket. There is a fielder in the backward point and short extra cover. Here is again the batsman looking for the improvisation. Look at the stroke, that one. No chance at all for the fieldsman. That was absolutely in the right time. Srinath hitting one more boundary. Score jumps into 44 for the loss of 2 wickets. Now just 5 runs required for the victory in 4 deliveries.
Look at the way he's getting that improvisation. Just I want to see it in a replay. Where he was standing and where he was getting improvisation. You know exactly the fine leg inside the ring. If you're able to send that one over that fine leg fielder, he will go to get the boundary. Even the deep backward square leg fielder, definitely is very, very difficult for them to reach towards the deep fine leg region. The perfect game planning here from Srinath. 5 to get, 4 to go. Venkatesh Bowes this time looking for the reverse stroke, but this time he's not really getting enough bat onto that, but quite enough for them to get the single in form of leg by. It's not from the bat. Ball is missing his bat, umpire not missing his opportunity to lift his leg to signal the leg by. 45 for the loss of 2 wicket. 4 required. 3 remaining. Now Venkatesh have to think a little bit. If he bowls good one for Ashwin, definitely one dot dead delivery will go into creep the pressure for the batter. Wait and see which one will go into handle the pressure, whether the bowler or the batsman. This time Avinash pulls that one handsomely. He will go to get the winning runs for that. He's finished the match in a style by hitting the boundary, and Indo Super Warriors, the played like a Warriors, and where could be a easy victory for Super Kings. Now I think there might be disappointed to get the result of this match after getting a 48 runs in 5 overs. Still they're finding them in the losing side. It's not a good to see, but I think need to appreciate the effort of the Warriors. It's been outstanding chasing under floodlight. It's not so easy to get that 49, but what Indo Super Warriors did here is they got the winning runs. 49 for the loss of 2 wicket. Congratulations for the winners. ಮಂಗಳಾಪುರ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗದೆ ಉಂಕ ಸಮಯ ಅಭಾವ ಶೆಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಉಗ್ಗುಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಾವುಕ ಮಂಗಳಾಪುರ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ದೆ ಉಂಕ ಮನ್ ವಿನಂತಿ. Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
धन्यवाद सतीश. So the match starts between team मंगलापुरा versus Deadly Panthers. और टीम मंगलापुरा टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय उन्होंने लिया है. पहली गेंद एक्स्ट्रा कवर पर और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है. He just checked the shot at the last moment and paid the penalty for that. और पहली गेंद पर विकेट यहां पर खो चुका है Deadly Panthers. और देखिए यहाँ पर रिप्ले पर दिखाया जा रहा है, हल्के से गेंद को पुश किया था लेकिन गेंद हमें में पहुंची एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में और चेक करने का नतीजा भुगतान के रूप में उन्हें अदा करना पड़ा और यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है. विकेट नंबर 1. इट्स नॉट फॉर 1 फॉर डेडली पैंथर्स एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली अ शैकलिंग स्टार्ट फॉर देम इन द वेरी फर्स्ट डिलीवरी ऑफ देयर इनिंग्स. तो पहला विकेट इस वक्त गिर चुका है और नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त नंबर 3 बल्लेबाज के हैसियत से क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए सर एक मूवमेंट देऊन स्वागत कोरकमंडू निम्गून घेता सर. विश्वनाथ द नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. तो गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए विनायक अपनी अगली गेंद लेकर तैयार और पहले गेंद पर विकेट खो जाने के बाद दबाव इस वक्त बल्लेबाज के ऊपर. दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद ओह दैट्स गॉन फॉर अ वाइड स्विंग अपीलिंग फॉर कट बिहाइंड इन फैक्ट बट सर्टेनली देयर इज नो contact between the bat and ball and the last moment and collected by a wicket keeper behind the stumps and there is no possibility of any run. तो दो बेहतर गेंदबाज विनायक यहाँ पर फेंक चुके. इट्स नॉट फॉर 1 इन द फर्स्ट ओवर और निस्संदेह यहाँ पर डेडली पैंथर्स को चाहिए एक साझेदारी पार्टनरशिप जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर. गेंद को इस वक्त विकेट कीपर ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए है लेकिन यहाँ पर सही गेंद घोषित कर चुके हैं अंपायर. गेंद कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और स्कोर अभी भी रुक चुका है 0 पर. रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू होना बाकी है और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाता है विनायक. विश्वनाथ कामत सामना करने के लिए तैयार. पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर. दाहिना ओवर द विकेट. पटकी हुई गेंद और इस बार गेंद जोरदार अपील जारी है और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है. 1 more wicket fallen and this is turning out to be a dream start for the bowling department. तो निस्संदेह गेंद उछाल ली थी, बल्ले के टॉप एज पर शायद टकराई थी. एक्चुअली व्हाट वाज हैपेंड वी आर जस्ट वाचिंग इन द रिप्ले. यस इट्स गॉट अ टॉप एज ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट एंड विकेट कीपर मेड नो मिस्टेक बिहाइंड द स्टंप्स. प्रताप मामाने एक स्टेज आरियोने एक मूवमेंट घेवकमंडू निम्गून घेता सर. So that is the wicket number 2 and they are looking now in trouble. मूवमेंट घेवकमंडू निम्गून घेता सर. तो 2 विकेट यहाँ पर गिर चुका है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाचार इस वक्त ये है कि राजकोट में जो तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जा रहा है उसमें भारत ने विशाल स्कोर यहाँ पर खड़ा किया है. इंडिया स्कोर 228 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट थैंक्स टू द ब्रिलियंट नॉक ऑफ सूर्य कुमार यादव हु ब्लास्टेड 112 in just 51 deliveries including 7 sixes and 5 boundaries and because of his fantastic knock they put a huge target in front of Sri Lanka in the decider ODI at Rajkot. Well support came from Shubman Gill 46, Rahul Tripathi scored 35 and the bottom of the order Akshar Patel contributed 21 in just 9 deliveries. A quick firing knock. इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता अंतिम क्षण में गेंद को चूंकि लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. और जहां तक सवाल है एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का तो इस वक्त चाहिए उन्हें एक बेहतर साझेदारी अपने टीम को एक सही मंजिल की ओर अग्रसर करने के लिए. तो इस वक्त गेंदबाज प्रोफेशनल एंड की ओर से अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिना तो ओवर द विकेट. ये गेंद पटकी हुई गेंद कट किया बैकफुट पर जाने के बाद पॉइंट की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद वहां पर फील्ड की जा चुकी है और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर. दिस इज एन एब्सोल्युटली real testing time progressing here for the batsmen of Deadly Panthers. और जो टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था टीम मंगलापुरम के कप्तान ने उस निर्धार का संपूर्ण समर्थन करते हुए यहाँ पर
पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अपनी ओर के अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद पट दैट इज एन ब्यूटी, दैट इज एन एब्सोल्युटली ब्यूटी। लेकिन एक बार फिर से अपील को नकार दिया, लेकिन गेंद उछाल अंतिम क्षण में लेते हुए और इस उछाल को समझ नहीं पाए और बाकी जा रही है बल्ला गेंद बल्लेबाज की गेंद बल्ले का कोई बाहरी किनारा या सिरा इस वक्त नहीं टकराया। नो डैमेज डन टू द बैट्समैन एंड अ फैंटास्टिक ओवर केम्स टू एन एंड। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड and after completion of first over what a fantastic start for the bowlers of team Mangalapuram and a shackling start for deadly Panthers. It's one for the loss of 2 wicket after completion of first over. And now in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in the innings. 4 ओवर का खेल इस वक्त बाकी है और निस्संदेह इस परेशानियों के दलदल से अगर उभरना है तो यहाँ पर डेडली पैंथर्स को एक बेहतर साझेदारी यहाँ पर निभानी होगी और एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना होगा। तो इस वक्त कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज आदित्य भट्ट is now brought into the attack and the second over starts in their innings. और स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए चिराग शानभाग इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए। तो दूसरा ओवर शुरू होता हुआ फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए गेंदबाज 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। पॉइंट एक्स्ट्रा कवर स्क्वायर लेग और मिड विकेट और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए शरत और गली फील्डर को इस वक्त थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है। हालांकि शॉर्ट थर्ड मैन पर इस वक्त फील्डर को भेजा जा रहा है। रात के 8:45 बज चुके, इट्स ऑलरेडी 8:45 इन द इवनिंग और फ्लडलाइट्स की रोशनी इस वक्त मैदान को फैलाती हुई आई थिंक नो इनफैक्ट नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एट द लास्ट मोमेंट। तो यहाँ पर बाल बचते हुए एक वक्त ऐसा लगा कि बल्ले का शायद बाहरी सिरा टकराया था, लेकिन गेंद अंतिम क्षण में कुछ डिविएट होती हुई बाहर की ओर निकली और यहाँ पर बल्लेबाज बाल बच चुके हैं। तो एक बार फिर से गेंदबाज की ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, बाउंड ऑफ हिज लेग्स, bowled off his legs, one more wicket fallen. ऐसा कहना पड़ेगा, just dragged down to the stumps at the last match. Just we have to look at the replay. Actually what was happened there. और यहाँ पर शफल होते हुए पूरी तरह गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था, लेकिन गेंद को उछाल नहीं पाए और गेंद शायद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे पर टकराने के बाद मिडलर ऑफ स्टंप पर जा टकराई। गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और यहाँ पर ये विकेट गिर चुका है। तो विकेट नंबर 3, रन बन चुके हैं सिर्फ 1 और ऐसा कहना पड़ेगा यहां पर डेडली पैंथर्स अपनी सही राह को तराशता हुआ, जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। निस्संदेह टीम मंगलापुरम के गेंदबाज इस वक्त अपनी पूरी क्षमता एबिलिटी के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए और अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए गेंदबाज इस वक्त तैयार, जबकि नए बल्लेबाज का यहां पर आगमन होता हुआ। मैच नंबर 11 पैंथर्स सुपर लीग 2023 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ इस फ्लडलाइट के रोशनी तले और फ्लडलाइट्स की रोशनी इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी है। घने अंधेरे को चीर कर यह रोशनी मैदान पर इस वक्त गिरती हुई, लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 2 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद, इस बार टॉप एज मौका, एक और विकेट नहीं, कैच को नहीं लपक पाए। जीतोड़ कोशिश जरूर की लेकिन आखिरकार थोड़ा सा मिस जजमेंट और कैच उनके हाथ से छूटता हुआ और बल्लेबाज जीवदान यहां पर प्राप्त करते हुए। और देखिए इस तरह से किस तरीके से यहां पर कोशिश की थी फील्डर ने और अंतिम क्षण में एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो मिस जजमेंट थोड़ा सा, इस कैच को आसानी के साथ लपक सकते थे लेकिन कुछ लेट मूवमेंट की वजह से यहां पर इस कैच को लपक नहीं पाए और इस बीच बल्लेबाज जीवदान और 1 रन प्राप्त करते। 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 2 रन पर 4 विकेट गिर सकते थे अगर इस कैच को फील्डर लपकते, लेकिन 1 रन ने यहां पर मिला, कैच छूटा और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, ये गेंद अच्छी गेंद, ब्लॉक होल पर टिप्पा खाते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेला। बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज टीम मंगलापुरम के
और जहां तक सवाल है यहां पर उनके लिए विजय दर्ज करना इस मैच में जरूरी बन चुका है। डेडली पैंथर्स को भी जीतना इस मैच में बेहद जरूरी बन चुका है। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया, इस वक्त पकड़ स्कोर की दिशा में गेंद जाती है, फीडर वहां पर मौजूद, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। couple of runs added to the total और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर। It's 5 for the loss of 3 wickets in the over number 2 in progress. Still the batsmen of Deadly Panthers searching for the right track. अभी भी अपनी सही राह को तलाशते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद पैरों पर टकराई, certainly going down the leg side और सही तरीके से अंपायर इस अपील को उन्होंने नकार दिया और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 2 overs completed. Still the problems are continuing for the batsmen of Deadly Panthers. They managed to score only 6 runs on the board and there are 3 top enders batsmen already back into the pavilion. Still in overall calculation, it's going to be 3 overs left in their innings and let's see how many runs they are making in this remaining 3 overs with the help of remaining 7 wickets. तो पैंथर्स सुपर लीग 2023 और शानदार श्रृंखला का आयोजन किया है इस श्रृंखला के संगठकों ने और इस श्रृंखला का 11वां मैच का प्रथमार्ध यहां पर प्रगति पर और निस्संदेह एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज टीम मंगलापुरम के। तो फील्डिंग में यहां पर जमावट चलती हुई तीसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ गेंदबाज षणमुख बालिगा is now brought into the attack. The third over starts in their innings और इस वक्त the striker is now going to face Prasad Naik who is batting on 2 of 5 deliveries. Non-striker and batsman Abhay Bhatt who is batting on 1 of 1. तो इस वक्त फील्डिंग में जमावट चलती हुई शॉर्ट मिड विकेट पर एक फील्डर मौजूद, एक्स्ट्रा कवर गली शॉर्ट थर्ड मैन तैनात और डीप मिड विकेट वाइड इज लॉन्ग ऑन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद, लॉन्ग ऑफ इस वक्त वहां पर बिल्कुल सीधा पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को उछालना चाहा, gone for a wide swing, not succeeded, the ball was not so missing so far or the off stump and collected by wicket keeper behind the stumps and there is no possibility of any run. 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद पटकी हुई गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को खेला खूबसूरती के साथ into the gap as well, it could be gone over the fence, in fact it cuts it off just inside the fence and the batsman come back for the second run before that. ऐसा कहना पड़ेगा, just rocked on the back foot and played that one square of the wicket, punched it away and because of that he gets in a couple of runs for that stroke and with that couple run the scoreboard moving up to 8 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. The partnership is now badly required for the batsmen of Deadly Panthers to get back into this match और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज प्रसाद और अभय इस बात से वाकिफ और एक साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए षणमुख एक बार फिर से तैयार अपनी अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर, गेंद को डाला मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, इट्स अ ह्यूज वन और पहला आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक यहां पर लग चुका है बल्लेबाज के बल्ले से, पटकी हुई गेंद थी और ऐसा कहना पड़ेगा इस उछाल को पहले ही भाप लिया था बल्लेबाज ने, मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया गेंद के लाइन पर आते हुए राइट बिहाइंड द लाइन ऑफ द बॉल एंड लॉफ्टेड दैट वन इन अ स्टाइल ओवर डीप मिड विकेट फॉर मैक्सिमम. So with that 6 scoreboard is now moving up to 14 now for the loss of 3 wickets. First confident stroke came from the bat of the batsman in the innings of Deadly Panthers. So third over in progress, 14 for the loss of 3 wickets. और फिर से एक बार गेंदबाज षणमुख गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से उछालना चाहा, चूंकि इस बार गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और अंतिम क्षण में गेंद पहुंचे सीधे विकेट कीपर के हाथों में, तो एक बेहतर कमबैक इस वक्त कर चुके गेंदबाज छक्का प्रदान करने के बाद और फिर से एक बार गेंदबाज अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया, रन के लिए दौड़ पड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग फॉलो थ्रू में थोड़ी सी मिसफील्ड और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 1 रन तेजी के साथ पूरे कर लिया. पहले थोड़ी सी झिझके थे बल्लेबाज लेकिन अंतिम क्षण में यशस्वीतम 1 रन पूरा करने में सफल. 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस और अभी भी बल्लेबाज रन बनाने का हर तरीके का प्रयास हर तरीके की कोशिश यहां पर करते हुए डेडली पैंथर्स के.
अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, ऑन साइड पर स्विंग किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मॉनिटर के अंदर नहीं, मॉनिटर पर जाकर गेंद टकरा चुकी है इस वक्त 6 रनों के लिए। तो बड़ा टीवी मॉनिटर वहां पर लगाया गया था, वहां पर गेंद जाकर टकराई, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर के हाथों को बीट करने के बाद और छक्का इस वक्त जुड़ चुका है। और इस ओवर की बदौलत अब मैं कहूंगा यहां पर डेडली पैंथर्स काफी हद तक इस मैच में वापस आ चुका है। So 15 runs I think so scored in this over, and with this over Deadly Panthers are now back in the game. 2 overs left in overall calculation in their innings. 2 ओवर का खेल बाकी, 2 छक्के इस ओवर में झड़े बल्लेबाज ने, और उन दोनों छक्कों की बदौलत यहां पर डेडली पैंथर्स अब एक अच्छा खासा स्कोर यहां पर खड़ा कर चुका है। 2 ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। तो 12वां मैच इस श्रृंखला का यहां पर खेला जाता हुआ, और इस बीच नए गेंदबाज का आगमन हो चुका है कमेंटेटर बॉक्स की ओर से। विनायक का इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए विकेट कीपर, और ओवर की पहली गेंद लेकर विनायक इस वक्त तैयार। दर्शक रात के 9 बजने के बावजूद मैदान के चारों ओर इस वक्त मौजूद, खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए। ओवर की पहली गेंद ऑन साइड पर गेंद को बोर्डा, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, नॉन स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज काफी आगे निकल आए थे, लेकिन गेंद को अंतिम क्षण में अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 21 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है, और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार फुलर लेंथ गेंद थी, गेंद को ड्राइव किया, इस वक्त मिड ऑन फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाए। वाइड लॉन्ग बॉल पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, बाएं हाथ तक फील्डर का सीधा थ्रो पहुंचा स्टंप सेंड पर, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और कुल मिलाकर ये ओवर गेंदबाज का अब तक बेहतर रह चुका है। 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में वो फेंक चुके हैं, और अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा सफल होते हुए, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए इट केप्ट लो एट द लास्ट मोमेंट आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन, एंड इट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर, एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन इन दिस डिलीवरी। Scoreboard stays at 22 for the loss of 3 wicket. 4th over in progress. Still the batsmen of Deadly Panthers are now searching for the right track, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, गेंद पहुंचे विकेटों के पीछे, मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। गेंद को बिना देखे रन लेने की हड़बड़ाहट इस वक्त दिखाई, विकेट छोड़ चुके थे, और इससे पहले कि वापिस अपना बल्ला बैट विकेट पर रखे, विकेट कीपर ने विकेट यहां पर चटका दिए, बेल उड़ा दिए। देखिए किस तरीके से हुआ था। एक्चुअली फनी थिंग्स इज गॉन at the middle of the pitch in this delivery in fact, and without seeing a delivery he just wanted a run, and because of that he paid the penalty for that. 22 for the loss of 4 wicket. 4th over in progress. Still a struggling time continuing here for the batsmen of Deadly Panthers. टीम मंगलापुरम के गेंदबाजी पर अगर नजर डाला जाए तो तीसरा ओवर उनका काफी महंगा रहा था, जिसमें 15 रन गेंदबाज ने प्रदान किए थे। उसके अलावा पहला, दूसरा और ये चौथा ओवर अब तक बेहतर हो चुका है उनके पारी में, और यहाँ पर इस ओवर में गेंदबाज विनायक का एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए। आदित्य पई द न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, टॉप एज शॉर्ट टचमैन की दिशा में, फील्डर गेंद तक पहुंचे, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। तो इस वक्त कुछ हद तक चौके और छक्कों की सख्त दरकार बल्लेबाजों को अपने टीम के रन की गति को एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, और कोशिश जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन सफलता अब तक तीसरे ओवर के बाद उनके पक्ष में नहीं आई है। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, पैरों पर टकराई, डिफ्लेक्ट होते हुए शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, 1 रन मिलेगा। फुलर लेंथ गेंद थी, और आखिरकार शॉर्ट फाइन लेग पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। सो 4 overs completed and now 24 for the loss of 4 wicket for Deadly Panthers. They recovered a little bit after being a shackling start. Still a last over remaining in the innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी। टीम
मैंगलोर के किस गेंदबाज को इस अंतिम ओवर की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, देखना होगा। और प्रोफेशनल एंड की ओर से लक्ष्मीश के हाथों में गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस वक्त सौंपी गई है और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रसाद नायक का, जबकि आदित्य पै नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। और काफी देर से आदित्य पै ने कोई गेंद का सामना नहीं किया है, सिर्फ एक गेंद का उन्होंने सामना किया है, 1 रन उन्होंने बनाए हैं और नॉन स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त क्रीज पर मौजूद। अंतिम ओवर शुरू होता हुआ, द लास्ट ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स, 24 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और फील्डिंग में यहाँ पर जमावट चलते हुए, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त तैनात। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा कोई डीप कवर पॉइंट इस वक्त दिखाई नहीं देता। वो एक फील्डर मौजूद कवर पॉइंट पर, पॉइंट और कवर पॉइंट के दरमियान एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर, और अब डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के पास एक फील्डर जाते हुए ऐसा कहना पड़ेगा वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर तैनात। और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। अंतिम ओवर शुरू होता हुआ डेडली पैंथर्स की बारी में, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद पटके हुए गेंद, ड्राइव किया इस वक्त गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर गेंद तक पहुंचे, 1 रन का इजाफा, not more than a single, and the scoreboard is now moving up to 25 now for the loss of 4 wicket at the start of the 5th over in fact। तो यहाँ पर देखना यह है कि इस अंतिम ओवर में डेडली पैंथर्स के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। और दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार उछाला, काफी उम्दा, काफी ऊंचा, और इस बार ये कैच फील्डर लपक चुके हैं। He just trying to hit that one over the long on fence, not succeeded. He hit that one high up in the air, and finally long on fielder made no mistake. One more wicket fallen, 5th wicket gone, 25 for 5 with just 4 balls to go in their innings. 4 गेंदें बाकी हैं और 25 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज का इंतजार है इस वक्त। नंबर 7 बैट्समैन इज नाउ स्लोली वॉकिंग टुवर्ड्स टू द मिडल फॉर डेडली पैंथर्स। और 4 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी, और देखते हैं इन बचे हुए 4 गेंदों में डेडली पैंथर्स के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। सो कुछ हद तक ठंड भरा मौसम इस मैदान पर छा चुका है और रात का वक्त 9 इस वक्त बज चुके हैं। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा इस फ्लडलाइट्स के रोशनी तले इस श्रृंखला का 12वां मैच का प्रथमार्ध यहां पर प्रगति पर, और मुकाबला इस वक्त जारी है डेडली पैंथर्स और टीम मंगलापुरम के बीच। तो नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर हो चुका है। नंदीश इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, बल्ले का बेहतरीन किनारा, फाइन निकल चुकी है गेंद, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है स्टम्पसन पर और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पर संतुष्ट। इट्स 26 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट विद जस्ट 3 बॉल्स टू गो इन द इनिंग्स। 3 गेंदें बाकी उनकी पारी में। तो अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। लक्ष्मीश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को उछालना चाहा, चूंकि वाइड की मांग की, पुरस्कृत किया इस वक्त अंपायर अपने दोनों हाथों को हवा में उठाने के बाद 1 रन का इजाफा। इट्स 27 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट और अभी भी कुल मिलाकर उनकी पारी में 3 गेंदें और बाकी। लक्ष्मीश एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को स्विंग किया खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। He just played that one square of the wicket and finds the gap as well. It just cleared the infield and it went over the extra cover fielders and down to a deep extra cover boundary for a 4 runs. So perfect struck came from the bat of the batsman, and the scoreboard is now moving up to 31 for the loss of 5 wicket with just 2 balls to go in their innings. 2 balls to go in their innings in fact. और फील्डिंग में इस वक्त जमावट करने के बाद एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्हें इस वक्त पीछे भेज दिया गया डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के पास। अगली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए वाइड का इशारा, स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर, दबाव इस वक्त महसूस करते हुए गेंदबाज अगली गेंद इस वक्त वाइड फेंक चुके हैं चौका प्रदान करने के बाद और स्कोर बढ़कर 1 रन के साथ पहुंच चुका है 32 रनों पर। इट्स 32 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। अगली गेंद के लिए तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद पटके हुई गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया डीप मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर मौजूद। इनफैक्ट दे लुकिंग फॉर द सेकंड, दे कम बैक फॉर द सेकंड, हाई थ्रो के स्ट्राइकर पर खतरा, लेकिन थ्रो इस वक्त पहुंचा लेकिन विकेट कीपर गैदर करने में असफल। 2 रन यहां पर मिले
और ऐसे रन अंतिम ओवर में चुनाना जरूरी भी होता है बल्लेबाजों के लिए। और यहाँ पर दूसरा रन बल्लेबाज यशस्वीतम पूर्ण कर चुके हैं। 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 34 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। अंतिम गेंद उनकी पारी का लेकर लक्ष्मीश इस वक्त तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। लक्ष्मीश टू प्रसाद, 20 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हैं प्रसाद। इस बार स्विंग किया लॉन्ग ऑफ पर, जस्ट अ सिंगल, लुकिंग फॉर द सेकंड। इन फैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड एंड देयर इज अ इजी रन आउट मेड एट द स्ट्राइकर एंड. So the innings is up and they finished with 35 for the loss of 6 wicket after completion of 5 overs, and now they set a victory target of 36 for Team Mangalapuram. They started slowly but finished well. 36 Mangalapuram have to score for victory in their stipulated 5 overs, and as far as the required run rate is concerned, exactly 7.20 runs per over they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them 36 रन बनाने हैं 10 विकेटों की मदद से निर्धारित 5 ओवर में, और देखते हैं टीम मंगलापुरम के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं। और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होगी चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद, थैंक यू। Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पैंथर्स सुपर लीग 2023 में बैठे तमाम दर्शकों को अजय राज का सप्रेम नमस्कार। शानदार क्रिकेट श्रृंखला, शानदार दृश्य, समय बहुत सुहावना, रात के 9:10 और प्रगति पर चलता हुआ पैंथर्स सुपर लीग 2023 नए कीर्तिमानों को बनाएगी। उम्मीद करते हैं फ्लडलाइट की दूधिया रोशनी में नहा रहा है ये मैदान। इस वक्त द्वंद्व संघर्ष ये चल रहा है टीम मंगलापुरा और डेडली पैंथर्स के बीच में। टॉस जीतने के पश्चात मंगलापुरा के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। 36 रनों का लक्ष्य उनके सामने रखा गया है और डेडली पैंथर्स के तरफ से 2 खोखार पैंथर मैदान पर उतर चुके हैं। विनायक भाई स्ट्राइक एंड पर, प्रथमेश जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं, तो विनायक स्ट्राइक एंड पर, प्रथमेश नॉन स्ट्राइक एंड पर। गेंद को लेकर आदित्य आ रहे हैं।
आदित्य की गेंद विनायक को, बहुत अच्छी गेंद, क्या बात है। आदित्य ने पहली गेंद पर मानसिक तौर पर बढ़त हासिल कर ली कहना होगा। टप्पा खाकर थोड़ा सा नीचे रही और घूमकर ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, जिसको खेलने के प्रयास में चूक गए और आदित्य दोबारा गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। उनकी गेंद इनफील्ड के ऊपर से उछाल दिया, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, फील्डर गेंद को रोक नहीं पाएंगे और ये 4 रन। विनायक का कमाल का स्ट्रोक, बाएं हाथ के बैट्समैन है और ऑन दी अप गेंद को खेला, लंबाई ज्यादा थी, हालांकि थोड़ा सा स्विंग था, लेकिन उसको कवर करते हुए उन्होंने सीधे बल्ले से गेंद को लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में लॉफ्ट कर दिया। बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई 4 रनों के लिए। उस छोर से आदित्य क्या योजना बनाते हैं। उनकी अगली गेंद विनायक को, बहुत अच्छी गेंद, बीट करके इस बार लगभग यॉक कराने का प्रयास किया, पैरों से टकरा कर गेंद निकली। ऑन साइड पर थोड़ा सा विनायक गेंद को फ्लिक करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूक गए, बल्ले पर आने के बजाय गेंद उनके पैरों से टकराई, लेकिन 1 रन लेने का अवसर उनको जरूर मिल चुका है। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 5 पर बगैर किसी नुकसान के, 5 विदाउट लॉस। और शानदार दूधिया रोशनी मैदान पर फैली हुई, बहुत खूबसूरत दृश्य दिखाई पड़ रहा है। दूर दूर आपको आकाश में थोड़ा सा धुंधला होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, धुंध है, ओस पड़ रही है। और जैसा आप जानते हैं कि ठंडी के महीने में, जाड़े के महीने में, ठंड के मौसम में इस बार बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है, शानदार कवर ड्राइव है, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, दूसरे फील्डर ने गेंद को अंदर की तरफ लोका, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन को छू चुकी है और ये 4 रन। कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 9 पर। क्या कमाल का स्ट्रोक खेला इस वक्त प्रथमेश ने, खूबसूरत स्ट्रोक खेल दिया और सही टाइमिंग के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को कवर बाउंड्री लाइन के दिशा में बाहर की तरफ भेज दिया 4 रनों के लिए। 2 फील्डर गेंद का पीछा कर रहे थे, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसे कहते हैं कि दूसरे फील्डर ने कह दिया कि ये गेंद बाउंड्री लाइन को छू चुकी है। ड्राइव किया, लेकिन इस बार प्लेस नहीं कर पाए और तिरछा खेलने के प्रयास में स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड पर कवर में एक फील्डर ने गेंद को उठा लिया। एक बड़ी दीवार ऑफ साइड पर बना दी गई है। ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण अगर आप देखें, थर्ड मैन के अलावा गली थोड़ा सा, जी हाँ, पीछे रख दिया गया। उल्टे हाथ से गेंद को खेलने के प्रयास में हवा में तैरती हुई गेंद, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे, गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में जा रही है, उन्होंने गेंद को रोक लिया, एक्स्ट्रा कवर डीप में गेंद गई है। जब तक वो गेंद को उठाकर थ्रो कर पाते, बैट्समैन के पास इतना समय कि वो 2 रनों को बटोर ले। इन 2 रनों के साथ ही 11 रन कुल मिलाकर बन चुके हैं, 11 विदाउट लॉस। 11 रन पहले ओवर के समाप्ति पर, 11 विदाउट लॉस, 11 रन्स, कोई विकेट, कोई क्षति, कोई आघात अभी नहीं हो चुका है। तो दोनों बैट्समैन बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस तरह से स्ट्रोक्स खेले गए, ऐसा लग रहा है कि एक विश्वास, एक संकल्प अपने मनो मस्तिष्क में लेकर वो उतर चुके हैं कि इस मैच को जीतने के लिए शुरुआत में वो एक अच्छी नींव बनाएंगे। और लक्ष्य है 36 रनों का, 36 रनों का लक्ष्य, और इस 36 रनों का पीछा करते करते अब शुरुआत में ही पहले पावर प्ले में 11 रन बनाए गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि शायद गाड़ी पटरी पर है। और अब दोनों बैट्समैन को अगर कहा जाए कि अनंतेश जो बाएं हाथ के बैट्समैन हैं, प्रथमेश नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं, दोनों बैट्समैन को चाहिए यही कि वो इस पटरी पर रही गाड़ी को इसी तरह से वो बरकरार रखें, तो आसानी के साथ टीम मंगलापुरम इस मैच को जीत सकता है। लेकिन दूसरी ओर डेडली पैंथर्स को विकेटों की सख्त तलाश है, क्या वो विकेटों की तलाश को अंजाम दे पाएंगे। इस छोर से नया ताजा ओवर लेकर विश्वनाथ आ रहे हैं और उनके सामने बैट्समैन माफ कीजिएगा अनंतेश स्ट्राइक एंड पर, विनायक स्ट्राइक एंड पर, माफ कीजिएगा विनायक स्ट्राइक एंड पर मौजूद हैं। राउंड विकेट ये गेंद विनायक के लिए ऑन साइड पर, जी नहीं ऑफ साइड पर, रिवर्स स्ट्रोक खेल दिया है, बहुत बढ़िया स्ट्रोक है, टप्पा खाकर गेंद फील्डर के हाथ में गई, उन्होंने गेंद को उठा लिया, 2 रन तेज कदमों के साथ पूरा कर लिया। इन 2 रनों के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 13 पर बगैर किसी नुकसान के, 13 विदाउट लॉस। और
विनायक बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने गेंद को बहुत जल्दी जज करते हुए शायद पहले ही ठान लिया था, कमिट हो गए उल्टे हाथ से खेलने के लिए। राउंड विकेट, ये गेंद विनायक के लिए, इस बार दबा दिया, धीरे से पुश पर कर दिया, लंबाई ज्यादा थी गेंद में, ऑफ स्टंप के लाइन के आसपास, उसको देखते हुए बल्ले का मुंह खोलते हुए पूरी तरह से गेंद के ऊपर आ गए और निचला हिस्सा बल्ले का देकर गेंद को धीरे से दबा देने के अंदाज में पुश भर कर दिया। एक रन चुराकर अपने साथीदार को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी। विश्वनाथ की गेंद प्रथमेश को। प्रथमेश युवा खिलाड़ी हैं और कितना कुछ दमखम रखते हैं, पिछला स्ट्रोक उनका बता चुका है। ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद स्टंप्स के लाइन पर, इस बार थोड़ा सा मिस कर गए गेंदबाज। फॉलो थ्रू में दौड़कर जाकर गेंद को समेटने का प्रयास उनका, अगर गेंद हाथों में आ जाती तो शायद ये सिंगल नहीं बन पाता। दोनों बैट्समैन को मजबूर होना पड़ता कि वो क्रीज की दिशा में लौट जाएं, लेकिन जैसे ही गेंद हाथ से छूट गई, उनको बीट कर गए, दोनों बैट्समैनों ने तेज कदमों के साथ अपना रन पूरा कर लिया। दोबारा अनंतेश स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं और राउंड विकेट, ये गेंद फुल टॉस थी, उछाल दिया सही दिशा में गेंद को, गगनचुंबी स्ट्रोक है, गेंद हवा से बातें करती हुई जा रही है, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे आ गए और इसी के साथ कैच के साथ ही, शानदार कैच के साथ ही पहला विकेट जो कि प्रथमेश, माफ कीजिएगा अनंतेश का गिर चुका है, अनंतेश आउट हो गए। माफ कीजिएगा विनायक आउट होकर लौट रहे हैं। बाएं हाथ के बैट्समैन विनायक जो कि गेंद को ऑन साइड की दिशा में उछालने के प्रयास में गेंद को ज्यादा ऊंचा खेल बैठे और गेंद हवा में तैरती हुई फील्डर की दिशा में गई और वो कैच कर लिए गए। तो विश्वनाथ गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं और स्ट्राइक एंड पर नए बैट्समैन हरिप्रसाद स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। बाएं हाथ के बैट्समैन विश्वनाथ पहला शिकार प्राप्त कर चुके हैं। क्या कमाल की गेंद थी, हालांकि फुल टॉस कभी कभार फुल टॉस भी काम कर जाती है, अचानक बैट्समैन प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं और उस फुल टॉस गेंद को ऑन साइड पर उछालने के प्रयास में पहले शायद ऐसा लगा कि गेंद बाउंड्री लाइन को क्लियर कर पाएगी, लेकिन आखिरकार कैच कर लिए गए। राउंड विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर धीरे से पेडल के अंदाज में खेलने का प्रयास किया, 9 सेकंड की दिशा में थ्रो हो चुका है। विश्वनाथ ने कोई गलती नहीं की, गेंद को गैदर किया, गिल्लियों को उड़ा दिया उन्होंने। इसी के साथ एक और विकेट का पतन हो चुका है, बैट्समैन आउट हो गए। जब जल्दबाजी में विकेटों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 2 पर 15, 2 विकेटों के नुकसान पर। प्रथमेश आउट होकर लौट रहे हैं। लक्ष्मीश नए बैट्समैन नॉन स्ट्राइक एंड पर। हरिप्रसाद स्ट्राइक एंड पर। विश्वनाथ की अगली गेंद राउंड विकेट, मुश्किल से वो 6-7 कदमों का स्टेप निकालते हैं और बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को। बहुत पैनापन देखने को मिला इस बार, गेंद में लंबाई ज्यादा थी, स्टंप्स के लाइन पर शायद थोड़ा सा बाहर निकल रही थी और अंपायर ने इस अपील को खारिज किया, लेग बाय का संकेत किया उन्होंने। 1 रन तेज कदमों के साथ दोनों बैट्समैन पूरा कर चुके हैं। हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा फील्डरों को हुई है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद नजदीकी मामला हो, लेकिन बाल बाल कहना होगा कि बैट्समैन बच गए अंपायर के नजरों से और 1 रन के साथ ही ये ओवर समाप्त हो चुका है। 20 रनों की दरकार, 18 गेंदें शेष बची हैं, 16 रन बन चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 ओवर के समाप्ति पर 18 गेंदों में 20 रनों की दरकार, 20 टू गेट इन रिमेनिंग 18 बॉल्स। 18 गेंदों में 20 रनों की दरकार, क्या कुछ होता है, कितना दिलचस्प मुकाबला। स्पार्क उडुपी आणि सप्तमी वॉरियर्स कॅप्टन अंग स्टेजला टॉस आगे का स्पार्क उडुपी आणि सप्तमी वॉरियर्स कॅप्टन संगे का स्टेजला लगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरिप्रसाद स्ट्राइक एंड पर, लक्ष्मीश नॉन स्ट्राइक एंड पर,
21 नंबर के जर्सी में हरिप्रसाद स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं और उनके सामने गेंदबाज जो कि इस वक्त बॉलर्स नेम प्लीज समय अभावाशील निमित्त जलती वगी स्पार्क उडुपी आणि सप्तमी वॉरियर्स कैप्टन अंगा स्टेजला टॉस आगे होगा। आदित्य पै गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर वो तैयार हो रहे हैं और उनके सामने कैप्टन अंग स्टेजला टॉस आगे होगा। समय अभाव तजन वगी होगा। हरिप्रसाद स्ट्राइक एंड पर और तो कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ, उसके पश्चात निश्चित तौर पर जी हाँ शुरू होने जा रहा है। उस छोर से आदित्य पै की गेंद को बहुत जबरदस्त तरीके से आक्रामक तरीके से लॉफ्ट किया, बिल्कुल गेंदबाज के अंपायर की दिशा में गेंद को लॉफ्ट कर दिया। ताकतवर स्ट्रोक था, फील्डर ने गेंद को कवर कर लिया। जब तक वो गेंद को कवर कर पाते बैट्समैन के पास इतना समय कि वो एक रन को पूरा करे। और अब स्ट्राइक एंड पर लक्ष्मीश आ चुके हैं। तो लक्ष्मीश अपने साथीदार के साथ मिलकर बात करने के पश्चात, विचार विमर्श करने के पश्चात दोबारा तैयार हो रहे हैं। क्या कुछ होता है फील्डिंग में, अब काफी फैलाव देखने को मिल रहा है। ऑफ साइड पर दायरे के अंदर दो खिलाड़ी हैं, ऑन साइड पर दायरे के अंदर दो खिलाड़ी दिखाई पड़ रहे हैं, तैनात हैं। फाइन लेग दायरे के अंदर है, मिड विकेट थोड़ा सा वाइड रखा गया है। उसके अलावा ऑफ साइड पर देखा जाए तो थर्ड मैन बिल्कुल दायरे के अंदर, एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी तैनात। उसके अलावा सारे फील्डर्स जो कि आउटफील्ड में फैले हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस गेंदबाजी के, इस क्षेत्ररक्षण के साथ इनफील्ड के गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। लक्ष्मीश क्या योजना बनाते हैं और गेंदबाज आदित्य पै जो कि योजना बना रहे हैं, आखिरकार क्या योजना वो बनाते हैं, क्या स्ट्रैटेजी वो अपनाते हैं कि इस बैट्समैन को किस तरह से परास्त किया जाए। 36 रनों का लक्ष्य जिसमें 17 रन बन चुके हैं। इस बार गेंद को धीरे से पुश भर कर दिया, जब तक विश्वनाथ गेंद को गैदर कर पाते। कवर क्षेत्र से आकर एक रन तेज कदमों के साथ दोनों बैट्समैन ने पूरा कर लिया। इस एक रन के साथ रन बढ़कर 18 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। दोनों के बीच में अगर भागीदारी बनती है तो शायद बात बने। हालांकि इस वक्त बल्लेबाजों का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी लगता हुआ। 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर आदित्य पै तैयार हो रहे हैं। उस छोर से उनकी गेंद ऑन द विकेट, ऑन साइड पर। क्या बात है, बहुत बढ़िया स्ट्रोक है। पेडल स्वीप के अंदाज में गेंद को खेल दिया, बहुत खूबसूरती के साथ। गेंद लॉन्ग लेग क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। जी हाँ, फील्डर गेंद को नहीं रोक पाया और ये 4 रन। इस शानदार चौके के प्रायोजक थे पैंथर्स सुपर लीग 2023। कमाल का स्ट्रोक, किस तरह से खूबसूरती के साथ स्वीप खेला गया, उसमें थोड़ा सा पेडल स्वीप का मिला जुला स्ट्रोक जिसे कहते हैं, प्लेसमेंट के साथ बहुत लाजवाब टाइमिंग के साथ गेंद को खेल दिया बैट्समैन ने। इस चौके के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 22 पर। 22 for 2। आदित्य पै को सोचना होगा कि किस लाइन और लेंथ के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। उस छोर से उनकी अगली गेंद थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ थी जिसको दोबारा घुमा दिया। कुछ ज्यादा बोर्ड पर नहीं है लेकिन वो प्रयास जरूर कर रहा है कि रनों को रोका जाए। अपनी तरफ से बहुत ज्यादा टोटल नहीं बना पाए। 1 रन और लेने का अवसर बैट्समैन के पास। रन बढ़कर 25 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। 25 for 2, यानी कि अभी और 11 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। प्रयास अच्छा जरूर है लेकिन जब आपके सामने आपके पास ज्यादा आमदनी या न हो तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे सक्षम गेंदबाजों के साथ आक्रमण करना होता है। रनों पर अंकुश लगाना जरूरी है। 1 और रन खाते में जोड़ लिए गए। इसी के साथ रन बढ़कर 26 पर 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि यह तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है। छब्बीस रन 2 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि 10 और रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। और ऐसे में क्या कुछ होता है, क्योंकि 12 गेंदें शेष बची हैं, 12 गेंदों में 10 रन। और ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजों का पलड़ा काफी भारी है, जिसमें डेडली पैंथर्स एक कसौटी से, एक चुनौती से, एक परीक्षा से गुजर रहा है। उनके पास क्या ऐसा कोई गेंदबाज मौजूद है जो कि इन रनों को रोक पाए। 12 गेंदों में 10 रनों को रोकना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन कभी कभार क्रिकेट अपने रंग को दिखा देती है और अनिश्चितताएं जी हां बनती हैं। और ऐसे में गेंद को लेकर इस छोर से
गेंदबाज शरत आ रहे हैं। शरत को खास तौर पर रखा गया है कि आखिरी स्लॉग ओवर्स में वो कुछ जादूबरी गेंदबाजी करें। हरिप्रसाद स्ट्राइक एंड पर बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई, लेकिन बैट्समैन जी हाँ अंपायर ने थोड़ा सा पुरस्कार जरूर दिया, लेग स्टंप के बाहर थी और वाइड करार दिया अंपायर ने। बैट्समैन थोड़ा सा बीट हो गए, एक और रन ओवरथ्रो के रूप में ले रहे हैं। क्या अंपायर इसे लीगल करार देंगे? अंपायर ने शायद इस गेंद को, इस रन को, जी हाँ दोनों अंपायर आपस में बातचीत करते हुए निष्कर्ष निकालेंगे कि ये दूसरा रन गिना जा सकता है या नहीं। तो दोनों अंपायर विचार विमर्श कर रहे हैं। विकेट कीपर की दिशा से, हालांकि पीछे से थ्रो आया था, बैकअप कर रहे फील्डर ने। तो शायद एक ही रन लिया गया, 2 रन माफ कीजिएगा। वाइट +1, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिके जी। तो अतिरिक्त और 1 रन खाते में जोड़ दिए गए, 2 रन खाते में, और इस प्रकार रन्स बढ़कर 28 पर 28 for 2। और स्ट्राइक एंड पर लक्ष्मीश आ चुके हैं। शरद क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्या उनकी गेंदबाजी में जादू है? हालांकि बहुत सारे दर्शक वो जानते हैं शरद की गेंदबाजी और बल्लेबाजी के हुनर के बारे में, वो जानते हैं कि कितने चतुर, जबरदस्त, शानदार खिलाड़ी, ऑलराउंडर वो माने जाते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, आपके सामने ज्यादा लक्ष्य आपने अभी रखा नहीं है। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर गई है और अंपायर ने कहा कि वाइड है, एक और वाइड। जी हाँ 29 रन बन चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर, 3 रन बगैर। जी हाँ सारे गेंद, अभी तक कोई गेंद फेंका नहीं गया, यानी कि लिखा नहीं गया है। 3 वाइड्स फेंके गए, ऑफ द विकेट, इस छोर से ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर। अंपायर ने कहा कि नो बॉल है, तो फ्री हिट का अवसर भी मिलेगा, 1 रन लिखे भी जाएंगे। कुल मिलाकर 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 30 for 2। शरद कहीं ना कहीं अपने विश्वास को खो चुके हैं, लेकिन बड़े बड़े अनुभवी ऑलराउंडर हैं। परिस्थितियां कभी कभार आपका साथ नहीं देती है। बहरहाल इस छोर से ऑफ द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप के ज्यादा बाहर, दोबारा वाइड घोषित किया अंपायर ने। 1 और रन, यानी कि फ्री हिट अभी भी बरकरार रखा जाएगा। 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। शरद गेंद को लेकर तैयार हुए, कमेंटेटर बॉक्स छोर से उनकी गेंद फुल टॉस थी, गेंद को लॉफ्ट कर दिया, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद हवा में तैरती, फील्डर ने गेंद को गैदर तो जरूर किया, लेकिन 1 रन लक्ष्मीश पूरा कर चुके हैं। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 32 पर 2 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि अभी और 4 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए, सिर्फ 4 रनों की दरकार। और आखिरकार एक तरह से कहना चाहिए कि डेडली पैंथर्स के शरद प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन समय, जैसा आप जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, कभी कभार अगर आंख फेर लें तो बात नहीं बनती है। राउंड विकेट, इस छोर से ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, वाइड घोषित किया अंपायर ने। 1 और वाइड, रन बढ़कर 33 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। समय जब आके फेर लेता है तो कुत्ता भी शेर को घेर लेता है, कहावत बिल्कुल सही है। और आखिरकार यहां पर दोनों बल्लेबाज जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन शरद आज समय उनका साथ नहीं दे रहा है। राउंड विकेट, उनकी गेंद इस छोर से, इस गेंद को देखा, थोड़ा सा कवर किया है गेंद को, उछाल को, और धीरे से पुश पर करते हुए 1 रन चुरा लिया, रन बढ़कर 34 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाजों ने बहुत चतुराई के साथ, सूझबूझ के साथ रनों को बटोरा है। वो जानते हैं कि सिंगल से काम चलाया जा सकता है। क्रिकेट की एक अच्छी योजना उन्होंने बनाई, वो संकल्प उनकी आंखों में झलक रहा है दोनों बैट्समैन के कि वो इस मैच को किसी भी हालत में जीतना चाहते हैं। बैकफुट पर गए, गेंद को ड्राइव किया, बहुत खूबसूरत ड्राइव है, कवर क्षेत्र में गेंद को ड्राइव कर दिया और 1 रन और साथ में दूसरा रन भी पूरा कर लिया। इन 2 रनों के साथ ही इस मैच को, जी हां, टीम मंगलापुर ने शानदार तरीके से 8 विकेटों से जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। और डेडली पैंथर्स को अगले मैच के लिए शुभकामनाएं देंगे। हालांकि वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनकी आमदनी काफी कम रही। अगर वो बड़ा टोटल, बड़ा लक्ष्य बना पाते तो शायद अपने शानदार गेंदबाजों के जरिए दबाव बना सकते थे, लेकिन मात्र 35 रन वो बना पाए और इसी वजह से कहीं ना कहीं मैच में उनको ज्यादा संघर्ष करने का अवसर नहीं मिला और इस मैच को शानदार तरीके से टीम मंगलापुरा ने 8 विकेटों से जीत लिया। उनको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस।
तो समय इस वक्त प्लेयर ऑफ द मैच का घोषणा करने का ये समय, और विनायक जी को ये पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। तो विनायक जी बड़े मंच की ओर पधारें, वहां पर आयोजनकर्ताओं की तरफ से आपको ये पुरस्कार दिया जाएगा। प्लेयर ऑफ द मैच, शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया, उनको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस। Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. See Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.